Good morning and welcome to Elections Online 2023. Five independent digital media news organizations have come together once again to give you election results as they roll out. Stay with us for the next 8 hours as we give you calm, steady, reliable commentary and analysis on election results across four states. You heard me right. We're going to be live for the next 8 hours straight up without any ad breaks because this show is powered by people. Everything you see here today, the studio, the lights, the camera, the setup, our entire production has been made possible thanks to people who believe in independent media and people who support independent media. So this broadcast is special for two reasons. First up, it's a super media coalition. We have five media organizations: Scroll, Wire, Caravan, News Minute, and Newslaundry coming together. You're going to hear from reporters in each of these organizations who've traveled across states over the past 1 month. You're going to get a lot of ground insights. Of course, you'll have editors from each of these organizations in conversation with political analysts and policy people and people who study Indian politics. The second reason why this broadcast is very special is because, like I said, we're completely powered by people. There will be absolutely no ad breaks in this broadcast. So you're not going to get government advertisements like the ones you saw in the lead up to the election results. No Shivraj, no Ashok Gehlot, no Bhupesh Baghel telling you what an amazing job they've done for their states. No advertisements from corporations or governments. This show has been made possible thanks to people who have powered this, supported this effort and endeavor. And you too can support this endeavor. You're probably watching this broadcast across five of our YouTube channels. So maybe you're on Scroll's YouTube channel or Wire's YouTube channel or Caravan, Newsminute or Newslaundry's YouTube channel. If you go on the comments section or the description, you'll see a Newslaundry link. Click on that link, choose an amount that's convenient to you and support our election broadcast. Now that I have that elaborate pitch out of the way, Well done. big welcome to Hartosh from Caravan and Seema from The Wire. First up, I think we're going to do a lot of granular discussion, over the next 8 hours, like I said. But I think the first 1 hour, it's good to just zoom out a little bit, talk about big picture themes. And I just want you guys to tell our audience why we're not doing early Rujhan or early trends in the first 1 hour. Hartosh. Well, I mean, quite clearly, we are here to ensure that people watch us, but we are not here to ensure that people watch us at any cost. And that is what happens in most channels till maybe 9:30. This frenzy to start counting numbers is basically an extension of the exit poll. My exit poll versus yours, my leads versus your leads. There is no methodology that explains where you're getting these leads from, how you're collating them, how you're collecting them. It becomes a quest for eyeballs, and it is often misleading. I can give you many examples. I think one Bihar case is particularly infamous for this. And I think it is much better to restrain ourselves and look at what unfolds over the next hour, hour and a half, zoom back and see what the larger picture in this election is, then come back to the results as they start making sense. Yeah. So from 9 onwards, we're going to do that. You've traveled to MP this time, and exit polls have created a lot of commotion because it may just be BJP back if we go by the exit polls. Were you surprised at all? Well, at least one or two of the exit polls, but I mean, since we have now 10 or 15 exit polls, I think three-fourths of them are going to be very surprising. My sense of traveling through the state, and obviously it's a huge state, you can't travel through all of it, is that I personally felt the Congress had an edge, and I speak in very unbiased fashion because, in particular, in Madhya Pradesh, I feel the Congress actually doesn't deserve to win. Yeah, they have a particularly bad leadership. And I go in looking with that eye, and I still feel that people were a little tired of Shivraj. So the numbers surprised me. But then we've been wrong before, and I think we have to admit that, and we'll find out soon enough. Seema, two big picture themes that we should be focusing on in the first 1 hour, if you zoom out. So I think critical, just to add a point to that, that, this anxiety created for who's winning, etc., much like a horse race, is a plague to journalism globally and particularly in India, to just make it into some sort of a game or a match and to go on about semi-finals. So that's wrong. Secondly, how do you signal a 4 or a 6 till the umpire says it?
and the umpire in this case is the EC. So till the election commission gives out the results, we're in no, what are we discussing? So, which is really, I mean, I just completely endorse what you said, that there's no point in rushing to discuss non-numbers, even though it gives a sense of having a lot. It's really quite illusory. I think there are two big pictures here which we must look at. I particularly dislike the phrase semi-final because, again, it's a sporting metaphor, which is also not very appropriate. I think a good metaphor, if we like metaphors, is almost like a prequel, you know, like you have Star Wars 1, 2, 3, that you have separate themes being made, but the end of a particular movie leaves you with clues and cues about the next one. So this is where we need to look at what these results tell us. Of course, it's almost a cliche. States are not the same as what will happen nationally, but they indicate mood. They sometimes create momentum. So I think both things, by indicating mood and by creating momentum, we need to look out for them. One thing why it's particularly important here is because I think we must record the death of the double engine of the BJP. There is no double engine now. Willfully, the second engines, in my view, of the chief ministers have been shown their place, whether it is Raman Singh, whether it is Vasundhara Raje, Rani, whether it is Shivraj Chauhan. So it is even Shivraj Chauhan, who was, I think, at the forefront of the battle, but in the posters, he was pretty diminished. And he's not been named by Mr. Modi in any of the things. So the whole thing, because of also the MPs contesting, the central ministers contesting, it's been made to run like a 2024 campaign. So it's like really interesting after the death of the double engine, what this does to this Modi card of contesting elections. So we're just going to go to some data because we're not looking at initial trends. I especially want to speak about Madhya Pradesh because Hartosh is with us. So we can probably just get the vote share graphic on, please, and just look at previous year's election. Of course, this is the 230 assembly constituency. Last time the Congress won 114 seats, BJP was at 109. If you look at the vote share, though, BJP was slightly ahead, but a little diminished from 2013. So what you have in front of you is 2013 and 2018 election data. The Congress went up slightly, but yeah, that's what we have. And we're going to have Yogendra Yadav join us. Is he with us? Okay. Hi, Yogendra. Welcome. Hi. How are you? Great. So we met you last during Karnataka elections, which was just one state, so it was easy. We have 4 states to talk about this time. The counting for Mizoram has been postponed. But tell us, we thought that the first 1 hour we should be talking about big picture themes that are coming out of this election, zoom out a little bit. On the ground, when you're traveling, a lot of the reporters at least told us that the big sort of overarching theme this time was welfare schemes. A lot of conversation about what party is offering what, especially to women voters. And communalism kind of took a backseat, Hindutva took a backseat. The large conversation was about welfare. Would you agree with that? And what were your observations in your travels? Thank you. And let me begin once again by congratulating all 5 of you for coming together, because in many ways, that's the future of independent journalism in India. So my thanks also to all of you for creating this conglomerate. Yes, as I traveled, I traveled in 3 of these 4, I must confess. In many ways, that's the future of independent journalism in India. So my thanks also to all of you for creating this conglomerate. Yes, as I traveled, I traveled in 3 of these 4. I must confess, I did not travel in Chhattisgarh. So what I said is hearsay. But when I traveled here, yes, very much the conversation that you get is about welfare schemes. So let's begin by saying what these elections are not about. These elections are not about Mr. Modi. BJP tried very hard. BJP
used all those standard things a week before election. Modi will come and change the election. Nothing of that sort happened. So this has happened so many times. But the legend still goes, Modi will come and change the election. That, even if BJP wins a few states, it's not because of Mr. Modi. That's not what the election is about. And I heard that thing about double engine not being there. That's true. That doesn't cut ice. Now, in all the four states, it is not that people are saying the government didn't do any work. Let's begin with Telangana, where I expect nothing short of a wave this time. And that's what I saw. So let's see what the results say. My observation, as I said, then I wrote and said, this is clearly a wave. But even there, voters do not say that, look, he didn't do anything. So that standard thing of throw the rascals out did not exist. They said, yes, he brought current, he brought water, he brought roads. But that's all right. Ho gaya iska kaam. Now it's time for someone else to come. So there was that sense. There was that sense in Rajasthan too, where Ashok Gehlot could well win this election. However, the mood was, yes, he's done a few things. Yes, his schemes are very good. Magar yahan to roti palatti. Whether it actually, so what it would ensure is that we are not going to see the kind of thumping majority that a government which is popular, a government which has a popular chief minister, no anti-incumbency sentiment should get. We're unlikely to see that. In Madhya Pradesh, strangely, that's the one place where I heard Badlao more often than any other state. The exit polls are saying no, BJP is going to win, which would actually be a genuine surprise if that were to be the case. In Madhya Pradesh too, they said, ha, kaam kiya tha. Magar 18 saal, bas ho gaya. There was that sense. I can't say that about Chhattisgarh, but in Chhattisgarh too, you have an incumbent government which has had a decent track record in some ways, especially in terms of payments to the farmers and many other welfare schemes that they came up with, but which faces difficulties. So governments which have done work face difficulties because voters want more. That, in a sense, connects these all. At least very interesting that you say. Even I felt that, at least in my travels, what I saw, there's very little anti-incumbency, at least for the CMs in the three states. Even with Shivraj in Madhya Pradesh, there was a fatigue. There was that, okay, let's try something else. But no one was angry, which is, I mean, we'll see what the numbers say. But tell us a bit, Hartosh. You've traveled through Madhya Pradesh. You saw a diminished Shivraj, sort of a tussle. I mean, uncharacteristic of BJP, because you usually have strong regional leaders and the center kind of supplements that. But here you saw Modi pretty much everywhere. It was one of the important. Yeah, in that sense, I think Seema began by saying that we perhaps should not use a sporting metaphor, but the kind of hold that the Sun has over the BCCI is the kind of hold the duo has now over the party. The figures that we are talking of. And the BJP, over a period of time, you look at Madhya Pradesh, it took 15 years of work before you had a set of OBC leaders like Uma Bharti focus on delivery. I think it's only in Rajasthan that you are seeing schemes that have been crafted out with some care for the future, health, education. Otherwise, there's a competition for distributing resources, which I don't think is clearly thought out. It is that everybody must offer something and you must offer it in competition. So in some senses, it was like not an election of competing visions. And it is only in Rajasthan that the Congress avoided falling into the trap of Hindutva over and over again. Kamal Nath is a man, RSS people in Madhya Pradesh told me will be very happy that he wins the elections. And in some ways, the language he speaks is the language even the BJP was not speaking in Madhya Pradesh. So you see that there are no competing visions in states like Madhya Pradesh. That's a very interesting point you make of lack of competing visions. I'm going to quickly come to Seema, and then Gilles Vernier has joined us, so we'll go to him. Somebody actually in Rajasthan, so we talk about BJP diminishing, regional leaders, but Congress, at least if you look at the Rajasthan election, very out of character election, because Ashok Gehlot, even his campaign didn't have INC colors. It was pink. It was his face throughout. Sonia and Rahul Gandhi made an entry very late, I think maybe on posters 2-3 weeks before the election. It was really very much about Gehlot.
So, I mean, I thought Rajasthan was like really interesting because all the state leaders had almost delinked from the central leadership, whether it is Sachin Pilot, Gehlot, or Vasundhara Raje. They had very little sort of backing, if you like, or the back of central leadership. So it almost seems like, I mean, Rajasthan is emerging as a very interesting autonomous model almost in the Hindi belt. Because as Hartosh said, we need to differentiate between just offering a Ladli Behna in Rajasthan to offering health to having a completely different vision about gig workers. So there is a kind of a thought through idea of an economic model. And also we must not forget what Gehlot told, I think, the Hindu, that he believes in a gardener's model, which is a very interesting mixed metaphor, which is a reference to the community he happened to be born in as well, that I believe in a Mali model where all kinds of flowers should blossom. So, I mean, so I think Rajasthan sort of offers a lot to the Hindi belt, which is why for reasons of, as you said, leaderships kind of running on their own, as it were, not really looking up to some ala kaman. And the kinds of schemes in the Hindi, it's the first time. So we should be looking at that very closely. But I think Ashok Gehlot's campaign got probably the least amount of kind of support from the center in terms of rallies, at least. The central leadership's rally. Yes, precisely. Yeah. So it'll be interesting to see. We have Pooja Prasanna joining us from the news. And Giles. Hi, Pooja. Hi. Where are you joining us from? We can't hear you. You have to unmute yourself. I hope I'm audible now. Yes, you're audible. Where are you joining us from? Bangalore? I am back in Bangalore, yes. Oh, great. So, Tracking Telangana from Bangalore. how excited are you about Telangana? Because when we were there, my God, I think we got trolled quite a bit because of the 2 videos we put up, because it was mostly people just unhappy with the BRS. And we were accused of being like, I don't know, paid trolls or something. But there was a lot of, clearly you could, I mean, we obviously journalist's job is not to predict who's going to win or not, but we could clearly sense that there's dissatisfaction, unhappiness. And now if the exit polls are anything to go by, it's going to be a Congress sweep, at least some are claiming so. We'll see what the results say. But tell me, how excited are you and what are you looking out for Telangana? If we'd had this conversation 4 months ago, we wouldn't even consider Congress being in the reckoning. It was almost given that BRS will perhaps come back to power for a 3rd term. So the very fact that Congress has come this close, whether they win or not, I'm not going to predict. But that in itself, I think, is a huge indicator of what's been happening in Telangana the last 10 years. Quickly, I want to just touch upon the Telangana sentiment that is spoken about so much. What I found on the ground is it's very much still present, but it's kind of evolved from what it was, say, 10 years ago or 5 years ago, because the statehood has been achieved. So the question is, what next? Has there been uniform development? Hyderabad is one place where BRS still has a lot of backers because they have developed the city. It has changed from what it was before, but it was work in progress. Chandrababu Naidu developed Hyderabad, so did YSR Reddy. So, outside of Hyderabad, people still feel that they're being ignored and neglected. The very core of Telangana was that they were being ignored when they were a part of the larger Andhra Pradesh. So there is that sentiment in nooks and corners of the state. And I feel like that is one of the main reasons why people have come out and spoken against KCR in such large numbers. Because in the past, when I have reported from Telangana, there was anger, Manisha, no doubt. The kind of people that we spoke to in the panel, they have been people who have been speaking out against KCR. But there was this impression that he is invincible. Yeah. So what if you're angry with him? He cannot be defeated. Now, that image has been shattered, I think, this election. A question for Pooja. Yeah. Pooja, how significant is it that, the Congress doesn't do brilliantly versus people who've left its party and set up regional outfits, especially those who are so powerful that they change their name from Telangana to the Bharatiya, who have very clear kind of national ambitions. Everyone still says TRS there. Well, okay, that's interesting. So how do you see the Congress kind of running up from behind and getting into this position to challenge the BRS or TRS? Yeah, a whole host of factors have worked in favor of Congress. But yes, it is mostly anti-incumbency vote that the Congress is leveraging. We saw several other parties, smaller parties, including Y.S. Sharmila's YSRTP, and also an outfit that supported, that fought for the Telangana movement led by Professor Kodandaram. All of them put their weight behind the Congress. So that would have done them a lot of good.
that was, I think, the primary reason. Bharat Jodo, in small measures, could have not, if not in terms of public perception, it could have at least, built the morale of the cadre, because this is a state. If I could just quickly take a minute, every election, after election, we saw defectors. Usually, we see that happening in, say, places like Madhya Pradesh and Karnataka, only to form government. Here, we saw the BRS having full numbers, but still we'd see people from the Congress and, in one case, TDP, going towards the TRS as it was then. So Yeah. there was no opposition. So for the Congress, they had to build it almost from scratch. The cadre had left because they thought it's a lost cause. The leaders had left. There was a joke saying that, the Congress has sleeper cells of KCR whenever he wants them to just come to TRS and they just walk. That's not happening this time around. The swing is the other way. From BRS leaders who are miffed that they didn't get tickets, strong leaders, I must add, have joined the Congress, gotten tickets, and have kind of revived the Congress in Telangana. So these are some factors that have come together for the Congress party. But the fact remains that even their most prominent face, Revant Reddy, is not originally a congressman. He was from the TDP, came and worked really hard on the ground. I must give him credit for that. So the Congress has had a rethink of its policies. You cannot no longer say that we gave Telangana, so be grateful to us. Welfarism was something that was very, very prominent in the campaign this time, both from BRS as well as Congress. And finally, I think the win in Karnataka did give them a lot of confidence. We saw a lot of leaders from Karnataka also go there and campaign. And we hear that a lot of money has been also pumped in from Karnataka. Let's get Yogendra in. See, general elections are going to happen in the next 6 months. And there is this irresistible urge to draw conclusions on what these results will mean for BJP in the Lok Sabha, for Modi, or for Lok Sabha results. How perilous is that? Should we be drawing any conclusions? And Telangana, I think that'll be most interesting if the exit polls are anything to go by, because like Pooja said, BRS was invincible. There was this sense that, okay, even if you're upset, you have to go with BRS. I think I heard this thing about semi-final not being an apt metaphor, and I completely agree. Year after year, election after year after election, we've seen that these results do not directly translate into Lok Sabha elections. It's only a function of electoral coincidence that these 5 states, earlier it used to be 3, would go just before the national election. So we have to be very careful in drawing the conclusions. One conclusion, to my mind, would be about whether it's exit for BJP from South India, because Karnataka, they've lost. Telangana, no matter what happens, I think no one is saying that BJP is getting into double figures, which is much less than what they did in the 2019 Lok Sabha election. BJP's sort of assault on Telangana, like they did in West Bengal, clearly did not happen. In West Bengal, at least they managed to become the real second party, the real competitor to TMC. Nothing of that sort is expected from Telangana this time. So in one broad thing would be BJP is out from South India. Now, this has some implications for Lok Sabha election. You could say BJP could bounce back if they ally with the BRS, which is what is widely expected, just as it happened in Karnataka, BJP aligning with JDS. There is some room there, but BJP on its own emerging as a very important player in the South is something you can rule out for 2024. That's important because that sets limits to what the BJP can do. That has been a structural limitation for the BJP. For the BJP to emerge as a very strong player in national politics in the long run, stronger than it is, it needs to break through that. And that is something it is unable to. And to my mind, it has implications for 24 as well. In Karnataka, yes, BJP can come back with some. I don't expect a 25-seat fall or something of that kind in Karnataka. And BJP would struggle to get back its 4 seats in Telangana. So there's some implication there. As for the 3 states, my sense is that all the 3 are going by very small margins.
We spoke about Ashok Gehlot ji. Now it's the third time for Ashok Gehlot. Anyone who's observed Rajasthan would know that every time he's actually run a reasonably decent government. His record in the first term was a tremendous record of famine relief, which is amazing. Very few governments has done the kind of famine relief that he did during the first term, but he lost. Second time, he ran again a reasonably good government. That is when the health reforms of Rajasthan began. He lost, and he lost very bad. Yeah. This time, he has come up with a slew of policies, not just health. It's about pension, it's about gig workers, series of reforms which have some vision for Rajasthan. And if he doesn't win, what message does it give? That's something we need to ponder over. So in all these three states, Rajasthan, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh, I think we are looking at small margins. A shift of 2 to 3% vote is going to tell us, to produce the final verdict. The difficulty, of course, is that this tiny shift in tectonic plates, if I could use a geological metaphor, can produce very big consequences. So consequences in terms of morale, consequences in terms of the larger political message. The larger political message people would wish to look at is the Congress on its way back? Telangana confirms that, and it's a remarkable story of Congress coming back from a position where not many expected it to come back. Frankly, it looked like a situation where Congress would slip into what has happened to it in Andhra Pradesh or Bengal or Bihar. But Congress is coming back is a major signal. But if Congress can hold on to, let's say, two of the three states, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Chhattisgarh, then the message would be much bigger than change. And that's the importance of this word, the verdict today. We all sitting here know it's a matter of a few percentage here and there. We are not going to see a knockout result unless the exit polls on Madhya Pradesh are right. But the impact on political reading, the political message would be very loud. If Congress manages to win two, Congress can go back into election confident, and it changes the morale. If BJP manages to get the two big states, Madhya Pradesh and Rajasthan, BJP goes back into elections much more strongly, although there is no direct correlation. But it does affect morale, it does affect political messaging, it does affect your overall preparation for the Lok Sabha. So morale is one thing, but Hartosh, like when you travel, I think the voters are pretty clear. There's a clear distinction that we're going to vote for Lok Sabha for X reasons, and the state will, vote for this government. And the, Modi's popularity hasn't diminished at all to my mind. Whenever you talk to voters, there's a very clear sense that, okay, center में तो वही ठीक है, यहाँ पे हम कांग्रेस को ला सकते हैं, यहाँ पे और किसी को try कर सकते हैं. So to what extent are voters giving any message? I mean, are we being completely wrong in taking any message from the voters? Because the voter seems very clear that ठीक है center में मोदी अच्छा है, यहाँ पे हम देखते रहेंगे क्या करना है. Absolutely, Manisha. And I'll just stop for a minute to just remind our viewers that we will be changing into Hindi occasionally over the 8 hours. We will have a few hours of Hindi as well in between. 9 to 10, in fact, will be Hindi, hosted by Arfa from the Wire. I think what is clear from conversations, and I mean, these are anecdotal, but from small villages to sort of towns, bazaars, offices, Modi remains undiminished in at least the Hindi belt, in the sense that I know, I think it's probably true of Rajasthan, but in Madhya Pradesh, it is certainly the case. So I don't think we should be reading much into these results in terms of the Lok Sabha, except for the question of psychology and momentum as you go into the elections. This also is, and I just move away from just the campaigning for these elections. It perplexes us. What are these events that are being staged for us here? The G20, the constant propaganda, how ridiculous it seems, this constant thrusting of himself in front, the images. Everywhere I went to in Madhya Pradesh, this should come up that he has changed our stature on the world stage. You ask people this question, what does it mean? Nobody really has an answer. But the psychology of that perception is deeply embedded into a voter there. And that is very different from how they are seeing Shivraj. Shivraj, in
himself is quite a story. I mean, it's a four-time chief minister, not completely out of it, still very much the most important politician in Madhya Pradesh. Mm, And I think it would be interesting to see post the results, however they come out, how the BJP handles who today, in a genuine sense, in terms of being tied to his community, the most important OBC leader they have in the Hindi belt in this side. I'm not talking of UP, because I think OBC politics, and we haven't yet come to that, is going to be one of the central themes as we go into the Lok Sabha. And we have seen glimpses of that in these elections. I think we will discuss that a bit further as we go along. In fact, I just want to underscore this point that Hartosh made about this sentiment of India having arrived at the global stage, that we've made it, and that somehow this will percolate down to us and we'll also do well. And Modi is taking care of the big picture India story. Chief ministers, states can then take care of our needs. It's a big sentiment. Would you agree with that? It's a great strategy. So I agree that that's a strategy in place. But I have views on for how long can I play the same card on the table. So I'm still thinking about it, that is it capital that diminishes? Is there diminishing returns to it? Or is it something you can keep throwing on the table and people will keep buying it? And I think our own political history tells us that there is some sort of a limit to that kind of capture. Because even when Indira Gandhi in 1977 loses the election, she doesn't really lose her popularity. So she, of course, like stages a remarkable comeback in 1980. But that's quite dramatic. But she doesn't really lose her popularity. So in India, there is a certain amount of tensile strength that cult leaders or phenomenally charismatic politicians do acquire, which doesn't mean that they don't lose the election. So I think what's a big change in terms of governments, should it happen, and the defeat of the BJP in states would do is it just kind of creates chaos. Like here in the studio, if people standing behind the camera started jumping around, there were suddenly things happening. It may not interrupt our broadcast, but it shifts. I mean, I like the geological metaphor that Yogendra used. Tectonic plates also play a role. And also, we must remember one thing. Holding on states for Mr. Modi is very important. This is something that has been learnt by the BJP after 2017, because he derives his power from saying that I'm elected by the people. All other institutions, whether they're courts, media, whatever, don't say that. They cannot say that because they're not elected by the people. The only ones who can say that are the state chief ministers. We've been elected by the people too. So that offers a counter. So I don't think Mr. Modi relishes to be the sole BJP sort of elected person, to be surrounded in the sea of non-BJP chief ministers. So that sets into motion other things. Other pieces of the chessboard start walking around, you see. Even the king feels that he's safe in the castle. So I think it's interesting, and politics is all about the art of the possible, or the momentum, as Hartosh says, that gets triggered by events. So Yogendra Yadav has to leave, but let's just quickly go to him. Thank you so much for And joining us. He'll be back. Yeah, you'll be back. But do you want to just add in on this sentiment of India doing well under Modi? And isn't that, I mean, we call out the propaganda on television news, we look at the real numbers, but it's fantastic politics in some ways, right? To instill this sense of hope. And like Hartosh said, when you question them, why, how has India arrived, what are the reasons? There's just a belief. There's a strong sense of belief. And that really is what seems to be working for them. Well, propaganda works. And true, it works. Yeah, that's exactly what I get to hear when I travel. 2 or 3 things. And people would say, अच्छा यादव जी, बाकी सब बातें तो ठीक है. इतना तो आप मानते हैं ना कि देश की इज्जत बढ़ गई है. I say, अच्छा मान लूंगा, आप बताइए कैसे? So देखिए, जब प्रधानमंत्री जाते हैं, इतनी बड़ी रैली होती है. I counter by saying, अच्छा उस रैली में तो NRI बैठे होते हैं, कोई वहां तो नहीं होता. नहीं, अब आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं. The second thing that everyone believes is that on the border, on the Sino-Indian border, हमने चीन को करारा जवाब दिया. I asked them, have you seen the satellite maps? Well, no one has, but how does it matter? So yes, that has indeed been the case, and that is, in fact, that's something very new in Indian politics. Very few politicians actually, in a sense, foreign policy, international relations has hardly been an issue, except in 1972, after the 71 victory, where Indira Gandhi, made some use of the Bangladesh victory that sort of added to her stature. Normally, that's not been the case, and this is unusual. I think the point Hartosh made about OBCs, that's a point that we need to come back probably later. But it's an important point because
In Madhya Pradesh, for the first time, I sensed a little OBC wave. So Mandal is entering Madhya Pradesh for the first time. The real question was whether Congress would be able to connect to that. I personally felt that Congress didn't manage to connect to that possibility very well. There was a possibility. Congress didn't do that well. In Chhattisgarh and Rajasthan, on the other hand, Congress has seemed to have a better connect with the OBC. In Telangana, BJP made the BC into a question. They don't call it OBC, it's the BC in Telangana. BJP tried to make that into a question. Didn't work that well for the BJP, but BC question is going to dominate Telangana politics because that's actually the dominant community. It's not seen in the leadership, but it is very much going to be the question of future of Telangana politics. So in some ways, the rise of the OBC and connected to this demand of caste census, which didn't play out very well in this particular election, but for the national election, caste census, OBC, that's a question that we should pick up some signals about during the course of the day. Great. Thank you so much, Yogendra, for joining us. We'll see you again when we have some numbers streaming in. For those of you who've just tuned in, we're not going to talk about early election results or early trends because postal ballots are being counted right now. There's no point getting excited about it. Sometimes it goes horribly wrong also because people get very excited about the numbers that are just streaming in and already call elections at 9 o'clock. We're not doing any of that. We're just going to have some big picture conversations from 8 to 9. That was our idea. And we have Giles joining us now, who's Senior Fellow at Center for Policy Research. Is he with us? Hello. Hi, Giles. Welcome. Hi. Good morning. It's good to be back. Yeah. So we've been talking about, personality politics, the cult of Modi, how it hasn't been diminished at all. And one could argue that, regional elections are pretty much about different competing models of governance. But is that really true if you look at this election? Because you see a Shivraj, who the exit polls are anything to go by, he may just come back. He fashions himself as this mama, who cares about women, who's their protector. The bulldozer mama, I think, didn't really work because he started off with that, but then close to the election, that disappeared. It became more the caring, loving mama that you can look up to. You look at the advertising by state governments, it's been stunning, I think, in the lead up to this election. All Chhattisgarh, Rajasthan, and Madhya Pradesh, and BRS also. So there is that sense that you have to project yourself as this person and fashion yourself in that Modi kind of, state alternative. Your thoughts? No, you're right. And in many ways, everyone is sort of emulating, the same model and producing, their own version of the same kind of, political figure. What strikes me is that there seems to be more differences of model of governance between states than within states. And that within states, BJP and Congress may not be as differentiated as one, can imagine. They all come with their limited set of, specific promises, which vary in terms of numbers or specific schemes, but they don't necessarily represent opposite approaches to development or social welfare within their states. But there are more differences between states, right? Chhattisgarh, under Raman Singh, adopted a more universalist approach to redistribution. The Congress continued with that. Madhya Pradesh always had a more conventional approach of targeting welfare schemes for farmers, women, OBCs. In both states, BJP and Congress are basically offering, making the same promises or offering the same scheme. Sometimes the difference is like 1,000 rupees between X or Y scheme. Telangana has a rather different model where the state combines massive investment in welfare schemes and public infrastructure, but it combines that with intense crony relations with the private sector, real estate barons, developers in and around Hyderabad. So that's been more, the marking of the Telangana government's model. In Rajasthan, again, you find traces of the previous UPA model, combining welfare schemes with, the extension or the creation of new rights for workers, like gig workers, for example. So, and again,
the BJP is not contesting those schemes and is likely going to continue them should they win, should they come to power, and vice versa for the Congress in case they manage to unseat BJP governments. So, I mean, it's just an observation, but it's quite interesting that you don't have that much differentiation between parties in that regard, in terms of model of governance and style of leadership, also projection of, you know, a benevolent, generous leader, provider of welfare. They basically sort of plagiarizing one another. I think it's quite fascinating what you said about Rajasthan, especially because one of the reasons why we were told that the state always votes out the incumbent is because they're sure that the BJP will continue the same schemes as Gehlot. So they're not really bothered. They know yahan se bhi milega, wahan se bhi milega. Let's keep them on their toes, change karte raho, which I think is pretty sensible actually. You should keep them on their toes, you should keep changing. Seema, do you want to come in? No, I just want to geez, this whole business of this competitive welfarism, which I think is a very good thing because I'm a fan of lots of elections, because that's the only time in India where voters seem to have their say, they are wooed, the netas turn up at their door, they knock. So anyway, just that's a disclaimer. But in what we've been made to believe that people are voting for reasons other than what's good for them. So we experienced that in the past couple of elections, that there is a sense that voters are looking for something else, this whole business of pride or the Hindu nation or dreams that are outside of their material well-being. But if voters are responding to welfare schemes, politicians are being forced to talk about it. Manifestos are full of that and competing. Yeah. Is that a good sign for India? I think it's a good sign. What do you think, Giles? No, it is a good sign, and I mean there are other models which I have not mentioned, but if you look at Kerala, for example, I mean the story of Kerala has been of competitive welfarism between two coalitions for a very long time. One Congress-led, the other communist-led, and that has created some sort of virtuous cycles where governments were evaluated on the basis of the quality of their delivery, knowing that there is another alternative, which is fundamentally not completely different. There is continuity in schemes, etc., and that has created a virtuous cycles. And so we can hope that a similar dynamic may be at play in other parts of the country now. But there are important differences between state and national elections. So we've known now for quite some time about the decoupling of electoral behavior between state and national elections. And we know, for instance, that the BJP gets a huge bump of vote share when the general election follows the state elections, or drops its vote share when the general election precedes a state election. The Congress performance also varies, but not at the same extent, right? In Rajasthan and MP, the difference in performance between BJP in state and national was 20% of vote share against 5-6 loss for the Congress. And of course, we know that the Modi factor accounts for a large part of it, but it's not just the personality or appeal of the PM alone, right? One argument that we could make is that state and general elections are fought along different logic of mobilization and accountability. So national versus regional issues. But the difference between national and regional issues is not merely the scale, but the fact that it's more difficult to hold a prime minister accountable on national issues that are by their definitions more, intangible than on regional issues. That's the point that Yogendra was making, earlier. People have a certain belief that India's standing has improved, that it's actually facing China in Ladakh, that the image of India worldwide, is more positive and so forth. And it's very hard, even if you can find faults into that, if you can sort of have a critical approach to that reality, it's very difficult to campaign on that, because these are not really tangible material things, right? In a state election fought on local factors or on regional factors, people can make an empirical assessment whether their lives have improved or not, and evaluate the performance of the state government in that regard. But when it comes to the image of India or nationalist themes, or themes that relate to Hindutva or to foreign policy, in a way, it's more intangible, and so the logic of accountability is different, and that's where the BJP retains such a huge advantage. One, because it has Prime Minister Modi, who's an effective campaigner and mobilizer,
but also because they have the resources to push on these issues, and that's where the opposition has difficulties to compete against. They can be very competitive, and in fact, the Congress has been competitive in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, Yes. and in Rajasthan for a while, precisely because those larger, less tangible, unaccountable issues are sort of out of the picture, but they tend to come back in a national election. So in that sense, Mohabbat ki dukaan, if at a national level, is not, I mean, India arriving at a global stage is way more tangible than, say, Mohabbat ki dukaan, which seems to be like the central. Well, of course. Yeah, it is Yeah, Gilles, go ahead. tangible in the sense that it's hard to counter with empirical evidence or empirical fact, right? It's tangible. It's real in terms of perception, right? The belief is real, and therefore it performs its effect, right? But it's much harder to sort of confront the prime minister on the fault in the approach to the Ladakh situation, for example, than to criticize the chief minister on the functioning or dysfunctioning of a scheme, right? In a way, it's maybe tangible is not the best word, but maybe material versus immaterial. I don't. Hartosh, you coming? Well, yeah, I mean, one is, of course, I think people will keep asking us for results. Yes. And I think we have to repeat that it doesn't make sense to look at it. I understand the curiosity. I'm driven by it myself. So I would suggest please switch to some channel, look at the numbers now, laugh at them later, and come back to hear what makes sense right now. But are the results even there? I'm trying to No, see. No. They're the not election even commission, visible but in the the channels site. are all Of showing their course, numbers, of course. But the Early umpire times. has not, but the umpire has not signaled anything, right? But- Yeah. So But we I will think have that results. Doesn't mean we won't there have will be a results. curiosity. When there are results, we will have them. talk. But there is, I think in all this talk about development, etc., and that there is something still substantial at stake going ahead in what we take away from these elections. Whatever the results of these elections, look at the differences in the states. And I want to emphasize this, even if it's a point that will be made over and over again, that in Madhya Pradesh, you have a 4-time chief minister, people tired of it, and the Congress is still struggling to take that state. In Chhattisgarh, in Rajasthan, you have something else. You have 2 chief ministers already in power making a fight of it. Is there a difference? Yes, there are substantial. Both are OBC leaders from the state. Kamal Nath is an outsider, an upper caste leader with no direct connect. You are also in desperation in Madhya Pradesh, and to some extent in Chhattisgarh, Gehlot has largely steered clear of trying to sound exactly like the BJP on the Ram Mandir. So the question is, what is the messaging that the Congress will take out of this? Yeah. You are, in the end, the BJP is still messaging. Shivraj started as the bulldozer mama. He realized that because there is an anti-incumbency feeling, that is not going to work. But there was Balaknath riding a bulldozer to his filing his nomination. And once the election results in, the BJP may fight on development. If you go back to 2014, the BJP was supposedly fighting this election on development. They've given anything but. It's a core Hindutva message that they delivered to the country. If Balaknath is your chief minister tomorrow, what was the point of the messaging of development that we are dwelling on today? So there are substantial issues at stake. And I don't think the Congress has clear answers of vision to that at all. And they are doing mixed messaging in a way that does not suggest that they have the ability, unlike in Karnataka, to actually understand how to deal with this particular issue. Great. So we're quickly going to go to Pooja. Thank you so much for joining us. But one very, very quick question, if you can answer very quickly. We're getting a question on YouTube, where someone said that people in Telangana of late have realized that voting for BRS is voting for BJP. Is that really a sentiment on ground? You're mute. You have to unmute. Okay, this is going to be a problem. I was saying that I didn't see that sentiment coming off a lot because it's anyway concentrated in pockets. And there isn't as much anger against the BJP on ground either. So even if people did think that, unlike in Karnataka, we did see Congress calling JD as the B team of BJP, and that did work in swaying the minority votes. So to that extent, yes, maybe the minorities outside of Hyderabad did vote for Congress because they did not want to vote for BRS. But beyond that, I do not see Not voters such a strong being sentiment. really, yeah.
not Great. receiving Thank you so much for joining us. And we're going to see a lot of you in the coming few hours. Giles is still with us, so we can just have one last quick question thrown at him before I leave for my coffee break. This irresistible urge to link 2024 to the results and read messages that the voters may not be giving to anyone. How perilous is it? Yeah, I mean, we have to be, extremely cautious because there are fundamentally different elections. We know that there are great variations in how people vote between state and national elections. They're not fought exactly, on the same issues. And also, I mean, in this particular case, for the most part, these were, at least in the Hindi belt, these were BJP Congress head-to-head contest. Major Congress allies remain distant spectators. And experience from the past shows that the BJP tends to get a bump unless, the Congress does something dramatic in the next, few months. In all likelihood, this is going to happen again, but Indian voters always retain a capacity for surprise. And so being, neither an economist or an astrologer, I would refrain of making any or a geologist. prognostic. Yeah. Oh, that reminds me, I'm missing an astrologer on this show. We should have we an can always astrologer do like some moon television gazing. news channels. Yeah. So sorry, Manisha, just before you wind up, we have half a second, is to just kind of make a pitch again to what Hartosh said, to make a case again for the importance of these elections. They may not be semi-finals, but imagine a scenario if the Congress loses all states. Or, how will its campaign be? What does it do to the mood? There's a message there. If the BJP loses all, there's a clear message there. In case Congress loses Rajasthan, wins Madhya Pradesh by a huge margin, there's a message then what the Congress campaign would be for 2024. So, with Telangana, I think it goes beyond the south. It's like a gateway to the east. It's a message to all other regional leaders who are sitting on the fence. They suddenly need to be wary of the Congress. So I think there's a lot of important cues which will be thrown out by these polls. So we must really pay attention. Yes. What those are is the, I think will unfold in the hours to come. And we're going to do a lot of that granular discussion in the coming hours as the results roll out. You will have numbers thrown at your screen and we will be discussing them as soon as we start getting reliable numbers. Like I said, calm, steady and reliable. That is what our attempt is going to be. I'm going to go now for my coffee break, and Arfa from The Wire is going to be hosting the next segment in Hindi. So that segment is going to be purely in Hindi. You're going to get a lot of numbers. And we're going to leave you with some ground reports that reporters from each of our organizations have done. Do catch them. Remember that we've been able to do this, a lot of our reporting, because we've been supported by people who believe in independent media, who believe, more importantly, in paying for independent news and independent media. So do support us. There will be a link wherever you're watching this video. There'll be a message in the description of the YouTube. There'll be a link. Click on it. Choose an amount that you like and support our election coverage. Thank you so much for tuning on at 8 a.m. in the morning while we're not screaming and shouting and telling you who's winning. So thank you for that. Stay tuned. We'll have a lot coming for you in the next 7 hours. I'm in Chhattisgarh and it's election season in this central Indian state. And behind me, as you can see, is the crop that is central to the election campaign this year, paddy. In fact, paddy has always played an important role in Chhattisgarh politics. In 2018, the Congress managed to dislodge the BJP on the basis of a paddy-related promise. It said that it would procure paddy at rupees 2,400 from farmers in the state. That's rupees 600 more than the minimum support price that the center offers. And it's a promise that the Congress government has lived up to in the state, as farmers here acknowledge. वो तो 2 साल के बोनस हे रमन देवे नहीं करी और तेने मुहारी से का ये बेचारा सबोल दे दे। बघेल जी से हम खुश है सर, बघेल कुछ से अभी तक नहीं रोका है, धान का बोनस भी दिया है सर। In response to that, the BJP this time has in its Ghoshna Patra manifesto has said that it would buy paddy at rupees 3,100 per quintal. But not to be left behind, the Congress in its manifesto has now said it would buy paddy at rupees 3,200, 100 more than the BJP has offered. Paddy, as you see, is at the heart of the elections this year in Chhattisgarh, and is probably this crop that will decide the fate of the political parties in the state.
During elections, it's natural for parties to trade allegations against each other. In Telangana, the biggest allegation a party faces is that it's the B team of another party. The Congress, for instance, has accused the BRS and AIMIM of being the B team of the Bharatiya Janata Party. मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। ये मत सोचिए कि बीआरएस अकेली है। बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों एक साथ मिले हुए हैं। The BRS has flatly denied these allegations of being the B team of any party. Instead, they have claimed that they're the A team of the Telangana public. In this interview with the News Minute, BRS working president KTR responded to Rahul Gandhi's allegations of BRS being the B team while speaking to TNM's editor-in-chief Dhanya Rajendran. B team जो लोग बोलते हैं, people whatever this narrative that they've built, if not arresting my sister by the enforcement directorate is what is the prima facie evidence that we are BJP's B team, then Rahul Gandhi and Sonia Gandhi also have not been arrested. They are also facing ED inquiry. So इसका मतलब क्या हुआ? BJP के B team है Congress. While the Congress has accused the BRS, the BJP and the AIMIM of being hand in glove, the BJP has thrown a counter allegation of its own, claiming that the BRS, Congress and AIMIM are the ones who are working together. What does the AIMIM make of these allegations? Listen to what its party chief Asaduddin Owaisi has to say. But the fact that it is forcing the Prime Minister and the Congress leaders to talk about us, to criticize us, I feel that we have hit the arrow where it hurts. But the B team saga does not end there. Owaisi has accused Congress President Revant Reddy of being the B team of the RSS. Revant was a member of the ABVP during his college days, and Owaisi alleges that association has still continued. In fact, in this election, he nicknamed Revant Reddy RSS Anna. But who is whose B team? Well, that is for the Telangana electorate to decide while they cast their vote. हमारी चुनावी यात्रा राजस्थान से शुरू हो गई है। हम पाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जहां 1998 से बीजेपी के एमएलए ज्ञानचंद पारक हैं। 25 साल हो गए उनको यहाँ पे। ये पाली का प्रदूषित पानी आ रहा है, उससे हमारी जमीन बर्बाद हो गई है, हमारे कुएं बर्बाद हो गए हैं और किसान सारे बर्बाद हो गए हैं। बीजेपी के राज में सब समस्या का हल था, अभी कांग्रेस के राज में कुछ नहीं है। कांग्रेस के राज में कुशासन, भ्रष्टाचार, जितना कांग्रेस राज में कुशासन चलता है आज दिन तक नहीं चला। पाली के अंदर एक ही मीठी नदी है और इस उद्योगपति ने इसको इतना बेकार कर दिया कि यहाँ जहर घोल दिया, हमारी गाय मर रही है। आज जो पानी है उस पानी का 11 TDS है। अगर ये जो मोदी कह रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि इन कुओं का पानी पी के दिखा दे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वोट बीजेपी को दूंगा। और फायदो नहीं, कोई टाबर फायदो नहीं, कोई कुछ दान सुन कुछ नहीं मिले। आप ले वालों तारे लाल मरे जाओ। कांग्रेस को कटिंग करा। ये किसी नाम का या फिर धर्म के नाम पे कोई प्रचार नहीं करिए, ये अपने काम का करिए। चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा में 25 लाख का और जो दुर्घटना बीमा है 15 लाख का। मैं खुद MRC में रह के आया हूँ। क्या सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिए? एक तो हमारे टाइम पे भर्ती नहीं निकालते हैं और भर्ती निकालते हैं तो ये पेपर है जो लीक हो जाते हैं, बाद में हम एग्जाम दे के आते हैं और उसके बाद ये जो है बाद में कैंसिल हो जाता है। मोबाइल से क्या है, खर्चा बढ़ गया। 400 रुपए महीने का अंदर मोबाइल के अंदर रिचार्ज करेगा तो वो मोबाइल चलेगा। वही अगर सिलाई की मशीन दी होती तो जिसके घर में पति नहीं है, जो गरीब है, वो सिलाई करके मजदूरी करती। ऐसा कह लो सिलाई सिखा रहे ना, राजविका की वो खुली हुई ना। तो वो ट्रेनिंग करो, समूह में जुड़ो, आप समूह में जुड़ो, उसके बाद आपको सिलाई सिखा रहे हैं। वसुंधरा जी होता तो यहाँ आगे बीजेपी वोट ज्यादा सीटों से जीतती, पर थोड़ा बहुत असर रहेगा, सरकार बीजेपी की बनी। वसुंधरा राजे का चेहरा नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है आपको लगता है? इसका तो ये ऊपर मोदी जी का उनका कारण ही है, दूसरा तो किसका कारण है? उनका ये ऊपर लेवल से संघ वाले है, वो क्या मैडम नहीं आनी चाहिए। मैडम तो हाई फाई है, वो राजघराने की है, वो तो दबती नहीं किसी से। उनका तो एक अलग ही रवैया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चुनावी कवरेज में। आपने सत्ता का राजनीतिक गठबंधन तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये मीडिया का गठबंधन है। अक्सर आप लोग कहते रहते हैं कि क्यों नहीं गोदी मीडिया के खिलाफ आप तमाम सच्चे ईमानदार पत्रकार एक हो जाइए। हमने आपकी बात सुन ली और आज हम यहाँ हाजिर हैं। तमाम 5 जो ऑल्टरनेट वैकल्पिक मीडिया जिसे कहते हैं, मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि यही मुख्य धारा का मीडिया है। आज जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो हम कोशिश आपको करेंगे सटीक खबरें देने की। हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि
हम बहुत ज्यादा दौड़ भी लें तब भी जो हमारी मंजिल है वो वही है, तो मंजिल करीब नहीं आएगी सिर्फ दौड़ लेने से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों में कम से कम जो चुनाव हो रहे हैं महत्वपूर्ण, उनके नतीजे हम आपको आज बताने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जो 5 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नुमाइंदे या हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, जिनके जरिए मुद्दों को हम समझेंगे। तो स्टूडियो के गेस्ट के अलावा हमारे साथ फील्ड में रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। तमाम तरह के आंकड़े हमने आपके लिए जुटाए हैं, ये सब तो बताने के लिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन लोकतंत्र में और लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इस जीत और हार में छिपी हुई जो महत्व है, जीत और हार का जो महत्व है लोकतंत्र के लिए, उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है बार बार कि सत्ता का सेमीफाइनल है, 2024 से पहले 2023 सब कुछ तय करने जा रहा है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जरूर कि फील्ड में जमीन पर उतरकर जब जनता से बात करते हैं तो लगता है कि मीडिया की कहानी अलग है, जनता की कहानी अलग है। जनता इस बात को बिल्कुल अलग तरीके से देख रही है। स्टूडियो में मेरे साथ हरतोष सिंह बल मौजूद हैं कैरावान से, इसके अलावा अतुल चौरसिया न्यूज लॉन्ड्री से, शुएब दानियाल साहब मेरे साथ स्क्रोल से मौजूद हैं, और ग्राउंड पे मेरे साथ 2 रिपोर्टर्स इस पूरे 1 घंटे के दौरान मौजूद रहेंगे, इरम आगा कैरावान से और प्रतीक न्यूज लॉन्ड्री से। तो ये 5 मेहमान और मैं द वायर से, तमाम लोगों के जरिए आप तक हम सही खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये जो घंटा होता है, इतने सारे चुनाव मैंने कवर किए। स्टूडियो में वही कहानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनसे हम नतीजे या मैं कहूंगी रुझान लगाने की कोशिश करते हैं, और पत्रकार भी कहीं ना कहीं लालायित हो जाते हैं कि क्या यही नतीजे हैं। मैं कहूंगी इंतजार हम करेंगे कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक का, जब लीड नतीजों में बदलते हुए, यानी कि रुझान नतीजों में बदलते हुए नजर आएंगे। 2 लीड्स अभी दिख रही हैं स्क्रीन पर, आप देखिए। फिलहाल कुछ ही पलों में स्क्रीन पर आपको लीड्स नजर आएंगी कि जो रुझान है वो किस तरह के दिख रहे हैं। राजस्थान में आप फिलहाल देखिए 2 सीटों का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर, और इसमें बीएसपी भी एक दावेदार है। इसके अलावा तो अभी 2 सीटों के रुझान अभी फिलहाल आपको दिख रहे हैं। काफी खबरें और जो कुछ हम यहाँ चर्चा करेंगे, इसके अलावा स्क्रीन पर भी नजर बना के रखिए, क्योंकि स्क्रीन से भी काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं जानती हूँ कि हमारे जो तमाम 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और द वायर के दर्शक हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि वायर और ये 5 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस मिलके जो कवरेज दे रहे हैं उसमें किस तरह से इस पूरे मुद्दे को समझा जाए। अतुल, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। अभी तक सिर्फ 1 घंटा गया है, मैं कहूंगी कि समंदर के नीचे, पानी के नीचे। इस 1 घंटे में अभी तक आपने क्या कुछ इकट्ठा किया? अभी बहुत शुरुआती जो रुझान है, और जो हमेशा होता है कि शुरुआत के 1-2 घंटे में चुनाव आयोग की अपनी जो वेबसाइट है, जहां से हमने कोशिश किया कि हम चुनाव आयोग की वेबसाइट का ही सहारा लें रुझान या फिर नतीजों को बताने के लिए, तो वो क्रैश कर गई है। उसमें बहुत ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें हमारे पास आई है। लेकिन अ, एक मोटी मोटा जो बाकी रिपोर्टर्स हैं हमारे और अलग अलग जगहों से सूचना आ रही है, उसके मुताबिक करीब करीब जो एग्जिट पोल हमें बता रहा था, उसमें उससे थोड़ा सा दाएं बाएं जा रहे हैं जैसे, लेकिन बहुत शुरुआती रुझान है तो हम इस पे बहुत भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का जैसे जिस तरह का बताया जा रहा था उस तरह का नहीं है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा शुरुआत में दिखा कि शायद कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। राजस्थान में इस तरह का जो था कि राजस्थान में शायद फिर से रिपीट हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ठीक करती दिख रही है। तेलंगाना का बहुत साफ साफ है। तेलंगाना के जो नतीजे हैं उसमें साफ एक ट्रेंड अभी शुरुआत से ही एक दिखने लगा है। तो ये है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि फिर भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, तो सीट्स के लिए, रुझान के लिए एग्जैक्ट नंबर्स अभी कुछ बहुत ज्यादा हमारे सामने नहीं है। शुएब साहब, आप क्या देखना पसंद करेंगे? मैं सोच रही हूँ कि इन 5 राज्यों में देखें, जिसमें से आज 4 के नतीजे हमें देखने को मिलेंगे, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। बार बार मैंने कहा कि ये टेम्पटेशन तो होता है कि ये कहा जाए कि ये जो 23 के नतीजे हैं वो 24 के हैं, लेकिन जो भी फील्ड में गया है, तमाम रिपोर्टर्स, ये कोई खास मेरी बात नहीं है, इसको लेकर एक तरह की आम राय है कि कुछ मामलों में, बल्कि कई मामलों में मैं कहूंगी कि जो राज्य के मुद्दे हैं वो अलग हैं, और जो केंद्र की जब सरकार बनेगी तब उसके मुद्दे अलग होंगे। अभी मैं मान लेती हूँ कि अगर ये पूरी जो हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, हिंदी पट्टी, काउ बेल्ट भी जिसे हम कहते हैं मजाक में, इस काउ बेल्ट में अगर इन 2 राज्यों को खासकर मैं देखूं, छत्तीसगढ़ साफ तौर पे निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो असली कॉन्टेस्ट है इस वक्त वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का, या मैं कहूँ बिल्कुल साफ साफ तो सिर्फ मध्य प्रदेश का कॉन्टेस्ट इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान
कि वो रिवायत है, न बदले तब भी ठीक है। कांग्रेस पार्टी बहुत पहले, राहुल गांधी आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, वो लोग कह रहे थे कि इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं है, जो उन्होंने कहा हम शायद जीत जाएंगे। तो कैमरे पे कभी आपने ये कहते नहीं सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस शायद का मतलब उन्हें भी अंदाजा था इस बात का। अब इस वक्त राजस्थान की भी एक और लीड आ रही है। फिलहाल आप ये देखिए कि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर। सवाल के बीच में आपको रुझान भी बताते हुए चलते हैं। शोएब साहब ये बताइए कि अगर मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश 18 साल के शासन के बाद फिर से बीजेपी लेने में कामयाब हो जाती है, और राजस्थान अगर मान लेते हैं कि उसी तरफ जाता है बीजेपी की तरफ, अगर ये 2 बड़े राज्य कांग्रेस पार्टी लूज करती है, पहले मैं लूज से शुरुआत करती हूँ, तो आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो आपने कहा आरफा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज दिस, ये क्या सेमीफाइनल है लोकसभा के लिए? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो इंडियन वोटर है वो बहुत ही अक्लमंदी से वोट दे रहा है। वो राज्य में एक जगह वोट देता है और तब सेंटर में जाके दूसरी जगह वोट देता है। तो अगर आप मान लीजिए कि बीजेपी जीत गया इस बार, तो बीजेपी के लिए तो बहुत एक मनोबल के लिए एक होगा कि वो लोकसभा में बहुत हाई स्पिरिट्स में जाएंगे। मगर अगर कांग्रेस जीत गई, इसका क्या मतलब हुआ वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली उसके स्पिरिट्स हाई हो जाएंगे, मगर इसका ये आप अगर याद करिएगा, यही हुआ था 2018 में। ठीक है, कांग्रेस ने कई सारे स्टेट इलेक्शन जीते थे, उसके 2019 में मोदी साहब वापस आ गए थे बहुत भारी बहुमत से। क्योंकि अभी इंडियन जो वोटर है वो स्प्लिट टिकट वोटिंग जिसको कहते हैं, वो राज्य में एक जगह वोट देता है ऑन सम इश्यूज, वेलफेयर वगैरह पर, और जब स्टेट नेशनल इलेक्शन आता है तो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह पर मोदी जी के जो जो ये है फिगर है उस पर वोट देता है। तो ये इलेक्शन का मतलब क्या है, ये हम लोग को एक्चुअली 2014 में जाके ही समझ में आएगा। इसका यानी आप ये कह रहे हैं कि न तो सत्ता की ना ही मीडिया की बात नहीं सुनती है जनता, उसका अपना दिमाग है, तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद उसे पता है क्या करना है। वो सिर्फ अपनी देखता है कि उसके और उसके परिवार के लिए क्या फायदेमंद होगा, स्पेशली स्टेट इलेक्शन में, क्योंकि नेशनल इलेक्शन में तब थोड़ा सा सेंटिमेंट आ जाता है। ठीक है, कि नेशनलिज्म ये वो वगैरह वगैरह, हिंदुस्तान का जो स्टेट है वर्ल्ड में वगैरह, मगर स्टेट इलेक्शन में इट इज अ कम्प्लीटली पूरा वेलफेयर बेस्ड और मतलब अपने लेन देन का इलेक्शन है। वो बहुत ही चालाकी से सोचता है कि मुझे किससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जैसे मैं तेलंगाना में रिपोर्ट मैंने किया, तेलंगाना में तो मतलब हजार रुपए के लिए लोग उस पर वोट डाल रहे कि अच्छा इसने मुझे 1000 रुपए दिया, केसीआर ने मेरे 1000 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ाया, तो इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। तो ये मतलब बहुत मोल तोल के वोट दिया जा रहा है। और शोएब साहब, इस दौरान मुझे पीसीआर के जरिए तमाम रुझान भी मिलते जा रहे हैं। कोई आकाशवाणी नहीं है जो मुझे हो रही है, पीसीआर के जरिए हमारी जो प्रोडक्शन कंट्रोल जो रूम है वहां से पता चल रहा है कि जो नतीजे तो नहीं, जाहिर रुझान ये भी हम बता सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। सवालों के साथ साथ ये भी अहम है, क्योंकि इन्हीं जो रुझान है उनसे हमारे सवाल भी निकलेंगे और सवालों के दौरान आपको रुझान भी बताते रहेंगे। इससे पहले कि मैं हरतोष सिंह बल की तरफ जाऊं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे जैसे एक ऐसे नागरिक के लिए, एक पत्रकार के लिए जो देखना चाहता है कि आम जनता के मुद्दे ही सर्वोपरि हों, उनके लिए बहुत अहम बात यह है कि जब जमीन पर उतरकर मैंने देखा कि कितना भी सांप्रदायिकता का और झूठे राष्ट्रवाद की कोशिश की कि इस प्रोपेगेंडा में फंस जाए जनता और ये भूल जाए कि उससे बिजली, सड़क, पानी, बैंक अकाउंट, उसे अपने बच्चों के लिए कपड़े, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम चीजें चाहिए। मैं हैरान हूं इस बात को आपको बताते हुए, खुश भी हूं कि काफी हद तक इस पूरी हिंदी पट्टी में भी देख लें, मैं तेलंगाना तक तो नहीं गई, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ में भी मेरी सहयोगी गई थी, उन सबके जरिए पता ये चलता है कि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा या फिर जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, इसे काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के कैंपेन ने कंटेन किया है, इसको काबू में रखा है और योजनाओं के बदले योजनाओं की बात हो रही है। अभी छत्तीसगढ़ का भी आप जिक्र कर लें तो उधर बात हो रही है कि किस तरह से हम किसानों को बेहतर वो देंगे, बेहतर दाम देंगे धान के। तो दूसरी तरफ बात हो रही है, जो न्याय स्कीम की बात हो रही है, राहुल गांधी देश से बाहर जाकर दुनिया भर में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मॉडल जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनको बता के आए हैं। हरतोष, ये भी एक मेरे ख्याल से एक तरह से बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है कि राहुल गांधी जैसा नेता, जो केंद्र में जाहिर है उनकी सरकार नहीं, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, मैंने कई उनके लेक्चर सुने और उसमें जिस तरह से उन्होंने खासकर जो बीमा स्कीम है उसे एक हेल्थ मॉडल के तौर पे पेश किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राजस्थान का ये मॉडल लागू करेंगे। या छत्तीसगढ़ का बात करें तो न्याय जो स्कीम है उसका उन्होंने जिक्र किया। राजस्थान में कम से कम मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जमीन पे इस स्कीम को, क्योंकि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि सरकारें स्कीम बना दें, उन्हें जमीन पर उतार दें, जनता को समझा दें, मीडिया के इस पूरे ब्लैकआउट के बावजूद, तो बहुत शान की या काम की बात है। देखिए, जो कुछ हमने जिक्र किया, मेरे
इन कई चीज़ों से मैं असहमत हूँ। एक तो मेरे को नहीं लगता कि हमें ये प्रिजम्पशन से चलना चाहिए कि राजस्थान में हार रही है या मध्य प्रदेश में जीत रही है। अभी रुझान आ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि हमें इसे तय करके ये कह सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट के इलेक्शन लड़ रहे होते, आप इस इलेक्शन के बाद भी देखेंगे कि आप कम्युनिटीज़ की वोटिंग पैटर्न देखेंगे, वो काफ़ी अलग रहेंगे। अगर डेवलपमेंट ही सिर्फ एक मुद्दा रहता, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ओबीसी के वोट ज़्यादा यहाँ क्यों पड़ रहे हैं या ट्राइबल्स के वोट यहाँ क्यों पड़ रहे हैं। उनमें पैटर्न जो डिफरेंशिएशन आ रहे हैं, वो कई कारणों के आ रहे हैं। और अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस रखेंगे, तो इंडिया के किसी भी इलेक्शन को आप पूरी तरह से एनालिसिस नहीं कर सकते। तीसरी बात कि मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी इस इलेक्शन में कोई ज़्यादा मुख्य फैक्टर थे। जो कुछ राजस्थान में हुआ है, गहलोत के सिर पे हो रहा है। राहुल गांधी राजस्थान ना गए हैं, इररेलेवेंट रहे हैं राजस्थान में, और इनफैक्ट उनको सेंटर से गहलोत को जो सपोर्ट इलेक्शन में मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। जो भी उन्होंने बातें की हैं मध्य प्रदेश में जाके, खास करके जो कास्ट सेंसस को लेके, वो मैसेजिंग इफेक्टिव नहीं रही है। ओबीसी इशू लोकसभा के लिए बहुत जरूरी रहेगा, पर उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, उस मैसेजिंग को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, कांग्रेस को इसके बारे में बहुत कुछ अभी सीखना नहीं पड़ेगा। अभी तक हर्षोष, वो मैं यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं था कि तमाम जाति धर्म की दीवारें लांघ कर और भारतीय वोटर वोट दे रहा है। मसला ये है कि मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक जो ओवर आर्चिंग जो थीम होती है एक चुनाव की, कि क्या सांप्रदायिकता हावी रही, क्या ध्रुवीकरण हावी रहा, क्या तमाम तरह की समाज कल्याण की योजनाओं पर क्या एक एजेंडा हावी रहा। मैं ये कह सकती हूँ कम से कम राजस्थान मध्य प्रदेश में कि ऐसा देखने को नहीं मिला। शहरों में जरूर, और फिर हमें जाहिर है फिर हमें जातियों में भी बांटना पड़ेगा, हमें क्षेत्रों में भी बांटना पड़ेगा कि गांव देहात क्या सोच रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का शहर क्या सोच रहे हैं। शहर तो एक जमाना हुआ, तमाम तरह की भगवा लहर तो अभी भी बह रही है, पूरे तरीके से किले बन चुके हैं भगवा। यहाँ सवाल यह है कि क्या जो एक आम जनमानस है जो इस भगवा पूरे रंग से दूर रहता है, क्या वो इस बार उसने इस मुद्दे पर वोट डाला है या नहीं? तो अब अगर हम कांग्रेस की देखें, आप राजस्थान देखिए और मध्य प्रदेश देखिए। राजस्थान पे गहलोत ने इन मुद्दों से दूर रह के सीधा डेवलपमेंट पे फोकस रखा है। कमलनाथ ये फोकस नहीं रख पाए। उनको हनुमान की मूर्ति याद आ रही है, उन्हें राम मंदिर याद आ रहा है। देखिए, इंदौर का मैं आपको उदाहरण दूंगा, सौरभ शुक्ला है शायद जो कैलाश विजयवर्गीय के, उनका मुख्य क्या बोस्ट क्या रहा है कि मैंने पिछले 3 साल में हर वार्ड से 600 लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजे हुए हैं। तो ये जो सब करंट है इस इलेक्शन में, ये मानना कि ये चीज हट गई है और लोग इसको लेके नहीं आगे चल रहे हैं, ये हम अपने आप को डिसीव करने की बात है। ये जरूर है कि डेवलपमेंट के इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर आप डेवलपमेंट विजन्स की तरफ देखिए, तो आज जो कुछ आधा घंटा पहले जील भी कह रहे थे, बाकी बात हुई कि दोनों पार्टी के एकदम अब मिलते बराबर के विजन दिख हो रहे गए हैं, हैं। हाँ, दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं रह और गया दोनों है। वेलफेयर स्कीम कह रहे हैं, एक के वेलफेयर बदले में स्कीम, हम दूसरी तो देंगे। जो अब वोटर जब निर्णय ले रहा है कि मेरे को दोनों जगह से बराबर का मिल रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मेरा अपना पर्सनल क्या कहते हैं हिंदुत्व की तरफ, ये फैक्टर्स भी डिसाइड कर रहे हैं इलेक्शन को, ये सामने आए। बीच में ये भी रोक देती हूँ। मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं दोनों की स्कीमें आपस में मुकाबला करिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मायने ये रखेगा कि क्या आम जनता तक ये संदेश पहुंच रहा है या नहीं। जो आप कह रहे हैं गहलोत ने पहुंचाया, कमलनाथ ने नहीं पहुंचाया, सरकार किसकी, ये भी मायने रखता है। मैं जो राहत शिविरों का भी मैं जिक्र करना चाहती हूँ आपसे कि राहत शिविरों का जब मैं गांव देहात पहुंची तो बाकायदा लोगों की जबान पे ये एक पॉपुलर जिसे नैरेटिव कहते हैं वो था कि हाँ मैं गया राहत शिविर में, मेरी बहन गई राहत शिविर में, और हमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुआ। और ये अलग अलग जाके मैंने अलवर से लेकर और अजमेर तक कई अलग अलग सैंपल, इतना ही पत्रकार कर सकता है कि अलग अलग जाके जाके सैंपल ले सके। मैं खुशी के साथ ये कह सकती हूँ कि मीडिया के तमाम, राष्ट्रीय मीडिया के तथाकथित तमाम ब्लैकआउट के बावजूद भी ऐसा हो पाया। अतुल, मुझे आप ये बताइए, जो हरतोष कह रहे हैं उनकी बात में जाहिर दम है, एक अलग नजरिया भी है और अच्छी बात है, इसलिए यहाँ 3 लोग बैठे हैं कि सब एक दूसरे से सहमत ना हो और सिर्फ चर्चा ना हो, बहस भी हो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप मध्य प्रदेश, आप घूमे मध्य प्रदेश में, तो जब आप मध्य प्रदेश जा रहे थे तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लगातार राजनीति है, जाहिर है हम में से यहाँ कोई भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन एक सोच ये भी है कि हिंदुत्व का दबाव भारत की राजनीति पर इतना है कि आप एक आदर्शवादी, एक आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं कर सकते और थोड़ा सा इधर भी खुश करना पड़ेगा। एक बार चुनाव जीत लेते हैं तो सेक्युलर पॉलिटिक्स करेंगे। क्या इस समझौते में कोई दम है?
देखिए इसमें क्या है, ये बहुत स्लिपरी स्लोप है। आप इलेक्शन के पहले कहें कि मैं थोड़ा सा अभी व्यावहारिक हो जाता हूँ और हिंदुत्व का भी कार्ड खेल लेता हूँ, और फिर बाद में कहेंगे कि मैं सेकुलर पॉलिटिक्स करूंगा, तो वो जो स्टेक होल्डर है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाता है। तो आप कह नहीं सकते कि चुनाव के बाद जीतने के बाद किस तरह से वो फिर वो निकल कहते हैं के कि भाई आएगा, सत्ता से नतीजा बाहर आएगा। रहने का क्या फायदा, सत्ता में एक बार आ जाते हैं तो फिर देखते फिर हैं। वही बात है, फिर तो मसला ये हो गया कि आप सत्ता के लिए केवल कर रहे हैं, आपकी कोई आइडियोलॉजिकल वो लाइन नहीं है। लेकिन किसी भी आइडियोलॉजी के लिए सत्ता में रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप विपक्ष में फिर परमानेंट मैं बैठे आपको थोड़ा रहे। सा पीछे से इसको लेके सुना बताता हूँ, बात को थोड़ा सा पीछे से हम थोड़ा देखने की कोशिश करें। कर्नाटक के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के चुनाव के बनिस्बत मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है, मैं तेलंगाना नहीं गया तो वहां की बात नहीं करूंगा, इन चुनावों में कम्युनलिज्म, हिंदुत्व उस तरह का उतना मुखर नहीं था जिस तरह से कर्नाटक में था। बजरंग बली आ गए थे और बहुत सारे प्रधानमंत्री हर मंच से नारे लगा रहे थे, वो चीज। लेकिन उसकी वजह दूसरी थी, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर भाजपा के अंदर जो लीडरशिप की क्राइसिस चल रही थी, कि यहाँ पर मोदी शिवराज को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, वहां पर वसुंधरा को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, उस वजह से उन सारी चीजों को, वो सारे मुद्दे जो थे जो कम्युनलाइज करते हैं या जो पोलराइज करते हैं वोटर को, उससे बीजेपी शायद बच रही थी। वो खैर एक दूसरा मुद्दा है। तो नो डाउट इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि उसमें इस पूरे उसमें कम्युनल जो टोन होता है वो टोन डाउन था पिछले चुनावों के मुकाबले। लेकिन जो दूसरा उसका तरीका, जो बात जो उसके उसका काउंटर करने के लिए जो अल्टरनेट था, वो था वेलफेयर। वेलफेयर के नाम पर आप देखिए कि एक तरह का विजनलेस कंपटीशन चल रहा था। आप एमपी को केवल अगर देखेंगे तो मैं 450 का गैस सिलेंडर दूंगा, वो कह रहा है मैं 500 का दूंगा, वो कह रहा है मैं 150 रुपए दूंगा हर महीने, तो वो कह रहा है कि मैं 3000 तक इसको बढ़ा के ले जाऊंगा। कहने का मतलब है कि आप पूरे भोपाल की सड़कों पे हमने देखा कि पटी हुई थी केवल और केवल छूट की स्कीमों से, मुफ्त की स्कीमों से। हम फ्रीबीज कह के वेलफेयर को गाली नहीं देना या उसको डिमीन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कोई पॉलिटिक्स ऐसी हो सकती है कि केवल दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में एक इसी चीज का केवल कंपटीशन है? इसका इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट पॉलिटिकल बहस हो ही नहीं रही है कि लोगों की और क्या मुद्दे हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे हों, सामाजिक बराबरी न्याय के का मुद्दे मुद्दा हों। है। दूसरा आपके बेरोजगारी इतनी ज्यादा, मतलब बेरोजगारी की दर, उसी समय सीएमआई की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है बेरोजगारी, बच्चों के, यूथ इस समय अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा। तो ऑल्टरनेट बाकी चीजों को छोड़ के केवल इमीडिएट लक्ष्य दोनों टीम पार्टियों का है कि किसी भी तरह से मुफ्त या कैश इंसेंटिव देकर और वोट ले लिया जाए। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम इस लेकिन पूरे लेकिन कैंपेन हो में थी। सकता है यही विश्व गुरु की सच्चाई है कि गरीबी की रेखा के नीचे इतनी बड़ी आबादी है कि कैश देना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हम बराबर रिसोर्सेज को बांटने की कोशिश करें। आपको नहीं लगता कि ये मुकाबला देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये अच्छा सा मुकाबला है कि आम जनता तक, गरीब लोगों तक कम से कम कुछ योजनाएं पहुंचे, ये नहीं वो ठीक है, प्रतिस्पर्धा लेकिन इससे। वो ठीक बात है कि लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन वो किस वजह से, किस मकसद से पहुंच रहा है, उस मकसद को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। वो मकसद कोई बहुत नेक मकसद नहीं है, मेरा ये कहना है। और उसको वोट करने खरीदने की का जरूरत। मकसद है हाँ, बेसिकली। आप वेलफेयर नहीं बन रहा है, आपका कैपेसिटी नहीं बन रहा है, कैपेसिटी नहीं बन रही है, आप स्कूल नहीं बना रही, अस्पताल नहीं बना रहे, आप सिर्फ पैसे दे दे रहे और हैं। लोगों को निर्भर रख रहे हैं सिर्फ सरकार के रहमो करम पर। बीजेपी का तो वर्ड भी है लाभार्थी, मतलब जो आप निर्भर हो जाए आप पर, क्योंकि वो राजस्थान के नजर उसका से राइट नहीं है तब जी, वो। राजस्थान के लिहाज से मैं एक और बात कहना चाहूँ। राजस्थान में जो पूरी लड़ाई है, ये जो भी आपको रुझान दिख रहे हो या एग्जिट पोल्स के आधार पर हम जो बना पाए, ये सारी की सारी लड़ाई जो है वो केवल और केवल अशोक गहलोत के अपने जो पिछले कुछ टाइम पे उनकी जो पॉलिसी लेवल पे, मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिसी लेवल पर जो चेंजेस है, चाहे वो चिरंजीवी योजना उनकी हो या फिर स्मार्टफोन के जरिए स्कीम्स को जोड़कर उसका उसके फायदे पहुंचाने की चीजें रही हो, या पेंशन की जो स्कीम है, पेंशन की स्कीम में एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने की है जिसका बड़ा रेजोनेंस दिखा। वहां पे बार बार सबसे बात आ रही थी कि उसमें ऑटोमेटिकली हर बार, हर 1 साल बाद, 2 साल बाद उसमें सर्टेन परसेंटेज का इंक्रीज हो जाएगा जो वृद्धा पेंशन है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अकेले उस वजह से कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में दिख रही है, जी हाँ, अशोक गहलोत की। तो एक ये बड़ा वो है। इस जबकि वक्त इरम आगा हमारे साथ जी, हैं, अतुल। इरम आगा से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ लाभार्थियों का जिक्र हुआ। इरम, आपने उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग की है काफी, मैं देखती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ आपके रिपोर्ट्स। लाभार्थी के अलावा नुकसानार्थी भी एक शब्द है जिस जिस फ्रेज को हमें लाना चाहिए इस पूरे डिस्कोर्स में, इस पूरी बातचीत में। क्या क्या नाम बताया आपने? जो लाभ है उसका नुकसान भी तो होना चाहिए। अच्छा, नुकसानार्थी। नुकसानार्थी। अच्छा। ऐसे लोग जिनसे भाजपा की राजनीति से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो लाभार्थी की जगह नुकसानार्थियों से भी मुलाकात हुई राजस्थान में काफी। आपने राजस्थान से भी रिपोर्टिंग की इस दौरान, इस इलेक्शन के दौरान। मैं देख रही थी मुस्लिम वोट को लेकर यहाँ बात हो रही है कि हिंदुत्व की राजनीति का दबाव किस तरीके से। हरतोष इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस पूरे इलेक्शन में हमें
धर्म पर आधारित राजनीति कम नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है? मैं देख रही थी राजस्थान में, देखिए आप 10% जो मुस्लिम आबादी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब वायर की टीम वहां पहुंची और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा आप पहला कैमरा, पहली पत्रकार आई है हमसे पूछने के लिए कि हमारा भी कोई मुद्दा है क्या? हिंदुत्व के पैरों तले सेक्युलर पार्टियां भी दबकर मुस्लिम वोटों को इस तरह मान लेती हैं कि ठीक है तो हमारा है ही, कहां जाएगा आखिर? इरम आगा से बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ वो जुड़ गई थी दोबारा। जब इरम अपना अनम्यूट कर लीजिए अपने को। शुएब साहब आप सवाल का जवाब देंगे? तो यहाँ पर आपने बहुत सही सवाल किया। यहाँ पर जबकि हिंदुत्व आ गया स्पेशली हिंदी पट्टी में, तो मुसलमानों का जो एक, आप जब वोट देते हैं तो आप कुछ उसके बदले कुछ लेते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है। मगर इस नॉर्मल इलेक्शन प्रैक्टिस को अब अपीजमेंट कहा जाता है। जो नॉर्मली करते हैं सब लोग कि आपने वोट दिया और उसके बतौर हमने सड़कें ली, ये ली वो ली, अब उसको अगर मुस्लिम करता है तो उसको अपीजमेंट कहा जाता है। तो एक ये हो गया, तो मुस्लिम को जो बार्गेनिंग पावर है विद पॉलिटिशियंस वो बहुत ही कम हो गया। दूसरे जो आप बात कर रहे थे सॉफ्ट हिंदुत्व के बारे में, तो यहाँ पर आपने ऐसा शिफ्ट ही कर दिया पूरी सियासत को कि अब हम दो किस्म के हिंदुत्व है यहाँ पर, हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व। और अगर आप ग्राउंड पर जाइएगा तो जो मुसलमान कम्युनिटीज है वो सॉफ्ट हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मतलब ये खराब है, मगर उससे ज्यादा तो वो तो खौफनाक ही है, मतलब जानो माल पर हमारी आंच पड़ जाएगी। यहाँ पर चलो वो जाके पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, अर्चना कर रहा है, बट एटलीस्ट हम जान हिफाजत है अगर दूसरी सरकार आ जाए। विकास और पढ़ाई की बात हम बाद में कर लेंगे, नौकरी में हिस्सेदारी की बात। इरम शायद जुड़ गए हैं हमारे साथ। इरम, Hello, yeah. जी। Hi. So, in my trip to Rajasthan, I also thought that Muslim voters का इतना assertion नहीं है वहाँ पर, मतलब but what I got was that they are very happy with Raje. Like they used to say that हमारा काम कभी नहीं रुकता है. So even if they don't have a very assertive leadership among Muslims, they have not been able. They don't look at the like Raje as somebody who's divisive or communal. Like I was in a Congress campaign also, so I spoke to people in Congress. There were some Muslims who said that कभी ground पे उतर के उसने incite नहीं किया है violence. But they were also worried the way Kanhaiya Lal issue was being brought up by some of the BJP lead campaigners who were there. So yeah, somewhere some of the issues are being used, like PFI marches and Ram Navami ke time pe Section 144 imposed kar dena. So they are trying to communalize or to polarize this. But I didn't see that the Muslim voters are not, or they don't look at Raji as their leader also. नहीं, बट इरम आगा, इसमें एक नेता के भले होने या बुरे होने की बात है, या आरएसएस और भाजपा की जो नीति है सांप्रदायिकता की, उसकी बात है? एक चीज मैं बता दूं, आई थिंक इरम आराम से हिंदी में बात कर सकती हैं, शायद उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि ये घंटा हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उनको बता दीजिए, वो आराम से आई थिंक हिंदी में ही स्विच कर लेंगी। ठीक है। या सो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझसे बात की लोगों ने वो यही थी कि वो उनको, अच्छा राजस्थान में लोग नेता ही को देखते हैं। अगर आप वो बात कर रहे हैं आपसे पार्टी के बारे में कि हाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी आ सकती है, और पूछिए सीएम कौन बनेगा तो बनेगा गहलोत। तो आपको लगेगा कि ये बात कर रहे हैं बीजेपी की तारीफ, लेकिन सीएम को देखना है गहलोत। सो द वोटर्स आल्सो टॉक इन दैट लैंग्वेज वेयर दे आर वेरी, लीडर्स को काफी अहमियत देते हैं। तो इन दैट सेंस उसमें जिस तरह से मुस्लिम लोगों ने जो कांग्रेस से भी रिलेटेड थे, उन्होंने भी राज्य के बारे में ऐसी बात की थी कि कभी ग्राउंड पे उतर के उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे कि हमको नुकसान हो, हमारा कोई काम नहीं रुकता है, चाहे वो मदरसा के टीचर्स की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। सो इन दैट वे इरम, इस दौरान हम स्क्रीन पे भी हम देखते जा रहे हैं, हम दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि अब राजस्थान में फिलहाल देखिए 71 सीटों पे हमें 200 में से लीड्स नजर आ रही हैं। बीजेपी 34 पर आगे है, 28 पर कांग्रेस पार्टी है, यानी बहुत नजदीक का ये मुकाबला फिलहाल कम से कम रुझान में नजर आ रहा है, क्योंकि 34-28 उतनी बड़ी बात नहीं है कि ये आंकड़े बदल ना सकें। मैं कहती अगर 10 के आसपास होता और वो 30 होता तो शायद लगता कि अब पार पाना मुश्किल होगा। एक और चीज इसमें आपको, क्योंकि ये इस पे हमें नजर रखनी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज में भी वो राजस्थान में कांग्रेस कुछ आगे चल रही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आगे रुझान कैसे रहते हैं, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के पीछे चल रही है, और ये वोटिंग परसेंटेज ही आगे जाके स्टेबलाइज करता है। सीट के नंबर्स वेरी करते रहते हैं,
तो हमें कुछ वोटिंग परसेंटेज पे अगर फोकस रखें तो हमें कुछ आइडिया मिलते जाएगा अगले आधे पौन घंटे। मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे है। जी हाँ, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। ये अभी फिलहाल आप देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, जैसे आप कह रहे थे थोड़ा सा खराब चल रही थी, पीछे चल रही थी, अब थोड़ा लगता है कि बदला भी है उन्होंने अपना, थोड़ा मैं कहूंगी कि अपना रंग रूप भी बदला है इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पार्टी वाइज जो वोट शेयर है वो भी यहाँ दिख रहा है, और उस लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा आगे नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी पीछे है। ये अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। इरम, आपने क्या सफर किया, आपने ट्रैवल किया मध्य प्रदेश? राजस्थान गए थे। जी हाँ, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश, अतुल आप बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश की क्या कहानी है, ये मध्य प्रदेश कैसे? देखिए, हाँ, ये वोट परसेंटेज जिसका जिक्र हरतोष कर रहे हैं, पिछली बार का जो नतीजा था बहुत छोटा, 5-7 सीटों का, 109 सीटें आई थी बीजेपी को और 114 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो उस समय 1% वोट बीजेपी का ज्यादा था, करीब 1-1.25% कांग्रेस के मुकाबले। तो ये जो है, अभी मुझे नहीं मालूम कि कितने परसेंटेज वोटिंग हो गई है। रुझान तो बता रहे हैं 13 सीटें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 2 सीटें, यानी फर्क तो काफी है, लेकिन ये बात सही सीटों है का है, लेकिन हाँ, परसेंटेज अभी अगर नहीं जी है हमारे पास, तो ये यही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा जो परसेंटेज वोट कितना बीजेपी कांग्रेस ने कुछ बढ़ाया है एक्स्ट्रा, उसमें कुछ जोड़ा है या नहीं। एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, हरतोष, और आपने जो जिक्र किया हरफा की सोशल जस्टिस वाला जो चीज, वो स्टेट के इलेक्शन में शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं मुझे लग रहा है कि ये स्टेट भी नहीं है। अगर राजस्थान को देखें या फिर मध्य प्रदेश को देखें, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा, फिर भी वहां पर राहुल गांधी का ये कहना कि हम कास्ट का की जनगणना कराएंगे, जातियों की जनगणना कराएंगे, और ये हमारा लोकसभा का मुद्दा हो सकता है वो, लेकिन ये दो के दोनों नेचुरली फ्यूडल स्टेट है बहुत ज्यादा। मतलब वहां पर पूरी पॉपुलेशन, चंबल वो ग्वालियर के रीजन में आप चले जाइए तो राजा साहब के दाएं बाएं कोई जाता ही नहीं, वहां पर कोई अवेयरनेस उस तरह की नहीं आपको दिखेगी कि कोई कास्ट के लेवल पर अवेयरनेस है। राजस्थान के बड़े हिस्से में आप जाएंगे तो ज्यादातर राजे रजवाड़ों की पॉलिटिक्स है वहां पर पूरा। तो ये जो फ्यूडल स्टेट बाय नेचर है ना, इनको बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस जो ये मुद्दा लेकर गई है, राहुल गांधी जो मुद्दा लेकर जा रहे थे, वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उनको चुनावी फायदा पहुंचाने की स्थिति में था। सोशल जस्टिस का जो उनका वो तो नारा अभी था। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में 58% के आसपास और 71% वोट लग रहे हैं इस बार, बताया जा रहा है बीजेपी के लिए। तो नहीं, ये वो तो नंबर्स हैं, 50% है 50%, बीजेपी के, 41% और 50%, जी हाँ, 45 और 50%। तो काफी 41 और 50। 41 और 50 तो काफी अंतर है। 41% और पर 50। अभी तो 1 लाख हाँ, वोट आए हैं, तो अभी तो ये तो बदलेगा। जी 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 हाँ, प्लस एनीवे क्योंकि 2 पार्टी इलेक्शन है, अब वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं होगा, नहीं एंड होगा तक हाँ, क्योंकि 3-4% ये का ही होगा दोनों जगह में। 2 ही ये उसी में इलेक्शन सारा पासा पलट। थोड़ा तेलंगाना की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं, यहाँ सीधे तौर पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है तेलंगाना में। शोएब साहब, ये क्या खेल हुआ आखिर? कुछ दिनों पहले तक एक ऐसी पार्टी जिसको 20-22 सीटें मिली, अचानक ये है कि बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के उसकी लोकप्रियता आगे बढ़ी है। क्या कहानी है तेलंगाना की? तो तेलंगाना मैंने रिपोर्ट किया, सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि वहां पर रूरल एरिया में इतनी अमीरी है। ठीक है, आप बिहार से तेलंगाना जाइएगा, लग रहा है कि यूरोप से कहीं और चले गए। ठीक है, तो और आधा वहाँ यूरोप पहुंच गए। तो इतनी अमीरी है वहां पर रूरल एरिया में। जो स्टेट का जो बंटवारा हुआ, हैदराबाद गया तेलंगाना के पास, उस रेवेन्यू से केसीआर ने रूरल एरियाज में काफी प्रोस्पेरिटी फैलाया है। मतलब कम गरीबी नहीं, अमीरी अमीरी है, आप बहुत सही बोल रहे हैं अमीरी बात। है, अच्छा, बिल्कुल, मतलब इंडिया के आपको लग रहा था मुकाबले। व्यंग्य में बोल नहीं, बिल्कुल कुछ व्यंग नहीं है। मैं खुद हैरत हो गया कि मैं बंगाल में रिपोर्टिंग किया, मैंने हिंदी पट्टी में रिपोर्टिंग की है, तो अमीरी है वहां पर। वहां कच्चे घर नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर कहूँ, आप बिहार बंगाल में ये कच्चे घर देखेंगे, वहां तो कच्चा घर है ही नहीं। अब जैसे केरला में आप जाइए, गांव देहात में मैंने देखा कि कमाल है। पहली बार जब जाके देखा तो लगा कि ये भारत का शायद हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि मैं आदत है मुझे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश देखने की, पहुंच गए केरला, पक्के बड़े बड़े घर बने हुए वहां पे तो गांव गांव भी नहीं है, छोटा हाँ टाउन है और सिटी है बेसिकली। तो एक तो वो हुआ है, तो बहुत सारा वेल्थ गया है रूरल एरिया में। मगर अब 10 साल हो गए हैं और जो तेलंगाना का वोटर है वो उसमें बहुत एंटी इनकम्बेंसी चला गया है। और ये बात हकीकत है कि हालांकि बहुत सारे स्कीम केसीआर साहब ने लगाए हैं, मगर इस पर ये एक इम्प्रेशन है कि बहुत खाया भी है केसीआर ने। तो इट इज एन एंटी इनकम्बेंसी वोट। और कांग्रेस तेलंगाना में अनलाइक हिंदी बेल्ट में स्ट्रांग है, उनके स्ट्रांग लीडर्स है, स्ट्रांग एमएलएज है, तो वो कर पा रही है। मुझे बस ये देखना था कि लास्ट डे में, क्योंकि वहां पर पैसे का बहुत बड़ा खेला होता है, लिटरली 10-15 हजार रुपए देते हैं पर वोट।
ठीक है, तो वो भी एक मतलब अमीरी का एक साइन है। तो आपको 15,000 रुपए की एक वोट के लिए, मतलब आम भारतीय के वोट की इतनी कीमत हो गई अब, इतनी कीमत हो गई है। ठीक है, तो 100, आप 200, देख 500 लीजिए, रुपए हाँ, नहीं, 10-15 5 हजार। घर का परिवार को 75,000 रुपए मिलेंगे वोट देने के। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बराबर वोट शेयर बता रही है तेलंगाना में, क्या है अभी? बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों 39% पर दिख रहे हैं फिलहाल। बीआरएस और कांग्रेस दोनों, जी हाँ, तो मतलब वोट परसेंटेज करीब है, लेकिन इसको शुरुआती अभी इसमें थोड़ा सा और बदलाव होगा। पर तेलंगाना के लिहाज से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है कि तेलंगाना में बीआरएस अगर हारती है तो ये बीआरएस के लिए तो सेटबैक है ही है, मतलब केसीआर के लिए तो सेटबैक है ही है। ये बहुत बड़ा सेटबैक मोदी के लिए भी है। मतलब अगर आप देखें तो जो पिछले दिनों का जो घटनाक्रम था, जो डेवलपमेंट थे, उसमें अचानक से ईडी आती है सीन में और फिर केसीआर उनकी बेटी को यहाँ पर बुलाया जाता है, सुनवाई होती है अचानक से। और उस समय का जो वो पूरा पीरियड है, आप देखिए कि केसीआर घूम घूम के पूरे देश में एक माइनस कांग्रेस और एंटी बीजेपी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो बिहार जा रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाकर एक अलायंस कुछ ऐसा फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे और लग रहा था कि वो उनकी अपनी एक नेशनल जो एम्बिशन थी उसको हवा देने की कोशिश कर रहे थे। उसको बाद अचानक से उनकी बेटी को बुलाया जाता है ईडी के बाद, और फिर वो उनका जो नेशनल अलायंस बनाने की पूरी मुहिम थी वो ठप पड़ जाती है। तो उसके बाद से जो सिग्नल उनकी तरफ से आ रहे थे वो सिग्नल ये थे कि स्टेट में जो है बीआरएस किसी तरह से अच्छा करे, और उसमें और सेंटर में फिर जब इलेक्शन होंगे उसके, तो वहां पर वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है, उसका अलाई बन सकती है किसी भी तरह के। वो अगर कुछ था तो उसके लिहाज से ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। शिव साहब, वापस मैं तेलंगाना पे ही हाँ। जाना चाहती हूँ और इसमें तेलंगाना की कहानी समझना चाहती हूँ कि कर्नाटका के बाद अब ये तेलंगाना में आ जाना। हैदराबाद, पहले बैंगलोर और फिर हैदराबाद, ये दोनों ट्विन सिटीज भी कहलाए जाते हैं। तो ये कहानी क्या बयान करती है? क्योंकि एक तरफ कॉन्ट्रास्ट हम ये देख रहे हैं कि 18 साल के राज के बावजूद, और जहां लोगों में बाकायदा वायर की तमाम रिपोर्टर्स मध्य प्रदेश जाके वापस आके बता रहे थे कि थकान है वहां जनता में, तो उस थकान के बावजूद भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम से कम लीड्स अभी तक की देखें 9:30 बज चुके हैं। मैं बहुत हैरान नहीं होंगी कि अगर यही जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आए, क्योंकि फर्क बहुत कम, बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बीजेपी को इस वक्त हम देखें तो 123 सीटों पे मध्य प्रदेश में लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 95 पर। तो इस लिहाज से अगर देखें तो काफी फर्क नजर आ रहा है। वोट शेयर का भी हम बार बार अगर देखते जाएं, उसको भी एक पैमाना माने तो भी वोट शेयर भी ज्यादा नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। वो 50 को पार कर रही है और इधर ये 40 के आसपास नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में भी उल्टा देखें तो ये कहानी वोट शेयर से लेकर और सीट शेयर तक बिल्कुल अलग नजर आती है। 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है तेलंगाना में। तो इन 67 सीटों को किस तरह से देखा जाएगा 2018 के मुकाबले? ये तो बिल्कुल कहानी ही बदल गई। तो यहाँ पे जो अतुल जी ने कहा कि केसीआर साहब ने एक पलटी खाई, पहले उन्होंने एंटी बीजेपी अलायंस बना रहे थे, तब उन्होंने बनाना बंद कर दिया। इसकी एक वजह ये भी है कि 1 साल पहले तक बीजेपी तेलंगाना में उभर रही थी, मगर कर्नाटक इलेक्शन के बाद कांग्रेस पे एक नई उत्साह आ गई। मेट बी मेनी रीजंस, बट एक रीजन था कर्नाटका विन। और उसके बाद अब अगर ये नतीजे देखिएगा, यहाँ पर तो बीजेपी सीन पर ही नहीं है, बीजेपी है ही नहीं। नॉर्थ में कुछ 1, 2, 4, 5 सीट जीतेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये कांग्रेस वर्सेस केसीआर है। और ये भी हमें समझा दीजिए, तेलंगाना नॉर्थ की कहानी और हैदराबाद की कहानी है कि नॉर्थ इनका गढ़ रहा है बीआरएस का, इस बार नॉर्थ पे ध्यान न देकर हैदराबाद की तरफ रुख किया। तो बीआरएस पूरा पैन स्टेट पार्टी एक तरीके से, बीआरएस ने तेलंगाना बनाया था। तो थोड़ा सा ईस्ट में उनका दबदबा नहीं है, ईस्ट में कांग्रेस तभी भी है वहां पर। और कांग्रेस को थोड़ा बहुत श्रेय मिलता है या नहीं कि उनके राज में बना? नहीं, तो ये हैरत अंगेज वाली बात है। कांग्रेस ने तो बनाया, मिलता तो 2 बार हारते क्यों? तो मैं एक कांग्रेस राज्यसभा एमपी से मिला, तो वो साहब कह रहे थे कि मैंने ही तो वोट डाला था, मगर हमको ही कुछ क्रेडिट नहीं मिलता है। केसीआर के पास तो उसका कोई एमपी नहीं थे। वो कह रहे थे कि राज्य तो बनता है सेंटर पे, तो केसीआर तो उस वक्त साहब तो कुछ थे ही नहीं सेंटर में, अभी भी नहीं है, बट एनीवे, तो कांग्रेस ने बनाया मगर कुछ क्रेडिट नहीं मिला। उल्टा आंध्र प्रदेश में मार खा गए, आंध्र प्रदेश में खत्म हो गए, और तेलंगाना में क्रेडिट नहीं मिला। मगर अभी देखिए क्या होता है। जी हाँ, हर्टोश, ये देखिए पूरी कहानी मैं यहाँ पर एमआईएम को भी लाना चाहती हूँ। ये एक ऐसी पार्टी है भारत में जिसकी सीटें बहुत कम है लेकिन दबदबा बहुत है। टीवी पर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि एमआईएम
जो है ओवैसी साहब की बड़ी पार्टी है। अभी तक रुझान में पता चल रहा है कि अपनी 7 सीटों में भी बचा पाना मुश्किल लग रहा है। 4 सीटें अभी उनको रुझान में मिलती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि फिर भी हो सकता है ये खींच के ले जाएंगे और अपनी 6-7 सीटें बना लेंगे, लेकिन कोई गेन उन्हें नजर नहीं आ रहा है। क्या एमआईएम का नुकसान कांग्रेस का फायदा है? एमआईएम का अलायंस था ना बीआरएस के साथ। एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, अलायंस था, एक उनकी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। अलायंस, बट जहां एमआईएम मीम लड़ता है मजलिस को ज्यादा है, वहां टीआरएस नहीं लड़ता है और वाइस जैसे कांग्रेस पार्टी के कई अहम जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुकाबले बाकायदा एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा है। पिछले चुनाव में ये कम देखा गया था ये रुझान कि कांग्रेस पार्टी से भी एक उनकी बैकडोर अंडरस्टैंडिंग होती थी, लेकिन इस चुनाव में सीधे सीधे उन्होंने उतारा है अपना कैंडिडेट। जी, तो अब ये कहना, क्योंकि उनका एक दायरा लिमिटेड है, उस दायरे पे लड़ रहे हैं, उस दायरे में अभी तक ये कहना कि उनको गेन या लॉस होएगा अभी कुछ देर में ही पता चलेगा। अगर जो बात शोएब ने कही वो जरूरी बात है कि एमआईएम की अगर ये दबदबा है या उनकी एक लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस है, वो इसलिए है कि वो अकेले ही उस रेटरिक या उस सिंबलिज्म या वो एक साइकोलॉजी को एक्सप्रेस करते हैं जो काफी मुस्लिम्स में इस देश में बनी हुई है, जिसको कांग्रेस पार्टी आर्टिकुलेट कहीं पे भी नहीं कर रही क्या है। ये मेन लाइन थॉट है या ये एक तबके की थॉट है जो ओवैसी साहब कहते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये सोचता है या एक तबका ऐसा सोचता है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ना ये कह सकता हूं कि मैं समझता हूं पूरी तरह कि तबका क्या कह रहा है, पर कुछ चीजें ऐसी जो वो उभार के पॉलिटिक्स में लाते हैं जिसके बारे हमने बात करनी बंद कर दी है। पॉलिटिकल असर्शन की जो बात है वो ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है। तो कुछ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोटर्स अक्रॉस द कंट्री में इसका रेजोनेंस है, क्योंकि उनको जो लगता है आप बार बार दब के ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो हमें कायम रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एक वो लार्जर थ्रेट है, वो समझते हैं। उसके बावजूद कोई ना कुछ आर्टिकुलेशन की एक जरूरत पड़ती है, एक साइकोलॉजी है जिसको कोई ना कोई एक्सप्रेस कर रहा है। उसको बार बार हम लोग ये कह देते हैं कि ये बीजेपी से यहाँ मिले हैं या वो मिले हैं, वो उसका जो भी सच्चाई होए, बट एक जो वर्बल आर्टिकुलेशन है जिसकी जरूरत है कई जगहों पे और जहां एक सेंटिमेंट एक्सप्रेस करता है वो एमआईएम जरूर कर रहा है। मैं इसी बात को मैं आप तक ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप तेलंगाना में आपने ट्रैवल भी किया, इस पूरी पॉलिटिक्स को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। इससे पहले कि जो प्रतीक गोयल हैं न्यूज लॉन्ड्री के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, एक सेकंड में आपके पास आती हूँ, लेकिन इस जो पूरी दलील है इसको यहाँ पर मैं आपके साथ काउंटर करना चाहती हूँ। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका काम है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, लेकिन अब हम देखते हैं कि ओवैसी साहब पार्लियामेंट में तो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तमाम आंकड़ा ये बताता है, उनकी कितनी अटेंडेंस है, जो उनकी स्पीचेस हैं, जिस पॉलिटिकल असर्शन का जिक्र कर रहे हैं हरतोष, इस बात से असहमति नहीं है। लेकिन जब जमीन पर उतरकर उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को आप स्टडी कीजिए, एक एक सीट देखने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं इलाहाबाद सीट पर उन्होंने किस तरह से चुनाव लड़ा। अब आप बिहार आ जाइए, बिहार में वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना में यहाँ किस पार्टी के खिलाफ कहां उन्होंने अपना कैंडिडेट रखा। मैं आपको गुजरात तक ले जाना चाहती हूँ। गुजरात में आप ये देखिए, फिलहाल एक अकेला मुस्लिम एमएलए वहां पर मौजूद है जो कि कांग्रेस पार्टी का है, 3 से, अब वो भी कम हो गया। जब आप इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं एमआईएम की पॉलिटिक्स को, तो ये पूरा जो पॉलिटिकल असर्शन है ये निचोड़ कर आ जाता है बिल्कुल कि आप जमीन पर किस तरह से उतारे, क्योंकि आप कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है, आप पत्रकार नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं है, आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है कि मैं आपके पॉलिटिकल असर्शन को, आपका काम है चुनाव लड़ना। तो मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा अर्फा जी। एक तो जो मजलिस है, मीम है, वो बहुत ही छोटी पार्टी है। हैदराबाद शहर का एक हिस्से में वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। 7 या 8-9 सीट है, इस बार अजहरुद्दीन के खिलाफ भी उन्होंने कैंडिडेट दिया है। दे ओनली ऑपरेट इन अ वेरी स्मॉल एरिया। पहले तो ये पिछली बार नहीं दिया था, ठीक है। तो अभी तो ये एक समझना पड़ेगा। तेलंगाना में अगर आप रूरल एरिया में जाइएगा तो वहाँ मजलिस नहीं है, तो रूरल क्या, आप हैदराबाद के दूसरे एरिया में जाइएगा वहाँ मजलिस नहीं है। उसमें दलील बोल देते हैं कि भाई देखिए बीआरएस के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो इसलिए हम नहीं जाते हैं। तो ये है, पहले कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये मीम का स्ट्रेटेजी की जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होता है। सेकंड, आप जो मीम के सीट्स में देखिएगा ओल्ड सिटी में, वो वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम होता है, 30-40% जाता है, ठीक है। ये दूसरा रीजन है। इसकी वजह से मतलब वोटर काफी वहां पर नाखुश है। एक इसका एक लक्षण है कि वोट नहीं देने जाता है वो, उसको लगता है कि वहां कुछ भी करे मजलिस का ही एमएलए आएगा। तीसरा पॉइंट है कि वहां पर जो मैंने देखा हैदराबाद में, वहां जो थोड़ा सा एजुकेटेड तबका का मुस्लिम है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और उसका यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो वहां से गया था,
तो राहुल साउथ में मैंने कवर भी किया था राहुल भारत जोड़ो, साउथ में एक अलग उत्साह था भारत जोड़ो के लिए कंपेयर टू नॉर्थ। तो यहाँ पर क्योंकि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं, जो थोड़ा सा कह रहे हैं की दुकान वगैरह वगैरह, वो मुस्लिम वहां देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पर मोदी जी का एक चैलेंजर है, तो राहुल जी को उस नजरिए से कुछ मुस्लिम देख रहे हैं और उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट भी है। तो ये भी समझा दीजिए, जब आप ये कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि ये एक छोटी पार्टी है जिसका हैदराबाद के भी एक हिस्से में असर है, तो वो नरेंद्र मोदी के चैलेंजर कैसे बन गए? तो अब वो कैसे बन गए वो देखना पड़ेगा। मीडिया ने बना दिया है। मीडिया ने बना दिया। तो एक्चुअली वो तेलंगाना पार्टी भी नहीं है, मतलब एक थोड़ा सा मजलिस जैसा कोई पार्टी नहीं है इंडिया में कि आप जैसे देखिएगा, अगर मध्य प्रदेश में इंदौर में एक पार्टी लड़ती, भोपाल में एक पार्टी लड़ती, भोपाल का भी एक हिस्सा मेरी समझ में ओवैसी साहब की पार्टी और उनका एक इस्तेमाल जरूर है। जिस फिक्र की तरफ हम इशारा कर रहे थे कि राजस्थान में टेकन फॉर ग्रांटेड, कहाँ जाएगा आखिर मुस्लिम वोट, वो एक काम उन्होंने अच्छा किया है कि मुस्लिम वोट को लेकर सेक्युलर पार्टियों में, सेक्युलर स्पेस में एक कंपटीशन पैदा किया है। मैंने खुद पॉलिटिकल पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, एक डर देखा है कि मुसलमानों को भी अच्छा है कि मुसलमानों को उनकी जरूरत है, जो साइकोलॉजी ऑफ असर्शन और एक्सप्रेशन है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कुछ दे दीजिए वरना वो वैसे आ जाएगा। वो आप उनका जो नुकसान कई जगह पे लोग कहते हैं ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान उनका मिनिमल है। मैं नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं कर रहे हैं वो, बट ये आर्टिकुलेशन अपने पॉलिटिक्स में जरूरी है, क्योंकि ये आवाज कहीं ना कहीं से आनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस ये आवाज नहीं उठा रही है, आपको कोई ना कोई कहीं से मिलेगा जो ये आवाज उठाएगा। वो अपने पर्सनल उसके लिए करे, पर्सनल गेन के लिए, पर पॉलिटिक्स पर्सनल गेन के ही लिए लड़ रहे हैं। कोई कांग्रेस देश की भलाई नहीं चाह रही है, पहले तो वो पावर सत्ता में आना है, एआईएमएम भी वही कर रही है। ये एक्सप्रेशन जरूरी है। जब तक चुनाव में टानाटूनी ना हो तब चुनाव नहीं। हाँ, लेकिन प्रतीक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमेशा वैसे साहब ये कहते हैं कि भाई मुझे आप आंकड़ों में बताइए कि कहाँ मैं सेक्युलर पार्टियों को हरवा रहा हूँ। अगर मैं वोट कटुआ हूँ, जिसे स्पॉइलर कहें अंग्रेजी में, तो फिर आम आदमी पार्टी क्या है, फिर बीएसपी क्या है। और जितना अग्रेसिवली अगर आप ओवैसी साहब के खिलाफ कहते हैं, तो ये बात बीएसपी के लिए। अब आप गुजरात का पूरा चुनाव नतीजा देखिए पिछले असेंबली इलेक्शन का, उसमें सीधे स्पॉइलर का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन अगर ये ओवैसी ने किया होता तो बहुत सारे इल्जाम लगते। प्रतीक गोयल, ये बताइए, मध्य प्रदेश के हम देख रहे हैं फिलहाल जो ये रुझान हमें मिल रहे हैं, और साफ साफ हम ये भी बताना चाहते हैं कि अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये रुझान आपको कम जो सीटों पे नजर आ रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो स्लोली बट श्योरली आपको रुझान सही मिलेंगे। कोई भी चीज बहुत ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ती नजर नहीं आएगी। तेलंगाना में सिर्फ 25 लीड्स दिख रही हैं हमें, और इन 25 लीडों पर जाहिर है इन रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। उसके बाद अब स्क्रीन पर दूसरे स्टेट का देखिए, छत्तीसगढ़ के फिलहाल रुझान नजर आ गए, इसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है, यानी रिटेन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये कहानी बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। जो एग्जिट पोल्स थे, चाहे उनको हम जितना भी कुछ कह लें, कभी गलत भी होते हैं, अक्सर सही भी होते हैं। इस बार लगता है कि मध्य प्रदेश की ये पूरी कहानी कुछ और बयां कर रही है। प्रतीक, आप इसे कैसे देख रहे हैं जमीन पर? क्या नजर आया था कि मध्य प्रदेश थके हुए शिवराज सिंह चौहान को फिर से वापस लाने की तैयारी कर रहा है? और इसमें हैरानी की बात तो ये है कि ये शिवराज सिंह चौहान अब इतने बड़े कद के नेता बन जाएंगे कि मोदी का मुकाबला करेंगे। मतलब देखिए, एमपी में जो ग्राउंड पे था, तो जैसे वो बदलाव की बात चलती है, वो तो चल ही रही थी। और इलेक्शन, मतलब हम 3 महीने पहले जाते हैं इलेक्शन डेट से, तो जो बीजेपी की हालत थी एक्चुअल में सही नहीं थी वहां पे। इन्होंने जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने 7 बिल्कुल सेंट्रल लेवल के लीडर्स को मैदान में भी उतारा। शिवराज सिंह चौहान को काफी साइडलाइन भी किया उन्होंने। लेकिन ये जो आप रिजल्ट अभी देख रहे हैं, अगर ये बीजेपी जीतती है चुनाव, तो ये पूरा चुनाव शिवराज सिंह चौहान की वजह से जीता जाएगा। मतलब उन्होंने बहुत ही जम के मेहनत करी है चुनाव में। और जैसे अक्सर बोलते हैं कि मोदी फैक्टर आता है या बहुत जगह मतलब उनका वो दिखता है, लेकिन इस चुनाव में नहीं तो नरेंद्र मोदी उनका कोई फैक्टर चला है वहां पे, ना ही कम्युनल कार्ड चल पाया है मध्य प्रदेश में। जितना एमपी को मैं जानता हूँ, उस चुनाव में बिल्कुल नहीं चला है। जो चला है वो शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से कैंपेनिंग करी है, उन्होंने बहुत मेहनत करी। मतलब वो एक एक दिन में 10-15 सभाएं करते थे, और आप कंपेयर करेंगे कांग्रेस से तो जमीन आसमान का फर्क था। और उन्होंने जिस तरीके से वहां पे काम किया, तो ये जो रिजल्ट है ना, अगर जीतती है बीजेपी तो उनकी वजह से जीतेगी। और डेफिनेटली वो, आई मीन, ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जितने वर्ल्ड लीडर बन पाएंगे वो, लेकिन हाँ ये है कि उनको पहले कैसे बोले थे कि सीएम उनको प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया। लेकिन हाँ ये है कि उनको रोकने की कोशिश जरूर होगी सीएम बनने से, लेकिन इतना इजी नहीं होगा उनको रोक पाना।
लेकिन प्रतीक मुझे ये ये चुनाव समझाइए, पूरा आप ये अपने कह रहे दम हैं पे उनका मतलब अगर जीतते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने दम पे चुनाव जिताया पूरा। आप ये कह रहे हैं कि ये जीत का सेहरा उनके सर पर सजेगा, शिवराज सिंह चौहान के, और हाँ, ये सिर्फ उनकी वजह बिल्कुल, है, बिल्कुल। आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स उतना नहीं देख रहे हैं। लेकिन क्या ये भूल जाएं कि पिछले 3 साल शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ के क्लोन के तौर पे काम करने की कोशिश की। चुनाव पूरा अगर अभियान भी हम देख लें, उसमें भी बाकायदा बुलडोजर्स पहुंच गए मुसलमानों के घरों पे, सरकारी बुलडोजरों ने किस तरह से हमला किया, बाकायदा उस वो केस भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक केमिस्ट की दुकान से उसकी पूरी दवाइयों सहित उसकी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। जिस तरह से पुलिस एक्शन लिया गया, पूरा एक योगी मॉडल को मध्य प्रदेश जैसे एक शांतिपूर्ण राज्य में लाने की कोशिश की गई। इससे पहले अगर आप देखें 5 साल पहले, इससे पहले के शिवराज सिंह चौहान, तो मुस्लिम तबके में भी उनको लेकर बहुत कोई ऐसी भावनाएं नहीं थी। जैसे राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान की बीजेपी बाकी बीजेपी गुजरात या उत्तर प्रदेश से अलग है, मध्य प्रदेश में भी मामा सबके मामा कहलाए जाते थे वो। लेकिन इन मामा ने जो एक पूरा अपना रंग दिखाया, एक कंस की तरह जो नजर आए एक समुदाय के लिए, क्या इसके बावजूद भी आप ये कहेंगे सांप्रदायिकता आपको नहीं दिख रही है? देखिए, ये जो बुलडोजर जो 2020 में जब वापस से बीजेपी आए, जब सिंधिया बीजेपी में आ गए और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने डेफिनेटली उन्होंने एक सभा करी थी वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना एग्रेसिव इमेज बनाना। लेकिन वो इमेज इस इलेक्शन के पहले बिल्कुल वो उनकी ये जो बुलडोजर मामा वाली इमेज काम बिल्कुल नहीं आई। वो लास्ट में उनका जो एक्चुअल जो रूप है वो उसी में आ गए थे, मतलब लोगों से मिलना जुलना, और वो अपने उनका जो सॉफ्ट टोन है वो उस पॉलिटिक्स में घुस चुके थे एंड में, उनकी ये हालत हो गई थी। तो बुलडोजर मामा वाला डेफिनेटली एमपी मैंने खुद कवर किया, जो बुलडोजर कैंपेन चला था मध्य प्रदेश में, बहुतों के घर तोड़ दिए गए हैं। मतलब अगर दंगा 10 किलोमीटर दूर हुआ है तो 20 किलोमीटर दूर कोई अगर गांव में आदमी रहता है तो उसका घर तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर थे वो तोड़े गए। तो वो सब बहुत हुआ है, लेकिन उनका वो जो इमेज वो सोच रहे थे कि वो एक बहुत ही जैसे योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी ऐसा इमेज बना लेंगे, तो वो इमेज उनका नहीं चला, उल्टा वो उनके लिए हानिकारक साबित हुआ। तो वो लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इलेक्शन है जो मतलब एक ग्राउंड पर अगर आप देखें तो ये कम्युनल कार्ड नहीं चल पाया इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में। नहीं तो मैं ग्राउंड की हानिकारक बात है कर रहा तो जनता के बीच तो उन्होंने वो बीज तो बो दिए। मैं कह रही हूँ आखिरी दिनों में चाहे जो भी उनके मुख से जो भी कुछ निकला हो, लेकिन उससे पहले की जो राजनीति है, आप ये सोचिए कि छोटा मोटा दंगा भी होता है, छोटा मोटा पुलिस एक्शन भी होता है दशकों के लिए, सालों नहीं। मेरी खुद की कहानी है, मेरे खुद के टाउन में मैंने देखा है कि 30 साल पहले दंगा हुआ था, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन हमेशा के लिए जो धार्मिक समुदाय हैं वो धार्मिक रेखाओं में बट जाते हैं। तो एक बार अगर बुलडोजर एक्शन हुआ और लोगों ने उसको चीयर लीडर की तरह काम किया और गोद में अपने पॉपकॉर्न रख के देखा इस पूरे तमाशे को, आपको नहीं लगता कि इसका असर वोटों पे पड़ रहा होगा और ध्रुवीकरण भी एक इसमें बड़ी बड़ी वजह रही होगी फिलहाल जो हमें रुझान दिख रहे हैं? मेरे को नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण, मतलब मैं मानता हूँ कि ये जैसे आप अगर इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर जैसे मैंगलोर है ना, जैसे मैंगलोर एक जैसे हिंदुस्तान की लेबोरेटरी बन चुका है, वैसे इंदौर को बना रहे हैं। इंदौर में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिनेमा बहुत अलग लेवल पे जा चुका है। लेकिन फिर भी जैसे आप अभी चुनाव में देख लीजिए तो कैलाश विजयवर्गीय इतने मतलब बीजेपी कद्दावर नेता है, मतलब इंदौर और उनका नाम बिल्कुल समांतर हो चुका था बीच में, उनको अपनी सीट बचाने में मुश्किल पड़ गई। मतलब वो अपनी सीट उनको उन लोग को वहां पे लेके आया था कि भाई मालवा निमाड़ा में घूमेंगे, आप बाकी सीट्स पे भी बीजेपी का वो करें, लेकिन वो अपना सीट खुद से मतलब उस सीट को अच्छी तरह छोड़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ठीक है, मैं मानता हूँ बुलडोजर कैंपेन हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो इमेज खुद शिवराज सिंह चौहान के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि उनके जो एक्चुअल में जो मतलब जो मध्य प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वो बात एक हद तक पसंद नहीं आई थी। एक हाँ मैं मानता हूँ जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट अतुल लोग शायद इस हैं पे जो कुछ कहना पार्टी से चाहते हैं। जुड़े लोग हैं। हरतोष, हाँ, I think एक हरतोष। मैं कहता हूँ कि 2 मिनट अगर हम वो क्या कहते हैं रिजल्ट्स पे अभी देख जी। ले तो हाँ राजस्थान में बड़ा क्लियर लग रहा है कि फाइट है, बहुत हाँ बराबर जी की है। जी वोट वही देख रही परसेंटेज हूँ, में अभी कांग्रेस आगे है, वही देख रही हूँ मैं। लीड्स कुछ बीजेपी की ज्यादा है, बट खास करके ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे बीजेपी की कोई वेव नहीं है और गहलोत लड़ाई पूरी तरह से लड़ रहे हैं। अब हम ये जी कह सकते हैं हाँ राजस्थान में काफी क्लियरली। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो कुछ अभी रीजन्स उभर के आ रहे हैं, पर देखेंगे कि अब कांग्रेस को सिर्फ आपका जो निमाड़ में ट्राइबल एरियाज के अलावा कोई ज्यादा ऐसा एरिया नहीं है जहां पे गेन्स हो रहे हैं, पर अब रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस थोड़ा सा सर्च कर रही है, गैप अभी जरूर है। बहुत एक ही मेरे को रिपोर्टर हमारे कैरावान के सुनील कश्यप ने एक बात बोली थी और वो यूपी इलेक्शन में भी सही थे कि
बीजेपी के पीछे, शिवराज के पीछे ईबीसी मोबिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुई है मध्य प्रदेश में इस तरह। और मेरे को आगे जाके ये देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि इसका असर आप देखेंगे ये नर्मदा के ऊपर की पूरी जितनी बेल्ट्स हैं, आप बघेलखंड में देखेंगे, चंबल में देखेंगे, उधर पे ये नतीजे अगर ये सच रहे, मालवा तो वैसे ही गढ़ है मध्य प्रदेश। तो मेरे को लगता है कि हमें ये जो डिफरेंशियल चीजों की बात कर रहे थे, कास्ट मोबिलाइजेशन की, उस पर क्या असर था, ये सब हमें मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में दिखेंगी। और ये भी बात थी कि सबको, हमको जो घूम के ये दिख रहा था कि कांग्रेस आगे चल रही है, तो ये किस हद तक हम लोग ये डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, या कि हद तक ये रुझान एंड में जाके बदले, ये सारे सवाल उठेंगे। और हरतोष, इस वक्त जो नजर आ रहा है, ये 4 स्टेट में 2 स्टेट बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सिर्फ एक फर्क पैदा हो सकता है कि ये जो आंकड़ा, हालांकि मैं कहती हूँ राजस्थान अभी भी, जैसे आपने कहा कि फाइट में नजर आ रहा है, उसको आप अभी ये नहीं कह सकते कि कोई एक जी हाँ, पार्टी आगे अब चल देखिए 20 का फर्क हो गया है इन दोनों के बीच। हम इस पूरी बातचीत में छत्तीसगढ़ को लगभग मिस कर गए। भूल मुझे रहे हैं लगता है कि छत्तीसगढ़ के भी अगर आंकड़े आप जरूर, बता जी पाए आ रहे हैं। अल्फा। मैं यहाँ एनडीटीवी की वेबसाइट देख रही हूँ। एक पुरानी आदत है एनडीटीवी को नहीं, विश्वसनीय हम मानने की। अगर इलेक्शन कमीशन के भी पुरानी आंकड़े हैं, आदतें बदल जाएं तो अच्छा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का स्लो आ रहा है डेटा तो फिलहाल। ये एक चीज जो प्रतीक ने कहा कि शिवराज की वजह से बीजेपी, अगर बीजेपी जीतेगी एमपी में शिवराज की वजह से, और हरतोष ने जो कहा गहलोत राजस्थान में जीत रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड कि आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडर्स उभर के आ रहे हैं, जो छत्रप हैं, जो छत्रप है। तो गहलोत ने ऑलरेडी जो रिबेलियन था पायलट का क्रश कर दिया था। गहलोत ने एक तरीके से कांग्रेस, अब एक राजस्थानी कांग्रेस हो गई जो गहलोत के अंदर है, वो हाईकमांड को ज्यादा मानती नहीं है। ये अटेम्प्ट किया था बीजेपी ने शिवराज के साथ, शिवराज को काटने की कोशिश की थी, मगर आखिर में शिवराज के पास ही जाना पड़ा जब एमपी का इलेक्शन आया। तो एक तरीके से एक जो हाई कमांड कल्चर रहता है इंडिया का, बहुत बहुत सालों से है, 70 दशक से है, वो इसके खिलाफ एक आवाज है ये दोनों इलेक्शन। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अब जो फर्क पैदा हो गया है अतुल, ये अब पार नहीं पाएगा। मैं वही एमपी को लेकर मेरा भी अपना भी अनुमान पूरी तरह से गलत है अगर ये ट्रेंड बने रहते हैं और यही नतीजा आता है तो, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि एमपी में कम से कम बदलाव होने जा रहा है, साफ साफ ऐसा दिख रहा था लोगों के अंदर फटी। जो बदलाव कुछ हुआ है, एक तो प्रतीक ने काफी डिटेल में बताया कि क्या हुआ हो सकता है। एक है कि लाडली बहला ने शायद काम किया है, जो इंसेंटिव गए हैं, 1-2 परिवार जैसे लोगों ने बताया कि एक ही घर में 4 महिलाएं हैं अगर, तो अचानक से उनके घर में 5,000 रुपए महीने का आने लगा। तो एक तो ये इस चीज ने अंतर किया। दूसरा, इसमें कोई डाउट नहीं कि शिवराज सिंह चौहान अब पिछले चुनाव या 5 साल पहले वाले शिवराज सिंह चौहान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान एक तरह से बीजेपी में, मोदी शाह की जो बीजेपी है उसमें एक रिबेल कैंडिडेट है, वो उनके चुनौती देने वाले कैरेक्टर बनकर उभरे। अगर आपको याद हो, शिवराज का पूरा कैंपेन वहां से बदला जब तीसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं था बीजेपी की, और उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर सीधे सीधे लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया था कि मुझे मुख्यमंत्री, पीएम मोदी जी को बनना चाहिए कि नहीं, सीएम शिवराज को बनना चाहिए कि नहीं, ये लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट किया। इसके बाद आखिरी लिस्ट में उनका नाम, तीसरी चौथी लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया विधानसभा चुनाव में, और वहां पर एक किस्म का सेंट्रल लीडरशिप के साथ उन्होंने अपना वो दिखा दिया था कि वो उससे एग्री नहीं करते, या कम से कम उसको चुनौती दे रहे थे अगर कोई ऑल्टरनेट प्लान शिवराज के लिए था सेंट्रल लीडरशिप के पास। तो अब इस नतीजे के बाद और उसके बाद लगातार एक एक दिन में हमने खुद देखा, हम 2 दिन 3 दिन उनके पीछे कोशिश भागते रहे, पड़े रहे कि कम से कम शिवराज का एक इंटरव्यू किया जाए, पर वो आदमी सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास निकलता है, रात में 2 बजे आता है, और कोई कांग्रेस 20 साल से बाहर है सत्ता से, लेकिन जो भूख होनी चाहिए या जो लड़ने की और वापस आने की वो चीज होनी चाहिए, वो पूरी तरह से नदारद है। 3, 4, 5 2-3 सभाएं हो रही हैं या ये हो रहे हैं, और उसके बनिस्बत हम शिवराज का आप देखें तो दिन भर में 10-10, 12-12 जनसभाएं और रोड शो अतुल, कर इस रहे वक्त थे। हम एक बार नजर डाल लेते हैं दर्शकों को, ये घंटा खत्म होने वाला है। इस घंटे यानी 10 बजे के आसपास, अभी 10 बजने में कई मिनट बाकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का आंकड़ा आप देखिए। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए हमारे पास ये जरिया है जिसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर रुझान मिल रहा है और 33
फिलहाल नेशनल कांग्रेस पार्टी को। तो यानी ये लगता है आंकड़ा इतना फर्क हो गया है कि 10 बजे के बाद लगता है कि यही रुझान आगे नतीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान में बीजेपी 81 और कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर आगे है। ये लगता है अभी भी पूरी तरीके से कंटेस्ट है, मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें बीजेपी जीत रही है। अब आप तेलंगाना में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी एक क्लियर विनर, एक सीधे तौर पर उनका जो घोड़ा है वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से, तेलंगाना का हम देख रहे हैं। और इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ में भी देख लें तो कांग्रेस पार्टी की जीत मिलती हुई महसूस हो रही है। और ये दोनों चीजों को नजर में रखकर हम ये बात कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज भी देखते रहिए और साथ साथ जो रुझान है वो देखते रहिए। अभी तक ये महसूस हो रहा है कि कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी फाइट है, मध्य प्रदेश लगता है कि बीजेपी सीधे तौर पर जीतती नजर आ रही है, राजस्थान बदल सकता है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। तो या तो इन 4 में बीजेपी को 1 या फिर 2 राज्य भी मिल सकते हैं। और मैं कहूंगी अगर 2 राज्य मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि पूरा जो हिंदी पट्टी है, हिंदी हार्टलैंड है, हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो कब्जा है न सिर्फ कि लोकसभा के चुनाव के लिए बल्कि जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी जो हिंदुत्व की राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसके साथ साथ जो अति पिछड़ा वर्ग है जिसके बारे में यहाँ कई बार इसी टेबल पर, इसी डिस्कशन में यहाँ पर चर्चा हुई कि ये जिसको सोशल इंजीनियरिंग हम कहते हैं, उसमें खासकर उसका जो पूरा जो चेहरा है वो जरूर नजर आता है कि जो गलाफ ओढ़ा हुआ है वो सांप्रदायिकता का, लेकिन उससे पीछे सीधे तौर पर जो राजनीति है वो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति है। तो अभी छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। स्मिता नायर मेरी सहयोगी, वो स्क्रोल से यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाएंगी और अगला 1 घंटा आप उनके साथ चर्चा कीजिए। राजस्थान जैसे शांतिप्रिय राज्य में बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को समझने के लिए द वायर हवा महल से उम्मीदवार बाल मुकुंद आचार्य तक पहुंचा। बाल मुकुंद से जब मैंने बयानों की जवाबदेही मांगी तो उनके समर्थकों ने इंटरव्यू को बीच में ही रोक दिया। उनके समर्थक धार्मिक और राष्ट्रवादी नारे लगाने लगे और हमें इंटरव्यू को बीच में रोकना पड़ा। के सांसद ने कहा भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, आप सहमत हैं इस बात में? सांसद ने कहा कि भारत पाकिस्तान नासिर जुनैद के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि पहले पहलू खान का मामला आया, फिर अकबर खान का मामला आया, उसके बाद नासिर जुनैद का, और कई ऐसे केस हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया में बातचीत नहीं हुई है। एक के बाद एक जब ये लिंचिंग हो रही है तो क्या आपके परिवार में, आपके समाज में लोग ये भी सोचते हैं कि इस काम को छोड़ दें? तो सुनिए कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण हो चुका है, एक धर्म की आंधी आ गई है, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ इस तरह के लोग भी हैं। नाम क्या? रानू जो है ये बता रही हैं कि खुद एक हिंदू होने के नाते वो ये कह रही हैं कि या तो हर धर्म को प्रमोट किया जाए या किसी धर्म को प्रमोट ना किया जाए। हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किए और तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता राजस्थान में नजर आए, तो क्या लगता है उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, वो बदले की भावना से उन्होंने टूर किए सारे, वो धावा बोल दिया राजस्थान तो उन्होंने, क्योंकि उनको दिल में दर्द है छिपा हुआ कि जगह गिरा नहीं पाए वो। आप ईडी का इस्तेमाल देखिए। अब आप ईडी के इस्तेमाल में 95% जो लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो विपक्ष के नेता हैं। क्या आप जनता को ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान की जनता के मन मस्तिष्क को छू रहे हैं? अब की बार जो बेर आ सकती है, कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस तो वापसी नहीं होगी इस साल। राजस्थान सरकार में कौन सी नौकरी पाना चाहते हैं? अब इस टाइम ये सफाई कर्मचारी वाली चल रही है, इस पर आचार संहिता के लिए ये बंद कर दी। क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है कि 5 साल में एक बार वोट डालने का मौका मिलता है। लोकतंत्र की और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश होती है जब पत्रकार बाहर निकलते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव में धान खरीद को बड़ा मुद्दा बना रही है। क्या किसानों को वास्तव में उसका लाभ मिला जो खरीद की गई, और किसान कितने खुश हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। इस बार फसल कैसा हुआ है, और सरकार जो कह रही है कि हमने जो वादा किया था कि 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, हमने उस वादे को पूरा किया। वो तो बाकी किस्त मार रहा है पैसा, बाकी वही 2000 आसपास कुंटल में दे रहा है। 3 किस्त तो डल गया है, अब ये किस्त बचा है। हमारे बघेल साहब के ऑफर बढ़िया है भैया, जिनकी हिस्से लकड़ी सवाए
और बराबर पैसा ला समय दी सब है वही ठीक है। वो समय तो भाजपा सरकार हथकेरी से 2100 रुपया ऐसे की, लेकिन 2100 रुपया कहाँ दिस, वो तो 1750 1800 रुपया समर्थन मूल्य टेक दिस घुटना, तो 2100 देवे नहीं करिए, झूठ बोल के पूरा रह गए। किसान को 2500 में भी बहुत घाटा हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है ना, मिलता नहीं है। ये क्या है, देहात में जानते हो यहाँ पानी का सुविधा नहीं है ना, कुछ सुविधा नहीं, ऊपर वाला से भरोसा का है, उसमें कमाते हैं तो 2500 रुपया हम घाटा ही होता है, हम लोग को कुछ नहीं बचता है। अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की, भूपेश बघेल ने, कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कर्ज माफ करेंगे। ना इस बार तो माफ होना चाहिए, कोई भी सरकार आए, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है ना, पानी भी नहीं गिरा। कोई भी सरकार आए इस बार कर्जा माफ होना चाहिए, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है। बारिश ही नहीं हुई। पिछले बार क्या वही 29 कुंटल बेचा था मैं, इस बार क्या वही 10-12 कुंटल होगा आसपास। ये तो है, इस साल का सूखा ग्रसित में कर्ज माफ तो होना चाहिए। आपने भी कर्ज लिया हुआ खेती के लिए? जी, मैं भी लिया। कितना? 90,000। आप पे 90,000 का कर्ज है, तो आप चाहते हैं कि माफ हो? जी, हम तो कर्जा माफ नहीं चाहते हैं, बस अपना बस्तर में कुछ ये रोजगार देना चाहिए, उसको चाहते हैं, कुछ प्लांट व्लांट बनना चाहिए, उसको चाहते हैं हम लोग। In 2018, Congress won 11 of the 12 assembly seats in Bastar region on the back of several promises, one of which was the implementation of the Panchayat Raj Extension in Scheduled Areas, or PESA Act, in which Adivasi villages would have a say on the kind of projects implemented on their land. Now, the Congress did frame the rules after a gap of over 2 decades. However, they were strongly diluted. There was sharp anger across the region against the government. I visited several villages in Bastar, where Adivasi youth were staging protests against the establishment of security camps, laying down of wide roads, and mining contracts without taking the consent of the Gram Sabha, a provision mandated in the PESA Act. हमारे पास गाड़ी घोड़ा भी नहीं है कि, और इधर बहुत सारा जंगल है कि इधर जंगल में क्यों रोड बनाया जा रहा है, और सब पहाड़ी हमारा, सब सारा चीज हमारा है। अब अपना अधिकार है, पहले से जो पूर्वजों ने ये सब बचा के रखा है। अब हम लोग का जंगल है तो फिर यहाँ नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कल उठाएंगे, कल उठाएंगे। ओके, आई एम अज्यूमिंग आप सब मुझे देख सकते हैं, और मैंने ये बहुत ही बढ़िया विश्लेषण और एनालिसिस इसलिए इंटरप्ट की है क्योंकि ये सब स्टूडियो ताम झाम, इसके लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं, हम सब सरकारी ऐड तो लेते नहीं, ना वो हमें देंगे ना हम लेंगे। हमारा पूरा इलेक्शन कवरेज आप आम आदमी से पावर्ड है। हर विंडो में जहां आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसके नीचे शो की जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और आप कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि पत्रकारिता को और पॉलिटिक्स, पत्रकारिता साधन है इंफॉर्मेशन का, उसको आप ही रिक्लेम कर सकते हैं। अब क्या हो गया है, न्यूज या तो सरकारी एड से या बड़े उद्योगपतियों के एड से चलती है, तो आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आपको इसको रिक्लेम करना है, तो इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए और थोड़ा बजट भी हो जाएगा, क्योंकि सब फिर मेरे कमरे में आके ठूस जाते हैं। अब देखिए, आरफा भी आई है, मनीषा भी यही है, ठीक है, और ये सीमा भी यही है, और हरतोष और धन्या भी ने, धन्या को बेस्ट जर्नलिस्ट मिला है, बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। अब हरतोष भी यही है, और मुझे बैठ के यहाँ काम करना है। हमारी ये भी औकात नहीं है कि इनको हम एक वेटिंग रूम दे सकें, तो ये आपके हाथ में है। आप प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए, क्लिक ऑन द लिंक in the show description wherever you're watching this, so that all these people can go and wait in some other room, so we have some budget for another room to have breakfast. Okay, so thank you for watching, thank you for your support. Let's reclaim
journalism from big corporates and governments, and a big hand to our colleagues at Scroll and Dhanya for Journalist of the Year, Red Ink Awards, Talian. And I hand over to our colleague Smita, who will tell you things of more consequence, while I will keep coming and telling you to pay. Thank you. Hi, and a very good morning to all our viewers. Results with Independent Media is a collaboration between Newslaundry, the News Minute, Scroll, The Wire, and Caravan. Of course, Abhinandan Sekhri has given you a more sort of colorful description of why you must contribute. But seriously, if you believe the fact that media should be a watchdog and not a lapdog, contribute to these 5 news independent media outlets. Details of contribution are in the show notes below this screen that you're on. We'll also sort of try and flash them on your screens right now. For those of you who are just logging in, a quick sort of lay of the land. Who's the incumbent in these 4 states? In Rajasthan and Chhattisgarh, we have the Congress that is in power currently, led, of course, by Ashok Gehlot and Bhupesh Baghel. In Telangana, we have K. Chandrasekhar Rao, the TRS, and in Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, of course, has been in power for close to 2 decades. He himself has been chief minister for about 16 and a half years. These are the leads that are coming in from the Election Commission of India. And if you're wondering why our leads aren't updating as thick and fast, aren't coming in as thick and fast as other perhaps television news networks, it's because we are relying essentially on data from the Election Commission. We're not extrapolating on the basis of the data that's already come in. So Rajasthan is on your screens. 200 assembly seats. We have leads for 180. And this is what the ECI is definitively telling you about leads. The BJP in 100 seats. The Congress leading in 68 seats. The tally of others is also fairly big, and we're going to discuss that. In Madhya Pradesh, we have leads for 152 out of the 230 seats. The BJP leading in 104. Again, consistent perhaps with exit polls. The Congress in 44 seats, others in 3. The BSP is yet to open its tally. Remember, there was no tie-up with the Congress and any of the other parties in the India bloc. In Chhattisgarh, we have leads only for 28 seats as of now out of the 119. The Congress party leading in 15 seats, the BJP in 13. The BSP hasn't opened its seat tally yet. This appears neck and neck right now. Of course, those of you who are also sort of going through other tabs on your laptops right now are seeing perhaps that Chhattisgarh is also playing out consistent with what most exit polls seem to suggest, that the Bhupesh Baghel government is in with a good chance to come back to power. In Telangana, 118 seats, we have leads only for 25. The Congress party leading in 15 seats. The BRS of KCR, which is the incumbent, has been in power since the state was formed in 2014, leading only in 9 seats. I don't have the vote share up. We'll try and bring that up as well at some point. The BJP, which had a seat in 2018, is leading, not one, is leading in 1 seat as well. For those who perhaps didn't read your newspapers in the morning or didn't check up on Twitter, the reason why we're not giving you leads from Mizoram is because the ECI has delayed counting on the basis of an appeal by all political parties in that state to 1 day. So Mizoram numbers will come in only tomorrow on Monday. Now, all these states, parties have been banking on welfare schemes to beat anti-incumbency. And of course, the challengers in all these states have also adopted the same sort of political approach, the same strategy. How do these cash transfer regimes or proposed cash transfer regimes, how do they square off with more traditional welfare models of investing in healthcare and in education? Is this indeed a race to the fiscal bottom, as some seem to be suggesting? Also, like, what is the exact correlation between these schemes and electoral fortunes are some of the questions thematically that I hope to sort of discuss in the next 1 hour. But of course, we'll keep giving you numbers. Don't worry about that. I have a great panel with me. Joining me on the broadcast here in the studio, Siddharth Varadarajan. You're familiar with this face. He is, of course, the founding editor of The Wire. We have Professor Nilanjan Sarkar, who I go to very often for election analysis. He, of course, is from the Center for Policy Research. At some point in the broadcast, I'm hoped to be joined by Professor K. Kailash. He is joining us from Telangana.
He's there as well. Thanks, Professor Kailash, for joining us. He is a political scientist. We'll also have a reporter from Newslaundry who's extensively traveled in Rajasthan and filed some fascinating reports. Before I go to Nilanjan Sarkar with the numbers, Siddharth, a question to you. We know that cash transfers aren't new, particularly in the state of Tamil Nadu. We have seen some kind of sort of dole, or what you may. But would it be correct to say that in this batch of state elections, we are seeing a definitive shift, that state welfare is being reoriented in a big way to cash benefits? With some differences, I would say. And I think it's, in a way, not unsurprising that the one state where the Congress is doing better than others, right? And perhaps better than it expected at the start of the campaign, was Telangana. Now, Telangana is Telangana. Telangana is, of course, a place where there's been lots of discussion of subsidies, cash, but it's, I was struck by the attempt the Congress has made to redefine the Raitu Bandhu scheme, which currently provides welfare essentially for landowners. Right. So, and if you understand the reality of Indian farming, the cultivator is often not the landowner. Right. And tenant farmers and agricultural laborers. Exactly. Yeah. Right. Yeah. So you have, I mean, the vast majority, in fact, are perhaps not owning any land. So in trying to redefine Raitu Bandhu, so there's some attempt to anchor welfarism or cash transfers, because at the end of the day, this is still a cash transfer, but anchor it in the specific requirements of the state's political economy, right? But otherwise, everywhere else, and actually even in Telangana, I mean, it's a competition for who can give the best price for rice, who will have the most attractive pension scheme, the most attractive scheme for women, and somewhere down the line, one would have thought that Indian politics would allow for the calm and careful design of a long-term, public welfare, social insurance scheme that would not be subject to the vagaries of elections in this way. But the nature of competitive politics in India is such that that conversation has become virtually impossible. Which was going to be a question that can we arrive at a democratic consensus on, where we are heading economically as a country? What should policy be? I'll come to that in a short bit, because we need to keep going to numbers as well. Professor Sarkar, you and I have chatted a lot over the last week, and we've spoken about Rajasthan. Can we pull up Rajasthan numbers, please? There you have it on your screens. The BJP leading in 100 seats, the Congress in 68. We have leads for 187 out of 200. Perhaps the most number of leads coming in on the Election Commission of India website is from Rajasthan, and which is to suggest that perhaps Rajasthan is following its revolving door politics of 5 years Congress and 5 years the BJP. Could you speak to the numbers on the basis of the travels you've had in that state? And could you also comment about, because Ashok Gehlot, most sort of pollsters and political analysts seem to suggest that Ashok Gehlot perhaps has done enough by way of welfare schemes. The Chiranjeevi Health Insurance Scheme, for instance, has been talked about so much in the analysis in the lead up to this election that perhaps he will be able to do what he was not able to do in 2013, yet that the data suggests is not happening. So look, I mean, there is, of course, one folk wisdom in which, every 5 years Rajasthan flips. This time it's true that when you went on the ground, Gehlot is the single most popular politician in Rajasthan. At a personal level, you're not seeing an extraordinary level of anti-incumbency. Unlike Telangana, also, you don't really have a concern that the delivery was unfair, right? That is, been one of the critiques that was made against the BRS in Telangana. But where the Congress has struggled is in actually managing its own factions. Of course, we know about Sachin Pilot, but when you traveled around, you saw significant splits in, let's say, the Jat community in the Shekhawati belt or in the Gujjar community due to the inability to manage some of these factions. So I think one of the challenges of analyzing a state like Rajasthan is that in addition to personal popularity, distribution of benefits, there are still these sort of structural caste-wise factors. The other issue, which I suspect we'll be talking about all day, is that you are increasingly seeing a split between male and female voters. Correct. So it is
challenging, and many people in the field, especially if you're male, are not speaking to female voters, especially in Rajasthan, Madhya Pradesh, where it can be quite difficult. But when you do actually speak to female voters, you have to do it carefully if you're male. You do actually see that there is a push towards the BJP in a number of these Hindi belt states among female voters. A lot of that is a Modi effect. A lot of it is, the ways in which some of the schemes have been branded towards women overall from the BJP. But that is something that you are seeing systematically now across many of the states. When you put two of those together, you do actually have just enough votes dropping from the Congress party in Rajasthan. The other just very quick thing, I know I've taken a little bit of time, is that Rajasthan is a state that has a real seat-by-seat character. There are lots of factions within the Congress, within the BJP, independent candidates being put up, other parties being put up, and you can see it in the initial seat tally. You have a very large number of non-BJP, non-Congress party as winning, even though it's largely a Congress-BJP fight. And that is basically defectors and so on and so forth that are pulling votes away. So there's a chance that despite the BJP being the single largest party, we may still have a hung assembly. Right. So that's the others column that Professor Sarkar is referring to. The 14 leads that you're seeing in Rajasthan for the others is essentially what he's referring to. I'll move to Telangana, but quickly, Siddharth, you would also be interested in this. I was listening to a conversation that Mr. Sanjay Lodha of Lokniti CSDS was having with an interviewer a few weeks ago. And he said that their study very clearly showed that the welfare delivery of state government schemes was perhaps better in Rajasthan of the state government than of central government schemes. The satisfaction shown with the state government schemes was much higher than, say, Ayushman Bharat at the center or the Ujala scheme. And he said Ujala scheme, I beg your pardon. And he also said that it has never happened before. 3/4 of the respondents said that not only had they heard of the Gehlot government schemes, that they personally had been beneficiary of these. Even so, we're not seeing that play out in the results, at least looking at the leads right now. But can I just add a caveat though? I mean, in the sense that, to explain the mystery, as it were, right? In both in Rajasthan and in Chhattisgarh, but let's stick to Rajasthan. Actually, you have a large difference in seats, but the vote percentages of both the Congress and the BJP are remarkably stable, right? Right. You've got the data in front. Yeah. I mean, like I noted earlier that in 2018, the BJP was 38%, Congress was 39%. Right. Both are at roughly 40% today. Right. So it's neck and neck in terms of vote shares, right? But clearly, the way in which these votes are distributed across constituencies can often make all the difference. In the last election, with the vote share difference of barely 1%, the Congress, ran away with the state, winning 100 seats. Correct. So I would just say that the seat result does not necessarily contradict what you heard about the delivery of schemes. It's just that the way in which this gets manifested in terms of actually the seat distribution is the sort of the magic source of first past the post. Right. And also a health warning, I think even with election commission data, there's a stats reason for this, but vote shares converge before seat shares. Correct. So in the next hour and a half, we could likely see a change in how that is translating into seats. We don't know yet. Yeah. With that caveat in place, can I bring in Professor Kailash from Hyderabad? Thanks, Professor, for joining us. I want to read to you from a report filed by my colleague, Scroll's political editor, Shoaib Danial. This is with regard to the welfare schemes in Telangana. He wrote, "So extensive is the spread of cash transfer schemes in the state that the BRS government has even crafted schemes for Brahmins, as well as castes and communities across the spectrum. This incredible reliance on cash transfers and transfer of private goods in general is KCR's main weapon as his party hopes to win a third term. That may not be happening looking at the numbers. Cash transfers have an immediate and visible impact among voters in a way that traditional welfare, for example, building hospitals and schools, just cannot. Yet it would seem, as we pull up the numbers from Telangana on your screens, Professor Kailash, that the TRS is perhaps unable to battle anti-incumbency. What does this say for the manner in which these cash transfer schemes, a massive sort of cash transfer schemes that we saw in Telangana, how do you see the correlation with the numbers that we're seeing play out right now? Okay, so thank you for having me here. Let me just put this whole issue of cash transfer and the type of welfare that we see in India in context. So the first thing is that
I think we need to see the type of welfare delivery that is happening here as part 2 of the economic reform program. So the first set of economic reforms that we had since 1991 largely focused on issues like licensing, financial services, export laws, and so on. So this largely left out the ordinary people, whereas the second level economic reforms that actually begin focus on welfare delivery. Here again, the state is sort of withdrawing and there is more space for the market. So this is also the dominant thinking that happens in economics as such when you say that you move away to you sort of incentivize or you give cash transfer so that this then leads to increases demand in the economy and then there is a entire runoff that happens. So I think this is the idea behind the cash transfer schemes that have happened, and every across India, that is this whole idea of how welfare delivery should take place has changed. Now, the Andhra Pradesh and Telangana have been, I think, one of the first few states to actually experiment with this sort of mechanisms in India. A lot of these welfare schemes are first experimented in Andhra, Telangana, and then it sort of moves over to the rest of the country. One good example of this would be, let's say, the whole health insurance scheme, which was started by YSR, then it went on to become the RSBY, and today now you have the Pradhan Mantri Arogya Health Scheme or something around that. So I think in the context of Telangana, there is a very big difference between having these schemes that is promising a lot, and then when it comes to delivery, there's a big gap between this. So whether it is the famous Right to Bandhu scheme, or whether it is the Lakshmi scheme, which gave money to women for building houses, or whether it is with regard to the Dalit Bandhu scheme, which gave money to Dalits to build for self-employment. In each of this, there is a gap between what is promised and what is fulfilled. Okay, right. So, and then I think Congress has picked up on all the gaps and then made a good chance out of it, or made promise much more than what KCR has been promising. I think that's where the Congress has sort of benefited. How much of the Congress is Doralu versus Prajalu, which is essentially saying that the BRS is more sort of saying that they are more sort of feudal, still feudal in nature, something that perhaps resonates very well with the people of Telangana, given the history of the Telangana movement. The Congress seem to be sort of reiterating this point that the BRS are Doralu versus we are speaking for the Prajalu, the people. Again, making a reference to the fact that the Raitu Bandhu scheme essentially that gives 10,000 odd rupees per season per acre only benefits rich farmers and doesn't really do so for tenant farmers and agricultural laborers. Did that have a sort of, did that strike with the voter, you think? As we say that, and as you answer that question, Professor Kailash, maybe look at the trends that are coming in from the Election Commission of India. These are fairly sort of significant leads that are coming in right now. From Chhattisgarh, we have leads on 90 seats. Sorry, these are the 90 seats, of which we have leads, the BJP leading in 24, the Congress in 22. So, that seems to be neck and neck again, Chhattisgarh, surprising. Madhya Pradesh, the BJP in 115 seats, the Congress in 44. In Rajasthan, the BJP leading in 99 and the Congress in 72. Again, consistent with what is being said this morning. In Telangana, the Congress seem to be definitively ahead on 46 seats and the BRS on 28. Professor Kailash, could you answer that question of Doralu versus Prajalu in the Congress's campaign? Yeah, so if you remember, this Right to Bandhu scheme came out just before the last election in 2018, and it's a flagship scheme of the TRS and now the BRS government. And this is what gave the TRS or the BRS now the space to sort of go all India. And if you look at his campaign subsequently, he would talk of Abki Bar Kisan Sarkar, and it sort of spread to Maharashtra, etc., to cash in on the disenchantment of the farmers there. So the BRS scheme, when it started, and as Siddharth also rightly mentioned, it was mainly for only the landowners. It is, but when you look at there have been a lot of civil society organizations that have done surveys around in Telangana and found that the number of tenant farmers is actually very huge, and they do not necessarily benefit not only from the Bandhu scheme, but also from the insurance scheme, and also they have problems when it comes to procurement. So this unhappiness with a large section of the population, I think, has also benefited the Congress.
Right. And as I cross over to my colleague Sudipto Mondal, who's the executive editor of the News Minute, I want to remind our viewers, or perhaps our viewers already know about this, the Prime Minister, who has, in the course of the campaign for Gujarat and the course of the campaign for Karnataka, derided political parties for what he said was bribing voters. Revdi is the word used by the Prime Minister. But Mr. Modi himself has been, as you would know from the meetings that have happened with the BJP in the last week, looking to sort of broaden the base of what the BJP refers to as Labhartis, the beneficiaries of the many welfare schemes at the end of the day. So perhaps, which scheme gets tagged as Revdi and which scheme gets tagged as just social welfare depends on which political party is proposing or implementing it, Siddharth. Yeah, and I mean, even at the time when he said it about a year and a half back. Yes. I mean, it was actually when AAP announced free electricity in Exactly. Gujarat. That's when it started, and then he reiterated that during Karnataka. And so what's that famous meme from one of the TV shows? Ki, Sada Kutta Tommy. So everybody was sort of saying that, look, when you do it, it's all great economics, and when we do it, it's Revdi. So that's the fact that every party has plunged into this same pool also is a comment on, and I think this is the other aspect that should alarm us, right? There is poverty which the state successive governments have been unable to dent. Like, look at the food subsidy that the BJP government at the center is unable to withdraw. Right, the subsidy that was announced during COVID, right? Yeah, they've extended it now indefinitely. Exactly, it's extended it, and so that's you can say that that's tempting the voters. It's also a commentary on the fact that there is genuine food insecurity, and somewhere down the line the question has to be asked that can we this Viksit Desh, all the big promises that the Modi guarantee is supposed to, if people are not able to earn enough to even feed themselves, this is a sad commentary on the state of affairs of the country and the government running the show, right? So somewhere down the line, the Revdi politics or freebie politics is a comment on the broad failure of economic policy. And it's not just the opposition party against whom the finger is raised. The primary finger has to be raised against the union government. Right. Professor Sarkar, now that said, state finances, state resources are finite. It is not the case that politicians, the revile lot, don't know what is required to help the disadvantaged. Perhaps they are best in a best position to appreciate the reality on the ground. That said, do you see something that Siddharth alluded to in his first answer and reply to my question? Do you see in this country, given that there is such a big focus now on these cash handouts and a cash transfer regime, as we are saying, a term I borrowed from my colleague Shoaib Daniel, he talks about these cash transfer regimes in place everywhere. Do you see a democratic consensus emerging in some way on the general direction that a country is taking? We do know that in Chhattisgarh, and I really hope to go to Sudipto because he's traveled in Chhattisgarh, the fact is that these last 5 years also saw the pandemic. We saw precarious livelihoods, people who we call middle class, that one economic shock pushing them below the poverty line. So these cash benefits were significant, were important. Even the much reviled National Food Security Act from the Congress's time, Manrega, all of this played a big role in ensuring that people didn't starve, for instance. So how do you see this going forward? Three related comments. So I think that what concerns me, and if you actually talk to even some of the people, academics who initially made an argument for these kinds of cash transfers, is that they didn't realize the monster that they were going to unleash. What I think has been unleashed on the system is a certain cynicism about what the state can do. So there are certain characteristics about many of these cash transfers. First, there's an attempt to make them universalistic, right? Which is a cynicism about the ability to target, let's say, the poorest people, right? So if I'm giving a cash transfer, I'm often giving cash transfers, free rations, scholarships, not just to the poorest people or the most needy, but basically to everybody, because the conditions for meeting these, for getting these benefits is typically very permissive. The second is that
a cash transfer does not need to be spent on the purpose for which it's being given. For instance, if I'm giving a scholarship and putting it in the bank account of the mother, there's no requirement that money be spent on education. Can be spent on consumption anyway. Right. So when you talk to people in, let's say, the education department in many of these states, they're actually quite upset. And the reason is it's education money. But that money need not be spent on education. So how these schemes are framed and the manner of delivery, something that we'll talk about bureaucrats and how they. Sudipto Mondal, the News Minutes executive editor who traveled in Chhattisgarh, is with us. Sudipto, if you're going to there, we have the numbers from Chhattisgarh: 61 leads of the 119 seats. And about 7 minutes ago, I told you that the Congress appeared to be in the lead, but now the BJP has inched slightly ahead. In 31 seats to the BJP, to the Congress's 28, others in 2 seats. Sudipto, a question about political alliances. There was much talk about how the Congress couldn't come to an understanding with the Samajwadi Party in Madhya Pradesh. And that it could have perhaps been, we all know of how talks failed and the sort of falling out between Kamal Nath and Akhilesh Yadav. Much has been written about it. Even sorry, I was going to talk about Telangana with you because he reports in the south. But Chhattisgarh, let's look at Chhattisgarh. Sorry, let's look at the cash transfer regime in Chhattisgarh, the welfare schemes, and how they played out. What was your sense in the course of your reporting on whether Bhupesh Baghel is in a position to get the Congress back to power in these elections? And those numbers, are they surprising, the leads that are coming in right now? Right. Thanks, Smita. Firstly, it's kind of fitting that they are neck and neck, the BJP and Congress in Chhattisgarh, because essentially they're the same party, in terms of ideology. In fact, I dare say that someone like a Baghel has done better than Raman Singh on the question of Hindutva. He's contributed more to the Hindutva cause than Baghel did, than Raman Singh did in 15 years of his rule. Ram, one mug, whatever, that path he's creating, where supposedly Lord Ram went through the forest and all of that. But since you bring up this cash transfer, I was listening to what you guys were talking about. See, I do believe that you have to look at it and look at any development initiative in India. Right. Hi. So it appears our link with Sudipto Mondal briefly broke. Can you hear me, Sudipto? Yeah. All right. We're going to go back to him in a bit again. Let's take a look at the numbers. Chhattisgarh, again, as I said, leads in 61 of the 119 seats. The BJP has got its nose ahead very slightly, leading on 31 seats. The Congress Party on 28 seats. 2 to the others, we don't know. No, BSP hasn't opened its tally. Can we look at the seats, please? If the PCR can pull up the numbers coming in from the Election Commission of India. In Madhya Pradesh, we have leads for 197 of the 230 seats. That's a substantial number. The BJP leading on 137, the Congress only on 57. That lead appears to be far too big for the Congress to make up. So it would seem that remarkably, the BJP coming back again to power. Remember, they came to power first in 2003. They have continually been in power. 2018, of course, the Congress won in Madhya Pradesh and the BJP engineered a defection, which resulted in the party forming a government in Madhya Pradesh again. Rajasthan, 194 of the 200 leads in, the BJP leading in 98, the Congress in 76. This lead also looks fairly big, maybe not as big as Madhya Pradesh, but the BJP certainly ahead here. Others, 18 seats. That's big, and so the BSP still be hung. You believe it could be, right? It could be, right? I mean, it's right at that 50-50 mark. Right. Yeah. Rajasthan, it appears we'll have to wait till later today to get a better sense of how this is going to be. At some point, I'll try and go to our reporter from Newslaundry, Shiv. Shiv is on. Shiv is on. All right. I'm told Shiv is on. Shiv, there was a fascinating report you filed from Rajasthan on, you traveled across 4 districts. You went to about 15 villages and you were trying to track down these young people in the state who are part of these BJP WhatsApp groups that were
looking to seed whatever the ideology of Hindutva. And what is it that you found? Could you tell our viewers through the insight you gained from many of these young people who perhaps will be voting for the first time or voted for the first time in this election? Yeah, so for this story, I traveled to 5 districts, and I traveled to mostly tribal areas in Udaipur division. I went to Udaipur, I went to Pratapgarh. So the story was basically about how BJP is using WhatsApp groups, how big their machinery is. So I tried to reach out to youths, only youths who are recent converts or people who are slightly older but who have recently converted to who have recently started voting for the BJP. So and by the time I was already part of BJP's WhatsApp group, so I was looking at the content also, what kind of content BJP pushes out on daily basis. So I saw that the content that they push out, it's not only about the schedule, the itinerary of leaders. It's also about it's also hateful content, Islamophobic content that they push out. When I met these youths in these areas, in these 15 odd villages, they were saying the same thing what I had been saying in WhatsApp groups. For example, they were saying they were convinced that Rahul Gandhi is a Muslim. They were convinced that Congress didn't want the construction of Ram temple, and they fielded some 25 lawyers. Wow. And yeah, and they also said that look at Priyanka Gandhi, wherever she goes, if she is in Kerala, she wears the cross. If she is in UP, she wears Janeu, she wears Rudraksh. So they are hypocrite. So look at Modi, wherever he goes, uh, he doesn't wear religious symbols of other religions. So these were the instances where I mean, these were only anecdotal evidence, but it shows me to what extent BJP has sort of brainwashed youths in some sense. Maybe everybody may not be convinced by what BJP is pushing out in WhatsApp group, but to some extent it confirms to their bias, and it also helps BJP in pushing their agenda, what kind of India they want. In fact, I met one class 12 student, and who was just 2 months shy of the age of 18. And there was an essay competition in his school where the essay was on how how do you see Rajasthan in 2013. So he wrote in the essay that he wants India to be a Hindu Rashtra. Wow. So even school students are saying these things. Of course, apart from that, he must have written so many things, other things. But the first thing that he came to his mind was like, I want India to be Hindu Rashtra by 2013. That's my idea of India. So it was so since you were discussing welfare schemes, to what extent welfare schemes can help political parties. Right. I think unless political parties have emotive issue other than the welfare schemes, these welfare schemes will always fall short of what the particular party expects from expects after the polls. So I think the Congress, I mean, most of the welfare schemes came in the run up to the polls, or maybe the Congress didn't have much time to implement these schemes. It was only Chiranjeevi scheme, the insurance scheme, health insurance scheme, which had a good run of 2 years or 3 years. But I think rest of the schemes ran only for 2 months or 3 months. So see, these welfare schemes uh, have to be gelled with some emotive issue that the Congress feels that because people do vote on emotive issues. It's not only welfare schemes. I've met a lot of people, a lot of girls. I mean, I saw in Pratapgarh, I was at one place where uh, there were 2 girl students. They got smartphones, but their father and their brothers, they were saying they are going to vote for BJP because Narendra Modi is building Ram temple in Ayodhya. Right. Shiv,
that was an eye opener. I mean, one knows that misinformation campaigns are carried out by political parties. In particular, the BJP has been in the dock for doing so. But the extent to which these WhatsApp groups that you refer to in your reporting, and it is important for our viewers to recognize here that Shiv had to seed himself in these WhatsApp groups. Then he had to go and track down people who are part of these WhatsApp groups and try and understand from them, to why did they join the group in the first place? To what extent are they being influenced by the kind of propaganda, if I may, that is being sort of given to them, fed to them day in and day out. And this sort of reporting takes time. He puts in the hard yards. So do all of us here. If you watch me on Scroll, I say this time and again: in a democracy, nothing is more important than an informed electorate. That's what we're trying to do here. Unfortunately, a lot of media outlets have now just become props for the powerful. So if you want to help us do the kind of reporting that Shiv is doing, go and check that report out. I mean, it is an eye opener. Please do contribute to these five independent outlets. Like I said, the show notes below the screen, you will have details on how you can contribute and how you can help us, put in these, as I said, hard yards and go get the information from various corners of the country. Those numbers continue to be on your screen. I was partially distracted by the conversation that was going on here between Siddharth and Professor Sarkar. Can you tell us what is it about the numbers that's either surprising you or is it the vote share? Siddharth, what is it that you're looking at? No, I mean, we're seeing a massive increase in the vote share of the BJP in Madhya Pradesh. Okay. Up about 8 percentage points compared to the last election, and actually up even compared to 2013. Wow. Right? So in 2013, the BJP got around 44-45%. And right now they're coming close to 48-49%. Right. Congress has held its level, but the BJP seems to have added 8 or 9% extra, which probably has come from the kitty of the smaller parties. Right. And I want to tell our viewers, 50% vote share is it's unusual. I mean, maybe 2015 Delhi, maybe Gujarat. 50% is massive if that's Last happening. election was 41 to 41%, right? So we're talking about a massive increase, probably, as you said, at the cost of the others. Can I just say, we have seen some 50% plus results. Of course, Delhi at a state level, but it's not uncommon at the national level, right? So in Madhya Pradesh in 2019, the BJP... You're saying per state in the Lok Sabha election, you have seen some states go so if you compare 2019 to 2023, the BJP's vote share in 2019 was 56% across Madhya Pradesh, right? Which is a stunning, majority. But 48-49% at a state election is pretty good. And I think somewhere down the line, maybe the lack of, the floating voter who was perhaps putting her vote with smaller parties or independents. Frankly, we'll have to look at this constituency by constituency to understand where these votes have shifted. Right. But unlike in Rajasthan or Chhattisgarh, right. And Rajasthan is surprising because the seat results are not neck and neck. Correct. But the vote share is neck and neck. Neck and neck, right? Yeah. Professor, I'll give you the last word, but can I go to Professor Kailash in Hyderabad? A question that I want to ask you: if these leads hold and if the BJP indeed comes back in Madhya Pradesh, that means if this to complete its term, they would have been in power for a quarter of a century. That is big. So is it correct, therefore, to say that Madhya Pradesh now, if they win this election, has become what is a BJP dominant state, quite like what Gujarat is for the BJP, or perhaps what Odisha is for the Biju Janata Dal? Yeah, if you look at it, traditionally the BJP has been strong here. This has been the Jansang area as well. So it's basically between the Congress and the BJP. So I think it has always been a BJP dominated state, and plus I think there is actually no difference between the BJP and the Congress when it comes to its the way in which they sort of campaign, the issues they take up, and it's a very conservative state. So I think there's no difference between the BJP and the Congress, and yes. Right. Yes, Professor Sarkar, you were saying. No. So I mean, so I agree with all of this, right? I mean, we are looking at a situation, and we've seen actually in many other states that in the sort of BJP dominant era, it has eaten up many of the smaller party voters. We saw it in UP. We've seen it actually all across the Hindi belt. That seems to be happening in Madhya Pradesh as well. Just quickly looking ahead to the national elections, which we've not talked about.
if we take the 3 Hindi belt states this time, with 65 seats, the BJP and Allied have won 62 out of 65 seats in the last 2 national elections. These are places where this version of the BJP does very well. How these state elections will translate to national elections, who knows? Because it's very hard to predict 95% plus strike rates. But in the Hindi belt in general, in the national elections, the BJP has had a 90% strike rate. And so we are talking about a situation in which there's already a BJP lean among the voters. And insofar as that national benefit the BJP gets from Modi is able to be translated into state elections, you're going to start seeing safer elections for the BJP in the Hindi belt. And I think some of that you see in Rajasthan. Actually, Basundhara Raje has been kind of pushed aside, right? And they're running the election on Modi. Right. And it's doing reasonably well. Right. Siddharth, I don't, the state elections don't necessarily map on to Lok Sabha. Always, it doesn't always 2013 and 2018 being different pictures. But what do you see the Congress and the India bloc? What are they going to do in 2024 that is different from how they individually sort of prepared for 2019? Do you see a narrative? How do you counter? No, that's a great question. And I would answer it at 3 levels. First, each individual party in the state where they are the strongest needs to get their act together. Organizationally, in terms of leadership, I think one of the biggest problems for the Congress in Rajasthan, the X factor, if you will, because I got a question from a viewer on my WhatsApp that if the Congress vote share is roughly the same as last time, and the schemes seem to have performed reasonably well, what went wrong, right? And what went wrong is the fact that you were a divided house. You papered over the Gehlot versus Pilot, divisions in the last 6 months, but the voters knew, and I suspect party cadre were suitably, demoralized on the basis of these divisions, right? So you need to get your party house in order. Secondly, and this is the silver lining for the Congress and for the India Alliance, if they're feeling a bit disheartened, because if the Congress had romped home the way Rahul Gandhi had said, ki we're winning 4 out of 5, he excluded Mizoram, right, about a month ago. If that had really happened, you can imagine the effect this would have had on seat sharing talks within the India Alliance, right? Congress would have said, no, we're not going to share. We want more seats. So I think that in a funny sort of way, this result, which is quite good for the BJP, today's state election results, will galvanize the India Alliance to get serious about seat sharing. I know that since the Bombay meeting, there's been virtually no progress. And this result is a wake-up call. Third point, and this ties together the discussion we've been having on quote-unquote freebies, welfare schemes, etc. And the reporter who was in the WhatsApp groups was saying, people want a vision, right? And I fear that some of the observations that he has picked up from Rajasthan, their effect is going to be even more, will be magnified at the national level in 2024. The Congress and the India Alliance have to come up with an alternative vision. And, it's good to have a hard-hitting, concrete, practical economic program for jobs, for other kinds of economic insecurity. But in terms of the broad direction that the country is taking, if you don't have a narrative that can counter the line that the BJP is clearly going to push, which is of Hindutva, Hindu Rashtra, in various ways, I think the India Alliance will have a problem. So I think they need to work on these 3 aspects. To what extent, as we look at the numbers coming in from Madhya Pradesh and Telangana, these are, of course, in one you have the Congress having something to cheer about, leading in 51 seats. The BJP in the Bharatiya Rashtra Samiti, I beg your pardon, on 29 seats, and the BJP in 6. They had only 1 in 2018. And Madhya Pradesh, of the 211 seats that we have leads for, the BJP leading in 147. They're just like storming ahead. And this is true to at least some of the exit polls seem to say that it's going to be a fairly big sort of lead. And the Congress party with only 30, in Chhattisgarh, you have the BJP on 36, the Congress on 33. That seems to be neck and neck. We have leads for 71 of the 119 seats and 2 for the others. The BSP isn't able to open its account in Chhattisgarh yet. The counter narrative to
the BJP sort of overarching Hindutva narrative, coupled with what they call Pradhan Mantri ke guarantee, or Modi ke guarantee. On my way here from the airport, I saw that everywhere as well. What did the Bharat Jodo Yatra do for the Congress and its potential India bloc allies? The Mohabbat Ki Dukaan and all of it seemed to, I know he spent a fair amount of time in Telangana, for instance, at the Bharat Jodo Yatra, more than what was initially envisaged. Sort of his program went on longer, and some people would say that perhaps you can credit Rahul Gandhi to that extent for the manner in which the numbers are playing out for them in Telangana. But that doesn't seem to have sort of, and there's no tangible electoral benefit. Is that correct to say, or? I mean, look, the Hindi belt is a tough nut to crack for the Congress. I think that's the simple fact, right? In the last two national elections, the BJP versus Congress head to head, the BJP's had a 90% strike rate. The Hindi belt, the BJP's had a 90% strike rate. These are places where the combination of Modi, Hindutva politics, and what the BJP represents has really surged ahead and has built a large core vote bank. You see what is happening in Madhya Pradesh. So I think it's a bit unfair, actually, to say that Bharat Jodo Yatra hasn't worked even in North India. It just has to go much further. In the South, where there was actually room for the Congress to come back, it seems to have had some impact, right? So maybe, right? I mean, but I think like we see that in Rajasthan, there were local factors that hurt the Congress. We see that in Madhya Pradesh, you have an ascendant BJP vote bank. You have Shivraj Singh Chauhan, even in a diminished capacity, and Modi being very popular. Just to give you one sort of thing, because I look at a lot of surveys. When you look at the South and you ask who is responsible for delivering benefits to you, you typically get a much lower percentage for the Prime Minister. When you look at the North, in the Hindi belt, you'll typically get a much higher number. So the combination of a chief minister that is reasonably popular, even in diminished capacity, and the overwhelming popularity of the prime minister makes the BJP very formidable in the Hindi belt. Right. Professor Kailash, a question to you about, this seeming north-south divide in how the Congress, of course, having been able to make a comeback in Telangana, if these numbers indeed hold, and it appears they will, and having won Karnataka earlier in the year. This is obviously significant for the party, for the cadre morale, and frankly for campaign finance, for raising money. I mean, you need to be in power somewhere to get money, do you not? But how do you see, Professor Kailash, the sort of distinctly separate tastes in the south and in the north of voters in the context of how the BJP's campaign has been, and what the Congress and what is the larger India bloc, the sort of the narratives that they have looked to offer to the people, to the voter? Yeah, just to take Nilanjan's point slightly forward. One is when you speak of voter satisfaction with the government, whether it's at the state level or with the center, I think one doesn't know whether voters are actually talking of satisfaction with the government, or is it a partisan sort of identity that matters, whether they're looking at governance through the lens of the party. So they support a party, and therefore whatever the government in that particular state does, if it's their party, they say yes. So I think one needs to be a little more careful when looking at it in terms of that. So I think, but there is this divide between, let's say, the north and the south, because the BJP has been weak in the southern states, whether it is Kerala, Tamil Nadu, Andhra, or Telangana. It has got a space in Karnataka. Now, moving on to the sort of India front, India bloc that which we hope will come up in 2024, or which plans are being made, I think it is very difficult. And it's not as easy as we say 1989 sort of coming together of opposition parties that happened, because today there are many more players that are there in terms of political parties, and there is much more overlap between these political parties, unlike in 89 when there was not much overlap in terms of territory that was there. Here today there is greater overlap. So I think you have sort of a narrative for each party to actually do well, and I think any sort of negotiation that could happen is most likely to be a post-electoral one rather than a pre-electoral one, because none of these parties are going to cede space to any of them, anyone
I don't think it makes sense for them to see the larger picture is that if they do, it's beneficial, but they are unlikely to cede space to each other in any of these states. So the Congress is likely to hold on to itself, whether it's UP or in Rajasthan or Madhya Pradesh. It will constantly keep saying that we are a dominant party, we are a big party, so we need those seats. So I don't think it is going to give it to the Samajwadi Party in Madhya Pradesh, or Samajwadi Party is not going to give the Congress seat. So I don't think this is going to come together at at the pre-electoral level. We can talk of something at the post-electoral level if the Congress does well in the South and then makes a claim when they come together later. Right. And on the bottom of your screens, you have that scroll talking about some of the key candidates and how they're doing. Two expected results, of course. Chief Minister Ashok Gehlot of Rajasthan is leading from his seat of Sardarpura, and that very interesting battle that Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh, had against his own nephew, fielded by the BJP, and of course Amit Jogi as well. Again, the speculation has been that BJP fielded him as well. Let's see what happens getting in Amit Jogi, but Bhupesh Baghel seems to be from Patin ahead comfortably for the moment. Siddharth, what Professor Kailash was talking about, that what everybody is saying, that the India bloc will collapse under the weight of its own internal contradictions. Essentially, historically, the Congress and these regional parties have had similar demographics as their core voter base, and therefore he doesn't envisage a situation pre-2024 that there could be a smart, clever sort of consensus arrived at on seat sharing. If at all anything could happen, it has to be post the election results come in. Is that beneficial? I mean, how do they go in? I don't necessarily agree with that analysis. I think that what he's saying is what he's offering is the conventional view and conventional wisdom, and it was true perhaps until a year or 2, 3, 4 years ago. Every party other than the BJP today, and I mean every party, including BJP allies, is facing an existential problem in the face of the BJP machine, Operation Lotus, weaponization of ED, income tax, CBI, the manner in which individual parties are being run off the stage, right, is something which is impelling parties that earlier may not have wanted to come together. So I see, for example, reasonable prospect of the Aam Aadmi Party and the Congress, who are at daggers drawn in Delhi and Punjab. And I would say even in Gujarat, where the Aam Aadmi Party got 14-15% in the last election, and the Congress felt that they spoiled a lot of, even in a state like Gujarat, smart politics dictates that where if you're Congress, you got 0 out of 26 in the last 2 elections. What's the harm in having a seat adjustment with Aam Aadmi for the looks of it, right? So I think somewhere down the line, this existential question that if we don't put up a fight, then we may not be around after 24, is what's going to drive parties together. You see that with TMC, you see that with the DMK, you see that with Samajwadi Party. I'm willing to wager that if the lay of the land changes in a certain fashion, even the BSP, which today clearly has been pushed into a corner by threats of legal action by the BJP, even the BSP may feel that it has some benefit in throwing its lot in with India. So I think that let's wait and see. Right. All right. Siddharth, thanks so much for that. Professor Sarkar as well, Professor Kailash, Sudipto for the brief time that he was able to join us, and of course Shiv from Newslaundry for your excellent reporting through this campaign from Rajasthan. Thanks for the moment. We'll be back again with a fresh panel, fresh voices from the ground as well. And of course, we'll keep updating the numbers that are coming in from the Election Commission of India. Voting in Madhya Pradesh, and I'm in Indore today. Over the last few weeks, I've traveled across multiple districts and spoken to scores of voters. A major dissatisfaction with the BJP-led government has been of unemployment and of inflation. पैसे बढ़े नहीं है, मजदूरी बढ़ी नहीं है, उतनी मजदूरी है, घट नहीं रही, पहले बीजेपी को दे देते। इस बार फिर क्या बेचारे महंगाई बढ़ गई है जो? आप देखेंगे जब देंगे वोट, जब क्या महंगाई देख रहे हो, बेरोजगारी देख रहे हो, खुद देखो पोस्ट ग्रेजुएट बैठा हूँ मैं, बिना किसी कई समस्याओं की वजह से ये है ना क्या जॉब नहीं लग पाई, तो अपने घर पे खुद का धंधा डाल के और काम कर रहा हूँ। चाह रहे हैं बदलाव, कांग्रेस की सरकार आए। To counter this, months before the election, the Shivraj government announced the Ladli Behna scheme,
which gives a cash transfer of rupees 1250 to women. The scheme has created a favorable sentiment among rural women voters, I found. But we are yet to see whether this will swing votes in the favor of BJP. You're watching The Wire and I'm Shravasti Dasgupta. In September, Union Home Minister Amit Shah alleged that a wave of religious conversions has been unleashed in Chhattisgarh under the Bhupesh Baghel-led Congress government. The Congress, on the other hand, has called these allegations baseless and said that the BJP has no issues to highlight and was hence polarizing the people in the elections. In November, I travelled to Chhattisgarh's Narayanpur district, which has emerged as the epicenter of the BJP's claims of forced conversions by Christian missionaries in the tribal regions of the state, and I found that the Christian Adivasis in the area are facing increasing attacks from other villagers, some of whom are backed by Hindutva groups. Narayanpur is in the Adivasi-dominated Bastar region, which went to the polls on November 7th. We found that Christian Adivasis living in the forest areas are struggling to bury their dead, facing social boycott of these claims of forced conversions. On November 2nd, 13-year-old Sunita from the Brehebeda village of Chhattisgarh died of typhoid at the district hospital in Narayanpur. Her brother, Manu Potai, said that when her body was brought home, a large number of villagers arrived and stopped the family from burying the teenager's body on the village land using Christian rituals. Instead, they insisted that the family bury the body using traditional Adivasi customs and traditions. On March 6th, Santer Nag's 36-year-old elder brother died of a heart attack in Sulenga village. Like Manu Potai, Santer Nag brought his sibling's body back home from the hospital and wanted to bury him. However, about 5 to 6 people prevented the family from accessing the burial ground, saying that they would only allow it if the family followed the traditional Adivasi customs. These villagers said to us that there is no force behind their conversions and that they have adopted the Christian faith because of their own free will and beliefs. However, it's not just the burial of the dead. Christian Adivasis there are also facing social boycott. 24-year-old Sarita, who lives in Kokri village, said that she has been boycotted by her family for adopting Christianity back in 2012. She claimed that she's also being stopped from working on her family land by her brother and has to travel outside the village to work as a laborer. Over 20 instances of anti-Christian violence were reported from the Narayanpur district in December last year alone. Things came to a boil at the turn of the year when the Sacred Heart Church inside the Vishwadipti High School in Narayanpur was vandalized on 2nd January 2023. The attack took place shortly after the police held a meeting with the tribal community over religious conversions in the area. When we visited the school, we found that the church is now being rebuilt. However, scars of the attack remain, with several glass windows still damaged and yet to be fixed. The incident resulted in a police officer being injured. Following the attack, 5 individuals, including BJP District President Roopsai Salam, were arrested. While the residents are paying the price for the bogey of conversions, the Congress and the BJP leadership in the district have resorted to pointing fingers at each other. Chandan Kashyap, the Congress candidate from Narayanpur, who is also the sitting MLA, said to us that the BJP is only talking about forced conversions as it has no other issues to highlight. Roopsai Salam, who was arrested in connection with the vandalism of the church in Narayanpur in January, however, said that conversion is not just a social issue. The Adivasis in Narayanpur who have converted to Christianity are looking at these elections for a chance to get their right to life, livelihood, and dignity restored. You can head to our website, thewire.in, to read our full story and support our journalism so we can bring you more such ground reports. No loudspeakers, no rallies, no processions, no door-to-door campaigns, and very few posters. Elections in Mizoram look and feel very different compared to the rest of the country. Are you wondering why? The Mizoram People's Forum is a church-backed poll watchdog that was started in 2006 to ensure fair and free elections in the state. The Mizoram People Forum was formed way back in 2006 in order to achieving the free and fair election, clean elections in Mizoram. We try to watch the election campaigns. We try to prevent candidates from distributing this money.
The MPF consists of 7 churches and 5 NGOs, including the powerful Young Mizo Association that nearly half the Mizo population is a part of. When election is near, this MPF, Mizoram People Forum, is organizing a meeting with all political parties. In that meeting, they have signed an agreement regarding this, not to carry out house-to-house campaign, not to organize these grand fees, not to, give freebies to the community. That kind of agreement we have signed. If they do not obey, then we will announce publicly what they do. That will be harmful for their winning. No? Rahul Gandhi's Padyatra in the state last month may have been talk of the town, but it violated MPF's rules and the MPF publicly condemned it. The Congress party later issued an apology to the MPF. We announced it through the media. And also I read that there is also... And then the Mizoram Pradesh Congress Committee president apologized in the media, through the media. A very good morning to you all. It's 11 a.m. Results with Independent Media is a collaboration between Newslaundry, the News Minute, Scroll, The Wire, and Caravan. From Scroll, I'm Smita Nair. Now, for those of you who are just tuning in, perhaps at 11 a.m., it's best that we go with the numbers first. So could we pull up the various states, please? We have numbers coming in thick and fast, at least from the Hindi belt. I know a substantial leads from a substantial number of seats in Rajasthan are available. In fact, 196 of the 199 seats that are being counted today. One seat, of course, it's been put off the election. Here are the leads. The BJP leading in 100 seats. The Congress party in 78. Others with 15. The Bahujan Samaj Party leading in 3 seats. The general trend that was being suggested in the exit polls done by the various news networks seemed to suggest it was neck and neck. If these leads are to be believed, it certainly isn't. The BJP seems firmly in the lead. In Chhattisgarh, we have numbers coming in from 81 of the 90 seats. Here again, about 10 minutes ago, when I checked the numbers, they seem neck and neck, with the BJP again inching forward here in 42 seats as opposed to Congress's 37, others in 2 seats. Can we pull up Madhya Pradesh and Telangana, please? In Madhya Pradesh, leads from 218 of the 230 seats, the BJP leading in 150, the Congress in 65, the others in 2, and the Bahujan Samaj Party in 1. This is big, which means, as we were talking about in the earlier panel, the Congress, the BJP, if it were to form the government in Madhya Pradesh again, would have been in power for a quarter of a century. Telangana leads from 98 of the 119 seats. The Congress firmly in the lead here, 51, well beyond the halfway mark. KCR's BRS in 29 seats, and the BJP in 6 seats. I'm going to ask one of our panelists who's joining us to comment on that particular figure and whether it's going to be relevant in the Lok Sabha polls that happen in a few months from now. Let me introduce the panel to you. My colleague and editor here from the Scroll, Supriya Sharma. She's traveled extensively in Chhattisgarh. Radhika Bodia, very familiar face for those who watch TV. Radhika, of course, was reporting for The Wire from Rajasthan in a big way. And Dhanya Rajendran, the editor of the News Minute. Big congratulations to her. The reason you see a glow on her face is because she's won Journalist of the Year at the Red Ink Awards in Mumbai. Scroll, of course, also big bragging rights for the investigative reports done by this news website. Online, do we have our guests who are joining us online as well? Yamini Iyer is expected from the Center for Policy Research, a great mind there. I would want to go to Yamini, as I have in the past in Scroll. We've discussed, Revdi versus freebie, what's a merit freebie or a welfare scheme versus a non-merit scheme. We'll come to all of that in a bit. Yamini, thanks so much for making the time. Who else do we have? For the moment, perhaps we'll return to the numbers for now. And I want to start with Rajasthan, Radhika, because up until this morning, we were being told that perhaps Ashok Gehlot will be able to buck the revolving door trend of 5 years BJP, 5 years Congress. The various schemes of Ashok Gehlot and his own personal popularity was being sort of put forth by pollsters, even to say that, the reason why they think this is different from 2013 is because, Gehlot is a different figure, blah, blah. In fact, I remember I was listening to a senior editor from a news network, and he said if Gehlot were to come back, it would propel him
him, as one of Congress's big leaders on the national stage. Break these numbers down for us and why they are the way they are. Absolutely. I mean, I think that we've had a lot of talk about Gehlot's popularity, and undoubtedly that is the case. Across Rajasthan, that is what you will repeatedly hear. And I think the reason everyone has found that this contest is as tight as it is because your vote share is telling you that. Currently, the difference in the vote share, and I'm going by the Election Commission website, is 1%. That was also the margin that the Congress won with in 2018. Now, when you have such a close margin of victory and you're an incumbent government, definitely the BJP had the edge. And I think by now almost every journalist has heard every version of revolving door, roti palatna, thali parosna, etc. that can be said. And so the BJP went into this with that edge. Having said that, I think the vote share will also be very interesting because it tells you just how tight it is. This is a state which is a Hindi belt state. It's also a Hindu belt, and it's got a long history of that as well. And some of that is manifesting if you look at the numbers from the BJP stronghold, which is Mewar. Mewar is Udaipur, it's Nathdwara, it's Rajsamand, and there the BJP did very well, even when the Congress won last time. That consolidation, I would say, has an underlying communal tinge to it. Having said that, look at what's happening with the tribal vote in Mewar. And that's actually, you have 4 seats where the Bharatiya Adivasi Party is leading. And I think we need to, because not much will be said about them. And that's a very important force to recognize, because the Bharatiya Adivasi Party is doing something which the Congress is not doing in that region. It's actually challenging the Hindutva agenda of tribals. This is a region where the Vanvasi Kalyan has done extensive work. Correct. Right? So I think Mewar is where they're getting gains. Eastern Rajasthan, a lot was said about the whole pilot and Gehlot dispute and how the Gujars are going to move away. And I think we'll have to look closely at the seats in Eastern Rajasthan. At the moment, at first glance, you are seeing a lot of losses there. But I will just want to put this on record. When we're talking about development, the reason you're seeing that vote share recurringly for the Congress is because Gehlot is seen as a man who is thinking of social welfare umbrella for the state, which goes well beyond anything that can be called reveries, because he's actually initiated laws that are going to outlast him. That takes courage, because one, just going into a battle on a plank that is only development. And unlike Madhya Pradesh, unlike Chhattisgarh, you've not had "we open the Ram door temples," as Kamal Nath was saying in Madhya Pradesh. Here, there was a very clear thing, "Kaam kiya dil se, Congress phir se." It was a slogan that was coined by a Congress worker in Bharatpur, actually. And that's what he's gone to the polls with. And I think that he will lose. And we will, as we discuss further, many reasons for that. One of it is the lack of cohesion with which the Congress is unable in the end to make that mahal. But we can talk about that more as we go along. Right. I may perhaps come to you with Madhya Pradesh and, with the chat we had before we went on the air. I just want to quickly read some of the leads that are coming in on the scroll, on the ticker there. BJP's Rajavardhan Singh Rathore is trailing. This was, I wouldn't say expected, but it was being said even before elections that perhaps he's not on a weak wicket against the Congress's Abhishek Chaudhary in Jotwara. Radhika, you're looking at that and not surprised by Rajavardhan Singh Rathore? Trailing? Yes, trailing. Absolutely. That was something that many people were seeing on the ground. On the ground as well. There is actually there are a lot of the inner politics and factionalism has also come to fore. Right. So that's something that was Right. not surprising at all. I have to bring in Dhanya here. Dhanya, I don't know whether you obviously you're on the phone throughout, so you've already heard this. I don't know by how many votes, but we are being told by the PCR that K. Chandrasekhar Rao, who's fighting from 2 assembly seats, Gajwel, of course, that he is the incumbent, and Kamareddy as well. In Kamareddy, his
His challenger, Mr. Revanth Reddy, potential chief ministerial candidate for the Congress, is actually leading against him. That you're surprised, expected? No, I wouldn't be. I mean, if there is a way for the Congress, which is what it looks like, if the Congress goes anywhere to win more than 65, there's definitely a wave, because in Telangana, that's what you call a wave. I think then Revanth Reddy has to win from Kamareddy. There's, I was actually thinking that the seat which KCR may lose could be Gajwel, more than Kamareddy, because on ground in Gajwel, there was a lot of anger. I mean, that's across Telangana. There was anger against the family itself and a lot of anti-incumbency regarding policies. But I think they did not pay heed to it till the last minute. In fact, it was in the last 2 weeks that the BRS started palpitating that perhaps they may lose elections. So not surprising at all. If Revanth Reddy is managing to win Kamareddy, then, and there's no doubt also on who will be the chief minister. But I don't think there's a doubt on who will be the chief minister. But you know, for TV channels, correct. it's Yesterday fun to there just was some keep it fun of going, saying correct, who will be correct. chief minister. It will Right. be Revanth Reddy. Absolutely no doubt about it. But Kamareddy will win cemented for him. Right. Well, very famously, Revanth Reddy in a television interview much before this exit polls happened said that I will meet you at 10:30 a.m. 9th December, Sonia Gandhi's birthday at the Lal Bahadur Shastri Stadium, where he will. I think he seemed to suggest he will be sworn in on the Congress. I was talking to someone who worked with him for many years because we were trying to write a profile on him, and I was asking him that what was his ambition when he was young, when he was a younger politician. He said he wanted to be chief minister. I said, but how can a young politician with the TDP, when Chandrababu Naidu is alive and he has a son who may take over, how can he think of becoming chief minister? He said Revanth Reddy has been clear. He wants to be chief minister, and he was very open about it. He apparently used to give sound bites saying that after Naidu, there will be time for younger people, then I will become. So this is a man who was also created by KCR in one way. During the whole Telangana struggle, I mean, there was this whole incident where he was arrested. That is, of course, post-Telangana, but even during Telangana movement. So KCR created Revanth Reddy is what a lot of people feel. Right. So talking about the Telangana movement in KCR's co-travelers, Dhanya Rajendran, if I'm pronouncing it correctly again, from Gajwel, fighting against KCR, the BJP's sort of main face, if I may. How are you seeing? Do we have anything from Gajwel PCR as you try and look for the leads? I was looking at TV9 Telugu, which has the Telugu numbers. They are saying that as of now, KCR seems to be leading. I think it's keeping on changing. But in Gajwel also, people were talking about Itala. Itala is someone who was in the TRS. Then he moved to the BJP. He's been a co-traveler of KCR. So people look at Itala as someone who rebelled against a dictatorship, against an autocrat. So there is a lot of sympathy towards Itla, which is also why he won the by-elections, right? So wherever we went, people would speak about Itla. And if the BJP itself does better than it did last time, that's the message for the BRS, that they gave away a lot of space to the BJP. And if the BJP walks away with those numbers, it's not just the Congress that poses a challenge for the BRS anymore. It is going to be the BJP too in 2024. Yeah, if I forget, remind me, we are going to talk about BJP, okay, and what it means. I want to go to Yamini before I speak with Supriya. Yamini, I'm not specifically asking you only about welfarism or about, the OBC caste census promised by the Congress party in various states. Thematically, as you look at these numbers that are coming in, there seems to be more for the BJP to cheer than the Congress party. Give us your sort of big picture of what you make of the numbers coming in from the 4 states that we're counting today. Thanks, Smita. I think it is interesting. There was, I think the Congress was expecting to do a lot better in Madhya Pradesh than they have. But it tells us, if I look at it from the broad trend perspective, I would say a few things. I think it tells us very clearly that there is a lot more political space for Congress in southern India at this moment in time than in North India. And in a way, the Congress has more or less played the BJP game in both places, except that in southern India, it's much more articulate on its ideological positioning as distinct from the BJP's Hindutva. It plays the same competitive welfarism game as KCR does, but it's ideologically a lot clearer than in northern India, both Madhya Pradesh and Chhattisgarh being 2 very important examples where you see this sort of attempt to play the BJP's game on the BJP's game, which is a combination of soft Hindutva alongside with competitive welfarism, and its inability, therefore, to actively articulate a distinct position for itself remains a challenge.
Rajasthan, I think, is somewhat more unique. I do agree with what Radhika was saying earlier. I think Gehlot is an extremely popular chief minister. His calm is very visible. I've been working in Rajasthan over many decades, and you really do see a significant shift. And the welfarism of Rajasthan, particularly by virtue of the minimum guarantee laws, is different. But I will say that when it came to the election campaign, the welfarism element of the campaign, as I saw in Rajasthan, almost mirrored the welfarism campaign of the BJP, in that what was really pushed and positioned electorally, regardless of what of the larger social security architecture that was being built up, was very much an individualized, leadership-centric welfare. So you saw Gehlot consistently with the pink background and his picture in each of these. I remember particularly the kit, the ration kit that was provided as in sort of competition with Modi Ka Gehu. Gehlot Ka ration kit has Gehlot's picture with a pink background and the details of what is so-called being offered. In terms of its instrumentality and strategic utility of the welfarism, it's very much mirrors what the BJP is doing. And that competing competition, I think, sort of makes it lose its distinctiveness in the electoral play. There's a third piece here, which I think will need a lot more unpacking, but is important, which is the role of the female voter. At least we saw in the exit polls the extent to which the BJP and particularly Modi remains extremely popular with the female voter. That showed up in the numbers, in the exit poll numbers, some of the numbers that I saw in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. And, I think that needs to be unpacked a lot more. We've seen this in different state elections in North India too. There is a particular appeal that the BJP has, and I would argue that the Prime Minister has in particular, vis-a-vis the female voter. And the female voter, particularly the young female voter, is voting very distinctively and differently to the family bloc, which I think is making a difference to how these electoral outcomes are playing out. These are just broad brush sort of views here. We'll have to look much more closely at voting patterns over the course of the next few days to see how this framework fits into what the data is telling us. Right. I know you have to go, Yamini, at 11:30. So I want to ask you, because I know you have sort of debated this and written so much about welfare politics or competitive welfarism, when the RBI put out its data, or when the Prime Minister sort of repeatedly since the Gujarat election and then the Karnataka election spoke about Revdi, dissing other political parties for doing so, at the same time looking to broad base his own, labhartis or beneficiaries of the schemes. You answered some of it already, but is there a direct sort of tangible outcome to what is being offered, if I may, in terms of welfare schemes? Or does it matter how it's been tailored? How, for example, a panelist in the hour that went by said the manner in which the scheme has been designed by the bureaucrats at that particular state perhaps is also key to how it's being perceived by the voter. On the basis of the numbers you're seeing right now, Yamini, is this the new sort of political idiom, the political narrative going into 2024? We've seen the Prime Minister in hoardings talking about Modi ke guarantee as well, even as he derides other parties for so-called bribing the voter or Revdis. How do you see welfare and welfare politics in the run-up to 2024 and the results on the basis of the numbers that are coming in from the states? So, I think we are definitely seeing a very clear political consensus that cuts across political parties. There are obviously regional prioritizations and sectoral prioritizations that occasionally make themselves visible. And I think here Rajasthan to a degree stands out. Chhattisgarh stands out a wee bit as well. But there is an overarching political consensus that has emerged about the kind of welfarism that is now getting increasingly popular within political parties, and the kind of electoral offerings and positionings of welfarism that we are seeing. And that is the use of the technology-enabled direct benefit transfers as a means of establishing a very direct emotive connection between the political party, and in more cases than not, the political party leader and the voter. And it's a form of
it's playing out in different ways in different states, but that is really the instrument of delivery. So the political party leader becomes really important. I think in the BJP state leader's problem is that Modi takes over that space. So even in Rajasthan, there is no chief ministerial candidate that is visible. Vasudha Raje has most definitely been pushed to the sidelines and the margins. We will see what plays out over the next few days. In Madhya Pradesh too, an active attempt was made to sideline Shivraj Singh Chauhan to a greater degree. I think his ability to fight back is a lot more visible than, say, Vasundhara Raje's ability to fight back. But even so, it's a double engine with Modi winning, and it is Modi's visibility that is able to establish that direct connect with the voter. In Rajasthan, the attempt was made by Gehlot to do exactly the same, but bypassing other political leaders, the Gandhis most visibly, but also seeking to bypass the local political challenges that he was competition that he was facing with Sachin Pilot to become the established figure that is establishing the emotive connect. That is why his image or his photograph was so central to the way in which the welfare offerings were delivered. In Telangana, this was being done much more so within the framework of the Gandhis, who played a much more visible role, I would say, in the political campaign there than they did in Rajasthan, for example. But in each of these, so you see differences, but in each of these, you see an attempt to bypass the local structure of delivery and establish this very direct connect between the cash transfer, the DBT, and the voter. And it is an attempt to build out an emotive relationship between the voter and the leader and the political party, rather than a more broad-based discourse about welfare, poverty. And what's also distinct about this is how distinguished it is from the discourse on jobs. So you find in conversations with voters that the question of unemployment is a very, very visible question that you see all across the country. But unemployment doesn't translate into a discourse about whether welfare is supporting that unemployment. It is mostly two completely different realms, which is very unique. Most welfare states across the world have developed within the framework of the labor market. This one is developing as a compensation for a labor market that is simply failing to employ workers in ways that workers would like to be employed. Right. I think Radhika wants to reflect on that. And Radhika, in fact, that was going to be my question to you, because the unemployment crisis and the paper leak sort of, I tie all that in too. Actually, interesting enough, I didn't actually find the paper leak as a resonant theme. You didn't? As I was traveling across. Okay. I do see it a little differently. I think both Yamini and I agree on the importance of these schemes and the act. But I'd say that this entire issue of it being leader-centric, I think we have to look at what the Gehlot-Sachin dispute actually did to Rajasthan. Here you have a chief minister. At the end of the day, the voters do identify with the face. Even when you don't have a chief ministerial candidate in the BJP, it's Modi, right? So we are dealing with people. It is absolutely true that the Congress cadre as such needed much greater mobilization. We saw a beginning of that in Rajasthan this time, with the Congress starting Mandal Adhyaksh at positions at various levels. But I'd like to say this: you have a chief minister who is as popular and who's done good work. What do? You allow a challenge to him. The Sachin Pilot narrative is a narrative, and I want to say this emphatically: it is a Delhi narrative. Okay. It is not a narrative in Rajasthan. He worked hard as a Congress president. He had many years. He could have been a great chief minister in the years to come. The Congress had a great second-rung leader. Gehlot was being undermined constantly. In 2011, when Chiranjeevi was first announced, there was very little campaigning by the Congress on it. Today, again in the state, Congress sources will openly tell you that the Congress in Delhi wants Gehlot to lose. And have tried everything possible for what was seen as Gehlot people to sort of undermine them. Gehlot has done his own politics. He's we're not calling anyone a saint here. Right. But I think that what pushed Gehlot to this sort of design box campaign strategy, design box was an election management company, which is responsible for all the pink packaging and gases and
That I would agree with Yamini that I think there was too much of a reliance on something like the design box. Why? I will, though, understand what pushed him there, because does his party project him as the leader that he is? It doesn't. Even though, and I'd say that again, I go back to the vote share, where you see in all the other Hindi-speaking states a complete consolidation of the OBC vote. In Rajasthan, yes, the OBCs have moved to the BJP, but it's not as total and complete as it is in all the other states. When we start looking at vote shares closely, I suspect whether it's Dalit vote share or Adivasi vote share, and that, of course, Adivasi is a different story we can come to later. Correct. So net TLDR is that internal machinations of the Congress party in Rajasthan perhaps is responsible for the numbers we're seeing. Supriya, thanks for waiting patiently. Sorry, Supriya, just can I just come in? Sorry, I can't see yes, you, so I Yamini. know Yes, I'm yes, interrupting, yes. You're still here, Yamini. Yes. Just wanted to come in on one point just to add to what we've said so far. I think there's another dimension that we need to think a little bit harder about, just to understand and analyze better, to get a better sense of what voter behavior is looking like, and how political parties are trying to distinguish their non-BJP political parties are trying to distinguish their ideological framework, which is the role of the discourse around the caste census, such as it exists in this whole framework. And it's I have speculated, this is speculation which I think is beginning to bear out a little bit with these electoral results, which is that given the nature of the role of that technology is playing in welfarism and the broader ways in which citizens are now engaging with the state, and this very leadership centric political process, that in a sense the appeal of the caste census from the point of view of what it does to how the state looks like at the grassroots level, the presence of your own representatives of your caste in the state, which facilitates your ability to access the state and demand from the state, is now no longer as appealing, because technology has sort of cut out the layers of the intermediary functions of the state. It's literally a centralized top-down delivery structure in which the citizen is engaging with the state in a very peripheral way, largely from the point of view of centralized databases and whether they are in or out, and the presence or absence, therefore, of their own group-based identities within the state is mattering somewhat less to the everyday experiences and everyday dimensions of citizen-state engagement. It's just something for us to understand a little better, because I am curious about why, given the caste census demand was very much part of the electoral offerings, so-called, through these elections, it's not showing up as much in much of our discussion and understanding of how the results are playing out. All right. Iram Agha and Arnab Saikia, our colleagues, are also joining us, and they're waiting by. But Supriya, can we pull up Chhattisgarh numbers, please? Supriya, you've not just in the course of this campaign, but Chhattisgarh is your state. You've lived there. You've reported extensively from there. Just for our viewers who are there, Chhattisgarh, you have it. BJP on 46, the Congress on 40. Do we know the vote share? If we know the vote share, perhaps we'll be able to comment better on and others won. The vote share will come up in a bit as well. Supriya, make sense of this for us. Well, I'm actually looking at the vote share, and it's 45% vote share for BJP and 42 for Congress. That's a 3% lead for BJP, and that's possibly more votes for BJP than it has ever had in the state, even in the elections that it won in 2003, in 2008, in 2013. So, of course, there's a cautionary note here. In Chhattisgarh, elections tend to be close, and counting goes on till pretty, I remember in 2013, it went on till 11 p.m. And with every round, sometimes seats can change hands. So this does seem close. At the same time, by every benchmark, this is a day when Congress needs to introspect in Chhattisgarh, because this is a state where it had a massive landslide victory in 2018. It has 80% of the seats in the assembly. To put that in context, Modi's victory in 2019, BJP has 55% seats in the Lok Sabha. So just to give you a scale of how spectacular Congress's victory in 2018 was, and from there, within 5 years, this is its position, where it's currently trailing. In a state where BJP won 3 consecutive elections, this was an election for Congress to win, and yet it's doing badly. The other thing that, as I'm looking at the EC site, I can see spatially
there's a story there. And this is something that everyone who's reported from Chhattisgarh has picked up, which is Congress is doing very badly in the Adivasi regions. And somewhere this larger interpretation of the 2018 victory of the Congress, I think, was off the mark, where everyone only spoke about paddy and about the fact that Congress won on the back of its promise to give farmers a paddy bonus. Congress also won because it made several promises to the Adivasi population of Chhattisgarh, which is 1/3 of the state's population. It said it's going to implement the Panchayat, the Extension to Scheduled Areas Act, PESA. It said it's going to protect their Jal Jangal Zameen. Rahul Gandhi made a famous campaign speech saying that he's going to protect versus Adivasi. Yes, but also that he's going to protect the Hastev Aran forest in North Chhattisgarh, which is this coal-rich belt. And the Congress literally walked back on all of those promises. It took 4 years to implement PESA, and that was done in a diluted form. In Sarguja, there's a lot of anger because it actually did not stop mining. And for all that it says on the national stage about taking on the Adani group, it allowed the Adani mines to continue. And it's only after a massive people's movement that it put it on hold. And that's not still been cancelled. And south in Bastar, in both these regions, actually, in North Chhattisgarh, in the Ambikapur division, Congress had won 14 of all 14 seats, and in Bastar, 12 seats. So actually, it was the Adivasi regions that voted for Congress in a decisive way. And as I said, in Sarguja and Ambikapur, it's already let down people by allowing mining. And in Bastar, again, this was an opportunity for the Congress to show that it's different from the BJP in the way it handles the Maoist insurgency and the general sort of angst of people in the area, which it didn't do anything about when there was a police firing episode in Silgair village in which 3 people were killed. Not a single minister went down there to talk to people. So there's a lot of anger that's built up in Adivasi areas, and we're seeing that right now. BJP is doing very well in both Bastar and in Sarguja. On the map, you can see these are 2 regions on the extremes of the state, while the plains are in the middle, and the plains we're seeing blue, the color of Congress, and that is Bilaspur, on both the extremes we're seeing saffron. Correct. So that tells the story. And again, in the plains, it isn't as if Congress is sweeping the plains. They literally thought paddy is like a silver bullet solution, that all they need to do is continue promising farmers, a hike in the paddy bonus. What they didn't realize is that the BJP is going to match it. In fact, just like a week, like 10 days before the elections, they were both engaged in a paddy war where both of them were trying to further up the price. And So loan waivers as well. Loan waivers was the other. Supriya, how many reserved seats in Sarguja in the north and Bastar in the seat? I think the most number of reserved seats tribals is split across these 2. Yes, exactly. I mean, these are Adivasi regions. 11 of 12 seats in Bastar are reserved. And similarly so in Ambikapur. And these are the regions Congress is doing badly. But I may also add here that it's also the internal factionalism of the Congress. I mean, and in some way, the blame for that lies with the central leadership of the party, where someone came up with this bizarre idea that you can do a half-term solution between Bhupesh Baghel and T.S. Singh Dev. Does anyone seriously believe that the chief minister at half-term is going to step down and make space for someone else? And the 2 leaders have spent these 5 years fighting. And because of that, very little has actually been done in the state. And the Congress is now paying a price for that. Arnab traveled to Chhattisgarh as well. Some of the reporting for Scroll was done. Arnab, I want to pick up from where Supriya has left off and what Radhika alluded to in her answer with respect to Rajasthan. It was being reported in national dailies that, Mallikarjun Kharge, the Congress president, has been able to bring warring factions together, Gehlot and Sachin Pilot, of course, in Rajasthan. And here, T.S. Singh Dev, for viewers who are perhaps not that familiar with Chhattisgarh, T.S. Singh Dev, candidate from Ambikapur, from the Sarguja region. There was in 2018, there was much talk that it is a toss-up between the 2. Mr. Baghel, of course, becoming the chief minister. Again, there was speculation that perhaps this is a half-term chief ministership. And that supporters of Mr. Singh Dev will perhaps be unhappy that he wasn't able to sort of take over the chief minister's chair. In June, the Congress made him the deputy chief minister. Was this a factor in the results that we're seeing play out, Arnab, this T.S. Singh Dev versus Mr. Baghel? Right, Smita. I think a bit of the factorism did play out, but as opposed to Rajasthan,
the scale of it, I think the Congress managed to kind of do damage control by the time we're close to elections. But as Supriya was pointing out, if you look at the map, for example, the district of Jashpur, Jashpur is where one of Asia's largest churches is, and so that Congress is trailing in all 3 seats in that district. So the Congress has the Congress won, as Supriya pointed out, 24 out of 25 seats in the last elections in the Adivasi areas. Now they're trailing in more than 20. So in terms of the paddy belt, the Congress has by far has by and large managed to hold on, it seems. But I suppose the damages in the Adivasi area, which is essentially, I suppose, a result, a consequence of the Congress not following up on many of the election promises. The Christian Adivasi community felt particularly under attack, because they felt that the Congress did not back them up. In Jashpur, for instance, earlier this year, a nun was arrested, and kept in jail for 3 days, and the local MLA did not, as the allegation goes, even bother to, intervene. So, I mean, all of that, that conceit, if I could use that word, is, I think, has really come to haunt Congress this time in the Adivasi areas. I think, and that probably be, I mean, there was anger. It was, I mean, the Congress leadership did acknowledge it, but it looks the anger is much more than they probably anticipated or gauged. Is it true, Supriya, this soft Hindutva I mean, I one didn't see, I mean, it was not discernible to me in the campaign, but you're saying it is. Well, it's sort of complicated where it may not be discernible in the campaign, but in the course of these 5 years, it was very clear what Bhupesh Baghel was doing. He thought that he's going to try and outdo the BJP, but instead, for instance, Ram Van Gaman Path, this sort of route that they were tracing that Ram had taken while in exile, in the name of building this sort of path for Ram, they were actually building a pathway for the BJP, because they were taking this iconography of Ram to regions where people didn't really know about it. I went to one of those sites where there were Durva Adivasi women who had actually built this installation. This is one of the sites along this Ram Van Gaman Path. And they didn't know anything about what they had built. And there's a temple there and none of them have visited it. But clearly, in the years to come, they've introduced people to what is actually a Hindutva plank. But if I may just come in on what was really the price that Congress is paying for its internal factionalism, they may have done some sort of a patch-up in the months leading into the elections. But for 5 years, there was a bitter war between Bhupesh Baghel and T.S. Singhdev. That meant that Baghel was always insecure that Singhdev is going to take over the mantle, and he was always trying to undermine Singhdev. Singhdev held 2 crucial portfolios, Panchayat and Health. And because of this, because Baghel was always trying to undermine Singhdev, basically the state didn't construct PM Awas houses because that's the Panchayat department. Correct. And the Panchayat extension to scheduled areas, PESA Act, the major promise that they made to Adivasi communities in the state, also suffered because of this internal fight. And what we're seeing right now is an outcome of that you cannot arrive at a truce like 6 months before the elections and undo the damage. Correct. But also that Baghel could have actually, if he had been able to work with other Congress politicians who are quite seasoned and experienced, they may have actually been able to have a better governance record. Baghel his vision seemed to be limited to just providing a better paddy price to farmers. And he didn't really utilize the expertise of other colleagues. And because the Congress was this sort of divided house internally, and Baghel had become like this kind of centralized figure, almost like we know many chief ministers, like a mini Modi, where all the publicity of the state was about him, and his narrow, limited vision has sort of resulted in this, where his Chhattisgarhi identity that the national media really talks about excludes the Bastaria and the Sargujia identities. Right. And that's really not something that was factored in. And there was this perception that the Congress is doing very well in Chhattisgarh,
but everyone who's actually traveled to the state could see that there was all of this pent-up resentment that is now coming to fore. Right. I can bet none of what Supriya has now talked about was reflected in any of the coverage, because I was watching television news channels as well. And in answer to that question, is Chhattisgarh identity, this unique thing that Baghel created, will that, in a sense, reap benefits electorally? But actually, all the pieces they did reflect. In fact, we also had Sudipto had gone to Chhattisgarh. I think in their pieces and ours, it did reflect that. I mean, I was surprised to see that Baghel is more Hindutva than the BJP in Chhattisgarh. Right. In fact, which is why, as I keep saying, the most important thing in a democracy is that we need a well-informed electorate. Unfortunately, we haven't had legacy media do that. There have been more props to the powerful. And if you believe that we should be watchdogs in a democracy and not a lapdog, you should contribute to these 5 media houses that have come together. Below this box that you're seeing in the show notes below, we have details on how you can contribute and be part of this journey. I want to go to Telangana because we've been holding that off for a while, but I believe Iram Aga from the Caravan, who's done some very good reporting from Rajasthan, is also on the line with us. Iram, you've been listening into the conversation. You heard the insight that Radhika had and was sharing with us from the state. Iram, you're looking at the numbers in the vote share right now. Tell us what you think, what we haven't covered so far. BJP has 100 and Congress 78. I mean, you didn't feel that there is any anti-incumbency in the state for the Gehlot government, but there was some very interesting interaction I had with people in the BJP who said that the generation of voters has changed and it will reflect this time. And the tradition of roti paltana or revolving door might, in the sense, it is going to reflect in the fact that the people will choose. In Raje won't be somebody who they would like to see next, because the generation has changed and it will reflect in BJP High Command bringing in the next person. And if you tell them that you have heard much better things about Raje in the older voters section, and you go to people from the university, speak to young students, they would go for Baba Balaknath. So there is definitely a kind of shift maybe that is taking place, which if BJP wins this time without the Raje Iram, can you talk about this Mahant Balaknath? For people unfamiliar with this name, he is being touted as Rajasthan ka yogi. Yeah, so he came to file his nomination on bulldozers. So that is exactly how he was pitching himself also, and he's fighting against Imran Khan from Congress. But what reports I saw that said that he doesn't really have that kind of edge in that region, and the Dalit and the oppressed minorities might not vote for him. So this is something that we can look for, that how Baba Balaknath can be is not in a very good position that way. I don't want to say it, but yeah. So Baba Balaknath is we don't have leads from his Tijara. Forget what's the seat? Yeah, Tijara. Yes. Tijara. Yeah. And as I'm seeing the seat of Tijara, I have to say though, that again on the ground, there wasn't such a clear sense. He was pushed to having to campaign village to village, had to moderate his sort of Adityanath emulation as we were getting closer to the polls. But there has obviously been some kind of a polarization there, because he's leading with a margin of 20,000. So, and it is, I think I would say that what Iram was saying, that this comfortable victory, and as I'm seeing on the election website, I just need to point out that even there has been a great gain of vote share for the BJP. I think it's very comfortable victory for the BJP in Rajasthan will be a huge shift for the state polity, because this will be the first time you will have a non-Vasundhara, possibly a non-Vasundhara BJP. There are surprises, and they could still make her the chief minister, but they have done everything possible to sideline her. And so this is a non-Gehlot, non-Vasundhara Rajasthan, which I think opens the door to a lot of far greater communalization, because there is a social base there, much like actually Gujarat. Right. Talking about polarization in the BJP in Telangana, can we have the Telangana numbers, please? You can look at the vote share. Congress 40.57, the BRS 38%,
I'm looking at the BJP's seats. Yeah. The BJP is leading in 8 seats, Sirpur, Adilabad, Nirmal, and in fact, they're leading in 3 seats in old city of Hyderabad, Bahadurpura, Caravan, and Goshamal. Goshamal is a seat that they won last time. Raja Singh, the most rabid BJP leader you can find in Telangana. But they are leading in 7 other seats. And if that does happen, if you look at, there's a place called Bhainsa where communal riots had happened. So Mudhol, Nirmal, these are all, Nirmal is a district and Mudhol is a constituency where Bhainsa is. So BJP is leading where there was communal riots. What is surprising is they're leading in Nizamabad urban, which is actually a Muslim population, a large Muslim population is there. So there could have been some sort of polarization. And I'm just looking at the numbers and wondering how wrong the BRS has got the entire thing, because they were telling us, even till 2 days ago, that they will do better in northern Telangana, and Which they is will do Nizamabad, Adilabad. yes, and they will do well in Hyderabad and adjoining areas. But if you, and they were really scared of the seat where Bandi Sanjay was standing, the previous BJP president, which is from Karimnagar, that they would lose seats there. But now it looks like the BJP may walk away with old city seats. And also the places where there was communalization. So old city seats at the cost of MIM? Because yes, 9 seats are for to the which. But as of now, Bahadurpura and Karwan. But I think these are close fights because the numbers I are think not. Nampally, I was told, is a close fight as well. I the don't know whether numbers we have are the not numbers for it. coming too fast. Right. But if the BJP does win more than 5, 6, then the politics of Telangana is basically changing. In fact, while all of you were speaking, I was just thinking that even 2-3 months ago, we would have thought about Madhya Pradesh and Rajasthan and Chhattisgarh, where will BJP win? I'm sorry, where will the Congress win? And imagine it's Telangana where the Congress will be winning. And 2-3 months ago, also, they were not very much on the map. So this election is where I think the Congress really has to go back to the drawing board. Yamini was talking about the caste census. The kind of messaging that party sends, for example, in Karnataka, Siddaramaiah had done a caste census. The first thing that he said during the campaign is, the moment I come to power, I will release the caste census. So many months have passed. His own Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has signed a document along with a lot of associations saying that the caste census should not be released. So the Congress speaks in so many voices. And I think that indecisiveness is what always does them in. Right. What do you make of this 13.73? What was their vote share in 2018? I know the BJP, when they won 1 seat. Yeah, almost the same. The Almost BJP the is, same. but the BJP's vote share actually went up quite a bit in the last election. When Bandi Sanjay became the president. They, I think they gained quite a bit because he did this yatra through Telangana, and that was quite popular. And when Bandi Sanjay was, made to step down, and G. Kishan Reddy was made the BJP president, the big joke was that the BRS themselves might have asked for Bandi Sanjay to step down, but the BRS said, no, if Bandi Sanjay is there, it would have done us good. But I don't know. I mean, communalization has helped the BJP a bit in Telangana, if you look at Nirmal, Adilabad, etc. But the big story really is Revant Reddy. Revant Reddy is set to become the chief minister of the state if we go by the numbers. Right. In case somebody is scratching their heads, I'll come back to Revant Reddy. Bandi Sanjay was the man leading the BJP in Telangana. He's the leader. He was very popular. He was basically known for taking on the BRS in a very big way. And then later it was speculated that perhaps there is some understanding between the BJP and the BRS, which is why the BJP went on an upswing, went on a rise, removed Bandi Sanjay and supplanted G. Kishan Reddy, a very quiet sort of man. Yes, I mean, I haven't exactly. a tourism minister. You may be familiar with him at the center. Sort of take that role on. Tell us about Congress and Revant Reddy and the importance of Telangana for the Congress party after, again, they've come back in the south. Now they've got Karnataka, they've got Telangana. As I keep saying, that it doesn't matter whether these, it doesn't matter if these map on to Lok Sabha. The fact is, a political party needs campaign finance, right? You need to be in power somewhere to raise money. And so, I don't know about how things were in Rajasthan and Madhya Pradesh, but in Telangana, money was flowing. Is that the same in Rajasthan and Madhya Pradesh, Chhattisgarh? I suspect not as much as Telangana. In Telangana, there was one constituency where they paid 3,500 rupees per voter. So money, I heard 10,000 from other people. No, I think 3,000. I think the maximum was 3,000. That was possibly a figure for the family, the household. Yeah. Okay. But the money has not helped because the BRS themselves were thinking that they are way more confident because in the last 2-3 days they gave money to a larger number of people. But I don't think that's helped. And as far as the Congress is concerned, 2-3 things worked. One, after the Bharat Jodo Yatra, there has been some
some sort of a movement, a positive movement for the Congress. The second thing is the promises. The promises helped them in Karnataka. They replicated the same in Telangana, and people thought, okay, fine. If KCR is making the same promise, he's only second in line, right? The Congress made it first. But I think more than anything else, more than this being a vote for the Congress, this is a vote against the BRS. People are saying no to the BRS, not because this was a party which didn't have schemes. They had Dalita Bandhu, Raita Bandhu, a lot of schemes they brought in. But people felt that the family has been in power for 10 years. There is this whole notion that they have made a lot of money. There's been corruption, something the BJP and the Congress has been hammering for months now, that Kaleshwaram or any other big project you take, the BRS and the first family has made a lot of money. So I think this is a vote primarily against the family. In fact, there was this woman, we spoke to in Gajwel, where KCR had one from. She said, an old woman, she gets all the schemes and everything, but she said, what happens if he loses one time? He's won twice, now let him lose. So even that thought, one simple thought, right? Like, why should someone be in power for 5 more years? Right. And this Revanth Reddy, the man who could likely be chief minister if these numbers stay and the Congress wins, he's also an interesting character. Former ABVP, joined the TDP, was there for a while. 2017, I think he joined the Congress. And he was also in the TRS for a short while. In then the TRS. He goes to the Congress. Yeah. And I think 2021 is when he was made the president. Yeah. And now he's potentially chief minister in a matter of two years. There's so many things I don't know how to sort of reorient myself now to looking at all the states. But as we close, because my PCR director is sort of counting down, saying itne minute bache hain. Thankfully we have no ads. I don't know if it's thankfully or not. Supriya, you're my big picture person for a lot of things. So while you have traveled only in Chhattisgarh this time around, can you map what is happening now onto Lok Sabha 2024? I asked Siddharth Varadarajan, the founding editor of The Wire, whether he agreed with this general understanding that this India bloc will be something that collapses under the weight of its own internal contradictions, that they have the same demographic vote base as the smaller parties they're looking to tie up with, and a seat adjustment will not happen. Madhya Pradesh maybe nahi kar paaye with Samajwadi Party. How do you see, what does this mean for Congress and India bloc? So, well, I did briefly travel in Rajasthan. I went to Rajasthan in September. It was a very short trip. And then, of course, I traveled in Chhattisgarh. And in all the conversations that I had with voters, the last question after speaking to them about the assembly election, the last question was, what about Lok Sabha? And virtually 9 out of 10 people said Modi. They didn't even say BJP. And this is like, I'm talking about Jhunjhunu in Rajasthan and Konta, which is like extreme south of Chhattisgarh, deep Bastar. People are just saying Modi. So it's pretty clear from just this little sample that I collected in my reporting that even those who are voting for the Congress in this election seem to be inclined towards BJP and Modi. And in fact, for me, that was like the big takeaway from the travels that I did, because, we're just a few months away from the Lok Sabha election. And if the first thing that voters say when you ask them about Lok Sabha is Modi, then it kind of gives you a sense of where things are heading. I had a conversation with a group of young Jat men in Jhunjhunu in Rajasthan. This is part of Shekhawati region. Jats are the dominant community. And, I'd heard all this, that there's a lot of anger about Agniveer, the scheme, the army recruitment scheme. People are like, especially in this belt, are feeling cheated out of like jobs, crucial jobs for them. There's anger over the way that the wrestlers have been treated. And that was all the case. Yet at the end of it, they said, I asked them about Lok Sabha, they said BJP. I said, you've just been complaining about all that's been happening. So how does this add up? They said, koi vikalp nahi hai, there's no alternative. And I said, there is an alternative. There's India bloc. These 17 parties that have come together. They said, chehra nahi hai, there's no face. I said, well, there's Rahul Gandhi. And they all just broke out laughing. So I guess that's really right. We sort of, you both are dyed-in-the-wool TV people, so you should be able to give me brief answers to close, because we have like 4 minutes. Supriya is also on, but yeah, long answer. Yeah, she doesn't. She forgotten TV. Yeah, she's forgotten TV. Yeah. So you were nodding when Supriya was saying that when it comes to Lok Sabha, everybody says Modi. I would assume that is not the case in southern India. Maybe not, but I feel even Karnataka, where I'm based out of, I think when the Lok Sabha elections come, a lot of people are going to think that we're not angry with Modi ji per se, right? They voted out the
Karnataka government, which is Bommai's government, they may as well as a lot of people will choose to vote for BJP in Lok Sabha. So I think how people behave during state elections is going to be very different how they behave in the national election. I just want to quickly point out one seat in Telangana called Sirpur, where BJP is leading from. This is where R.S. Praveen, the BSP leader, is also contesting. Split of votes or whatever, it could be any reason. But the point is, just before the elections, one of the biggest Madiga groups, one of the Dalit communities, they came together with Narendra Modi on a stage. So there is a lot of community coming together, which the BJP does, right? And they are doing that in the southern states also. So even if it doesn't bear fruit now, it will at some point, is what they believe. Right. We unfortunately, Radhika, we don't have time. I'm saying wrap. I'm being told to wrap. So thanks so much though for all your reporting that you've done. And please go to our websites, to Scroll, to Wire, to Caravan, to News Minute, to Newslaundry, and read the reporting that we have done. All these issues explained in great detail. Supriya, Radhika, Dhanya, Iram there from Rajasthan as well, and Arnab, my colleague from the Scroll. Thanks for the moment. The elections are in Telangana, but the buzzword is Karnataka. The Congress had made 6 poll promises to youth, women, etc. The party aims to replicate its victory in Karnataka, where it made similar poll promises. We are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one. The BRS was quick to counter Congress's campaign, trying to punch holes in its Karnataka's model. BRS leaders Krishank Manne and several others travelled through districts in Karnataka, intending to gather proof of Karnataka's failed governance. From October, BRS leaders have been sharing videos of women, farmers, youth, etc. that they are unhappy with the Congress rule in Karnataka. The BRS constant reminder to its voters has been, look what's happening to the people of Karnataka. Don't repeat the same year. The BRS party has also alleged that the Congress in Karnataka has been funding the party in Telangana. The Congress has hit back at the ruling BRS by even bringing Chief Minister Siddaramaiah. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar and almost 70% of the cabinet participated in Congress's election campaign in Telangana. Even today, I will ask Mr. Chandrasekhar Rao, please come to Karnataka. Don't make all delegations unnecessarily for the election purpose. So why did the Telangana election become about Karnataka? The BRS blames it's the Congress that it had made the election all about Karnataka and it was forced to reply. But in reality, the Congress win in Karnataka will have a spillover effect in Telangana. Congress leaders and its cadre are confident than ever, and that itself is a threat to BRS. So instead of allowing the Congress to praise its rule in the neighboring state, the BRS has decided to go for an attack and claim from the very beginning that the Karnataka model is a failed model. But will the people of Telangana buy it? 20 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता के नाम एक अनोखी अपील जारी की। उस अपील में जनता को प्रदेश में बीजेपी को विजय बनाकर सीधे मोदी को समर्थन देने का संदेश था। अपील में प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम फुटनोट की तरह था और तस्वीरों से भी शिवराज लगभग लापता थे। मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में वही किया है जो वे अक्सर करते हैं, यानी अपनी ही बात की है। बीजेपी की सोच है कि मोदी पर फोकस रखकर वो 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से खुद को निकाल ले जाएगी। आज भी अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता की दौड़ में दिख रही है तो वो कांग्रेस की कमजोरियों के चलते है, जिसके पास जनता के आगे रखने के लिए गंभीर मुद्दों का अकाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पर लगभग 2 दशकों से कमलनाथ और दिग्विजय का नियंत्रण है। प्रदेश कांग्रेस का चुनावी अभियान सिर्फ इस बात पर केंद्रित रहता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि बीजेपी उसे मुद्दा बना ले। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण का श्रेय तक कांग्रेस ने लिया। जब दोनों पार्टियों के प्रचार में अंतर करना ही मुश्किल है तो यह सवाल लाजमी है कि क्या मतदाता एक ऐसे चेहरे से जिसे वे 18 सालों से देख रहे हैं इतने ऊब गए हैं कि एक पहले से ही थकी मांदी पार्टी को प्रदेश की कमान सौंप देंगे।
In Rajasthan, Chief Minister Ashok Gehlot has managed to ensure development and welfare schemes are the dominant themes of the campaign. At work sites like these in Kota in eastern Rajasthan and Jaipur, women spoke of the value of the Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme, or Shehri Narega as they called it. In September 2022, the Gehlot government had extended Narega to urban areas, guaranteeing households 125 days of work, just one example of his many welfare policies. Late October, the Congress had also announced its social welfare guarantees. Ironically, development and welfare are seen as electorally risky, pushing the Congress to also adopt Hindutva overtones in states like Madhya Pradesh and Chhattisgarh. In Rajasthan, the slogan is predominantly secular. But phir se or once again is the problem in a state which changes governments every year. A logic peculiar to Rajasthan, a pattern of change almost internalized by voters. Gehlot had other issues to contend with. The Gehlot pilot dispute will impact the Congress and has polarized the party into two camps. ये गहलोत साहब कमी नहीं है वैसे काम की उम्र से काम की बरकर सिद्धि बेस्ट आप कह रहे हो गहलोत साहब बेस्ट हैं तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा कर दिया ना हमसे कड़ा कर दिया वोट ले लिए सचिव पायलट की वजह से ले लिए भाई सीएम बनाया जाएगा फिर धोखाधड़ी कर दी तो आप कह रहे हो कि पायलट की नाराजगी के कारण गुजर 90% खिलाफ रहे लेकिन गहलोत जी एक नंबर पे हैं दी बेस्ट. Pilot's challenge to Gehlot's stable government also forced the CM to seek the help of MLAs. Some of them faced serious anti-incumbency, but beholden to them, Gehlot was in no position to replace them. And yet, Gehlot remained a formidable rival to the BJP, which went into these elections with few issues, banking more on Hindutva, the idea of change, and Modi. The party has had to fight hard, even having to pull out 7 of their MPs to contest assembly seats, like Diya Kumari from the erstwhile royal family of Jaipur. In the Mewat region, Balaknath Yadav, the MP of Alwar, who filed his nomination for the Tajara seat atop a bulldozer with another saffron-clad MP and CM of Uttar Pradesh in tow. The BJP believes this will be enough for victory and the Satta market is tilted in their favour. हेलो एंड वेलकम बैक टू इलेक्शन ऑनलाइन 2023। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरफा खानम शेरवानी द वायर से और अतुल चौरसिया न्यूज़ लॉन्ड्री से, और कुछ देर में आपसे ऑनलाइन जुड़ेंगे आलोक पुतिल छत्तीसगढ़ से, योगेंद्र यादव चुनाव एक्सपर्ट और यूसुफ लसानिया हैदराबाद से। सबसे पहले हम नज़र डालें थोड़े से आंकड़ों पे, रुझानों पर क्या दिख रहा है। माफ़ कीजिए, यूनुस लसानिया। राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी 33 सीट में 133 सीट में लीड कर रही है, 112 दिखा रही है। 11:45 के आंकड़े हैं, जिसमें बीजेपी 112 में है, कांग्रेस 70, और वोट प्रतिशत में भी देखें तो बीजेपी 42% वोट प्रतिशत है और INC 39%। क्या समझ आ रहा है आरफा? सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, आपने बहुत अच्छी कवर किया है राजस्थान को, क्या भूल चूक लग रही है गहलोत की? भूल चूक लेनी देनी, लेकिन यहाँ सिर्फ लेनी लेनी हो रही है, देनी कुछ नहीं। साफ तौर पर लग रहा है कि जो हिंदी पट्टी जिसे हम ये कहते हैं, काउ बेल्ट कहते हैं, उस पर हिंदुत्व की राजनीति, नरेंद्र मोदी, भाजपा, RSS, उसका प्रभुत्व पूरी तरह बरकरार है। तमाम तरह की समस्याओं के बावजूद, बेरोजगारी से लेकर गरीबी से लेकर जितनी खराब अर्थव्यवस्था रही है, कोविड के सालों में, हम बाद के सालों में अभी जी रहे हैं, जहां अर्थव्यवस्था की हालत है कि पूरी तरीके से कमर टूटी हुई है, और जिनको नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी रेवड़ियां कहते हैं, वो रेवड़ियां बांटने पे मजबूर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि इलेक्शनरिंग जो है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो जातियों की सोशल इंजीनियरिंग है, उसको बेहतरीन तरीके से भाजपा खेल रही है। मीडिया उनके साथ है, पूरा नेटवर्क उनके साथ है। इसमें अलग अलग राज्यों को मुझे लगता है अलग अलग तरीके से भी देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें एक वाक्य में इसको कहा जा सके, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जहां आज हम दिसंबर 3 में यहाँ बैठे हुए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के स्टूडियो में,
इसमें पूरे तौर पे कहा जा सकता है कि 2024 के लिए बीजेपी की राह आसान होती हुई नजर आ रही है और जो इंडिया अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजी में एक हम्बल्ड शब्द होता है कि थोड़ा सा झुक जाना, उर्दू में कहें तो आजिज़ी बरतना कांग्रेस पार्टी को करना होगा। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की भी जो इक्वेशन है वो इस चुनाव के बाद बदलते हुए मुझे नजर आ रही है। इसी सवाल को मैं अगर आपसे पूछूं कि जो भीतरघात की बात हो रही थी दोनों पार्टियों में, खासकर बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, बीजेपी मेरे को लगता है अपना हाउस ऑर्डर करने में सफल रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की गड़बड़ी कहाँ शुरू होती है? कांग्रेस की गड़बड़ी आप ये देखिए कि एक राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो लड़ाई थी, मैं पहले भी शो में बताया कि करीब-करीब वो सारी की सारी लड़ाई एक व्यक्ति तक केंद्रित थी। वो अशोक गहलोत और उनकी जो वेलफेयर स्कीम लड़ रही थी स्कीम, जहाँ पर भी हम लोग ग्राउंड पर गए, लोगों से मिला है गाँव में लोगों को, तो उसमें अशोक गहलोत को लेकर एक किस्म का एक्सेप्टेंस था। लेकिन वो एक साथ में पैटर्न भी है, ट्रेंड भी है कि हर 5 साल में वो सरकार बदल देने का। तो लोगों के अंदर वो भी चीज़ एक चल रही थी कि अशोक गहलोत की स्कीम्स हैं और वो आप देखें कि पहली बार अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से देखें, तो राजस्थान का जो कैंपेन था, एक आदमी के इर्द-गिर्द बहुत फ़ोकस था। केवल और केवल अशोक गहलोत लड़ रहे थे, इवन उसमें से सेंट्रल लीडरशिप पूरी तरह से गायब थी। नदारद थी। वो सोनिया, बिल्कुल। राहुल गांधी और प्रियंका भी गायब थे। और अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुकाबले राजस्थान में इनके दौरों को देखेंगे सेंट्रल लीडरशिप की, तो वो बहुत कम था। करीब-करीब मैं बताऊँ आपको जब 17 तारीख को मध्य प्रदेश और ये खत्म हो गए, पोलिंग खत्म हो गई है। इसके बाद राहुल और प्रियंका ने यहाँ पर शुरू किया है कैंपेन। जब 4-5 दिन का बिल्कुल। टाइम बाकी रह गया तो एक किस्म का वो चल रहा था उनका, क्योंकि अ, अशोक गहलोत का जो पहले अध्यक्ष पद को लेकर जो एक खींचतान हुई, फिर टिकट को टिकट देने को लेकर एक बड़ा फ्रिक्शन पैदा हुआ था, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो लोग वो अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जो छोटा-सा एक रिबेल हुआ था, एक विद्रोह हुआ था जिसमें अशोक गहलोत को वहाँ से बिल्कुल। दिल्ली आना था, लेकिन वो नहीं हुआ। और एक तो उसमें जो लोग उसके आर्किटेक्ट थे, उन लोगों को भी टिकट दिया गया, उस पर सेंट्रल लीडरशिप नाराज़ थी, तो करीब-करीब राजस्थान से बहुत दूर थे। तो एक तो ये है पार्टी का। दूसरा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का अपना इक्वेशन। अभी हमारे पास एरिया वाइज डाटा नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तो जब वो आएगा तो हम थोड़ा ज़्यादा बात करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ये पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा है जिसमें गुर्जर बहुल इलाका है, जिसको कहा जाता था कि जिसमें सचिन पायलट की करीब 27-28 सीटें इसमें थी। और इसमें सचिन पायलट के साथ जो 5 साल में पूरा हुआ था, उसको लेकर एक साफ-साफ खुलेआम सतह पर नाराज़गी दिख रही थी। तो वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कितनी सीटें कांग्रेस ने गँवाई हैं, क्योंकि पिछली बार ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो वो एक चीज़ है। तो नो डाउट कि इसमें एक कांग्रेस का अपना हाउस ऑर्डर में नहीं था, बहुत सारा। लेकिन इससे ज़्यादा गड़बड़ भारतीय जनता भारतीय पार्टी के जनता अंदर पार्टी चल में रहा थे, था। बिल्कुल। वसुंधरा राजे को लेकर ये बहुत नाराज़गी थी। आखिरी समय तक एकदम उनको एक तो चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने, प्लस उनके लोगों को टिकट भी थर्ड लिस्ट में जाकर उन सारे नामों को शामिल किया गया और ये सब, तो काफ़ी देर हुआ। लेकिन अगर हम बहुत कम में केवल ये कहें तो दोनों उसमें पार्टियों के अंदर ये गड़बड़ी थी। आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो पिछली बार से इस बार अभी जो पैटर्न है उसके हिसाब से जो परसेंटेज आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर किया है। मतलब पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें तो करीब 38% उनको वोट मिला था और 73 सीटें मिली थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस में कम से कम अब तक के जो काउंटिंग हुई है और इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 5-4% का गेन किया है, फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसके उलट करीब 1.5% से 2% का नुकसान हुआ, 1% का नुकसान हुआ पिछली बार के मुकाबले। तो ये जो चीज़ है, सीटों का अंतर मुझे लग रहा है कि बना रही है। अगर ये बना रहा तो करीब-करीब जो रुझान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आराम से बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है, वो बना रहेगा पैटर्न। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जैसे पत्रकारों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है और अभी लगता था कि बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। मान लेते हैं कि अगर ये इस तरह से एक साइडेड, वन साइडेड अगर ये चुनाव नतीजे नहीं आ रहे होते,
तो 2024 में हम कहते कि फाइट इज ऑन। हालांकि मैं भी बिल्कुल। मानती हूँ कि गेम तो ऑन है, लेकिन इसके बावजूद जो एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता था दो लगभग बराबर के खिलाड़ियों के बीच, अभी जो दूसरा खिलाड़ी है वो कमजोर प्रतीत हो रहा है। जन भावनाएं, पब्लिक सेंटिमेंट, या आम अगर भाषा में हम कहें तो जो चुनावी हवा होती है, वो हवा फिलहाल बीजेपी के फेवर में नजर आएगी इसके बाद। और इस सब के अलावा आप ये देखिए कि रिसोर्सेज का, जितने ज्यादा राज्य उनके हाथ में होंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। धन ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हमने देखा है, मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, एक तरह से एक भय और खौफ की भी फीलिंग हो रही है कि बिल्कुल। जो लोकतंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया गया है पिछले 9 साल में, ये सिर्फ एक एक तरह से राजनीतिक अहंकार के घोड़े पर बैठ के ही नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस ने किया है कि हमें जनता सपोर्ट कर रही है कि हम लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएं, संविधान को नुकसान पहुंचाएं, अल्पसंख्यक विरोधी तमाम नीतियां, मैं कहूंगी गरीब विरोधी तमाम नीतियां, कारोबारियों को देश का सब संसाधन सौंप देना। अब ये जो चुनावी जीत है, ये सीधे तौर पर उनके हौसले और ज्यादा बुलंद करेगी। ये कोई बहुत खुशी के साथ मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, एक ऐसे नागरिक के तौर पे जिसको लगता है कि चुनाव तो जाहिर है एक बुनियाद है लोकतंत्र की, लेकिन चुनाव में एक बराबरी का, जो जिसे अंग्रेजी में लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, हमें ये भी समझना जरूरी है कि क्या चुनावों में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टियों को हम दे पा रहे हैं। एक के पास जो धन का बल है वो ज्यादा है, एक के पास मीडिया की पूरी ताकत है। मुझे राजस्थान थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में जब गांव देहात में मैं सफर कर रही थी और वहां के चाय खानों पे जाके लोगों से बातचीत कर रही थी, तो एक पूरे तरीके से ये प्रतीत होता था कि मीडिया के प्रोपेगेंडा को हराते हुए एक पहला स्टेट ऐसा लग रहा था जहां कांग्रेस अपनी स्कीमों, अपनी नीति और अपनी राजनीति को लोगों के साथ बांटने में, उस जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है उसमें कामयाब रही है। क्योंकि जब लोगों से आप बात कर रहे थे तो वो सिर्फ ये नहीं कहते थे कि हमें गहलोत चाहिए या मोदी चाहिए, वो ये कहते थे कि गहलोत हमें पसंद है, लेकिन क्यों पसंद है, और उसकी वजह बताते थे बिल्कुल। कि देखिए ये 5 स्कीमें हैं, ये 5 गारंटी हैं, और ये जो 5 स्कीमें हैं या 7 उन्होंने वादे किए, 7 गारंटी की, 7 गारंटी चुनावी, मैं कैंपेन की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, उससे मैनिफेस्टो से पहले 5 साल राजस्थान में जो गहलोत सरकार थी उसने लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाई। लोग मुझे गांव देहात में ये कहते पाए गए कि मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन होना था, जिसको लेकर मुझे लगता था कि अब ये मेरे ताऊजी हैं, ये तो बचेंगे ही नहीं, और 5 लाख रुपए लगे और उनका ट्यूमर निकल गया, और मुझे लगता है उन्हें 5 साल जिंदगी और मिल गई। लोग ऐसे मुझे मिले वहां पर जो कहते थे हमें मोबाइल फोन मिला है, किसी को लैपटॉप मिला है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जो 60+ की जो पेंशन स्कीम्स थी वो उनको बिल्कुल। मिली थी। तो ये अपने आप में ये भी बताता है कि क्या वाकई अब कांग्रेस पार्टी, जिसको हम बार बार पुश करते हैं और कहते हैं कि आपको सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, हार्ड सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हमने देखा एक बयान आया था अशोक गहलोत जी का कि अरफा, मैं अगर 1 मिनट जी आपको रोकता हूँ, क्योंकि आलोक पुतिल हमसे छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ का जो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा दिख रहा है रिजल्ट इस समय। आलोक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या गड़बड़ कांग्रेस की तरफ से हुई है। हेलो आलोक। जी शुक्रिया। पिछले 5 सालों से कांग्रेस पार्टी ने जो जमीन तैयार की थी हिंदुत्व की, बीजेपी उसी जमीन का लाभ उठाने में सफल रही है। हमारे हिंदुत्व जैसे की लोग जमीन पिछले कांग्रेस 3 ने साल तैयार 4 की, साल कहते से हैं। बिल्कुल। लगातार ये बात कहते रहे थे कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बार-बार राम वन गमन पथ, अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव, गांव-गांव में मानस प्रतियोगिता, रामायण प्रतियोगिता, आरएसएस के सहयोग से राम और राम वन गमन पथ पर होने वाले सेमिनार, तो उसका हल तो यही आना था, परिणाम तो इस रूप में ही आना था। तो मुझको बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। लेकिन मुझको ओबीसी बिल्कुल आरक्षण के मामले में और ये तमाम सारे सोशल जस्टिस के मामले में भूपेश बघेल सोशल आगे दिख रहे थे। जस्टिस की बात जहां तक आप पता नहीं किस हद तक पहुंच पाई है आप लोगों तक। भूपेश बघेल की सरकार ने एक क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करवाया था ओबीसी का, उसको भूपेश बघेल की सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। तो जातियों के भीतर के वर्चस्व का जो मामला है वो जस का तस बचा हुआ है। सोशल जस्टिस के नाम पे ओबीसी का जो आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया था वो आज तक लटका हुआ है, क्योंकि इनको मालूम था कि ये लटकेगा। और जिन लोगों ने इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, भूपेश बघेल की सरकार ने उनको पद दिए, उनको सरकार में अच्छी जगह दी,
और एक बात और थी, कल्लूरी की वापसी भी भूपेश बघेल के जमाने में हुई है, जिन पर काफी मानवाधिकार हनन के आरोप थे एक्सट्रीमिस्ट के। एक सवाल मैं यहाँ पे विष्णु आलोक जी से पूछना चाह रहा हूँ। आलोक जी, एक बड़ा जो मुद्दा था चुनाव में, हमेशा छत्तीसगढ़ की उसमें हमने देखा धान की खरीद का बड़ा मुद्दा था और बार बार उस पे बहुत जोर था भूपेश बघेल का। इन लोगों ने एमएसपी धान की बढ़ाकर 3100 रुपए पर क्विंटल कर दी थी और पर एकड़ 20 कुंटल से बढ़ाकर 21 कुंटल करने का ऐलान किया था। माना जा रहा था कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इनके लिए और ये पूरी योजना। लेकिन हम जब अब वोट के उसमें देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट परसेंटेज जो सबसे बड़ा जो सुधार किया है वो यहीं पर किया है। अभी जो दिख रहा है उसमें हालत हमें हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ में पिछला जो वोट परसेंटेज था भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 33% था और उसके मुकाबले कांग्रेस ने 43% वोट हासिल किया था। और आज की जो स्थिति है उसमें अगर मैं देखूं तो छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की अपनी वोट शेयर है वो करीब करीब बढ़कर 45.78 यानी कि करीब 12% के वोट गेन किया है भारतीय जनता। तो एक बहुत बड़ी छलांग दिख रही है। हम ये जब ग्राउंड पर थे तो वहां पर भी करीब करीब देखने में इसको असमर्थ रहे। एग्जिट पोल जैसी तमाम संस्था वो भी इसको समझने में वो रही। तो ये इसको आप थोड़ा सा अगर हमें एक्सप्लेन कर पाए कि मुद्दा कौन सा था जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम का। एक तो आपने हिंदुत्व वाली बात बताई, लेकिन वो 12-13% एक बड़ा गैप देखिए, था। छत्तीसगढ़ के इलाके में ये पहली दफा ऐसा हुआ जिसकी आशंका पहले से थी कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने इसकी पूरी जमीन तैयार कर रखी थी और कांग्रेस ने कहीं से भी एक संवैधानिक दायित्व निभाने वाली जो भूमिका होनी चाहिए थी उसको निभाने में कांग्रेस पार्टी असफल रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बार बार ये कोशिश की कि वो गलती से भी अल्पसंख्यकों के साथ न देखें, वो किसी भी तरीके से जो है अल्पसंख्यकों के साथ न दिखें। 15 साल के रमन सिंह के शासन काल में छत्तीसगढ़ में ईसाइयों पर और चर्चों पर जितने हमले हुए थे उससे 5 गुना ज्यादा हमले केवल 5 साल के शासन काल में भूपेश बघेल के शासन काल में हुए। हालत ये हुई कि मैं उदाहरण के साथ इस बात को कह रहा हूं कि बेमेतरा एक इलाका है, उस जिले में बीरनपुर में इसी साल दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे में एक हिंदू लड़के की मौत हो गई, मुसलमानों ने मार डाला। मैं ये बहुत साफ क्योंकि बात जब बहुत साफ तरीके से होती है तो चीजें बहुत क्लियर रहती हैं, तो इसलिए मैं उल्लेख करते हुए कह रहा हूं कि मुसलमानों ने पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। 2 दिन बाद विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने बंद बुलाया और उसी इलाके में 2 मुसलमानों को पीट पीट के मार डाला। सप्ताह भर के भीतर भूपेश बघेल ने हिंदू परिवार के लिए 10 लाख रुपए और नौकरी का ऐलान किया और जो 2 मुसलमान मारे गए थे उनके परिजनों को मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा। जी। अभी से इस इलेक्शन के दरमियान एक इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने कहा कि मुसलमान हमारे पास आए ही नहीं थे तो हम मुआवजा कहां देते। तो ये जो स्टैंड है पूरा, जी जी, उससे साल भर पहले कबीरधाम जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगे झंडे फहराने को लेकर हुए थे। हिंदू संगठनों ने वहां बनारस से, अयोध्या से, देश के बाकी हिस्सों से झंडा फहराने के लिए साधु संतों को बुलवाया। 120 फुट ऊंचा झंडा फहराने का ऐलान किया और जिस दिन ये पूरा कार्यक्रम था उस दिन उस इलाके में और छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों में पूरे पन्ने का कांग्रेस पार्टी ने विज्ञापन देकर उन साधु संतों का स्वागत किया जो झंडा फहराने के लिए आए थे। तो कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी थी? आलोक पुत्र, थैंक यू। नहीं, अभी फिर और बात करते हैं। ये बार बार हो रही इसी है। बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रही थी। बिल्कुल ये सही बात है, इनकी दुरुस्त बात है कि हिंदी पट्टी में पिछले घंटे में भी हमने यही बहस की थी कि हिंदुत्व का जो दबाव है
और इसी बात को मैं उठाना चाहती थी कि ये जो छत्रप है कांग्रेस पार्टी के, देखिए राहुल गांधी तो हर जगह जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी और उनकी जो कांग्रेस पार्टी की जो पूरी टीम है, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या पूरी जो उनकी सीनियर लीडर्स की जो टीम है, दिल्ली का जो आला कमान है, वो तो सिर्फ एक नेतृत्व देगा। लेकिन ये चेहरे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे वो भूपेश बघेल हों या कमलनाथ हों, ये तीनों चेहरे और इनकी अगर राजनीति आप जमीन पे देखें, अभी पिछले घंटे में यही हमने चर्चा की थी, जिस बात का जिक्र पुतुल साहब कर रहे हैं कि क्या जो जिसको अपीजमेंट कहा जाता है, ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करती, लेकिन जो कितना डिस्कोर्स का ये हिस्सा बन गया है कि खुश करने की ये कोशिश कि हम बीजेपी नहीं है, उनसे थोड़ा कम है। तो अगर आपके पास एक ओरिजिनल हिंदुत्व पार्टी है तो आप डुप्लीकेट या जीरोक्स हिंदुत्व पार्टी की तरफ क्यों बिल्कुल जाएंगे? यही बात है और अरफा। छत्तीसगढ़ लगातार आप देखिए, हमेशा लगातार पिछले 1-1.5 साल में, 1.5 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, जिन खबरों के लिए प्रकाश में आया, और बार बार छत्तीसगढ़ में लोगों से आप बात करेंगे, कहेंगे लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, भूपेश बघेल इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने अपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल, मैं आपको राजस्थान का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। नासिर और जुनैद का आप एग्जाम्पल देखिए, और आप उदयपुर की जो घटना हुई थी, दुखद घटना, उसका आप एग्जाम्पल देखिए। जब मैंने राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की, उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि पूरे तरीके से हम अनाथ हो गए हैं इस राज्य में। नासिर जुनैद के परिवार वालों से मिलने तक को तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री। वहां हेलीपैड के पास उस फैमिली को बुलाया गया, उनको जिस जिस संघर्ष का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जो संघर्ष हुआ उन्हें जो कॉम्पेंसेशन वगैरह लेने में, यही संघर्ष राजस्थान में भी देखने को मिला। तो पूरे तरीके से जो मुस्लिम आबादी है उससे नदारद करके, उसे जो पॉलिटिकल स्टेज जिसे हम कहते हैं कि कोई दाढ़ी वाला ना दिख जाए, कोई टोपी वाला ना दिख जाए, बुर्के में कोई औरत, यानी कोई भी विजिबल मुस्लिम, ये जो कांग्रेस पार्टी के छत्रप्स हैं ये देखने को तैयार नहीं है। इनको ये लगता है ये हमारा कैप्टिव वोटिंग वोटर्स है, तो इससे हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो उसके साथ इंसाफ भी करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में बार बार होता है। कमलनाथ एक तरह से लाइबिलिटी हो जाते हैं कांग्रेस के, क्योंकि पिछली बार जब कमलनाथ जीते थे, मैं मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं देखता था कि वो वही नीतियां ला रहे थे, गाय से रिलेटेड, लव जिहाद से रिलेटेड, इवन महाकुंभ कर रहे थे, नर्मदा महाकुंभ कर रहे थे। कोई बहुत अंतर दिख नहीं रहा था कि ये नई सरकार है। जबकि हम कर्नाटक में अगर देखते हैं, जब कांग्रेस कहती है कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे, तो उसको फेवर मिलता है। फिर बार बार कांग्रेस उस चीज को ना पकड़कर जो से सफलता दिलाती है, वही पिछली चीज क्यों पकड़ने की एक कोशिश छोटा सा करते हैं। उदाहरण जो देना बहुत यहाँ अहम है, और इसमें पर्सपेक्टिव भी आपको मिलेगा कि राजस्थान में ये पता चला कि गौ रक्षा के लिए जो बजट है, वो जो पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो बजट है, गौ रक्षा वाले बजट के लिए वो 23 गुना उससे ज्यादा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि गायों को बचाने के लिए 23 गुना ज्यादा बजट है, बजाय इसके कि पूरी की पूरी वहां लगभग 10% आबादी। तो आपने जो सवाल पूछा, तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, आप बताएं। जी, तो आप ये कह रहे थे कि क्यों ऐसा नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मान लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव के बाद खासकर, कि वो नहीं समझती कि हिंदी पट्टी का वोटर क्या चाहता है। ये पिछले 5 साल की कहानी है इस पूरी हिंदी पट्टी की, कि मीडिया, आप देखिए मीडिया को देखिए आप, ये पूरा जो बिग मीडिया आप इसे देखेंगे, लगातार भूपेश बघेल जैसे लोग, गहलोत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग, इनके प्लेटफॉर्म्स पे लगातार देखे जाते हैं। इसके बावजूद भी कि पूरे इंडिया अलायंस ने बॉयकॉट किया कि हम इन गोदी एंकर्स के साथ नहीं देखे जाएंगे, क्या कमलनाथ ने इंटरव्यू नहीं दिया जो बिल्कुल गोदी दिया, मीडिया के एंकर को? बिल्कुल। बघेल ने क्या वो बड़े से बड़े फेस्टिवल्स, जो एक खास मीडिया नेटवर्क के फेस्टिवल है, मीडिया फेस्टिवल, उसमें नहीं देखे गए? बिल्कुल। क्या अशोक गहलोत ने बढ़ चढ़कर हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ के क्या बिग मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया? तो मुझे लगता है कि इनको ये लगता है कि हम बीजेपी जैसे लगते हुए भी चुनाव जीत सकते हैं। मुझे लगता है भारत में देखिए तमाम तरह की जो आर्थिक समस्याएं हैं उससे अलग हटके ये चुनाव आइडियोलॉजिकल इलेक्शन हो रहे हैं भारत में। विचारधारा के स्तर पर लोगों की, मैं कहूंगी कि लोग कहते हैं कि ईवीएम को रिग किया, मैं कहती हूँ उनके जहनों को रिग कर दिया गया है कि देखिए बीजेपी जो है वो हमारी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है। तो ये छत्रप नहीं समझ पा रहे हैं। ये सीधे तौर पे कह सकती हूँ, ये 4 स्टेट हारने के बाद कि कांग्रेस पार्टी को वापस टेबल पर बैठ के ये सोचना चाहिए कि क्या बिना हिंदी पट्टी के वो 2024 में उसको डिग्निटी के साथ चुनाव में जाना भी चाहिए या नहीं। अब यहाँ हम आलोक पुतिल जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आलोक दिख रहे हैं स्क्रीन में? आलोक, ये जो रुझान अभी दिख रहे हैं, क्या उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? एक्चुअली मैं पिछले चुनावों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बहुत लेट पिक्चर क्लियर होती है। अभी आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा कांग्रेस फाइट बैक करेगी?
म्यूट पे हैं आलोक, आप अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ आलोक को तो आतुल, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बसंत भी जी। जुड़ रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री से। अच्छा आगे शायद एक बार बसंत से जानते हैं। बसंत स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाय बसंत, हेलो हेलो नमस्ते। क्या दिख रहा है? चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के सब क्लियर हैं, एक वेव सी दिख रही है, क्या कारण है? मैं छत्तीसगढ़ गया था और मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लग रहा है जो नतीजा आ रहा है। क्योंकि ग्राउंड पे भूपेश बघेल कांग्रेस को लेकर झुकाव तो दिख रहा था, लेकिन भाजपा खराब प्रदर्शन नहीं करेगी। जैसे दिल्ली में हम लोग देख रहे थे कि मैंने एक दिल्ली के जर्नलिस्ट को बोला कि मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ, तो उन्होंने मजाक मजाक में बोला कि वहां क्यों गए, वहां तो कांग्रेस आ रही है। तो ऐसे हंसते हुए उन्होंने बोला था। लेकिन जब अभी जो आपने आलोक सर से सवाल पूछा उसका मैं अभी इलेक्शन कमीशन का देख रहा हूँ। जैसे सर ने जिस साजा की घटना का जिक्र किया, जिन हिंदू लड़के की हत्या हुई थी, उनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं साजा विधानसभा क्षेत्र से। अभी वो 1000 वोट से आगे चल रहे हैं ईश्वर साहू, लेकिन 22 राउंड की काउंटिंग होनी है, सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग हुई है। और ऐसे ही कई अन्य क्षेत्रों में हम देखें, जैसे पाटन मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है भूपेश बघेल का, वहां अभी बघेल आगे चल रहे हैं 1400 वोट से, लेकिन अभी 18 राउंड की काउंटिंग होनी है, 5 राउंड की हुई है। तो अभी जो और अंतर ज्यादा नहीं है, 100 200 400 500 यही अंतर है। तो ये जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे कि 54 सीटों पे भाजपा आगे है, 34 पे, तो इसमें काफी बदलाव होगा। बस्तर में, दंतेवाड़ा में भी 16 17 18 राउंड बाकी है। 5-6 राउंड में हो सकता है शहर में काउंटिंग हो रही हो, तो वहां भाजपा को फायदा होता है। गांव में काउंटिंग पहुंचती है तो कहते हैं कांग्रेस को फायदा होता है। तो नतीजे मुझे लगता है जब तक आधे राउंड की काउंटिंग ना हो जाए, तब तक ये नहीं माना, मतलब मुझे लगता है कि ये ना माना जाए और आधे राउंड की काउंटिंग के बाद अंतर 5000 4000 का हो, तो मान सकते हैं कि जो दिख रहा है इलेक्शन कमीशन पे वो बेहतर वही नतीजे आएंगे। बिल्कुल मुझे ये पसंद। लगता है। आप आलोक पुतिल फिर जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनसे वही सवाल दोहराना चाहता हूँ। आलोक स्क्रीन में दिख नहीं रहे हैं। आलोक देखिए, बसंत जी की बात से मैं इत्तेफाक रखते हुए भी मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का इलाका है और जो सरगुजा का इलाका, इन दोनों इलाकों में पूरी तरह से कांग्रेस जो है उसने बीजेपी को साफ कर रखा था। सरगुजा की 14 सीटें जो है आदिवासी बहुल इलाके की सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास थी। इसी तरीके से बस्तर की सीटें जो है 12 की 12 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो कांग्रेस के हिस्से खोने के लिए ही है और बीजेपी के हिस्से केवल पाना ही पाना है। और जो रुझान है, जो एग्जिट पोल हैं, जो ओपिनियन पोल हैं इन आदिवासी हिस्सों के, आदिवासी इलाकों के, वहां बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी इन इलाकों में लगभग आधी सीट जो है वो छीनेगी, चाहे वो बस्तर हो चाहे वो सरगुजा हो। कांग्रेस पार्टी का पूरा दारोमदार जो है वो मैदानी इलाकों पे टिका हुआ है इस बार, और मैदानी इलाकों में अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है। थैंक यू आलोक। हमारे साथ तबस्सुम स्क्रॉल से भी जुड़ रहे विष्णु, हैं। इस बीच जो है अगर हम ये इलेक्शन कमीशन का वोट शेयर देखें तो देखिए इसकी जो डिफरेंस है, जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी फिलहाल छत्तीसगढ़ में 45% से भी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी 41। जो आप सोच रहे थे कि शायद नतीजे में कोई तब्दीली आएगी, 12:30 बज चुके हैं, इसकी उम्मीद बहुत कम है। बहुत सारे इलेक्शंस ऐसे ही स्टूडियोज में बैठ के देखे हैं और जो हमारे अंदाजे होते हैं और जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो जब मैच नहीं करते, थोड़ी हैरानी तो जरूर होती है, लेकिन इसको स्वीकार करना जरूरी है कि ये जिस तरह के तमाम एग्जिट पोल्स को भी हरा के ये तो नतीजे बहुत आगे बढ़ लेकिन जैसे बसंत बता रहे थे कि अभी सिर्फ 4-5 राउंड की काउंटिंग हुई है और 22 राउंड की काउंटिंग है, तो थोड़ा इंतजार करते हैं। हमारे साथ तबस्सुम जुड़ गई हैं स्क्रॉल से। हाय तबस्सुम। हेलो। तबस्सुम, क्या नतीजे देख रही हैं आप? बीजेपी 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 सब जगह बीजेपी नजर आ रही है, क्यों, कैसे हुआ है? देखिए, मैं जब एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी तो वो लोग काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग अगर हारेंगे तो भी 100 सीट्स क्रॉस जरूर करेंगे।
पर आज जब मैंने सुबह से कॉल्स लगाना शुरू करे हैं तो एक एक्सेप्टेंस उन लोगों के अंदर आ रहा है और 2-3 फैक्टर्स बहुत क्लियरली निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस पे इनफाइटिंग अभी भी चल रही है। कमलनाथ के अगेंस्ट एंगर बहुत ज्यादा है। छतरपुर इलाके में, ग्वालियर चंबल के इलाके में, ट्राइबल बेल्ट जो साउथ वेस्ट की तरफ आता है मध्य प्रदेश का, झाबुआ, बड़वानी, सबका ऐसा कहना है कि कमलनाथ का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उन लोगों को ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने इलेक्शंस के वक्त भी देखा कि 4 सीट्स में उन लोगों ने कैंडिडेट्स बदले। कई जगहों पे कमलनाथ के क्लोज एड्स को टिकट दी गई है। हम छतरपुर का एग्जांपल ले तो राजनगर की सीट में विक्रम नाथी को सीट दिया गया था। सारे सर्वेज ने बोला था कि वो शायद इस बार नहीं जीतेंगे और अभी हम जो देख रहे हैं उसमें बीजेपी लीड कर रही है। अशोक करके वहां के बीजेपी के कैंडिडेट है जो लीड कर रहे हैं। तो एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको लेकर काफी गुस्सा है। कांग्रेस की यूथ जो है उन लोगों ने कैंपेनिंग के वक्त भी ये चीज डिस्कस करी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी वजह से हम फुली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमारे एमएलए कैंडिडेट्स ये को। बिल्कुल तबस्सुम, आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने गहलोत और कमलनाथ पर तंज भी किया था कि वो अपने बेटों की पॉलिटिक्स बनाने के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ राज्य में। ऐसा ही नजर आया अब मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ है, आप मध्य प्रदेश गए हैं, तो मैं देखता हूँ पिछले 7 दिन जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव के, उसमें कमलनाथ अपनी सीट से छोड़ते नहीं है, मतलब छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकलते। ये जो लापरवाही है, बार बार कमलनाथ क्यों करते हैं? नहीं, लापरवाही नहीं, आप इसको, मुझे लगता है कि कमलनाथ का जो आखिरी 7-8 दिन अपनी सीट पर क्यों चिपक रहे, एक उसमें अपवाद एक्सेप्शन था जब वो राहुल गांधी ने भोपाल में एक रोड शो किया और जनसभा की, तो उसमें वो आए, लेकिन एकदम वो जनसभा में, रोड शो में नहीं उन्होंने शामिल हिस्सा लिया, सीधे स्टेज पर आए और अपना छोटा सा हिस्सा भाषण का देके स्टेज पर जनसभा में, और उसके बाद वो चले गए। ये शायद इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा हो कि पूरे स्टेट के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं वो अपनी सीट ना गवा बैठे हैं, अपनी सीट हारने का कोई खतरा नहीं हो। मतलब ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये तो हुई अटकलबाजी की बात। लेकिन ये आप देखिए कि जो कंटेंडर थे, पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश के नतीजे चौंकाने वाले हैं। अगर हम देखें जो ग्राउंड पर सेंटिमेंट था लोगों के, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ जहां से सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर भी जिससे बात करो तो नहीं, इस बार तो शिवराज जाएगा, ऐसे बात कर रहे थे लोग। तो एक तो इसकी व्याख्या क्या हो सकती है इस नतीजे की? जब हम वहां पर थे तो कुछ और था। शायद इसकी एक ही 2 चीजें मुझे समझ में आती है। एक तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई क्योंकि चारों तरफ से सिग्नल आ रहे थे कि भाई जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो। शायद उसी ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा था कि इनको, कमलनाथ को लगा हो कि अपनी सीट पर बैठते हैं आराम से, बाकी जगह काम हो जाएगा, निकल जाएगा सीट। तो एक तो वो है। दूसरा ये कि शायद एक चीज होती है इमोशनल, जो भावनात्मक जो एक कार्ड होता है, उसके नजरिए से अगर मैं देखूं तो इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव की व्याख्या, नतीजों की व्याख्या, अभी तो ये नतीजे नहीं है, रुझान है, फिर भी इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है और परसेंटेज में भी बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, सीटों में भी बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। एक इसकी व्याख्या ये हो सकती है कि शायद जो भावनात्मक कार्ड होता है, इमोशनल कार्ड होता है, एक उसकी वो हावी हो गई बनिस्बत बाकी मुद्दों के। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल, 18.5 साल कह लीजिए, उसकी एंटी इनकम्बेंसी पर शिवराज सिंह चौहान का जो भावनात्मक कार्ड था। आप देखिए कि जब ये सिग्नल आने लगे, शिवराज सिंह चौहान 3 बार के चीफ मिनिस्टर को लगभग ह्यूमिलिएट किया गया हर स्टेज पर, कि प्रधानमंत्री आते थे, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, और इसका पूरा एक परसेप्शन बन गया। ये मीडिया के जरिए एक व्यापक पैमाने पर फैल भी गया कि ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार इनको नजरअंदाज कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, इनको पूछ नहीं रहे। वहां पर अचानक से, और ये सब 1 महीने पहले हुआ, शिवराज ने अपने पूरे कैंपेन का गियर चेंज कर दिया। शिवराज जो बहुत माइल्ड माने जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं होते, हालांकि बीच में 3 साल में उन्होंने बुलडोजर के जरिए अपनी एक हार्ड छवि बनाने की कोशिश की थी, बहुत एक सख्त नेता की छवि बनाने की कोशिश की थी। वो दूसरी चीज थी, वो दूसरा फेज था, क्योंकि तब उनके सामने इमीडिएट चुनौतियां दूसरी थी, क्योंकि बाहर से एक नया दावेदार पार्टी के अंदर आ गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, केंद्र की तरफ से नरोत्तम मिश्रा जैसे चैलेंजर आ गए थे, जो हर दिन विजय वर्गीय से चल ही रहा था। तो बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में वो अपनी पोजीशन शायद सख्त करने के लिए एक लार्जर कल्ट इमेज बना रहे थे, और वो उसमें
बुलडोजर वाली चीज थी। लेकिन चुनाव आते आते इस 1 महीनों में जो उन्होंने किया वो स्पेशल, स्पेसिफिक, बहुत यूनिक शिवराज सिंह के स्टाइल है। बहुत बेचारा वाली छवि, बहुत डाउन टू अर्थ वाली छवि, लोगों के बीच रहने वाली छवि, मामा, इजी अवेलेबल, बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली। और सिर्फ ये छवि नहीं, उन्होंने इस बीच में वैसा काम भी किया, जैसे कि किसी ने उतनी जनसभाएं नहीं की एक दिन में, सुबह से लेके 10-10, 12-12, 13-13। और जब हम वहां पर थे तो इस चीज को फैक्टर के तौर पर हमारे जो साथी थे, हम लोगों ने जब एक मॉर्निंग शो, अनदर इलेक्शन शो के जरिए उसमें किया था, तो उसको हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बाकायदा आइडेंटिफाई किया कि आप देखिए कि शिवराज के मुकाबले कोई इतनी मेहनत नहीं कर रहा। तो एक तो वो मेहनत, और दूसरा उनका जो इमोशनल गार्ड है, जाके अपनी विधानसभा में मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। फिर उस सबसे आगे जाके एक लाइन थी कि ऐसा भाई फिर नहीं मिलेगा, ऐसा मामा फिर नहीं मिलेगा। आई थिंक कनेक्ट इमोशन और अभी ने बयान आ बहुत गया है, शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आ गया है कि जो काबिल लीडरशिप है नरेंद्र मोदी की, उसको श्रेय जाता है ये मध्य प्रदेश में जो रुझान नजर आ रहे हैं। अतुल की बात पे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, ये सिर्फ मामा मैं की अरफा 1 मिनट के लिए आपके लिए रुकता हूँ। तेलंगाना से हमारे साथ यूनिस लसानिया जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं तेलंगाना के उलटफेर के बारे में। जी हेलो यूनिस, क्या है तेलंगाना में तो एक बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं इसे, इसकी वजह क्या रही है? बदलाव तो है। फिलहाल कांग्रेस 119 सीट में से कांग्रेस फिलहाल 60+ सीट में लीडिंग है। जो भारत राष्ट्र समिति जो पावर में थी, उनके पास फिलहाल मेरा ख्याल 36 या 38 सीट में कुछ लीडिंग है वो लोग। बट फिलहाल आधे राउंड्स काउंट हो चुके हैं, तो इसीलिए ये भी नहीं बोल सकते कि 101% हम लोग श्योर है कि एग्जैक्टली यही रहेगा। अभी 1 घंटे में प्रोबेबली पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली विनिंग उनका परसेंटेज क्या होगा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस बाकी स्टेट्स में इतना अच्छा नहीं करके यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, क्योंकि 2-3-4 महीने पहले तक तो कांग्रेस का हाल इतना कुछ अच्छा नहीं था। बट लास्ट 1 महीने में, स्पेशली नवंबर के एंडिंग में, कांग्रेस काफी पिकअप कर दिया था यहाँ पर। तो क्या ये यूनुस, ये जो भारत जोड़ो रैली थी, उसका बहुत दिनों तक तेलंगाना से गुजरी है, वो लंबा समय दिया है साउथ में, उसका असर है क्या इस पूरे मोमेंटम में? मेरे ख्याल थोड़ा असर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सीट है। 2014 से पहले जहां तक हमारा अंडरस्टैंडिंग ये था कि हैदराबाद के बाहर ऑल इंडिया मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, दैट इज लेड बाय असदुद्दीन ओवैसी। अंडरस्टैंडिंग ये था कि हैदराबाद ओल्ड सिटी या कोर हैदराबाद एरियाज के बाहर जनरली मिस्टर ओवैसी का होल्ड इतना कुछ खास नहीं था कि और तो डिस्ट्रिक्ट्स में काफी सारा मुस्लिम जो वोट था 2014 के बाद बीआरएस को शिफ्ट हो गया था, जहां तक हमको समझ में आया था। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, और भारत जोड़ो यात्रा का भी जनरली इम्पैक्ट थोड़ा सा हुआ ही होगा, क्योंकि एक सीट है निजामाबाद अर्बन बोल के, ये सीट जो है वहां पर मेरे ख्याल से 30 या 33% मुस्लिम वोट्स है वहां पर। तो इस बार कांग्रेस का जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो फिलहाल लीडिंग पे है, या वेरी क्लोज कॉल है वहां पर भी। तो दिख तो रहा है कांग्रेस का जनरली वेव यहाँ पर था है, अच्छा खासा कुछ इम्पैक्ट हुआ है। ये काफी लोग 1 महीना पहले तक भी यही पता, जहां तक हमको समझ में आया था कि ये दिख रहा था कि बीआरएस मोस्टली शायद एक 70-75 से निकल जाएगी। बट अभी रिजल्ट तो कुछ और ही है। फिलहाल 35 पे है कांग्रेस का लीड, सो 60 इज द विनिंग नंबर। ठीक है, थैंक यू यूनिस। हमारे साथ योगेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं, आइए चुनाव विश्लेषक हैं, उनसे समझते हैं। हेलो योगेंद्र जी। जी योगेंद्र जी, चुनाव क्या विश्लेषक हुआ करता था, अब नहीं अभी तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता। जी बताइए। योगेंद्र जी, आप राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से भी हमें बताएं कि क्या कमी रह गई है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से? आप तो भारत जोड़ो रैली के सूत्रधार की तरह थे, हमेशा अपडेट दे रहे थे, और लग रहा था कि अच्छा इसका असर जहां जहां से राहुल गुजरे होगा, लेकिन वैसा असर दिखाई नहीं दिया मध्य प्रदेश में। देखिए, मैं समझता हूँ जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का ताल्लुक है, भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने कर्नाटका में देखा,
अभी आपके साथी बता रहे थे कि उसका असर तेलंगाना में भी हुआ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से रास्ते से गुजरी थी, वहां एग्जैक्टली उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हुआ इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का महत्व मैं बार बार कहता था कि देश का माहौल बनाने की यात्रा है, देश में एक पॉजिटिव माहौल बनाने और हर चुनाव के बाद अमूमन एक टेंडेंसी रहती है कि हम हर सफलता के पीछे हर चीज को सफल बता देते हैं, हर विफलता के पीछे हर चीज विफल हो जाती है, नॉर्मल चीज है। मैं समझता हूँ इससे अलग हटके हमें सोचना चाहिए। कांग्रेस को जो तेलंगाना में सफलता मिली है बहुत बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस जिस हालत में पहुंच गई पिछली बार 28% वोट, तो बिल्कुल लग रहा था कि जो कांग्रेस के साथ आंध्र प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, कुछ उस स्थिति में कांग्रेस जाती, वहां से पलट के कांग्रेस आई। ये अपने आप में एक लेसन है कि हाँ, यदि आपके पास नेतृत्व हो, आप ऊर्जा डालें तो बदलाव आ सकता है। लेकिन जो 3 उत्तर भारत के राज्यों से संकेत आ रहा है, हिंदी पट्टी के राज्यों से, वो बहुत निराशाजनक है। सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, हम जैसे लोगों के लिए जो इस देश में बेहतर बदलाव की उम्मीद करते हैं, हमारे लिए भी बहुत निराशाजनक संकेत। अब उसके लिए ये कह देना कि हर चीज गलत थी, उसकी बजाय मुझे या बीजेपी जो सब कुछ कर रही है सब सही है, वो तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट मैच में भी आप नहीं कहते कि अगर कोई टीम जीत गई तो उसकी बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, ऐसा तो नहीं होता। हमें अलग अलग देखना हो। ये मायूसी की बात इसलिए है क्योंकि ये तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत सकती थी। राजस्थान में सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, मुख्यमंत्री खुद पॉपुलर थे, लेकिन एमएलए के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। और राजस्थान का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस जब हारती है तो पूरी तरह से हारती है, हर 5 साल बाद सत्ता पलटती है। इस सब के बराबरी करने के लिए जो रणनीति चाहिए थी वो कांग्रेस ने नहीं बनाई, खासतौर पे बिल्कुल एक कुछ साधारण सी गलतियां, यानी कि जो एमएलए जिनके खिलाफ कांग्रेस को पता था कि खूब गुस्सा है लोगों का, उनको वापस टिकट दिया गया। और 2 अलायंसेस जो बहुत आसानी से बन सकते थे, सीपीएम के साथ और बीएपी के साथ, वो क्यों नहीं बने मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आया। अगर इतना भी हो जाता तब भी आज आपको मुकाबला उस तरह का न दिखता जैसा कि अंक इस टाइम दिख रहे हैं। ये बहुत ही नजदीकी का मुकाबला राजस्थान में था। आफ्टर ऑल जितने भी सीट के आंकड़े आपको दिख रहे हो, वोट में सिर्फ 3% का फासला है इस वक्त भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। इन 2 चीजों से वो ठीक किया जा सकता है। योगेंद्र जो जी, मुझे समझ नहीं आता वो है मध्य प्रदेश। आपको 1 मिनट यहाँ रोके। आप कास्ट सेंसस के बहुत बड़े समर्थक हैं, बार बार उसको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात बार बार कांग्रेस ने उठाई, इसका लाभ क्यों नहीं मिला कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान आपको में? लगता है कांग्रेस ने उठाई? कांग्रेस के नेतृत्व ने इसका जिक्र किया बड़ी बड़ी रैलीज में, बिल्कुल। लेकिन जमीन पे आप लोग घूमे होंगे, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स गए होंगे, क्या आपको जमीन पे कहीं भी ये मुद्दा दिखाई दिया? मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई दिया। ना कांग्रेस के कैंडिडेट इसका जिक्र करते थे, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता इसके बारे में जानता था, और जिसके लिए बना है ओबीसी और लोअर ओबीसी, वहां तक तो खबर पहुंची ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ना तो एक पॉजिटिव मुद्दा था ना नेगेटिव मुद्दा था। और दिक्कत यही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो एक पोस्चर, आइडियोलॉजिकल पोस्चर, वो और जमीन पे कांग्रेस जो कर रही है उसमें मुझे कोई अलाइनमेंट, तारतम्य दिखाई नहीं देता। वो एक बहुत बड़ी कमी है। और जो दूसरी इससे जुड़ी हुई कमी है वो है कि कांग्रेस का जो अपना जनाधार, कांग्रेस का जनाधार किसमें है? जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो निचले तबके में लोग हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनाधार कांग्रेस का वहां है। लेकिन कांग्रेस की अपनी नीतियां, अपना पोस्चर, अपने कैंडिडेट, उनका इससे कोई अलाइनमेंट नहीं। जब तक कांग्रेस इन चीजों को ठीक नहीं करती तो आज का परिणाम हमें बताता है कि कांग्रेस के लिए ये काफी कठिन स्थिति है उत्तर भारत में बदलना, क्योंकि जब तक हिंदी पट्टी में कांग्रेस रिकवर नहीं कर तब तक बाकी सारे देश का किया धरा यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज हो जाता है। और आज के परिणाम से एक संभावना बन, अगर कांग्रेस किसी तरह से जीत लेती इन 3 में से 2 जो कि संभव था, तो 24 के लिए कांग्रेस के पास एक अच्छी जमीन बन जाती। लेकिन इन तीनों में हारना अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और इस स्ट्रगल को बहुत कठिन बनाता है, और इसमें कुछ बहुत
इनोवेशन की मांग करता है। बिल्कुल। इस हार के बाद तो इंडिया अलायंस पे भी असर पड़ेगा। तो आपको लगता है जिस तरह से स्नब किया कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में, क्या इस हार के बाद कांग्रेस इस स्थिति में होगी कि वो लीडरशिप ले ले? मैं अगर योगेंद्र जी हैं तो एक सवाल योगेंद्र जी से इसी बाबत पूछना चाह रहा था, जिसका आखिरी में उन्होंने बहुत थोड़ा-सा शब्दों में ज़िक्र किया। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा अगर वो विस्तार से हमें योगेंद्र जी बता पाएँ। एक तो आप बताने जा रहे थे कि मध्य प्रदेश आपको बहुत चौंका रहा है। वो हम सब लोग के लिए भी, मैं मध्य प्रदेश में मैं भी जब दौरा कर रहा था और आज के नतीजों में बहुत अंतर है। मैं बहुत भरोसे से कह रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में कमलनाथ से। दूसरा, राष्ट्रीय परिदृश्य के लिहाज से इंडिया अलायंस के नज़रिए से अगर थोड़ी-सी आप इस पूरे उसकी व्याख्या कर पाएँ। क्या इसमें इंडिया अलायंस क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं उससे पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा-सा एक कहें कि उसको स्नब किया था, इंडिया अलायंस को बैक बर्नर पे डाल दिया था और उससे एक मैसेज गया क्योंकि मध्य प्रदेश में सपा को से लेकर उनकी एक तकरार भी हुई। अब वो कहाँ जाता दिख रहा है, इसके आगे की राह इंडिया अलायंस की, राष्ट्रीय राजनीति की, और साथ में जो आश्चर्य में आपको मध्य प्रदेश डाल रहा है, उसकी कोई व्याख्या आपके दिमाग में आती है कि इसको कैसे हम समझ पाएँ? दरअसल दिक्कत यही होती है कि अगर मुझे लगता है कल तक कि ए होगा और उसके बाद जिसके लिए मेरे पास 50 तर्क हैं, उसके बाद हो जाता है बी, तो अब मैं एकदम तुरंत तर्क गढ़ के बता दूं, वो शायद बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं, अभी भी मुझे मध्य प्रदेश पूरी तरह समझ नहीं आता। मध्य प्रदेश में सच ये है कि लोगों में बदलाव की इच्छा, पिछली बार कांग्रेस लगभग चुनाव जीत गई, सरकार भी 15 महीने के लिए बना ली गई, सरकार को चोर दरवाजे से तोड़ा गया, लोगों की सिंपैथी इसलिए कांग्रेस के साथ थी और जहां जाइए लोग बदलाव की बात करते थे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि उस बदलाव के भाव को कांग्रेस ने इतना गंभीरता से नहीं लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था, शायद उस तरह से नहीं लड़ा और कांग्रेस में एक तरह का ढीलापन रहा। ये सब बातें हैं, लेकिन ये हमेशा कांग्रेस में होती हैं। पिछली बार तो इससे भी ज्यादा थी, 2018 का जो चुनाव था, उसमें तो कांग्रेस का ढीलापन इससे भी ज्यादा था। तो और इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन इस सब से अगर ये हो जाता कि भाई कांग्रेस को जो बहुत स्पष्ट लीड दिखाई दे रही थी आज से 3-4 महीने पहले, अगर वो लीड लगभग 0 हो जाती, अगर कांग्रेस और बीजेपी लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाते, तो मैं समझ सकता था कि देखिए कांग्रेस को एडवांटेज था, जो कि उसने अपनी छोटी-छोटी गलतियों के कारण न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन बीजेपी 8% आगे चल रही, कोई 48% है उसके लिए, 48% वोट इस वक्त बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 40%। जी, 8% का फासला इतना बड़ा योगेंद्र जी, आपको रोकता हूँ, समय मेरे इस कम से सेशन कम का मुझे समय दिखाई हो नहीं रहा दिया, है। ईमानदारी की बात है। मैं अरफा 8% का फैसला सड़क पे, ये बिल्कुल वैसे है जैसे 103 डिग्री बुखार, वो आप यूं हाथ लगाइए आपको पता लग जाता नहीं, है। बुखार के अलावा मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, ये चीज जो हमें समझ में नहीं आ रही, कहा जाता है जब समझ में ना आए तो क्या है, इसका मतलब वो प्यार है। व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी ना हो और वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है, पूछते हैं लोग इसमें क्या देखा, तो प्यार है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जिसको अतुल कह रहे थे कि मामा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए, मैं कहती हूँ कि भारत में अब चुनाव भावनात्मक चुनाव हो रहे हैं, इमोशनल वोटिंग हो रही है, जिसमें आप ये नहीं देख रहे, अंधी मोहब्बत है कि आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी में क्या देखा, आप पूछ रहे हैं कि 18 साल में आपके इतने बदतरीन हालात थे, आप फिर उसी पार्टी को वापस क्यों लाना चाहते हैं? आप अरफा, जो रिपोर्ट्स मध्य प्रदेश से आ रही थी उसमें ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा वो हुआ है, वोटिंग हुआ है और खासकर महिलाओं ने किया है। तो जो लाडली बहन योजना है उसने भी गेम चेंजर का काम किया है। योजनाओं का वादा तो कांग्रेस पार्टी ने, ये योजनाएं राजस्थान में फिर कांग्रेस के लिए क्यों नहीं काम कर रही हैं? जिन योजनाओं को मैंने खुद फर्स्ट हैंड देखा, मैं किसी का सेकंड हैंड एनालिसिस नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने खुद देखा, तो अगर ये भावनात्मक लगाव कांग्रेस पार्टी से राजस्थान में होता तो इन तमाम स्कीमों से जो अशोक गहलोत हैं वो जीत गए होते। इस चीज को सिर्फ और सिर्फ, इस पूरी ऐसी हार जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसे सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर सकती है, वो है इमोशनल वोटिंग। लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जो परेशानियां, तकलीफें और दर्द हैं, उन्हें एक किनारे रखकर अपनी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि दो चीजें समझने वाली हैं। देखिए, हम शुतुरमुर्ग बन के अगर रेत में अपना सर दे दें
और ये समझने की कोशिश करें कि हम बहुत बड़े चुनावी पंडित हैं, सिर्फ हम जानते हैं। जो चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती वो यही है कि इस पूरे क्षेत्र को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया है, और न सिर्फ जिस तरह से पुतुल जी कह रहे थे, मैं 100% उनके साथ हूं इसमें, कि इस प्रयोगशाला में और ज्यादा जो रसायन डालने का काम कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के छत्रप कर रहे हैं। ये वक्त है सीधे कांग्रेस पार्टी को ये देखने का कि 6 महीने पहले आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, और ये अगर आप मिला ले 6-7 स्टेट्स, तो ये करीब 160-170 सीटें बैठ जाती हैं ये भाजपा के लिए। कुछ सीटें उन्हें और चाहिए, 70-80-100 सीटें, और उसके बाद ये इलेक्शन पूरे तरीके से उनका हो जाएगा 2024 का। बिल्कुल। तो ये जो कांग्रेस पार्टी को ये बैठ के ये 5 समझने की राज्य जरूरत हैं, है। 5 राज्य हैं अरफा, आपको मैं रोक रहा हूँ। 5 राज्य में 83 लोकसभा सीट बनती है, और इसका इन व्यापक पांचों में इन पांचों में मिलाकर इनका व्यापक असर होने वाला है। तबस्सुम हमसे कुछ कहना चाहती हैं, तबस्सुम से जुड़ते हैं, हमारा वक्त भी देखिए, मध्य प्रदेश में हमें एक योगेंद्र जी ने एक बात बोली कि कास्ट सेंसस को लेकर ग्राउंड पे ज्यादा डिस्कशन नहीं था। ये ओबीसी महासभा के लोगों ने भी मुझे कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, पर कमलनाथ उनकी स्पीचेस में बहुत एग्रेसिवली ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि कास्ट सेंसस किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने काफी अच्छी अच्छी स्कीम्स अनाउंस करी है इस पोल कैंपेन में। उन्होंने पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम अनाउंस करी, जिसमें बच्चों को 500 से 1500 रुपए दिए जाएंगे स्कूल गोइंग बच्चों को हर महीने। इस चीज को ग्राउंड पर अगर हम जाकर देखें तो पब्लिसाइज कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं करा। तो कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं था, उन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि वो लोग इस चीज को अच्छे से पब्लिसाइज करें। लाडली बहना स्कीम को जिस तरीके से बीजेपी ने पब्लिसाइज करा है, आप कोई भी गांव में जाइए, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल पे आउट्स हेल्प करते हैं। 2018 इलेक्शंस में कांग्रेस ने वादा किया था फार्म डिस्ट्रेस को ठीक करने का, लोन वेवर्स का, उन लोगों को उसका फायदा दिखा। इस इलेक्शंस में लाडली बहना 4 महीने औरतों के अकाउंट में पैसे आए हैं 1250 रुपीज। कोई छोटा बिल्कुल अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा बिल्कुल अमाउंट है। 6 महीना पहले अगर मैं लोगों से जाके बात करती हूँ, मैं बहुत गुस्सा था बीजेपी के अगेंस्ट, बट लाडली बहना स्कीम शुरू होने के बाद गुस्सा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी नारी सम्मान योजना का इतने अच्छे से पब्लिसिटी नहीं करा, पढ़ो पढ़ाओ स्कीम का पब्लिसिटी नहीं करा। काफी ज्यादा एक वो जो हवा है एंटी इनकम्बेंसी की, उस हवा को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, और कमलनाथ का वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू तबस्सुम, हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। अब हम हमारे नए मेहमान भी आ चुके हैं, नीलांजना सरकार और के वेनु अगले सत्र में होंगे और उनका साथ देंगे, उनके साथ चर्चा करेंगी मेरी वायर की कलीग श्रमस्ते। तब तक लेकिन हम स्क्रीन पे कुछ देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप थोड़ा सा ला सकते हैं क्या? या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 53 सीट में आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 36 में, अदर 1 और बहुजन पार्टी 0। क्या हमारे पास मध्य प्रदेश का है? हाँ, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 162 में, एक तूफान है वहाँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 65 में, बहुजन पार्टी 2 में और अदर 1 में। इसके साथ राजस्थान में भी 114 में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 70, अदर 13 और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं। तेलंगाना का हमें दिख रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस 64, भारतीय राष्ट्रीय समिति 40, भारतीय जनता पार्टी 9 और अदर्स 5। ये अब तक का रुझान है। उम्मीद है, लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। हम आपको बता दें कि ये जो इलेक्शन ऑनलाइन 2023 आप देख रहे हैं, ये 5 मीडिया घराने, इंडिपेंडेंट मीडिया घराने लेकर आए हैं आपके लिए, आपके खर्चे पर लाए हैं। प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल के लिंक में जाइए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम ऐसे ही कार्यक्रम बार-बार आपके लिए लाते रहें। थैंक यू अरफा, थैंक यू अतुल। शुक्रिया। ये बमोरी विधानसभा क्षेत्र का धर्मपुरी गांव है। शाम ढलने पर इस गांव के लोग आग जलाकर टॉर्चों के सहारे रोशनी किया करते हैं। पानी भरने के लिए भी लोगों को यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पैदल या मोटरसाइकिल पर जाना पड़ता है। अगर किसी गर्भवती महिला को प्रसव की पीड़ा हो तो उसे खटिया पर लेटाकर 4 कंधों पर ले जाना पड़ता है। यहाँ न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। परेशानी आ रही है, टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च भी नहीं जल रही, अभी जल रही है और फिर बंद हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? ये कावर बमोरी जाते हैं। किस लिए? पानी भरने के लिए। अच्छा, और ये दिन में कितनी बार जाना पड़ता है? 4 चक्कर हो जाते हैं।
यहाँ ऐसे बहुत से गांव हैं जो बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के मोहताज हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र में 22,000 करोड़ का विकास हुआ है तो शायद आप चकरा जाएं। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया खुद इस बात का दावा कर 22,000 करोड़ के काम अकेली बमोरी विधानसभा में। और यहाँ पे ये कितने कमरे हैं स्कूल में? मतलब 2 कमरे हैं। है कमी, अब फिलहाल में पानी की कमी बहुत बड़ी है हमारे, तो हम इधर उधर से पानी भरवा के बच्चों से ही मंगाते हैं अच्छा, उनको पीने के लिए। तो कहाँ से लाते हो पानी पीने का? बाहर से। और बाथरूम वगैरह किधर जाते हो आप? बमोरी विधानसभा में लगभग 2 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 70,000 आदिवासी वोटर्स हैं। यहाँ आदिवासी वोटर्स की चुनाव में निर्णायक भूमिका होती है, लेकिन फिर भी उनकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने किसी शिकायत करी कभी इसकी कि भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है? 25 बेर फिर आए हम। हाँ। इसी कारण लोग वाग क्या हुआ, गांव तो निकल लगे। हाँ। वहाँ अब बिन के पास जुगाड़ थे, इसलिए बिन ने जगह लेके वहाँ पे मकान बना लिया। अब हमारे पास जुगाड़ नहीं है, हम कहाँ जाए। तो यहाँ की जो हालत है, मतलब वो कोई भी किसी भी स्तर पे 22,000 करोड़ के विकास की बात को साबित नहीं करती। The elections are in Telangana, but the buzzword is Karnataka. The Congress had made 6 poll promises to youth, women, etc. The party aims to replicate its victory in Karnataka, where it made similar poll promises. We are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one. The BRS was quick to counter Congress's campaign, trying to punch holes in its Karnataka's model. BRS leaders Krishank Manne and several others traveled through districts in Karnataka, intending to gather proof of Karnataka's failed governance. From October, BRS leaders have been sharing videos of women, farmers, youth, etc. that they are unhappy with the Congress rule in Karnataka. The BRS constant reminder to its voters has been, look what's happening to the people of Karnataka. Don't repeat the same year. The BRS party has also alleged that the Congress in Karnataka has been funding the party in Telangana. The Congress has hit back at the ruling BRS by even bringing Chief Minister Siddaramaiah. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar and almost 70% of the cabinet participated in Congress's election campaign in Telangana. Even today, I will ask Mr. Chandrasekhar Rao, please come to Karnataka. Don't make all delegations unnecessarily for the election purpose. So why did the Telangana election become about Karnataka? The BRS blames it's the Congress that it had made the election all about Karnataka and it was forced to reply. But in reality, the Congress win in Karnataka will have a spillover effect in Telangana. Congress leaders and its cadre are confident than ever, and that itself is a threat to BRS. So instead of allowing the Congress to praise its rule in the neighboring state, the BRS has decided to go for back and claim from the very beginning that the Karnataka model is a failed model. But will the people of Telangana buy it? The great thing about visual कि आप जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये ना किसी सरकारी ऐड से फंडेड है, ना किसी लार्ज उद्योगपतियों के ऐड से फंडेड है, ये ऐड से फंडेड है ही नहीं। ये आप लोग जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे हम अपना जर्नलिज्म करते हैं, अपनी पत्रकारिता करते हैं। तो जहां पर भी आप देख रहे हो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस शो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा। उस लिंक पर जाके आप योगदान दीजिए, कंट्रीब्यूशन दीजिए, ताकि पत्रकारिता को जनता रिक्लेम कर सके। Because we always say that when the public pays, the public is served. So the public has to reclaim journalism. And जब तक ये contribution आएगा, फिर मुझे कमाने की जरूरत पड़ेगी. Now I hand you over back to our journalists. Please go to the link in the window description below and contribute so we can support journalism. We can fund our journalism with your help. This coalition of news is not just these 5 organizations. It is also all of you. So if we come together, journalism can be saved. Thank you. I will hand over to my colleagues in the studio now.
Hello and a very warm welcome this afternoon. I'm Sravasti Dasgupta from The Wire and you're watching Elections Online 2023. This is a very special webcast that is being brought to you by the coming together of 5 independent news organizations, The Wire, Scroll, Newslaundry, News Minute and The Caravan. And this webcast is being powered by you, the viewer. So I would urge you to support our efforts by contributing, and the link is down below in the description box. At this hour on the webcast, we are being joined by M.K. Venu. He's founding editor at The Wire, and Nilanjan Sarkar. He's senior fellow at the Center for Policy Research. We are also going to be joined by our reporters from all 5 organizations. We're going to be having Pooja Prasanna from the News Minute, Aruna Bhasakia from the Scroll, as well as Shivnara from Newslaundry and Sujata from the Caravan, and they'll be joining us in just a moment. But first, let's take a look at the trends that are coming in at this hour, and these are trends that we are getting from the Election Commission of India. And let's start off with Chhattisgarh, which many are saying are the big surprise, with the BJP in a sense crossing the halfway mark in the state as we are seeing right now. The trends that are coming in, I want to tell our viewers that these are still trends at this moment. They are not definitive results, but going by the trends that we're getting from the ECI, the BJP at the moment, as you're seeing with the figures on your screen, has 53 seats across the halfway mark, and the incumbent Indian National Congress has only 35 seats. The others are down to 1 and nothing for the others are down to 1, and BSP has nothing at the moment. Let's go across to our guest in the studio. Nilanjan, I want to come to you first. In a sense, the Congress was very confident about the elections in Chhattisgarh, banking on the personality cult in a sense of Bhupesh Baghel, a strong OBC leader, and if out of all the 4 states and 5 states, in fact, the Congress was sure that Chhattisgarh is in the bag. But what we're seeing right now is that the BJP has crossed the halfway mark. And how are you seeing this? So, I mean, I don't have any deep insights other than to say that, when I had gone and when others have gone to the field, I think that unlike the popular perception, anybody who had actually gone to Chhattisgarh felt that the election was at a minimum close. When you spoke to voters, there was a sense that even if I'd voted for Congress once, there isn't a huge difference between the Congress promises and the BJP promises. The BJP has done a lot of work in Chhattisgarh over the years. Raman Singh was popular at some point. So, it isn't unusual for voters which had at one point shown allegiance to the BJP to switch back. It is true that many people didn't see it coming, but I also think that the quality of serving, the quality of getting to, sort of far-flung places in Chhattisgarh, even information, getting it up the party ranks is difficult in Chhattisgarh. So even last time, you remember that people were quite shocked by the scale of the Congress victory, right? So it's, Chhattisgarh is just one of those states where the information from the bottom to the top is just not flowing the way that it should. But I think when people have gone to different places, they've picked up that these kinds of movements were happening in the state. Right. And I just want to give our viewers a sense, because I also traveled to Chhattisgarh for these elections. And the sense that we got from the ground is that in 2018, there was a huge anti-incumbency factor that kind of played in favor of the Congress. And Raman Singh's government had been in power for 15 years. So there was anti-incumbency. And of course, the Congress's policies, pro-farmer policies, social welfare schemes that the Congress brought in Chhattisgarh for the first time in 2018, whether it was the farm loan waivers or increased prices for the paddy procurement. So that kind of helped the Congress. But in this time, M.K. Venu, I want to come to you on this, that in this election, the BJP has met the Congress on every poll promise that it has promised. In a sense, the Congress has even called the BJP's manifesto a copy of its own manifesto. Yeah. But it eventually came down to these social welfare promises. And the sense that one would get is that from the ground is that people have already seen what they have got from the Congress, and the promises are more or less the same. So people are going back to voting for their traditional parties. How do you see that? See, my sense is that there is definitely anti-incumbency in all the elections except in Madhya Pradesh. If you notice, all the other elections, including Telangana, the incumbent is actually under, is being thrown out, right? More or less, right? Now,
you could argue that in all these elections, the incumbent had done very well on welfare schemes. Like, I don't think BRS, the kind of last mile delivery perfected by KCR, it actually it as good or better than what Amit Shah and Modi have done, at the center, or BJP has done other places. Chhattisgarh also, farm loan waiver, again another round of farm loan he promised, right? There was one farm loan waiver earlier, and then he also promised to increase the quantity of food grains to be procured, and he also announced some new schemes, gas cylinder, etc., subsidy schemes, but it didn't work, as you said, because the others also promised as much. So all things remaining the same, I think they decided to just throw out the incumbent. So I want to point out here another very interesting thing. If you look at Axis My India's caste-wise data, now Axis My India, all said and done, they have had the best strike rate so far in their polling. It showed that in Chhattisgarh and in Rajasthan and Madhya Pradesh, very interesting caste polarization, where it showed that Congress was doing much better in getting SC, ST votes, as BJP was miles ahead in garnering OBC votes. In fact, in Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, BJP, their survey shows BJP 50% plus, garnering 50% plus of OBC votes, and Congress is at some late 20s. Huge gap. I think this gap has helped the BJP, and where Axis has gone wrong in Chhattisgarh is that they overestimated scheduled tribe votes for Congress. A lot of scheduled tribe votes have gone to the BJP, which shows in the Bastar region, where Congress had nearly 100% strike rate. This time it's down to some 25%. Nearly BJP has taken on most of the seats there. I think that's where Axis made a mistake. But my larger point is that this massive OBC, other backward caste vote bank that BJP has built in central India, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, it should be a worry for the India Alliance for even Lok Sabha election, because this caste census, politics around caste census may have some impact in Bihar, but not showing if this data, if you go by this data, with BJP's lead among OBCs being so large, caste census politics will take a long time to take roots here in central India. That's very interesting that you're mentioning that, because the Congress and Rahul Gandhi from the front has led this whole OBC mobilization, in a sense, while talking about the caste census across all election-bound states. And the Congress has also promised that if they come to power in 2024, they will bring a nationwide caste census. In fact, in all these election-going states also, they said that if they form the government, they will conduct a caste census. But as Venu's pointing out right now, that does not seem to have had a resonance in these election-bound states. But one more thing. OBCs, for some very interesting reason, is working for Congress. Work for Congress in Karnataka, also working for them in Telangana. Congress was always seen as a Reddy dominated party, but I think a lot of OBCs from BRS may have come to Congress. Those are for different reasons, because South has over the years, decades, built a politics of social empowerment in a very steady sort of foundational sort of way, which has not happened in the North, where it's Hindutva politics, which is radicalizing OBCs a lot more, which needs to be watched. It's a very serious trend. Right. I'm just being told that we are being joined by our reporters, Pooja from News Minute, Sujata from the Caravan, and Arunabha from the Scroll, and they have all covered these elections from the ground. Let's go to Arunabha right now, because we are talking about Chhattisgarh. Arunabha, how are you seeing the trends that are coming in? It was, in a sense, a lot of people were expecting the Congress to win, but that has not happened. But of course, you have traveled to the ground and you have met people, especially you have reported on the competitive prices of paddy that was promised by both the parties. So do you think that has played a role in working against the Congress, because the BJP has met the Congress in every promise that it has made to the farmers? Right. I don't quite see it in that sense. I think in terms of delivering welfare,
I think the Baghel government did a pretty good job, which most people acknowledge, And even when BJP matched the paddy price, in fact, promised to better it before Congress again did another round of in its manifesto. Because one should remember that there was a lot of anger against Raman Singh because he had not been able to fulfill the paddy bonus that he had promised ahead of the 2018, ahead of the 2013 elections. But the Congress, I think, Congress was a bit of a one-trick pony in this election. They put way too much. They put all their eggs in one basket. Everything was about paddy, and it showed, right? If you look at the map, the Sarguja division, which is 14 seats, which they swept last time, they're losing every single seat there currently. Even T.S. Deo, the Deputy Chief Minister, he's trailing. So, I think it's the Adivasi votes that has really broken the Congress's back, And another thing that seems to have gone against the Congress is, I suppose, which also, by the way, was reflected in the Axis's survey, is that the Congress seems to have lost a lot of women voters. The Congress, remember, had promised prohibition in Chhattisgarh ahead of the 2018 elections, and when I was traveling, it was something that came up very organically in conversations with women. There was this perception that alcohol was more freely available. The money that was coming in form of the paddy bonus was being used by men to drink, and that it was leading to leading to unpleasant circumstances at homes. So I think that seems like that is something that because a lot of women told me that they wouldn't vote for the Congress. And that seems to have happened. So, everything that could have gone wrong for the Congress has gone wrong in, Chhattisgarh. And everything that could have gone well for the BJP seems to have worked out, there's this, in the plains, if you see, there's this, the Kavardha Bemidara belt, which is where there was, some talk of polarization, and the BJP seems to have reaped benefits. Mohammed Akbar, Congress stalwart, is trailing from his seat. He's been MLA 5 times. Ravindra Chaube in Saja, where the BJP propped up the father of, this young man who died during communal riots. Ishwar Sahu is the candidate from there. So I think a lot of factors came together for the BJP. And I think the Congress kind of put too much onus on its paddy scheme, and I think the results are for all to see. I want to add something here. I was just looking at some data. The Chhattisgarh government, Baghel, had made so many promises that it all added up to an extra some 30,000 crore of extra budget. We are forgetting he had implemented old pension scheme. Yeah, that itself would have cost an extra 22,000 crores from 2-3 years from now, 4 years from now. And in a 1 lakh crore budget, he had promised the moon. Maybe these things were not properly communicated to the to the electorate. Also, an interesting point related to this is, of course, that as you're mentioning, that the whole cost to the exchequer has been huge, and anyone who has traveled to the state will also notice this, that because of these promises that have been made, electricity at half the price to farmers, or even the increased price of paddy, which they're just trying to up one after another, the infrastructure development, the roads leading to these places are practically breaking down. There's no roads, there's no infrastructure, and people are complaining that there has been no development in this regard, and the cost to the state exchequer after a point is getting so huge that what is the long-term policy and the long-term monetary politics behind this? You were saying, Nilanjan? No, so one of the things I say, when you look at the election commission numbers, it might be the seats are going to move around a little bit, but the vote shares are broadly intact by now. They've converged. And so it's actually only 46% for BJP and 42% for Congress. And in Chhattisgarh. Okay. And so one of the things that we sort of always, and that same thing happened last time, a small vote share difference actually created a huge difference in the seats gap. Yeah. And so I think part of what is challenging about trying to analyze Chhattisgarh ex post, so to take a step back, is that 1 or 2 percentage points this way or that way, had Congress done something a little bit better, had BJP done something a little bit worse, would have given us a completely different result, right? And so basically, you're saying 42% is a good vote share
for Congress to have got. Yeah. 4 percentage point difference can happen for a number of reasons, right? And you will see I have a similar phenomenon in Rajasthan, right? Where 3 percentage point difference is giving you a massive difference in seats. All right, we're just getting to know that the Bharat Adivasi Party has won in Rajasthan by 70,000 votes. That's the latest that's coming in. It's on your screens right now. Bharat Adivasi Party's Rajkumar Roat wins Chaurasia seat by nearly 70,000 votes. Please continue, Nilanjan. So that's it. So I just want to say that, I think part of what the challenge here is that we will have to look, when all is said and done, at the vote share splits by community, because 1 or 2 percentage points means that even having done just a little bit better among, as you said, among scheduled tribes, would have just had a dramatic impact on the electoral outcomes in the state. All right, let's just shift focus right now to some of the other states where trends are coming in. If we can have the trends coming in from Rajasthan at this point, please, and then we can just take a look at what's happening over there. Rajasthan, of course, Congress incumbent government over there as well, and the BJP leading on 111 seats and the Congress down to 73 seats. Others at 13 and the BSP at 2 seats. So Rajasthan, in a way, sticking to its pattern of revolving door governments. The Congress had said that it's very confident that it's going to come back to power, but Rajasthan has stuck to its trend and look to get a BJP government over there as well. How do you see this? So look, I mean, one thing is that Gehlot is actually the single most popular political actor on the ground. However, the level of factionalism within the Congress party, it was clear that there were several factions, not just Sachin Pilot, and that was going to hurt Congress in this election. The question was how much. When you travel to areas with large Gujjar populations, you met a lot of people who had voted for the Congress who were shifting to the BJP. Big time. When you travel to Shekhawati belt, and the Jat politics is slightly different in the region, you did meet that it was not going to be a sweep for the Congress this time at a minimum. So you were seeing a shift towards the BJP. I was actually quite surprised by the exit polls, including Axis, because I thought it was pretty clear the BJP was going to be ahead. So I think that what we're seeing today is probably what a lot of reporters saw. But Axis did show your point. Yeah. Like among Gujars, BJP has 56% plus vote share and Congress are in the 20s. Like massive lead among Gujars. Which shows that, I mean, the question to ask is Sachin Pilot, I mean, what was his efficacy? Yeah, so the Congress did try to set its house in order in a sense before the elections in terms of pacifying Sachin Pilot and settling the differences between Gehlot and Pilot. But it doesn't seem to have worked in Rajasthan. The best social security scheme with the Chiranjeevi ever, scheme. by any state. Yeah. It's like a pioneering social security scheme they've implemented. But you didn't see severe anti-incumbents in Gehlot, right? That was there was no. That's what I'm saying. Yeah. In India, I guess elections are lost rather than won. Well, especially for Congress. Yeah, I mean, there's anti-incumbency working everywhere except, as I said, Madhya Pradesh. So I guess it worked. It worked in Karnataka also, anti-incumbency. So I don't know whether South and North are showing different trends. Since you're mentioning South and North, let's go across to Pooja, who's joining us. She's my colleague from the News Minute, and she's joining us live. Pooja, in Telangana, if we can have the results, the trends on our screens at this moment, then that's the only state, in a sense, that's been sticking to the exit polls predictions, and the Congress over there is leading with 66 seats. The BRS is down to 39 seats. The BJP is down to 9 seats, and the others are at 5. So as Venu was just mentioning, Pooja, that do you see a north-south divide playing out over here? The BJP is down to 9 seats, and the Congress was predicted towards the last leg of the campaigning that it is kind of capitalizing on its gains in the Karnataka election, has surged ahead of the BRS. Actually, one correction: BJP has actually increased its seats, number of seats from last time. Yeah, it had 4 seats last time, right? Yeah, yes, exactly. Yeah. So it's not down to 9 seats; it's a little marginal increase at the cost of obviously BRS. Sorry. Yeah, Pooja, if you could go ahead. As I was speaking to you about, if you could unmute your mic and just. So
So I was saying I slightly disagree. The BJP's gains have been at the cost of Congress. Many people feel that if it wasn't for the BJP, the Congress could have very easily crossed 85. So a lot of anti-incumbency votes have been split between Congress and BJP. And even if the seat share does not reflect it, in many places BJP candidates have come either in second or third place, which goes on to show that maybe if the BJP was not present, Congress could have very well won those seats as well. But yeah, the trends are by and large sticking by what exit polls predicted. But the Congress is performing better than what most exit polls predicted, because they gave around 55 to 60, 65 seats to Congress. Now it looks like they will get a simple majority. And honestly, if we had been having this conversation a few months ago, nobody would have guessed that Congress can perform this well. In fact, there was a question of whether Congress can retain the position of the principal opposition party, or will BJP kind of take it away from them? Because if you look at the numbers from 2018, Congress had 19 legislators, TDP had 2, they were in alliance. But over the next few years, many of them defected to the BRS. And just before elections, Congress had just 5 MLAs in the Telangana Assembly. So that's almost negligible. That's less than MIM. Today, there has been a huge resurgence. And yes, Karnataka, I think, has been a big factor. Not just because it has given a huge morale boost for the cadre, but also somewhere Congress is now seen as a winning horse, right? Because it was almost written off in Telangana. It was unimaginable that KCR can be defeated. And today, Congress kind of divided its campaign in 2 parts. For the first 2 to 3 months of the campaign, they went after KCR personally. They mocked him. Those ads had to be taken down, but somehow they made him real. Because for people in especially rural Telangana, he was this larger than life figure, right? They almost felt indebted that he got the statehood for Telangana. So though they were angry, they couldn't possibly defeat KCR. That changed in the first 2 months of the Congress campaign, where they took pot shots at him personally, and of course, the governance as well. And then the Congress presented an alternative vision where they said, okay, this is where they have fumbled, this is what they've not delivered, and this is our vision. So they had targeted campaigns, they had a BC document, they reached out to minorities. And in my opinion, I think minority votes going to Congress, especially in rural Telangana, has been very, very decisive. Because pre-2014, the minorities did stick with the Congress. After that, it was split between MIM and BRS. And this time, MIM numbers have also come down, and their appeal for the minority voters to vote for BRS has clearly not worked. So that has been at least a game changer in about 20 to 25 constituencies, in my opinion. I must tell you this. I visited Telangana with a group of other journalists, extensive rural belt. We found that in every village, this is very strange. Out of 10 BRS voters, 4 were shifting to Congress. And this was also the observation of Yogendra Yadav, by the way. Then I had a chat with Yogendra Yadav after I came back, and Yadav said that there's a big wave, and he tweeted Andhi, and I was personally I was a bit scared of going that far, although I also saw 4 out of 10 shifting to, because the gap between BRS and Congress is so huge. Congress had 29% vote share, BRS 48 last time. So I said, how will the Congress bridge this gap? But actually they have done, they have brought BRS down and they moved up. And as she said, minorities. And we found many Muslims who told us in Hyderabad that the ulemas, the religious leaders this time, told them not to listen to Asad Owaisi and vote for Congress. So there was a clash between Owaisi's guidance and the ulema's guidance. It's very interesting. And and it's welfare schemes. Nobody was abusing KCR. As I said, women were showing bangle thing we got from our pensions, KCR. So this is strange. In spite of such a massive delivery of welfare, KCR still lost. So that means some voters said that we need 10 years, we need a change. In fact, Revant Reddy, when we met him, Revant Reddy responded to this very point. And he said the Nizam of Hyderabad was the greatest welfare deliverer. Even he had to at some point go. So
So that was the logic he used. So, and that's what has happened. So anti-incumbency, in a sense, playing out hugely in Telangana. Nilanjan, from your observation, these social welfare schemes that were promised by both the Congress and the BRS, but it doesn't seem to have worked in the BRS's favor, and it has lost out to the Congress in a huge sense. And the unequal development of Telangana has also, in a sense, come back to bite the BRS. Do you see that playing out as a factor? No, absolutely. I mean, it is. We'll still have to figure out a little more about why, despite such welfare delivery, it seems to have actually reached the ground. Why, when you actually talk to people, there is still a narrative of uneven development, right? True. There is a narrative that there's a bias in in the beneficiary list. There is a narrative of the MLAs have siphoned off money in this direction or that direction, right? Now, it is peculiar. MLA level anti-incumbency was there. You're right. And it is very peculiar because, in principle, this kind of the logic of this kind of social welfare delivery is that the chief minister and some bureaucrats are pushing a button from the top, and the money is getting to people. Right? That's exactly how this kind of cash into bank accounts works. So, what is it that? How is the MLA inserting herself or himself into this equation is unclear. If it has happened, it is either a mistake that the chief minister somehow made that has allowed these people to insert, or the bureaucrats have screwed up, right? Because actually, I mean, we work with a lot of states. We've done it. We've done. There's absolutely no reason why a lower level actor should be able to insert themselves into this process. So that's something we need to figure out, because certainly you heard it. Certainly you heard that there was that kind of anti-incumbency against MLAs and against some kind of bias. But from where it came, that is something that we need to sort of understand. A lot of congressmen didn't believe. 1 week before the election, they didn't. They said we may hit 50 to 55, but they never, at the ground level, they didn't believe they could get this performance. Yeah, and Pooja wants to come in on this. She has some insight on the social welfare schemes not really bringing back the BRS into power. Pooja, if you can unmute yourself and come in. No, I spoke to a few people who traveled about 60, 70 constituencies also, and they feel that, the Raita Bandhu and the Dalita Bandhu schemes, which the, KCR and the BRS party speak so much about, did not reach people in a uniform way. They have reached mostly BRS supporters, and that's where, that aspect of MLAs coming in the middle comes in, because it apparently in many, many villages seem like if you are from the party, then you are a beneficiary of these schemes. The MLAs did find a way to kind of, ensure that it is not uniformly distributed. Even in Dalita Bandhu, this was happening. And an internal survey of BRS did indicate this. About 40 MLAs were facing huge anti-incumbency. But despite that, KCR chose to repeat all of them, saying that I know better. Nobody, no survey can predict what will happen much better than me. And of course, looks like he has been proven wrong. But the fact is that it was a particular community, it was a particular party, followers of the party that were benefiting from the scheme, and there was anger against it. Particularly women felt that they were not getting the kind of benefits that they were being promised. That worked against BRS as well. At the same time, they tried very hard to make sure that the Congress government's promises in Karnataka to paint a picture that it has not been implemented. There are issues in its implementation. That's not feasible even. They ran campaigns in Telangana to prove that, but it doesn't look like that has kind of percolated to the ground. All right, stay on with us, Pooja. I want to cut across to Sujata right now. She's also reported from Telangana, and in her reporting, she has found that there was a wave of anti-incumbency also in terms of the massive policing in the state. 10,000 CCTV cameras, and the general sentiment among citizens is that the police state is getting too much. And Sujata, you want to come in on this? How do you see that having played out against the BRS? Can you hear me? Yeah. Am I audible? Yeah. Okay, it's not 10,000, actually, it's 10 lakh, okay? Okay, I KTR has corrected. said that in many interviews. 10 lakh CCTV cameras in the city of Hyderabad, it's like, everybody is under surveillance. And more than surveillance is the policing part also. It's not with respect only to the privacy issues and all that. You have, policing in every aspect of, life encountered by anybody in Telangana. You talk to students after the
the suicide of Pravalika in October, there was a massive protest on RTC crossroads, if you remember. The protest was just not about that day alone. It was the oppression. Any day after Telangana came, the state was born, I mean, KCR and BRS made sure there was no protest at all, and police were used in every part, in every front, and the students didn't have jobs, and they didn't have any means to even express. I just want to stop you there for a moment, Sujata, because we are getting in trends. Congress's Revant Reddy is leading against CM KCR and Kamareddy. Those are the latest trends coming in from Telangana. Sujata, please continue. Yeah, so it's students on the jobs front, and policing in every part. Okay, even the TDP voters, even they might not play a major role. They would have voted for BRS. Okay, but when Chandrababu Naidu was arrested, they made sure that there was no protest at all, and protesters were arrested right from the beginning, right from the day state was born. KCR made sure there was no protest. Police were used right, left, and center. The cardinal searches. People, it was not told about. I mean, it was not talked about by many political parties because they thought it's not an election issue, but it was an election issue. People were talking about it. People were talking about the atrocities of police. People were going through under the police regime, and it was there all over. Okay. And it finally translated to some amount of, not some amount, a lot of resentment against the BRS. Yes, definitely. Policing and surveillance did play a major role among students, among, protesters, among the civil society as such. If you remember, when KCR came to power, the first thing they did was close down the Dharna Chowk. And police was used in a major way. All right, Sujata, that's a very important insight that you're getting for us. That police state has seems to have caused Telangana and the BRS government in a massive way, and we are getting to see the vote share numbers that are also coming up on our ticker at the moment, with the Congress in Telangana getting about 39% of the vote share, and the BRS at about 37%. That's on your screens right now. Congress's vote share at 39.74%, the BRS at 37.9%, and the BJP at 14.02%. Nilanjan, how do you see the vote share figures and their impact on the results that we're seeing in that's coming in? I mean, so this is, I think, another example of vote share and seat share being dramatically different from each other. But I think, as Venu mentioned, I mean, given the gap that existed at one point between the BRS and the Congress, whatever the final vote share numbers look like, it's just an extraordinary shift from one election to the next. 48 to 34%. Yeah. This is like just huge fall. And I can't even think of, I mean, 15% fall. See, because we tend to put KCR in the camp of your sort of Patnaik, Mamta, these kinds of, welfareists who cannot lose so much in such a short period of time. But, clearly that wasn't the case. Compared to last time, he lost 14% vote share. Yeah, that's a massive vote share loss in the sense. And let's also shift focus at this point to Madhya Pradesh, which in a departure from all the other states, Madhya Pradesh has no anti-incumbency. We go by the trends that are coming in right now. BJP is leading on 163 seats, and the Congress is at the moment leading on 64 seats, and the BSP is leading on 2 seats, and others are at 1. So Shivraj Singh Chauhan, Nilanjan, this election was all about Shivraj Singh Chauhan. Initially, we saw that his wings were in a sense clipped by the BJP. They were not projecting him 6 months ago. Yeah, they were not projecting him in any way, and it was all Modi. And but Shivraj Singh Chauhan, in a sense, a lone warrior fighting on his own, parading his schemes of Ladli Behna, and the woman voter has become a massive player in the Madhya Pradesh elections, and he's kind of reordered his image to be Mama more than the bulldozer Mama that was fashioned a couple of months back, and with all the demolitions that took place in Khargone, of course, last year. But do you see this as a personal triumph of Shivraj Singh Chauhan? In a sense, he was not backed by his party as much, but he's gone ahead and he's delivered a huge mandate. Yeah, this is a huge mandate. I actually
This is the one state I had access to the raw data of a post-poll survey. And similar to Axis, we picked up very similar vote share percentages, 9 percentage point gap of support for the among you women. kind of anticipated that this guy Vote shares were looking like this, like what Axis. So had. therefore, you would retain the Yes. And it's all from women. So actually, men, even in the Axis data, I think it's like a 1 percentage point gap, something like that. Among women, there was a 9 percentage point advantage for the BJP. Big. This is a huge advantage, and it's across the board. Every community, every subgroup. And when we asked about Ladli Behna, we saw that at least 70% plus of the households, which is you typically have underreporting on having received a benefit, reported having received. And Nilan, just correct me if I'm wrong. And they delivered Ladli Behna in a matter of 6 months, right? Amazing. Yeah. From March, the speed of delivery. And they've also promised to increase the amount. Earlier it was 1,200, if I'm not wrong, and now it's going to be 1,500. So Shivraj Singh Chauhan, of course, coming in strongly in Madhya Pradesh. And the other factor that's played out in Madhya Pradesh is the fact that I'm coming to you on this, Venu, there was a massive sentiment of unemployment. The youth were disenchanted with the Shivraj Singh Chauhan government. Inflation was a huge issue. But he seemed to have defied all of that, and he's coming back to power. How do you see this playing out in the upcoming government, the unemployment and the inflation issues? See, here I want to say something. As I said before, MP is the only state which defied anti-incumbency. In spite of, anti-incumbency so far in other states has kind of neutralized welfare delivery also, right? It has overridden welfare. Here it has not. And Shivraj Singh Behna, as Nilanjan just said, I think the women are sticking by him. OBCs in Madhya Pradesh, massive lead BJP has over Congress. At least 25 percentage point leads, if I'm not mistaken from the Axis data. And I feel that employment, somehow the voter links employment and inflation to the center. Much more than to the state. In basic psychology, because it is a center which has been screaming from rooftop, starting from Modi, 2 crore job ek saal mein. Ye kar denge, wo kar denge, and inflation control, always center talks about controlling inflation, right? So that may play out more in the Lok Sabha polls. But you're right, Shivraj Singh Chauhan has defied Delhi. They were not projecting him until 5 months ago. Mr. Modi was not even having him by his side in some of the meetings. But later on, he suddenly appeared after last 2 months. He appeared, and now I can guarantee that BJP will find it very difficult not to make him CM. There is some buzz in the BJP circuit that some younger person should be made. Shivraj has run his course, but no, he's not. He's 64. He's much younger than many people. And if they don't make him a CM, there will be some disappointment which BJP can ill afford, because they're going into the Lok Sabha elections by 4-5 months. And Shivraj Singh has beaten Modi's record of longest duration as CM. Which will not make some people happy in the BJP, because they want Mr. Modi to retain all the records. It's a bit like in cricket. Somebody's breaking somebody else's record, and if they and by virtue of having broken Modi's record, I also anticipate that Shivraj Chauhan has made his claim for future prime ministership in the eyes of the RSS. By the way, the RSS is very fond of him. All right. On that note, I want to bring in Shiv Narayan, our reporter from Rajasthan, and let's get the trends coming in from Rajasthan at the moment on our screens, and we can just take a look at that. So the BJP also leading in Rajasthan with 111 seats, the Congress with 73 seats, the others at 13, and the BSP is at 2 seats at the moment. So as we were talking about earlier, in Rajasthan, it has by and large stuck to its pattern of revolving door governments. The incumbent Congress is out, and we are seeing that the BJP is set to form the government again, if going by these particular trends that we are getting at this moment. So let me go across to my colleague Shiv Narayan, who's covered Rajasthan for the Newslaundry. Shiv Narayan, how do you see these trends that are coming in a sense, Rajasthan sticking to the predictions in the past few elections that has taken place in the state, and the BJP is all set to form the government again, if we are going by the current trends?
Yeah, if we look at the trends, it seems that BJP is likely to form the government. But I will just give you a couple of things why Congress has not been able to capitalize on its welfare schemes. First is, in so many ways, this election campaign of the Congress was different from previous assembly elections. In 2003, when Congress lost, and at the time Ashok Gehlot was chief minister. At the time, his focus was also welfare schemes. By the time after losing election, he ruled the fact that he regret that he could not market welfare schemes. He could not take schemes to people in terms of awareness. At the time, they were reduced to 50 plus seats. In 2013, again, when the Congress lost, they were reduced to 21. It's worst tally in its history in Rajasthan. At the time, also he was at his wits' end. Like, what is wrong with the welfare schemes? What is the part where what are the areas where the Congress is not working properly? So this time he roped in a consultancy firm, Design Box, to market welfare schemes just in the run up to the assembly elections. So, and after, I mean, in the run up to the polls, there were so many posters about subsidized gas cylinders. There were Mehengai Rahat camps also, where people could go and register themselves and avail a lot of welfare schemes. And once the election dates were announced, the same firm helped the Congress government in its campaign. But again, that did not work out. So there are a couple of reasons why this this strategy didn't work for Ashok Gehlot, the because the Ashok Gehlot was at the center of the Congress campaign, and I mean, there was he gave an interview to Indian Express why Rahul Gandhi came so late in Rajasthan for campaigning. He said that the Rahul Gandhi trusted him. That's why Rahul Gandhi was late in campaigning in Rajasthan. So at the same time, there is a pilot factor also, as MK Venu and Nilanjan were discussing Gujjar votes and Jat votes. This time, Pilot was not as active as he was in 2018. At the time, he was Congress state president, and he would hold so many rallies in single day. This time, until 16th or 17th of November, if I'm correct, he was campaigning in Madhya Pradesh, and it made sense for Pilot because Pilot was nowhere on the posters, on Congress posters. So at the same time, the Gujjar votes. So Congress believed that Pilot would get Gujjar votes, especially in Eastern Rajasthan. But Gujjars knew that even if Congress comes to power, Pilot is not going to become chief minister. That's very interesting that you're mentioning there, Shivnarayan, that Pilot's voters and supporters have been disappointed for 2 elections in a row now. In the previous election, they wanted him to become the chief minister, but the Congress could not set its house in order. And we saw there was a revolt, in a sense, by Pilot. He came to Delhi and he protested against the paper leaks. And this time also, he's come in campaigning, as Shivnarayan's mentioning, he's come into the campaigning late and tried to project that the house is in order, but it's not really worked out. So do you think that the Congress's failure to kind of project a united stance convincingly has worked against it? Absolutely. Yeah. I mean, I think we have seen this movie played out so many times in last 5 years in Rajasthan. Whenever there were differences between Gehlot and Pilot, the central leadership would come in. They would hold meetings. Then there'll be rallies. Gehlot and Pilot holding hands. But it was I mean, they could not patch up. I mean, people say that they were money. Thanks, Yeah. Shivnarayan. I just want to get Nilanjan's perspective on this. The fact that they, as he was also mentioning, they've not been able to show this convincing united front, and that may have worked against it. No, absolutely. I mean, I think, as I said, on a personal level, Gehlot did not have much anti-incumbency, but the level of fractionalization among the Congress base was clear. I mean, I think we may have disagreed on how much it would hurt the Congress, but there was no doubt it was going to hurt the Congress. And there was no doubt it was going to benefit the BJP. I think the other thing that we've not talked about in Rajasthan, and
many people missed it except for the people who were in the field, is that we did see even in Rajasthan that there were among female voters, and female voters are hard to speak to, right? In Rajasthan, it's a very conservative society. You did see support for the BJP. So the Axis poll, for instance, got it wrong. And they got it wrong because it looked like they may have showed more yeah. women voters for Gehlot. Axis, I don't mean as a mirror. Axis has a bit of a women's problem, right? So Bihar, West Bengal, Rajasthan, these are all places where, you know, they sort of underestimate how much women matter to the vote, and then they get the direction wrong, right? And so we did definitely pick up, and I think other people in the field also picked up that among female voters, you did see a lot of people mentioning the BJP. Now, the reason there is a Hindi belt phenomenon. Modi is very popular among female voters in the Hindi belt. You're right. So if we take MP, Rajasthan, Chhattisgarh, of those 65 seats, in both 2014 and 2019, the BJP won 62 of them, right? I mean, they have more than 95% strike rate. Yeah. Modi is hugely popular in this belt. And so unlike Madhya Pradesh, where Shivraj was able to insert himself into the process, the BJP achieved winning very significantly in Rajasthan, and also casting aside Vasundhara Raje. But here, Nilendra, I just want to ask you a question here. I'm a bit confused because some time ago, Rahul Verma of CPR, you know him, he had written a piece in HT saying that relative to earlier times, BJP was slowly losing its popularity among youth and women. Is there some, I mean, how does that square with the what is shown in this election there? I mean, I think relative to the earlier times, yeah. I mean, look, I mean, I think the different states have been, you've read that piece, right? I have. I mean, look, based on what I saw, at least in Rajasthan, I would not agree. Or Madhya Pradesh. Is it a general India-wide phenomenon? That I don't know, right? I mean, I think there is certainly frustration about unemployment, as you mentioned, and that you can see in certain places in UP and so on and so forth. All right, I just want to interrupt you there because we are getting some questions from our viewers on YouTube, and let's just take a couple of that because we are also running short on time. So one of the questions that has come up is that, can you tell us about the Dalit Bahujan voting pattern in these elections? Is the BJP still getting their votes, or is there a sense of shift? And where does the BSP stand in these elections? You want to take this? Yeah. As I said, for this, you have to go to either CSDS's vote share data. I don't know whether CSDS has done caste-wise, but Axis has done caste-wise. Even if their Axis has gone wrong in Rajasthan, I mean, it showed Rajasthan and Chhattisgarh like kind of neck and neck, not necessarily anybody reaching half a mark. But what it clearly showed was that among scheduled caste, Congress has got back some of its mojo, earlier mojo. So its Axis shows about 3 to 4 percentage points lead over BJP among scheduled caste. Now, this trend was also visible in Karnataka and even Telangana and all. Even Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, yeah, Madhya Pradesh also. But again, as I said, the big elephant in the room is OBC. BJP still has 50% plus vote share, 55% among OBC in all these states. And Congress is in the late 20s. So it's a long catch up. And the Congress needs to rethink it. You know, it is not about caste census. Yeah, it's right. I mean, this is the we Congress don't know needs whether to caste census will work here. Yeah, so that's very interesting because the other question that we are getting in from YouTube from our viewers is that, is this the end of the caste census politics and of the old pension scheme? You want to comment on this, Nilanjan? So old pension scheme, I'll set aside because I think that actually the average person has very complicated views on. The caste because it worked in Himachal anyway. Exactly, right? That's what I'm saying. It works it's a bit more complicated. Depending on incumbency, anti-incumbency. But OBC and the caste census, I think, you know, the Congress needs to actually fundamentally rethink its position on this. This is not the 1990s, right? The political economy of caste at that time, the inability of the government to directly reach the voter with a benefit in the 1990s was a very real problem. So I, as a voter, knew that if I had to get benefits, similar to what was being said about Telangana, I needed representatives of my caste community locally, in the police, in the government, because that is what gave me benefits. Today, the game has changed on that dimension because of the way that direct benefit transfers work. The second thing that has changed is that certain ascendant dominant OBC communities, like the Jats and the Yadavs, right? Today, if you are a backward caste
that is not from one of these dominant groups, do you dislike the Brahmins more, or do you dislike the Yadavs more? Do you dislike the Thakurs more, or do you like? Right? These are complicated calculations, and you cannot simply reduce it to OBC and non-OBC. And so this kind of calculation is just something that hasn't made it into this language yet. Yeah, it is a. It has And it's a big North-South difference too. That's why the South doesn't have this kind of OBC South dynamic. doesn't have, because South has built its politics around, social empowerment over decades. So there is a more organic development of caste politics there. In the North, my experience is I covered the Rath Yatra. From there on, I covered the entire BJP's Ram Temple movement, and BJP involved a lot of OBCs in their temple. In the North, OBCs have, whether you like it or not, there is a Hindutva element which Modi has kind of managed to further fortify. So to bring them out of the Hindutva thing and to build a South type of social development empowerment politics will take time. I'm not rejecting caste census, but it has This to. is not about personal support for the caste census. It has to be packaged in such a way that people start trusting it, because in the first instance, caste politics was hijacked by, at least in UP and Bihar, by Muslim Yadav combination. That kind of discredited the caste politics and helped BJP. In the second Mandal 2.0, Congress and others, India Alliance, will have to demonstrate that it's really scientifically kind of packaging caste census and caste empowerment in such a way that it also overlaps with class. This is a point that Jafar Law recently made in a conversation with. Yeah, we're running short on time, so one final question just to our guests in the studio, that I think in the end we can kind of surmise that these elections, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, apart from Telangana, Modi is coming up as a big factor, which was not seen earlier in state elections, because people were believed to vote differently in state elections on local level. And vote differently in the central elections in the Lok Sabha, where Modi was a huge factor. But here we are seeing that whether it's in Madhya Pradesh or in Rajasthan or even in Chhattisgarh to a certain extent, Modi has loomed large, and that's the it's a new message coming out of state elections for the first time. You want to weigh in on this? No, so I think this is something Modi's been working at for a while, right? He is the social welfare provider in the country. That is how he has positioned himself. And actually, for a short period of time, other welfare chief ministers from the BJP were getting hurt by that, like Raman Singh, like Shivraj, although he's made a comeback, right? So that is certainly what he represents. And even casting aside locally strong BJP leaders, the BJP is able to hold forth, especially in the Hindi belt, because of the popularity of Modi and because of his association with delivery. Right, so I think that is very much there. You have a double-digit difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha elections, a double-digit vote share difference for the BJP between Lok Sabha and Vidhan Sabha. That will likely still hold, right? The national elections are different, but systematically, the idea for the BJP is to centralize elections to such an extent. Like, the optimal thing for Modi and Amit Shah is that every election is, even at the state level, run on Modi and not on some strong chief ministerial candidate, right? Except in Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, I think Shivraj had a role. They did not succeed in doing it, but they tried. In Rajasthan, they succeeded. Rajasthan. And one point I just want to make very quickly. We just have a minute left. Modi, but it will be unfair when some state is won, you give credit to Modi. And when it's lost, you say, no, he was nowhere on the pitch. So I think give credit to Shivraj Chauhan. While he's right that Modi has popularity among women and OBCs, that is uniform. Yeah. All right. So that's the big message coming in from the elections at this point, that Modi's factor is playing out in the Hindi belt once again. And there were questions that were raised about the leadership crisis in the BJP in these states, but it doesn't seem to have had any effect, and the BJP is surging ahead. I'm going to hand over to my colleague Pooja now, who's going to be bringing you the numbers, the trends that are coming in from all 4 states. And after that, Pooja is going to be handing over to our colleague Atul, who's going to be joined by new guests and reporters to take you through the next hour. Over to you, Pooja.
Thank you so much. I am bringing you numbers from 3 minutes ago, the latest numbers, and I'll start with Chhattisgarh. The current numbers are 54 for the BJP, 33 for the Congress. GGP is at 1, so is BSP and the CPI. Moving on to Madhya Pradesh, the BJP is surging ahead at 161. The Congress has been reduced to 66. BSP is leading in 2 seats. And moving on to Rajasthan, we'll start with the BJP, which is again at a formidable 112. The Congress is leading in 71 seats. Independent MLAs candidates are leading in at least 8 seats at this point, and BSP candidates in 2. And Telangana, we are seeing Congress at 64, way past the halfway mark. The BRS has been reduced to 40 from the 101 that they were at. The BJP is at 8, which is still an improvement of the previous tally. MIM has reduced its tally by 1. They're currently at 6. And CPI is leading in 1 constituency. Before I hand it to Atul, a quick appeal from all of us here. Our entire coverage and today has been not sponsored by any advertiser with vested interest or by any political party. You, the viewer, have completely throughout powered our coverage. We still have a couple of hours left. I request you to do your bit and support independent journalism. Over to you, Atul. इलेक्शंस ऑनलाइन 2023 में आप सबका स्वागत है। मैं अतुल चौरसिया न्यूज़लॉन्ड्री से हूं। 5 मीडिया संस्थान मिलकर एक साथ ये इलेक्शन चुनावी नतीजों की कवरेज लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान होंगे हमारे साथी।
विष्णु शर्मा हैं द कैरावन से। इसके अलावा बहुत जल्दी थोड़ी ही देर में द वायर के एडिटर इन चीफ सिद्धार्थ वरदराजन भी हमसे स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं, और साथ में ऑनलाइन हमसे सीएसडीएस के राजस्थान चैप्टर के संजय लोढ़ा भी हमसे जुड़ेंगे, और वो भी जो नतीजे आ रहे हैं उन पर अपनी राय रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ 3 रिपोर्टर ऑनलाइन जुड़ेंगे। बसंत कुमार न्यूज लॉन्ड्री से, याकुत अली जुड़ेंगे हमारे साथ द वायर से, और प्रतीक गोयल न्यूज लॉन्ड्री से। तो करीब करीब नतीजे सामने हैं। उन पर अब इन नतीजों की रोशनी में हम क्या बात कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये 5 मीडिया संस्थान जो एक साथ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मकसद है। स्वागत है, सिद्धार्थ वरदराजन हमारे साथ हैं। बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि डिजिटल मीडिया को एक तरह से ये कहा जा रहा था और बड़ी मांग आ रही थी कि बहुत बिखरा बिखरा सा है, तो एक कोशिश ये भी है कि सारी जो महत्वपूर्ण आवाजें वो एक साथ आएं, और वो इलेक्शन के नतीजों पर या खबरों की बात जो कि आजकल चिल्पों में, चीख चिल्लाहट में तब्दील हो गई है, हल्ले गुल्ले में तब्दील हो गई, बहुत हिस्टीरिया में तब्दील हो गई है, उसको एक सैनिटी भी दी जाए। आराम से बैठकर, शांति से बैठकर हम चुनावी नतीजों को थोड़ा सा समझ पाएं, उसके निहितार्थ को समझ पाएं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसको भी समझें। तो इस नियत से भी ये 5 मीडिया संस्थान एक साथ आए हैं, और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पूरे 8-9 घंटे के जो लाइव में हम आपसे मिल रहे हैं, इसमें ना किसी तरह का आपको विज्ञापन मिलेगा, ना कोई और कमर्शियल ब्रेक मिलेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह से आप, यानी जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, उनके समर्थन से हम ये लाइव शो आयोजित कर रहे हैं आज। और ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़ में, जो खबरों की दुनिया है, उसमें आपकी हिस्सेदारी आपकी से बढ़े, क्योंकि आज जो हमारे मीडिया की हालत है उसमें विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा है, और वो खबरों को संचालित करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ये 5 मीडिया संस्थान जो मिले हैं, उनकी ये कोशिश है कि खबरें विज्ञापन के चंगुल से, चाहे वो सरकारी विज्ञापन हो, सरकार के विज्ञापन हो, या फिर कॉरपोरेशन के विज्ञापन हो, इनसे मुक्त होकर जो पब्लिक इंटरेस्ट, जो मेन मुख्य काम है पत्रकारिता का, उस तरफ ध्यान फोकस कर पाएं, उससे न्याय कर पाएं। तो वो भी हमारा एक मकसद है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि करीब करीब जो अभी रुझान है, नतीजे जिस तरफ जाते दिख रहे हैं, वो करीब करीब आ गए हैं। तो अब हम एक बार मैं हमारे जो पीसीआर में मैं बोलूंगा कि एक बार जल्दी से जो चारों राज्यों के नतीजों के अभी तक आंकड़े हैं वो हमारे सामने रख दें। सबसे पहले मेरे सामने छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की 90 से 90 सीटों में रुझान सामने है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 55 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है, अदर्स 2 और बहुजन समाज पार्टी 1। ये छत्तीसगढ़ की बात हुई। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, और 230 सीटों के रुझान हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी 161 सीट पर, कांग्रेस 66, बहुजन समाज पार्टी 2 और अदर्स 1 सीट पर हैं। राजस्थान के नतीजे 199 सीटों की के रुझान हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी 112 पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 71 पर, अदर्स 14 पर, और बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर। तेलंगाना की 119 सीटों के रुझान है, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 65 सीटों के साथ सबसे आगे है। भारत राष्ट्र समिति 39 सीटों पर है, भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर, अदर्स 6 सीट पर। तो ये अब नतीजे हैं। करीब करीब ये माना जा रहा है कि इन्हीं रुझानों के इर्द गिर्द अंतिम नतीजे भी आएंगे। सबसे पहले मैं इस बातचीत को शुरू करना चाह रहा हूँ। सिद्धार्थ, में ये समझना चाह रहा था कि ये जो नतीजे आए हैं, तेलंगाना को थोड़ा सा हम अगर हिंदी पट्टी से अलग करके रखें, तो कांग्रेस पार्टी का कमोबेश जो हिंदी पट्टी में है, इस नतीजे के बाद लगभग सफाया जैसी स्थिति है। पहले से ही हम उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम उन राज्यों में देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरे, वहां पे ना ऑर्गेनाइजेशन है कुछ। इन तीनों स्टेट्स के जाने के बाद, इसमें से मान लीजिए एक तो पहले से ही नहीं था मध्य प्रदेश, लेकिन बाकी फिर आप आगे क्या कांग्रेस के का भविष्य देखते हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में उसकी क्या भूमिका देखते हैं? मैं सफाया लफ्ज शायद इस्तेमाल ना करूं। हाँ, मध्य प्रदेश के हवाले से तो वो लफ्ज ठीक लग रहा है जी, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लड़ाई अच्छी हुई है जी। वोटों का फासला, सीटों का फासला शायद
काफी ज्यादा है, वोटों का फासला 3-4% के आसपास इर्द गिर्द है। मध्य प्रदेश में फासला बहुत ज्यादा है। इसीलिए मुझे लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस रिकवरी के पोजीशन में दिख रहा है, मतलब नॉट इन दिस इस चुनाव में नहीं, लेकिन अगर हम पार्टी के भविष्य की बात कर रहे हैं उन राज्यों में, राइट। मध्य प्रदेश जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये गुजरात की ओर चला जा रहा है, कि भाई मुसलसल जो है भारतीय जनता पार्टी अपना जो है लीड बना रहा है, सरकार फॉर्म कर रहा है। हालांकि 2018 में तो कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, ये जो चुनाव है बीजेपी का जो वोट शेयर मतलब 2013 से भी ज्यादा जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश डेफिनेटली, सफाया लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रहा जो सवाल आपका राष्ट्रीय स्तर अगर भारतीय जनता पार्टी का इन 3 प्रदेशों में ये परफॉर्मेंस रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो 2019 में रिजल्ट आया लगभग वही आने वाला है जी, जहां पे एनडीए राजस्थान में 25 के 25 ले गया जी, मध्य प्रदेश में शायद छिंदवाड़ा को छोड़ के लगता है कि आप छिंदवाड़ा भी शायद कांग्रेस ना बचा पाए जी, और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 सीट जो है बीजेपी हार गई थी 2019 में, शायद कांग्रेस वो 1-2 सीट अपना बचा ले। लेकिन ऑलरेडी राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी मैक्स पोजीशन पे है, इसलिए इसके नेशनल इंप्लीकेशंस जहां तक इन 3 प्रदेशों का सवाल है इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम मनोबल की बात करें, अगर हम कांग्रेस के अंदर जो मोराल है काडर के और लीडरशिप का भी, जाहिर है कि इस शिकस्त के बाद कांग्रेस को जो लग रहा था कि भाई हम आगे बढ़ पाएंगे, बीजेपी को हराने के पोजीशन में है, उसके बारे में थोड़ी सी उनको रणनीति सोचनी पड़ेगी। और यहां मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया गठबंधन जो है, शायद कांग्रेस के नेताओं के सोच में इंडिया गठबंधन की अहमियत और बढ़ने वाली है। और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने एलाइड पार्टीज के साथ समझौता करने से पूरी तरह से इनकार किया, शायद इस पे थोड़ी सी रीथिंकिंग होगी, जो पोजीशन चेंज जो कांग्रेस के लिए मेरी नजरों में 2024 में हेल्प करेगा जी। तो ये मुझे लगता है कि इसका नेशनल, अगर हम हिंदी पट्टी की बात करें, दक्षिण भारत अलग अलग सवाल है। ये दिलचस्प बात है कि जो इंडिया अलायंस है उसकी स्थिति थोड़ी अब उसमें बदल सकती है, और उसमें जो रीजनल फोर्सेस हैं उनकी से बढ़ सकती है, क्योंकि हम देखें तो इन 4-5 राज्यों के मद्देनजर कांग्रेस ने करीब लगभग डेलिबरेटली जानबूझकर इंडिया अलायंस के आगे की बातचीत को करीब बंद कर रखा था। शायद उसकी भी यही मंशा रही कि जब ये नतीजे आएंगे तब ज्यादा उसमें बातचीत होगी। विष्णु, आपसे मैं पहली राय इस पर लेना चाह रहा हूँ, इसी राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर, कि आप इस नतीजे के बाद कांग्रेस की और साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी बात होनी चाहिए। लोग विज्ञापनों में बहुत थैंक यू मोदी जी कहते हैं, पर यहाँ पर लगता है कि ये थैंक यू मोदी जी वाली बात है, या फिर हम रीजनल लीडर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी क्षमता या उनके कारण ये जीत संभव हुई है? अतुल, थैंक यू। मैं जीत से ज्यादा मैं कांग्रेस की हार पे फोकस करना चाहता हूँ। मतलब बीजेपी लगभग एक ही मोड में हमेशा रहती है, इलेक्शन मोड में, लगातार रैली करती है, लगातार अपने कैडर को मोबिलाइज करती है, लेकिन कांग्रेस के साथ ये बातें दिखाई नहीं देती हमें। कांग्रेस में एक जीत होती है, उसके तुरंत बाद एक लथार्जी हो जाती है, एक हल्कापन आ जाता है। और मध्य प्रदेश चुनाव में तो ये बहुत दिखाई दिया है। लगभग पिछली बार ऐसा लगता है कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश के लिए एक लाइबिलिटी की तरह है जी। हमने देखा है कि अब आप आंकड़ों की बात करें, मेरे पास एक आंकड़ा है जिसमें मोदी ने लगभग 15 रैली की है और 1 रोड शो किया है मध्य प्रदेश में, और तेलंगाना में 8 रैली, छत्तीसगढ़ में 4 रैली। अब टोटल अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश बीजेपी ने 634 रैलीज की है। बीजेपी ने
सारे नेताओं ने राष्ट्रीय नेताओं ने, मोदी ने, सबने ये मिला केवल एमपी में है। एमपी में। जी। और अगर आप देखते हैं यही रैली का आंकड़ा कांग्रेस ने कितनी की है, तो 350, आधा करीब। जबकि कांग्रेस जीतने के लिए लड़, वो सीट बचाने के लिए लड़ रही थी। और हम कई बार सोचते थे कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, कैडर का मोरल भी डाउन था बीजेपी का, कि बार बार वही चेहरा भी एक कंफ्यूजन से शुरू से दिख रहा था। लेकिन ये कांग्रेस की हार नहीं है, मतलब बीजेपी की जीत नहीं है, कांग्रेस का काम ना करना मुझे समझ आता है कि कांग्रेस एकदम से लापरवाह हो जाती है। अब कमलनाथ की बात करें तो आखिरी के 7 दिन वो छिंदवाड़ा से हिले नहीं है। वो मध्य प्रदेश की कमान उनको दी गई है, लेकिन उनका काम होना चाहिए मध्य प्रदेश। राहुल गांधी ने इनफैक्ट 2019 के चुनाव के बाद कमलनाथ को और गहलोत को एक तरह से इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज भी किया था कि अपने बेटों के भविष्य की ज्यादा चिंता करते हैं इंस्टेड कांग्रेस की। जी, ठीक बात। हमारे साथ ऑनलाइन संजय लोढ़ा जी मेरे ख्याल से जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि उनको स्क्रीन पर लाया जाए। नमस्कार संजय जी। राजस्थान के नतीजों पर मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि राजस्थान को लेकर भी ये बात कही जा रही थी जो एग्जिट पोल्स के मुताबिक कि कांग्रेस को वहां पर एज है, और साथ में वहां पर जब हम लोग थे तो उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स थी अशोक गहलोत की, वो भी काफी उनकी चर्चा थी और उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती। बहुत सारे लाभार्थी भी थे, उसके गाँव में तमाम लोग मिले। तो ये नतीजे उससे अलग दिख रहे हैं। इसको आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे हमारे लिए? नमस्ते अतुल जी, वापस आपसे बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है कुछ दिनों बाद। और आज जब हम पहले बात कर रहे थे पत्रिका गेट पे जवाहर सर्कल में जयपुर में, जी, तब से लेके और आज जब परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं तो स्थिति काफी कुछ बदली हुई नजर आ रही है। देखिए, वैसे तो एक स्थापित जो समझ है राजस्थान की राजनीति की, तो ये परिणाम उस स्थापित समझ को और मजबूत कर रहे हैं कि एक प्रकार का ऑसिलेशन है या रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स राजस्थान के अंदर है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार और 5 साल बीजेपी की सरकार, तो उससे तो कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता। नतीजे बहुत स्पष्ट हैं। एक बहुत ही हैंडसम विक्ट्री बीजेपी की हमें देखने को मिल रही है। शायद 115 प्लस कुछ सीट्स होंगी और कांग्रेस के पास शायद 70 के आसपास सीट्स होंगी। मैं सिद्धार्थ की बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं कि मतलब अंग्रेजी में कहें तो कांग्रेस हैज बीन डिफीटेड बट नॉट डिस्ग्रेस्ड। जो पहले 2003 या 2013 में हुआ, जब 50 के आसपास तक कांग्रेस या 22 के आसपास तक कांग्रेस सिमट गई थी, आज वो स्थिति हाल फिलहाल नहीं लग रही है। आधी काउंटिंग से ज्यादा हो चुके हैं, अब शायद 7-8 राउंड्स बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्थिति कांग्रेस की नहीं होने वाली है। तो एक तो ये अंतर मुझे साफ नजर आ रहा है कि हाँ, रिवॉल्विंग डोर कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन रिवॉल्विंग डोर में भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति को उतना कमजोर नहीं होने दिया है जितना कि वो पहले हुई थी। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि जो पूरा पिछले 2-2.5 महीनों का जो इलेक्शन कैंपेनिंग हुई, प्रधानमंत्री की सभाएं इत्यादि, जैसा अभी हमारे मध्य प्रदेश के साथी बता रहे थे विष्णु जी, तो राजस्थान में भी नरेंद्र मोदी जी के 14 मीटिंग्स हुई, 2 रोड शोज हुए, ये सारी चीजें हुई थी। अमित शाह बहुत बार आए, दूसरे सेंट्रल मिनिस्टर्स आए, 3 राज्य के मुख्यमंत्री असम के, यूपी के और महाराष्ट्र के लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे थे। तो उसका प्रभाव, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उसका प्रभाव शर्तिया इस चुनाव के ऊपर कुछ इलाकों में पड़ा है। लेकिन मैं साथ ही साथ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो हमेशा मैं देता रहा हूं कि यदि हम 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद के विधानसभा चुनाव देखते हैं उत्तर पश्चिम भारत में या दक्षिण भारत में भी, जहां इसी लीडरशिप को रीजनल लीडरशिप की जगह प्रोजेक्ट किया गया था, वहां पे लोकसभा 2019 की तुलना में विधानसभा चुनावों में सब जगह बीजेपी के वोट परसेंटेज कम हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन ऑल दीज 3 states could be singularly attributed to, you know, the projection of Narendra Modi as the principal towering leader, which he is definitely. इसके अलावा कई चीजें हैं जिनके ऊपर हमको नजर डालनी चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी बात, अगर हम बीजेपी की जीत की बात करें, बाद में कांग्रेस की हार की भी हम चर्चा करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। तो जो माइक्रो मैनेजमेंट वाली जो बात है,
और जिस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क बीजेपी का आरएसएस के मार्फत है या दूसरे जो संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या वीएचपी हो, राजस्थान के अंदर हम लगातार ये महसूस करते रहे कि सोशल मीडिया के ऊपर लगभग 38,000 ग्रुप्स बीजेपी के द्वारा अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से युवाओं को इन ग्रुप्स के माध्यम से कैप्चर किया गया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आरएसएस का माइक्रो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ में जो कलेक्टिव लीडरशिप की बात की जा रही है कि एक लीडर को रीजनल लेवल पर प्रोजेक्ट न करना, मुझे लगता है कि हालांकि हमारे सर्वे के डेटा अभी तक मेरे पास आए नहीं है सीएसडीएस के, लेकिन मुझे लगता है कि यदि किसी लोकल लीडर को प्रोजेक्ट किया जाता तो बीजेपी में जिस प्रकार के अनुशासन है, आरएसएस का जो अनुशासन है, जो कांग्रेस की जो फियर था कांग्रेस का कि यदि हम कई एमएलए को बदल देते हैं, नए एमएलए नए कैंडिडेट्स लेके आते हैं तो उससे सिटिंग एमएलए नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनको नाराज नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी में उस प्रकार की स्थिति नहीं है। बीजेपी में जो हाई कमांड एक बार डिसीजन ले लेता है, एवरीबडी फॉल्स बैक ऑन दैट, उसके अलावा वो उस तरीके से बात नहीं करते। तो यदि लोकल लीडर को प्रोजेक्ट किया जाता तो हो सकता है कि स्थिति शायद और भी अच्छी बीजेपी के लिए हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं हम कांग्रेस के ऊपर की पिछले, जैसा आपने पहले भी बातचीत बस एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा संजय जी। 2-3 अपडेट है यहाँ पर राजस्थान से जुड़े, वो मैं बता दूं कि शांति लाल धारीवाल जो कि जिनको लेकर बहुत बवाल हुआ, बहुत वो था उनको टिकट देने को लेकर, वो बहुत छोटे वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं, 400-450 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। सचिन पायलट काफी अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो ये 2 अपडेट है। दिया कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो मैं हमारे साथ अगर हमारे रिपोर्टर बसंत और प्रतीक जुड़े हों, मैं उन लोगों से ये जानना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में सांसदों को और मंत्रियों को, 7 सांसदों को सिटिंग टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा यही स्थिति करीब करीब राजस्थान में थी, और 4 सांसदों को दिया गया था टिकट छत्तीसगढ़ से। तो इन लोगों के बारे में अगर कोई आंकड़ा हो, कोई वो हो, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारी टीम उनके परफॉर्मेंस के बारे में हमें जानकारी दे। सिद्धार्थ, आपने सुना ये पूरा, थोड़ा सा मैं स्कीम्स के बारे में जानना चाहूंगा। बहुत सारी स्कीम्स इस पूरे कैंपेन के दौरान सामने आई। एक उसमें बहुत बड़ी चीज थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। उसको लेकर बड़ी मिक्स सी राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत उल्टी दिशा में जाने वाला कदम है, लेकिन इसने थोड़ा सा एक तरह का मोमेंटम कांग्रेस को दिया था, चाहे वो छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश रहा हो या कर्नाटका, वहां पर उसका काफी वो दिखा एम्प्लॉयज के साथ, तो जहां पर बड़ी संख्या में। पर यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह से लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई खास उसका असर नहीं दिखा है। तो ये स्कीम आगे चलकर आपको लग रहा है कि अब इसमें एक किसी तरह का पार्टियां दोनों रिकैलिब्रेशन करेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी कोई कमिटमेंट किया नहीं, लेकिन कांग्रेस को इस पर फिर से रीथॉट करने की जरूरत होगी। कहना मुश्किल है। पोस्ट पोल सर्वेज शायद बता पाएंगे कि किस हद तक कौन सा अपील कांग्रेस का जो है लोगों तक पहुंच पाया। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और शायद बीजेपी को भी एक होलिस्टिक अप्रोच, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, उसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये स्कीम्स का जो दौर है, ये कि भाई चुनाव के टाइम आपने कुछ अनाउंस कर दिया, एमएसपी में बढ़ोतरी की जो रेट है, या ओल्ड एज पेंशन आप या विधवाओं का पेंशन आप 3,000 से 4,000 बढ़ा दोगे। मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि पार्टीज कोई विजन इकोनॉमी का और एक सोशल वेलफेयर सिस्टम का वोटर्स तक पहुंचाए। शायद कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि भाई अभी आपके पास मुश्किल से 6 महीने रह गए हैं, 4-5 महीने रह गए। आपका विजन क्या है? आप नरेंद्र मोदी सरकार को एम्प्लॉयमेंट के इशू पे भर के आप आलोचना करते हैं, लेकिन विकल्प आप आगे क्या बढ़ाएंगे? मुझे लगता है कि स्कीम से ज्यादा कांग्रेस को चाहिए कि कोई ऐसा एक विजन, कोई ऐसा प्रोग्राम जो न सिर्फ नौजवानों को, बल्कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो एक बड़ी तादाद में जो वर्किंग क्लास है, जो हिंदुस्तान की जो पेजेंट्री है, उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करे। और मुझे लगता है कि
शायद ये चुनाव हमको बता रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन, जैसे राजस्थान में जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो गहलोत साहब का जो स्कीम था, चिरंजीवी स्कीम, हर कोई कह रहा है कि भाई वो अच्छी तरह से वो चल रहा था, लेकिन ये एक वजह नहीं हो सकती कि इसलिए लोग आपको वोट करेंगे। आपका भी, आप सरकार हैं, आपका जिम्मा है कि आप लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम जो चीजें हैं आप मुहैया कराएं। तो आपने डिलीवरी की, तो इसकी वजह से ही आपको वोट मिले, ये मुझे लगता है कि गले से नहीं उतरता। मतलब कि आपको कुछ और देना पड़ेगा, एक विजन देना पड़ेगा, जो कांग्रेस में आज नहीं दिखता है। दूसरी बात, हालांकि ये स्कीम से जुड़ा नहीं है कहीं ना कहीं, और इससे पहले मेरे कोलीग जो है एमके वेणु इस बात को उठा रहे थे कि जो ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी सेंसस का जो तमाम पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका असर नहीं दिख रहा है। और सीएसजीएस का सर्वे बाद में हमको बताएगा, लेकिन एक्सिस पोल ने जो कुछ कंस्टिट्यूएंसी लेवल मध्य प्रदेश का डेटा दिया, तो वहां ओबीसी जो है अभी भारी मात्रा में बीजेपी के साथ है जा रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको एक एकमात्र इशू बना दिया है कि भाई जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद हम रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ हो सकता है कि कुछ प्रदेशों में, जैसे सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ओबीसी कास्ट हैं जो बीजेपी से हटके हो सकता है कि समाजवादी या कांग्रेस की ओर आए। बिहार में भी हो सकता है कि इसके कुछ असरात हो, लेकिन पूर्ण रूप से क्या इसको एक मतलब कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैजिक सिल्वर बुलेट कि भाई ये इश्यू आपको चुनाव जितवा लेगा, ऐसा नहीं लगता इन रिजल्ट्स को देख के। ठीक बात आप कह रहे हैं। बेसिकली मैं संजय लोढ़ा के पास भी जाऊंगा इसको लेकर। विष्णु, आपको जोड़ना चाह रही है जो सोशल जस्टिस वाले प्लान पे कांग्रेस की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, उसका कोई नतीजा उस तरह से नहीं आया। बिल्कुल, ये तो ऐसा इलेक्शन था जहां मुझे लगता है कि महिला आरक्षण बनाम सोशल जस्टिस था। बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश में देखते हैं तो महिलाओं पे रहता है, लाडली बहन योजना करते हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर आप वोट शेयरिंग देखेंगे तो महिलाओं की काफी बड़ी है, और इसीलिए बड़ी है क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहे हैं, और कई डीप फेक वीडियो भी कमलनाथ के चलाए गए कि मैं आऊंगा तो बंद करा दूंगा। इसका एक असर, एक डर तो था लोगों में कि कहीं नई सरकार बदलती है तो ये स्कीम भी बदल जाए। अब दूसरी बात, सिद्धार्थ सर यहाँ हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चुनाव होते हैं ना, जितनी भी बदलाव हमने देखे हैं शुरू से, इंदिरा गांधी के समय से भी, उसमें करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और कोई भी विपक्षी दल जो करप्शन को सेंटर मुद्दा बना पाती है वो हमेशा जीतती है। चाहे इंदिरा गांधी के समय हमने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हम देख रहे थे कि कॉफिन स्कैम था, पेट्रोल पंप आवंटन स्कैम था। उसके बाद हम देख रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार को तो एकदम करप्शन ही ले डूबा। कांग्रेस जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कोशिश तक नहीं करती है कि करप्शन जैसे मुद्दे को सामने हाईलाइट लाए, और मुझे लगता है ये सोशल जस्टिस के मुद्दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करप्शन एक ऐसा मुद्दा होता है जिसको भारतीय जनता बहुत शिद्दत से समझती है और उसके अंदर एक तरह से नाकार है इसके। बल्कि इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं 2 सेकंड। छत्तीसगढ़ में इल्जाम क्या है कांग्रेस के खिलाफ, खासतौर पे जो आदिवासी बहुल इलाके हैं बस्तर में वगैरह, वहां पे जब कांग्रेस के, जैसे कोंटा में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, कांग्रेस बनाम सीपीआई, मनीष कुंजाम आगे पीछे उनका चल रहा है। इल्जाम कांग्रेस पे ये है कि भाई आपने आदिवासी एम्प्लॉयमेंट की बात की कि शिक्षकों को आप उनका भर्ती कराएंगे, लेकिन पता चला कि बहुत सारे फंड्स कलेक्ट किए गए और नियुक्ति जो है और लोगों की गई। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को एक एटीएम मशीन जैसे कहा जाता है ना कांग्रेस पार्टी के लिए, जो बाकी चुनाव लड़ने हैं वगैरह, तो एक जो है कांग्रेस का स्टेट था, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन जो है, मतलब नॉट ओनली वो बीजेपी के खिलाफ इसको यूज नहीं करें, लेकिन बीजेपी को आप हथियार के तौर पे पेश करें। और ये जो महादेव इशू, पता नहीं कितना उसमें सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन सेकंड फेज में तो उसमें नुकसान ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार संजय लोढ़ा जी से फिर से लाना चाह रहा हूं उनसे। ये जो सोशल जस्टिस वाला मुद्दा हुआ, ओबीसी को लेकर बहुत कांग्रेस पार्टी एक असर्शन दिख रहा था कि वो जातिगत आरक्षण, वो जनगणना करवाएगी, तो ये सारी जो चीजें चल रही थी,
आपको लगता है कि राजस्थान या मध्य प्रदेश, मैं पहले भी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था, कि मुझे लग रहा था कि ये एक तो वोट के रूप में नतीजों में दिख रहा है कि वो इतना बड़ा आपके लिए वोट बैंक या जिताऊ मुद्दा नहीं बन रहा है। दूसरे, ये राज्य इस मुद्दे के लिए मुफीद हैं क्या, जहां पर इतनी ज्यादा फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है पॉलिटिक्स में पूरी? अतुल जी, जैसा अभी सिद्धार्थ ने मेंशन किया था सीएसडीएस के बारे में, तो ये वाला जो सेंसस का कास्ट सेंसस वाला इश्यू है, उसको लेके हमने जो प्री पोल सर्वे किया था नवंबर के प्रारंभ में, तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं बहुत ही स्पष्ट हैं कि यदि आप दो चीजों को मतदाता के सामने रखते हैं, एक तो है कास्ट सेंसस का मुद्दा और दूसरा है तीन चार मुद्दे जैसे हिंदू राष्ट्रवाद की बात है या कन्हैया मर्डर की बात है या गौ वध या इस तरह के इश्यूज की बात है, तो कास्ट वाले सेंसस को लेके कुछ लगभग 40% मतदाताओं ने जरूर कहा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट एक इश्यू है। लेकिन जब हम दूसरे सेट के इश्यूज पर आते हैं तो वहां लगभग 2/3 से लेके 3/4 हमारे उत्तरदाता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे लिए, हम इन आधारों पर वोट देंगे। तो जितना रेजोनेंस कास्ट सेंसस का कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी, और राजस्थान में तो जैसा आप जानते हैं कि बहुत लेट ये इश्यू आया, राजस्थान के अंदर जो पूरा फोकस इलेक्शन के ऊपर रहा या इलेक्शन से पहले रहा वो वेलफेयर स्कीम्स का रहा था। और एक नई चीज भी अशोक गहलोत साहब ने की थी जब उन्होंने विजन की बात अभी सिद्धार्थ कर रहे थे, विजन 2030, मिशन 2030 राजस्थान, इसको लेके 2-2.5 महीने तक पूरे राज्य में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मोबिलाइजेशन की थी, कवायद की थी, तो वो एक प्रयास किया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर, यद्यपि एक एनालिसिस जो राजस्थान के चुनावों की हम हमेशा करते आए हैं कि कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राजस्थान की राजनीति में, पर साथ ही साथ में यदि राजस्थान की सोशल डेमोग्राफी को आप देखें तो स्पष्ट है कि लगभग 45% मतदाता राजस्थान के अंदर ओबीसी के हैं और 9% मुस्लिम हैं, लगभग 17% एससी हैं, 13% एसटी हैं और 20 से 22% जो अगड़ी जातियां हैं। यानी ओबीसी का जो कंपोजिशन है या शेयर है वो लगभग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल वोटर्स हैं। तो यदि ओबीसी, आज जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं कि ओबीसी में उस तरीके का ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में जो ओबीसी हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इस पे एक रीथिंक करने की आवश्यकता कांग्रेस को रहेगी कि क्या कास्ट सेंसस के माध्यम से बिहार में हो सकता है, यूपी में हो सकता है, दूसरे राज्यों में कास्ट सेंसस की बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन एक फ्रेगमेंटेड, सोशली फ्रेगमेंटेड जो स्ट्रक्चर राजस्थान का है उसमें संभवतः कास्ट सेंसस की बात इतनी ज्यादा वोटर्स के साथ रेजोनेट नहीं करे। ठीक बात। एक बार हम चारों राज्यों का जो अभी ताजा रुझान है उसकी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के अभी एकदम ताजा जो नतीजे हैं उसमें रुझान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 55 सीट, कांग्रेस पार्टी 32 सीट, अदर्स 2 और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को मिल रहे हैं 39 सीट, कांग्रेस को मिल रही है 65 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 9, अदर्स को 6। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 112, कांग्रेस को 71, अदर्स को 14 और बहुजन समाज पार्टी को 2। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 66 और बहुजन समाज पार्टी को 2, अदर्स को 1। तो ये अभी तक का ताजा आंकड़ा है। हमारे साथ अभिनंदन शेखरी हैं। ओके, तो हमारे साथ बसंत और तबस्सुम भी हैं। मैं उन दोनों लोगों को चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन पे लाएं। मैं छत्तीसगढ़ के नजरिए से एक बार बसंत से समझना चाह रहा हूं कि जब 2 फेज में हुए, पहला जो 7 नवंबर का था और फिर 17 नवंबर का, इस बीच में क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव आया, उसको मैं थोड़ा सा समझाएं। जो नतीजे अब आ रहे हैं और जो वहां पर रहकर आपने देखा, बसंत, क्या चेंज हो गए, बदलाव, क्यों इतना अंतर दिख रहा है नतीजों में? क्या आपका अनुमान यही था? नहीं, मेरा अनुमान ठीक इसके उलट था। मुझे लग रहा था कांग्रेस 50-55 के बीच रहेगी और बीजेपी 35-40 के बीच। लेकिन बिल्कुल उलट है अभी तक के जो है। लेकिन अभी भी कई जगहों पे जो काउंटिंग का है कि अभी 15-16 राउंड बचा हुआ है,
तो मुझे एक जर्नलिस्ट बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ का चुनाव एकदम रात तक खिंचता है, कभी देखना होगा। आपने पहले एक सवाल बोला था कि छत्तीसगढ़ में जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। तो दो मैं जल्दी में दो का ही निकाल पाया। दीपक बैज जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है, और चित्रकोट जो बस्तर का एक इलाका है, वहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वो लगभग 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी तक वहाँ 18 राउंड की काउंटिंग होनी है, 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और विनायक गोयल हैं जो बीजेपी के हैं, वो 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पाटन, जहां से मुख्यमंत्री खुद कैंडिडेट हैं भूपेश बघेल, और उनके सामने है विजय बघेल जो सांसद हैं, वो बघेल से लगभग 5500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और वहां भी 18 राउंड की काउंटिंग होनी है, 9 राउंड की काउंटिंग हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग है, पाटन से ही अमित जोगी चुनाव लड़े थे, अजीत जोगी के बेटे, उनको महज 2371 वोट अभी तक मिले हैं। तो ये है, तो अभी तक ये स्थिति है। और जहां तक तब मैं लोगों से बात करता था, किसानों से बात करता था, तो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। लेकिन कुछ साइन मिले थे जो मुझे लगा था कि ये अच्छा संकेत नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। जैसे मैं अंबिकापुर गया हुआ था, और अंबिकापुर से टीएस बाबा जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए आखिरी दिनों में, वो कैंडिडेट है अंबिकापुर में। और मैं सोचा उनके घर गया, वो थे नहीं, तो मैं सोचा कांग्रेस दफ्तर जाके थोड़ा देखते हैं क्या माहौल है। शाम के 6:30 बज रहे थे, और अंबिकापुर में कांग्रेस का दफ्तर पे ताला लगा हुआ था। और चुनाव के 5 दिन पहले की बात है, मैं 10-11 तारीख की बात कर रहा हूँ, 10 तारीख की, 9-10 की। तो जिस पार्टी का, जो पार्टी मैदान में है, सरगुजा का क्षेत्र, वहां पे ताला लगा हुआ है। जब जिस दिन मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा, सबसे पहले कांग्रेस दफ्तर गया, 10 बज रहे थे सुबह सुबह। तो वहां पे एक नगर निगम के कर्मचारी थे जो सफाई का काम करते थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही बात कर रहा था बाहर चाय की दुकान पे, तो मैंने पूछा और क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी, ऐसे मजाक में। तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने बोला आप कांग्रेस दफ्तर में सफाई का काम देखते हैं, और आप बीजेपी की बात, मतलब हिंदू राष्ट्र मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो बोला नहीं नहीं। फिर मैंने थोड़ा और बातचीत की, तो उसने कहा कि सैलरी कम मिले कुछ नहीं, लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये 2-3 लक्षण ऐसे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी है कि किसान वर्ग काफी खुश था, जो हमें दिख रहा था। और किसानों का ये कहना था कि बघेल ने दिया है, बीजेपी नहीं दी है, तो हम बघेल को चुनेंगे। एमएसपी का बड़ा मुद्दा था धान की खरीद में, जो उन्होंने 3100 करने का। एक सीट का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ, साजा विधानसभा क्षेत्र, जिसपे मैंने स्टोरी भी किया था। बीजेपी वहां से जो एक्सपेरिमेंट की है, जिसका आलोक पुतुल सर पहले जिक्र कर रहे थे, एक ऐसे ईश्वर साहू नाम के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिनके पास घर नहीं है। उनके घर में 2 कमरे हैं, एक में दरवाजा तक नहीं है, बेहद ही गरीब परिवार से हैं। और उनकी पहचान बस इतनी है कि उनके बेटे की कम्युनल राइट्स में हत्या हुई थी। और अभी जो उनके सामने है वो है रविंद्र चौबे, जो 7 बार के विधायक है। और साजा विधानसभा क्षेत्र पे उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके बड़े ताऊ रविंद्र चौबे के विधायक रह चुके हैं पहले। 7 बार से ये खुद है। अच्छा। और अभी की जो स्थिति है, वो लगभग 1800-1900 वोटों से रविंद्र चौबे पीछे चल रहे हैं। तो ये स्थिति है, और वो जो ईश्वर साहू हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथ स्टूडियो में इस समय अभिनंदन शेखरी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैं कुछ विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं चैनल्स पर आता था इलेक्शन के दौरान, जब मैं ब्रॉडकास्ट चैनलों पे आता था, वहां आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहां पहुंच जाता था। मैं यहाँ बस इतना कहना आया हूँ कि ये पूरा जो आप प्रोडक्शन देख रहे हैं सुबह से अब तक, और अभी और ये 2-3 घंटे चलेगा, ये किसी सरकारी पार्टी की सौजन्य से नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सौजन्य से नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं करता, ना कोई कॉरपोरेशन, ना कोई उद्योगपति। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से चलता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि 5 जैसे कि स्क्रोल, वायर, न्यूज मिनट, कैरावैन और हम साथ आए हैं, एक कोलिशन बनाए मीडिया का, जहां आप भी सहयोग दे। तो आप जहां भी ये देख रहे हैं, उसके नीचे शो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा। अगर आप उस लिंक पर जाके योगदान दें, तो हम एक ऐसा कोलिशन बना सकते हैं कि मीडिया को सरकारी विज्ञापनों और उद्योगपति विज्ञापनों से वापस लेकर जनहित में जो जर्नलिज्म होना चाहिए वहां तक ला सकते हैं। मैं बस ये कहने आया हूँ, ज्ञान पेलने के लिए हमारे पास बहुत बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज है। तो अब आप सब हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, मैंने तो रिपोर्टिंग कब से नहीं की। तो थैंक यू वेरी मच, सहयोग दीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। तो यही मैं भी कहूंगा कि सहयोग दीजिए, ये ताकि ये 5 संस्थान मिलकर आगे और भी अच्छे से और बड़े पैमाने पर
क्योंकि आगे आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो हम उसको और भी प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से, एक्सटेंसिव तरीके से कवर करना चाहेंगे। हमारे साथ तबस्सुम भी हैं। तबस्सुम, आप जिस तरह से नतीजों को देख रही हैं और जब हम ग्राउंड पर थे तब क्या हालात थे, थोड़ा सा अगर आप हमको अब नतीजों की रोशनी में बता पाएं कि क्या शायद बीजेपी के लिए काम किया, क्या शायद कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा था। जी जरूर। दो तीन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 1 घंटे में। अगर हम ग्वालियर चंबल बेल्ट में देखें तो दतिया जो है, जहाँ पे नरोत्तम सिंह मिश्रा कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी पीछे है अभी के जो राउंड्स की काउंटिंग है। दिल्ली रोक दूं मैं, ये नरेंद्र सिंह आहत मिश्रा इनका नाम है, ये इनको कहा जाता है आहत मिश्रा, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पर एक के बाद एक हर दिन सुबह इनके बारे में माना जाता था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और किसी एक चीज पर बैन लगाने, एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते थे, बतौर गृह मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के। तो इनका आहत मिश्रा लोग कहते हैं। हाँ, जारी कर। निवास के अंदर फगन सिंह जो है वो अभी पीछे लैग कर रहे हैं। तो ये हैवी वेट्स थे बीजेपी के, जिनको डाला गया था इंश्योर करने के लिए कि ना ही बस वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बट आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी अफेक्ट करे। अगर हम वो देखें तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में ऑलमोस्ट सारी सीट्स उनका एक इन्फ्लुएंस रहा है। इंदौर हमेशा से बीजेपी का एक सीट भी रहा है और कैलाश विजयवर्गीय के आसपास राव के एरिया में भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। जीतू पटवारी कांग्रेस के बहुत पॉपुलर फेस है, वो अभी इलेक्शंस में पीछे चल रहे हैं। वो यूजुअली पिछले 2-3 टर्म से वो जीतते आ रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय का हम जहाँ इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, वहाँ ग्वालियर चंबल में थोड़ा बहुत दतिया और इधर निवास के एरिया में हमको डाउटफुल लग रहा है कि बीजेपी जीत पाएगी या नहीं। तो वो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगर हम साउथ वेस्ट बेल्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का, ये प्रॉपर कांग्रेस वोट बैंक है। 2018 के इलेक्शंस में यहाँ पे कुछ अराउंड 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स थी, जिसमें ज्यादातर वोट्स कांग्रेस को गए थे, कुछ 4-5 सीट्स बीजेपी को गई थी। अगर हम अभी देखते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स, तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बीजेपी ऑलमोस्ट 50% सीट्स पे लीड कर रही है। ये ह्यूज डेवलपमेंट है। दिस शोज कि जो कांग्रेस के लॉयल वोटर्स है वो लोग शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स बीजेपी। और इस एरिया में माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर लाडली बहना का इम्पैक्ट दिख रहा है बहुत ज्यादा। जब मैं इस एरिया में टूर भी की थी तभी मुझे लोगों ने बोला था कि जो हमारे अकाउंट में पैसा देगा हम उसको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल पे आउट्स वाला जो स्कीम है वो मध्य प्रदेश के लिए वर्क करता है, वो हम देख रहे हैं। 2018 में देखा हमने, हम अभी फिर से देख रहे हैं। तो ये अभी के लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं। ये आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो काफी सारा कांग्रेस के काफी सारे लोगों से जब मैं सुबह से बात करी हूँ, वो कमलनाथ के ऊपर काफी कुछ ब्लेम कर रहे हैं इलेक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर, कैंपेनिंग को लेकर। कई सारे कांग्रेस यूथ के नेताओं से मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि जो एक कर्नाटक इलेक्शंस के चीफ आर्किटेक्ट थे सुनील कोनुबल, उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तेलंगाना में भी और मध्य प्रदेश में भी। बट मध्य प्रदेश में इलेक्शंस के कुछ दिन पहले ही कमलनाथ और उनका डिसएग्रीमेंट हुआ और कमलनाथ उनके आइडियाज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो एक वो जो आइसोलेटेड वे ऑफ वर्किंग है वो कमलनाथ का इस बार इस इलेक्शंस में दिखा है और उसकी वजह से आई थिंक कांग्रेस को एक बहुत बड़ा हिट हुआ है। तो अभी तक इतना हमारे सामने आया है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वहां पर जब हम लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे तो बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ही ये बात थी कि एक कमलनाथ एक किस्म की पैरेलल कांग्रेस यहाँ पर चला रहे हैं। और वो कई घटनाएं हुई, जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश के साथ जो तू मैं हुई, या इंडिया अलायंस को लेकर, या भोपाल में जो वहां पर इंडिया अलायंस की सभा होने वाली थी, पब्लिक रैली, उसको दरकिनार करना। तो ये सारी चीजों से एक किस्म का ये था कि सेंट्रल लीडरशिप और मध्य प्रदेश की जो यूनिट थी जो कि कमलनाथ के अंडर में काम कर रही, दोनों के बीच में उस तरह का कोई मेल मिलाप या कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था। एक चीज और तबस्सुम आपसे जानना चाहूंगा, 7 जो एमपीज और सेंट्रल मिनिस्टर्स को उतारा था बीजेपी ने, उनकी स्थिति आपके पास कुछ रिपोर्ट है उनके बारे में? जी हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निवास में फगन सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय इज अहेड। दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा उनका थोड़ा वो चल रहा है पीछे, वो उनके चांसेस थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं। दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमार अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, लेकिन आधे घंटे पहले पिछले राउंड में वो पीछे चल रहे थे। तो उनका रविंद्र तोमार के साथ कंटेस्ट है दिल्ली में। रविंद्र तोमार भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कांग्रेस के, उन्होंने काफी प्रचार वगैरह किया है। ये कुछ हैवी वेट्स है। प्रहलाद पटेल इज लीडिंग, वो आगे चल रहे हैं।
और अगर हम दूसरे की प्लेयर्स का देखें तो जैसे रघुगढ़ में जयवर्धन हुए, वो अभी आगे चल रहे हैं। झाबुआ के अंदर विक्रांत भूरिया पीछे चल रहे हैं। विक्रांत भूरिया कांग्रेस के युवा नेता के स्टेट हेड है। उनका सीट अज्यूम किया गया था कि वो जीतेंगे, बट झाबुआ के अंदर अभी वो भी पीछे लैग कर रहे हैं। इट इज अ बिग लॉस फॉर कांग्रेस इन अ सेंस, क्योंकि उनकी कुछ शॉर्ट सीट्स है, जीतू पटवारी, विक्रांत भूरिया, वो लोग ऐसा लग रहा है कि वो लोग लूज आउट कर देंगे। जी इसके अलावा राजनगर जो छतरपुर में सीट है, विक्रमनाथ पीछे चल रहे हैं। वो बहुत सालों से ही इज बीन दी एमएलए। नरसिंहपुर में जैसे मैंने आपको बताया प्रहलाद पटेल लीड में है। शिवपुरी में बीजेपी लीड कर रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ लीड कर रहे हैं। ग्वालियर में प्रद्युमन सिंह तोमर लीड कर रहे हैं। ये सिंधिया फैक्शन के साथ स्विच किए थे बीजेपी में। अराउंड 18 एमएलए सिंधिया के साथ स्विच किए थे, जिनको टिकट्स मिली है इस बार इलेक्शंस की बीजेपी की तरफ से, और ज्यादातर उसमें से जो है वो लोग लीड कर रहे हैं अभी अपनी ज्यादातर चुनाव अपनी सीट जीत रहे हैं। मतलब आप कुछ तबस्सुम से पूछ सकते हैं कि जबलपुर पश्चिम का क्या हाल है, क्योंकि वहां पर कई बार के सांसद राकेश सिंह को बीजेपी ने उतारा था, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट के खिलाफ। कोई अपडेट है उनके बारे में तबस्सुम? जबलपुर में मैं जो ओवरऑल देख रही थी उसमें मुझे बीजेपी लीड करते हुए दिख रहा था, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि जबलपुर के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में इस बार कांग्रेस जीती थी। तो एक वहां पे माहौल था कि शायद इस बार कांग्रेस एक स्विच हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा से बीजेपी का वोट रहा है। बट यहाँ पे मेजरली जबलपुर की मोस्ट ऑफ द सीट्स विष्णु का स्पेशल इंटरेस्ट था, क्योंकि विष्णु जबलपुर से खुद है, तो विष्णु को लगा कि जबलपुर का अपडेट ले लिया जाए। से ही हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि तरुण भानोट का काम एक्चुअली बहुत अच्छा था, काफी उनकी रिस्पेक्ट थी। एकमात्र कांग्रेस लीडर थे जो जनता में खुले हुए थे, मतलब आप जब भी जा सकते थे उनके खिलाफ। और राकेश सिंह की इज्जत एकदम जा चुकी थी, सवाल नहीं पूछते, कुछ नहीं करते संसद में। राजस्थान की एक सीट का नतीजा हमारे सामने आ रहा है, और दिया कुमारी जो कि बहुत स्टार कैंडिडेट थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 71,000 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। मैं सिद्धार्थ एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो तबस्सुम ने कहा, एक जगह पर कैश इंसेंटिव स्कीम बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है, दूसरी तरफ कैश इंसेंटिव की स्कीम जो है अशोक गहलोत ने बहुत सारी शुरू की, चिरंजीवी योजना से लेकर वो काम नहीं कर रही है। तो ये जो कैश इंसेंटिव वाली चीजें हैं, लगता है कि श्योर शॉट हो जाएंगी, पर कहीं काम करते हैं कहीं नहीं काम करते, तो इसको कैसे हम देख पाए? मेरा हमेशा मानना है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ स्कीम से आप नहीं जीतेंगे जी। स्कीम्स के अलावा आपको कुछ और चाहिए, और वो मिसिंग फैक्टर जो है, जो मैं आप उसको विजन कह लीजिए, या एक वोटर के साथ लगाव, या जैसे बीजेपी ने हिंदुत्व के इशू को बना के, मतलब इस चुनाव में शायद इतना खुल के उसका प्रचार नहीं हुआ, लेकिन लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो एक इशू रहा है, और मध्य प्रदेश में खास तौर पे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से भी एक सपोर्ट बेस बन जाता है, जिसके चलते ये स्कीम्स मतलब दे सर्व, अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कि भाई ये चीजें और आपके लिए कामयाब हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास वो विजन नहीं है, अगर आपके पास एक अटैचमेंट वोटरों के साथ या कोई ऐसा नहीं बन पाता जी, तो शायद ये आपके लिए काम नहीं करते। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट वोटर के साथ, और जहां तक संजय की बात, मतलब शायद सीएसडीएस के सर्वे के अलावा ये जो नतीजे हैं जी, ये हमको बता रहा है कि सारे भारत में जो ओबीसी कास्ट सेंसस का जो इशू था, जो राहुल गांधी ने पकड़ लिया, खरगे साहब ने पकड़ लिया, कि उनको लगा कि बहुत बड़ा ये बन सकता है, और लोग कहते हैं कि भाई मंडल 2.0 जो है, कमंडल 2.0 को हराएगा। शायद ये लॉजिक पूर्ण रूप से भारत के लेवल पे कामयाब नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल इशू जो आप कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ, और वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर हमारे साथ संजय लोढ़ा हो तो हम उनसे भी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि जो कैश इंसेंटिव के मामले में कैश बेनिफिट्स जो होते हैं डायरेक्ट, उसको वो जनता के ऊपर किस तरह से असर डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत, हमारे सामने इसी नतीजों को देख ले तो बड़ा मिक्स है, एक स्टेट में किसी तरह से वो असर करती है, दूसरे स्टेट में दूसरे तरह से असर करती दिख रही है। हाँ अतुल जी, पहले भी मैंने इस बात को एम्फेसाइज किया था कि
जो ये वेलफेयर स्टेट वाला एक जो कॉन्सेप्ट था जिसको लेके अशोक गहलोत आगे बढ़े और पिछले साल 1.5 साल के अंदर उन्होंने एक के बाद एक कई तरीके की वेलफेयर स्कीम्स, कैश इंसेंटिव्स, पेंशन को लेके विधवाओं के लिए या बिजली को लेके या अन्य प्रकार की जो स्कीम्स थी, तो मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि इसका कोई असर नहीं हुआ। इनका डेफिनेटली असर हुआ है और हमारे जो सर्वे रहे हैं प्री पोल सर्वे में भी और डेफिनेटली पोस्ट पोल के डेटा जब मेरे पास आएंगे तो उसमें भी ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। जो मैंने पहले भी शेयर किया कि अब तक हमने जितने सर्वेस किए हैं, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, हम हमेशा ये बातें पूछते हैं लोगों से कि आप इन स्कीम्स के बारे में आपने सुना है क्या, सुना है तो आपको फायदा हुआ है क्या। ये पहला चुनाव और पहला चुनावी सर्वेक्षण हमारा था जहाँ लोगों ने कहा कि हाँ हमने इनके बारे में सुना है और लगभग 2/3 से 3/4 हमारे उत्तरदाता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यस वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दीज स्कीम्स। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्या उस एक्सेप्ट जो बेनिफिशियरीज रहे उन्होंने अपना वोट दिया या नहीं दिया। यहाँ पर मैं ये मानूंगा कि उससे कांग्रेस को फायदा हुआ है, अन्यथा ये जो 72-73 सीटें उनको दिखा रही हैं शायद ये भी कांग्रेस को नहीं मिलती। दूसरी बात और भी है जो कि किस प्रकार से ये सर्विसेज दी जा रही हैं और कितने लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। जब ये राजस्थान मिशन 2030 की बातचीत हो रही थी कि कई संवादों में मैं भी था, आईडीएस जयपुर की तरफ से मैं गया था इन संवादों के अंदर और मैंने ये ग्रीवेंसेस जो कमेटी है उसके अध्यक्ष से भी पूछा जो कि मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक हैं कि आप सब बोलते हैं कि ये सब मतलब गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऐसा कई तरह के कानून आप लेके आए हैं, लेकिन इफेक्टिवली कहाँ तक लोगों को इनसे इन चीजों से फायदा मिल रहा है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। जैसे मैं हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पिछले 2 सालों में नई कॉलेजेस खुले हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन उन कॉलेजेस की स्थिति बड़ी खराब है। वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी में किताबें नहीं है। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस खोलने से क्या फायदा कि जिस पर्पस के लिए उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है वो फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से कई साथी ऐसे भी हैं मेरे पत्रकार मित्र जो कह रहे हैं कि चिरंजीवी की चर्चा तो बहुत है, लेकिन चिरंजीवी से लोगों को जिस प्रकार का फायदा मिलना चाहिए था आपने दे दिया, लेकिन लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ भी कारण हो, चाहे हॉस्पिटल अच्छी तरीके से नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, डॉक्टर्स नहीं हो, डिस्टेंसेस हो, सेवा अच्छी तरीके से नहीं दी जा रही है। इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। केवल आप कुछ घोषणाएं कर देते हैं वेलफेयर स्कीम्स की, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन या तो सही तरीके से नहीं हो रहा है या वो घोषणाएं बहुत लेट आई। ये वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। मेरे ख्याल से कुछ सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं। राजस्थान से करीब 7 सीटों के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, एक कांग्रेस पार्टी को जाती गई है और एक अदर्स को गई है। एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ सिद्धार्थ और विष्णु दोनों लोगों से, थोड़ा सा हम इन नतीजों की रोशनी में थोड़ा सा मीडिया के लिहाज से बात करना चाह रहे हैं। बहुत भारी भरकम एक कसरत होती है चुनावों से पहले ओपिनियन पोल की। डे बाय डे ओपिनियन पोल्स आते हैं, फिर एग्जिट पोल आते हैं और काफी हाइप क्रिएट होता है चैनलों से लेकर ये जो नतीजे आए, जो एग्जिट पोल्स और तमाम चीजें इस नतीजे के पहले हमारे सामने आए थे, उसमें देखें अगर हम तो मध्य प्रदेश के नतीजों को 2 संस्थानों ने करीब आसपास प्रेडिक्ट किया था कि ये नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों के नतीजे के आकलन गलत रहे। छत्तीसगढ़ के एक तरफ से सबने गलत प्रेडिक्ट किया, राजस्थान को भी ज्यादातर लोगों ने गलत प्रेडिक्ट किया। इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, इतना सारा हाइप क्रिएट किया जाता है, मीडिया की अपनी विश्वसनीयता दांव पर, अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाकर इतनी बड़ी एक्सरसाइज तामझाम करता है और इतनी गलत चीजें सामने आती हैं। आपको लगता है कि इस तरह की एक्सरसाइज में अब कोई एक बहुत बड़ा आमूल बदलाव और एक बहुत सीरियस थॉट विचार करने की जरूरत है सबको कि ये अल्टीमेटली हमारे अपने प्रोफेशन पेशे के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि आप चुनाव दर चुनाव इसी तरह के उल्टे दर सीधे, मतलब अगर आप 4 के अनुमान 5 के अनुमान लगा रहे हैं और 2 सही हो रहे हैं 3 गलत हो रहे, तो ये तो तुक्केबाजी वाली बात होगी। और तुक्का जो होता है वो कोई भी सही लगा सकता है, मतलब सड़क पे चलता हुआ आदमी, उसके लिए किसी बहुत विशेषज्ञता की जरूरत नहीं होती, इतने पैसे रुपए ताना। तो मैं उस पर थोड़ा सा सवाल आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि मीडिया के इस रवैये में कितना सीरियस थॉट, सोच विचार की इस समय जरूरत है इन नतीजों में। अगर मैं पहले बिल्कुल देखिए
जो सर्वेक्षण होता है, प्री पोल, पोस्ट पोल, एग्जिट पोल वगैरह, ये एक साइंस है और इसको एक साइंस की तरह देखना पड़ेगा। जहां मार्जिन वोट शेयर का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्वेक्षण करने वाला वोट शेयर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जहां फासला बहुत ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश में तकरीबन 9% गैप है। यू वुड एक्सपेक्ट कि जो सर्वेयर्स हैं वो 9% गैप को पकड़ लेंगे, सैंपल छोटा भी हो लेकिन वो सैंपल जो है पकड़ा जाएगा जी जी, और ये डिफरेंस पकड़ा जाएगा। जहां गैप कम है, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गैप शायद 2-3-4% है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अगर आपका सैंपल बड़ा है तो आप उसको पकड़ लेंगे, उसको कैच कर लेंगे। अगर आपका सैंपल छोटा है जी जी, तो जाहिर है कि आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सर्वेज मीडिया इदारे कर रहे हैं या करवा रहे हैं एक कम से कम मिनिमम बजट पे, जहां पे सैंपल साइज 20,000-30,000 लोगों का होना चाहिए, शायद वो 4,000-5,000 का कर रहे हैं। ये भी मेरा अनुमान है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनमें से बहुत कम ऐसे सर्वेक्षण एजेंसीज हैं जो अपना जो मेथोडोलॉजी जो है वो डिस्क्लोज करते हैं कि भाई किस डेट पे कितने लोगों को कांटेक्ट किया गया, कैसे कैसे सवाल पूछे गए। सीएसडीएस डिस्क्लोज करता है, इसलिए सीएसडीएस जो है एक तरह से पोस्ट पोल एनालिसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। जी जी, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सीएसडीएस के सर्वेक्षण को एक आधार बनाते हैं कि भाई चुनाव के नतीजों को समझने के लिए। जी, तो मैं समझता हूं कि मीडिया हाउसेस जो सर्वे करना चाहते हैं, हम लोग 4-5 कैरावान, स्क्रॉल, वायर और न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री हम लोग इकट्ठे हुए, जी जी, हमारे बीच में भी सवाल उठा कि क्या हम कोई ऐसा पोल कमीशन करें कि ना करें। और सवाल सीधा बजट का है, क्योंकि आप 2 लाख में भी कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। पैसे खर्च करके आप कर सकते हैं और उसके सही निकलने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जाहिर है कि 5 इंडिपेंडेंट पोर्टल्स के आने के बावजूद भी उतना बजट हमारे पास नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात कि जो रिपोर्टर ग्राउंड पे जाता है, इस पे भी कहीं ना कहीं एक गिरहवान के अंदर झांक के देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे रिपोर्टर्स हैं, बल्कि ज्यादातर रिपोर्टर्स ने मध्य प्रदेश, अगर 3 हफ्ते पहले आप रिपोर्टर से बात करें जो राजस्थान गए हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स थे जो कह रहे हैं कि भाई इन 3 में से कांग्रेस की जीत मध्य प्रदेश में तय है। बिल्कुल। तो क्या चुनावी रुझान आखिर लास्ट 2 वीक्स में बदल गया या रिपोर्टर्स ने सही तरह से नब्ज नहीं पकड़ा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इलेक्शन कवर कर चुका हूं, इस इलेक्शन में तो नहीं उतरा, लेकिन मैं मतलब बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि आप एक कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, चंद लोगों से आपकी बातें होती हैं और उस आधार पे आप एक कहानी बुनने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि अक्सर आप गलत साबित हो सकते हैं। ठीक बात है विष्णु। बिल्कुल, यही मेरा भी ये कहना है कि जिस तरह का रिसोर्स इस तरह के सर्वे में होना चाहिए वो बहुत कम दिखता है। मीडिया हाउसेस, बड़े मीडिया हाउसेस, हम अपनी क्या बात करें, लेकिन जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं लगातार कॉस्ट कटिंग पे ज्यादा जाता है। रिपोर्टर्स की संख्या कम है, आपको डेस्क में ज्यादा लोग मिल जाएंगे, रिपोर्टर्स कम हैं, तो वो भी जब उसका असर तो सीधे सीधे यहाँ दिखता है। और जब तक आप रिपोर्टिंग पे रिसोर्स अपना खर्च नहीं करते, रिपोर्टर्स की संख्या नहीं बढ़ाते, मुझे नहीं लगता मीडिया हाउसेस, ये बड़े हाउस या कुछ नया कर पाएंगे या अच्छे से दिखा पाएंगे चीजों। जिस साइंटिफिक सर्वे की बात हो रही है, वेस्ट में, पश्चिमी देशों में अगर देखा जाए तो वहां पर ज्यादातर पोल और सर्वे जो होते हैं इस तरह के बहुत एक्यूरेट आते हैं कई बार। तो एक तो हिस्सा उसका वो है कि भाई उसमें रिसोर्स बहुत ज्यादा है और सैम्पलिंग बहुत ज्यादा है, बारीकी से उसको किया जाता है। दूसरा उसका है कि भारत का जो स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना है वो बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि मतलब वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो
कास्ट और ये सब इतनी सारी फॉल्ट लाइंस उसमें बटी हुई हैं, तो उसको पकड़ने के लिए उससे कई गुना ज्यादा साइंटिफिक होना पड़ेगा, कई गुना ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। वो चीजें कमोबेश हमारे यहाँ ज्यादातर ये कंपनियां हैं वहां पे मिसिंग दिखती हैं, और इसी वजह से वो बहुत लीनियर और वो फिर एवरेज वाले फॉर्मूले से काम चलाते हैं कि वो काम 4 का किया, 2 का सही हो गया, 1 का सही, 3 का सही हो गया, 1 का गलत हो गया। ये एरर वाला जो हिस्सा है इसीलिए हमेशा ज्यादा रहता है, जैसे इसमें ही दिख रहा है कि इतनी सारी और गड़बड़ियां आप हैं। ये देखिए माफी भी नहीं मांगते गलत करने के बाद। नहीं, माफी वापस तो क्या ही वापस है। वही गलती करने के लिए तैयार बिल्कुल। रहते हैं। तो ये हमारा आज अभी का जो हिंदी का सत्र था, इसके बाद आखिरी सत्र शुरू होगा। उसमें मनीषा होंगी, धन्या होंगी, हरतोष होंगे, और इसके अलावा हमारे साथ एक और पैनल होगा साथ में, और कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले बसंत कुमार आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको उनके हवाले यहाँ पर करूंगा मंच, और फिर अगले 1 घंटे के लिए आपको फाइनल नतीजों के ऊपर बातचीत होगी। संजय सर कुछ कहना चाह रहे थे। अतुल जी, एक बात कहना चाहूंगा जी, अगर आप इजाजत दें। जी, बहुत संक्षेप में, समय नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ ने सैंपल की बात की। मैं आपको ये कहूँ कि राजस्थान के अंदर जो हमने किया प्री पोल भी पोस्ट पोल में, दोनों में हमने ये बताया कि हमने सीट प्रेडिक्शन नहीं किया, लेकिन हमने कहा वोट परसेंटेज में लगभग 3% का गैप होगा। तो वो कंसिस्टेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में भी थी, और वो कंसिस्टेंसी अभी भी हमको देखने को मिल रही है। बीजेपी के 42% है और कांग्रेस के 39% है। तो 3% के गैप में हम मान के चलते हैं कि 30-40 सीट का अंतर आता ही आता है। ठीक बात है। तो बसंत के हवाले करेंगे, और साथ में हाँ अगले पैनल में सीमा चिश्ती भी होंगी। हाँ, जो अभी छत्तीसगढ़ की बात है, तो छत्तीसगढ़ में भी 54 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 33 पे कांग्रेस, 1 पे गुड़वाना जो जीजीपी है वो है, और 1 है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1 पर, और कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पे आगे चल रही है। कुछ सीटों का मैं बता देता हूँ। जो महत्वपूर्ण सीट है, अंबिकापुर, जो टीएस बाबा जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हाल ही में, काफी उनका दबदबा है, वो लगभग 7500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राजेश अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आगे चल रहे हैं, और अभी वहां पे 21 राउंड की वोट काउंटिंग होनी है, जिसमें अभी सिर्फ 6 राउंड हुआ है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। ऐसे ही आपको दंतेवाड़ा काफी इंटरेस्टिंग है। दंतेवाड़ा में जो महेंद्र कर्मा के बेटे थे छविंदर कर्मा, वो 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट बनाया। बस्तर में जो 12 सीटें हैं, एकमात्र सीट थी जहां से बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान यहाँ जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे, नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें इनकी माँ छविंद्र कर्मा की माँ चुनाव लड़ी और जीती थी। अभी ये चैतराम अटामी जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे लगभग 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और इसके बाद हम बात कर लें चित्रकूट की, क्योंकि चित्रकूट से कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे हैं दीपक वैद, जो लगभग अब 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहां पे 12 राउंड की वोट काउंटिंग हो चुकी है, 18 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो ये पीछे चल रहे हैं। अब पाटन की बात कर लेते हैं, क्योंकि दुर्ग पाटन है जहां से मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है। पाटन की अगर बात करें तो पाटन में मुख्यमंत्री लगभग 10,000 भूपेश बघेल 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और उनके सामने विजय बघेल हैं जो 10,000 से पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़े सीट है। बस्तर की अगर बात करें, वहां से कांग्रेस के जो कांग्रेस यहाँ से लगभग 5,000 वोटों से आगे चल रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पे है। और एक और कांग्रेस के नेता हैं ताम्रध्वज साहू, उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो लगभग 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं दुर्ग रूरल से। तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो काफी पीछे चल रहे हैं। एक सीट इंटरेस्टिंग है जो जहां की बात मैं पहले भी किया था, साजा कोंटा की बात कर लेते हैं। कोंटा से कवासी लखमा जो शराब मंत्री थे, और जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि आप लोगों ने वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे लेकिन शराबबंदी नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम अब आपसे पूछ के अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। वो मनीष कुंजाम जो सीपीआई के लीडर हैं, उनसे लगभग
500 वोट पीछे चल रहे हैं। और एक चीज ध्यान देने वाली है कि मनीष कुंजाम कोंटा जो सुकमा का क्षेत्र है वहां से वो चुनाव लड़ रहे थे और उनको अपने पार्टी का सिंबल नहीं मिला था सीपीआई का, वो एसी चुनाव चिन्ह उनका था। अब आप सोचिए कि आदिवासी बेल्ट में एसी चुनाव चिन्ह मिलना कैसे समझाए होंगे, तो उनको काफी अच्छा वोट परसेंटेज है उनका, अच्छा आगे भी है 500 वोटों से। तो ये स्थिति है। साझा की अगर एक बार बात कर लेते हैं, साझा जिसका जिक्र मैंने अपने बातचीत में पहले किया था, लगभग 4000 वोटों से ईश्वर साहू लीड कर रहे हैं। और लेकिन वहां पे अभी बहुत काउंटिंग बाकी है, 22 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी सिर्फ 7 राउंड हुई है। तो ये स्थिति है। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव जो नौजवान कांग्रेस के नेता हैं वो लगभग 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहां पे 12 राउंड की काउंटिंग होनी, 8 राउंड की हो चुकी है। और अगर कुछ आपको कुछ और जगहों का बता देते हैं। कोरबा, राजनांदगांव जहां से रमन सिंह खुद मैदान में, वो काफी आगे चल रहे हैं, 30,000 वोटों से आगे। उर्दू दिख रहा है। Thank you, Basant. You want to finish that? सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े. Is he still on air? He's left. Okay, Basant has left. Welcome back. Actually, don't have to say welcome back because we've been on for about 8 hours now, but I am back after the morning slot. And I've been noticing a lot of you are typing moe, 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 moe on the YouTube comments. And I was wondering, ye kya cheez hai moe, moe? Then I went to NDTV, I read a full piece on it. So very bad. Now I had to read a piece on moe, moe, which basically, you guys don't know, it means heartache. But there's no heartache here, guys. We're eating jalebis, saffron colors. It's beautiful, tasty. We're having chai, and we're going to give you results which have been really, really something to watch out for. Spectacular victory for the BJP in Madhya Pradesh and in Chhattisgarh, and we're going to talk a lot about that because I think Madhya Pradesh is especially very interesting. Rajasthan also the BJP is ahead, and Telangana, of course. It's safe to say Congress is winning then, or Yes. it's still like a... No, I think it's safe to say Congress is winning. Yeah. And before actually we get into the results, congratulations, Dhanya. Thank you. Hey. And congratulations, Supriya. Yes, Dhanya congratulations. has won the Journalist of the Year award at the Reading. So, thank you. And Supriya and Arunabh have won an award for an investigative piece on the misuse of ED by the Modi government. So, congratulations on that. Please do check out Reporting by Scroll. I think you guys have won 5 awards. So, really kudos for that. Check out all their reporting on Scroll. Of course, check out News Minute and remember that they're able to do all this reporting. And despite being such a small team, they're able to win these amazing awards because they have people supporting them, people subscribing to them, and that's how they're able to stay independent and bring you incisive reporting. We're going to, of course, go into numbers and there's lots to discuss. But I think let's quickly go to Sudipto because he's waiting for us at Bangalore. So let's just say hello to him. And Sudipto, you must tell us as a journalist, can I say you parachuted into Chhattisgarh? You won't get offended by that, right? You're mute.
Please unmute yourself and express your offense. But how surprised are you from the results? It's BJP was a 33% vote share. 46% vote share they've got in this as we're counting. Spectacular victory for them there. Out. So the exit polls were all saying Congress jeetne wala hai. Reporting bhi mostly there was no wave at least that we heard of. How surprised are you by Chhattisgarh? And what do you think you missed out as a journalist? So the thing is, I mean, I didn't get out of Raipur. Stationed in Raipur only and speaking to the experts there. So yes, it is right that I was a paratrooper in Chhattisgarh. The results, I mean, I can't react to the results because I was not looking at the results when I went to Chhattisgarh. I was looking at, the nature of politics under Baghel. And now that the results have come in, I'm able to add 2 and 2 together. I dare say that this is what happens when you try and be more Hindutva than the BJP. Right, I say this also broadly about Madhya Pradesh, Rajasthan as well, where the Congress has taken the shape of the container, and the container happens to be right wing. And I do not think that in Chhattisgarh, Baghel has really set a secular agenda. And I don't know. I'm imagining myself as a voter in Chhattisgarh. What would I have voted for or against? Because I'm essentially voting for two parties that are pursuing a similar line. So to that extent, I don't know. I mean, the results. That's how I read the results. Mm. And yes, the other important thing, I suppose, to say that Baghel was defeated by the social justice agenda, because I do feel that the smaller parties, the Hamar Raj Party, the Gondwana Ganatantra Party, the Bahujan Samaj Party, and there were several other parties in the fray, smaller parties, and each of them was contesting on that flank of the Congress's failure or Baghel's failure on the question of social justice. So now, it is crying over spilled milk, but a party that claims to present a secular agenda as against the BJP has completely failed on that ground as well as on the ground of social justice. So therefore, I don't know, serves Baghel right. What about Telangana? Because you guys have covered that pretty closely. Of course, I mean, through all the reporting, it was very clear that people were upset, but there was this invincibility to BRS, which seems to have been proven wrong now. Yeah, I think Dhanya will be able to answer that question better. But my initial reaction is, okay, now one nightmare is over. And now, a lot of people who I'm speaking to, since morning are very worried about the return of Reddy rule, through Revanth Reddy. And that is a very real danger. I'm more excited about the kind of reporting we'll get to do from here on forward, where we can, hold the Congress to account in that state and, look at how they're going to undo the damage that the TRS or the BRS did in its time in power. So that is going to be of key interest for me, because if you're going to be replacing an incumbent, I mean, if you can't take the shape of the person you've replaced. So that is really the thing for me, either in the case of Baghel or in the case of the Congress in Telangana. That's one thing to watch out for, is Velama rule, which is what was discussed. So Congress said it is feudal rule, KCR's feudal rule, and all of that. But Revanth Reddy is not from some toiling community either, or he doesn't represent the interests of the toiling masses either. So we'll have to wait and see what happens there. Great. Thank you so much for joining us. We also have Ajoy from The Wire who's going to join us. Is he here with us? Hey, Ajoy. So, hi, Manisha. Reactions to the results. And I think we can talk about this a little bit with the others also. That, there is this urge to just, talk about Hindutva with the results now, even though when we started these elections, analysis, we talk about how welfare played a scheme. But it seems like BJP is a party that has a little bit of something for everyone. आपको हिंदुत्व चाहिए आप हिंदुत्व ले लो, आपको वेलफेयर चाहिए आप वेलफेयर ले लो, आपको nationalism चाहिए आप nationalism ले लो. So do you see that reflecting in the results a little bit for everyone? And that's what, and there's essentially no difference between the welfare promises that were being offered by both parties. Manisha, the whole campaign kind of suggested that it was competitive welfarism between both the parties, and all of us knew that BJP, as organizationally and kind of the election machine that it has,
it was always very, very strong on the ground. But what kind of this whole kind of the Chhattisgarh for me was actually a surprise that Baghel was losing, as Sudipto also said. But I was looking more granularly at the Chhattisgarh result. What the BJP has done here, BJP has cornered most of the votes which went to other parties last time. Congress is hovering around. Congress lost 2% vote share, but we can say that more or less they got the same number, same number of votes, a little here and there. But what BJP has done, that it shot up from almost 33% to 46%, cornering most of the Jogi Congress's votes, the GGP and BSP's votes, and that is what is kind of pulling BJP much ahead of the Congress, and that is how it has done. And it played like very, very the micromanagement that did in Chhattisgarh also. It gave almost 20 to 25 seats in the to Sahu community, and all the Sahu dominated seats they seem to be kind of sweeping there. So these are the kind of small tricks that the BJP does in every election, and but kind of very sorry to say, but the Congress seems to be getting like really have gotten really, really complacent in Chhattisgarh, thinking that there's no opposition. But this is how the BJP micromanages election, and it could not. And Congress should have thought about how these smaller parties would perform, and how and it's for example, the Jogi Congress got around 8% votes in 2018, and this time it is getting only around 1.5%. So most of the votes seems to be BJP. And similarly, a large chunk of scheduled caste and Adivasi votes which went to the Gondwana Ganatantra Party and the Bahujan Samaj Party alliance, has also played a spoiler for the Congress. And similarly, in Madhya Pradesh also, if you see all the adjoining regions of Uttar Pradesh, the BSP seems to be doing its overall, its vote share is only 2%, but in those, if you see the contested vote shares, all the constituencies around in Bundelkhand or in Baghelkhand, which is kind of abutting Uttar Pradesh, BSP has played a spoiler for the Congress in huge number of areas. But these are like small tricks. I feel the Congress, because of all the poll surveys that projected a win for the Congress in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, they seem to have gotten very, very complacent. And while in Madhya Pradesh they seem to be getting almost the same number of votes, what the BJP has done, they have pushed the base vote share to a much higher kind of base. So in Madhya Pradesh, BJP is getting almost 48% votes, which makes makes it really, really difficult for the Congress to defeat it. And similarly, what used to be in earlier elections in Chhattisgarh, the winner would get around 39 or 40% votes, but the BJP this time seem to be getting 46%. So it's a daunting task for the Congress in 2024 to defeat the BJP, which seems to be always pushing the vote share base higher up. We saw that how BJP earlier in, for example, in Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav won more than 200 seats in just 28% votes. But BJP seems to be now is getting 45% votes. Parties, which is not getting any incremental votes. And when so we're going to come back to you with that, because right when we started the show, we said that we're not going to talk about Lok Sabha or draw any conclusions. But here we are. I'm just saying that the base with this increasing bipolarity in elections, the base for the vote share basis is actually getting higher and higher, and that completely changes the game in any election, be it Lok Sabha or be it assembly elections. And I thought, like, if Congress would have done much better had it not gotten complacent. If they could have actually gotten into alliance with their India partners. So we're going to get some numbers in now. We're going to get some numbers. Ajay, we'll come back to you. We'll come back to you. We're going to get into some numbers because this is the closing hour. We want to give our audience some concluding final numbers. So let's at least start with Chhattisgarh, I think, Supriya. You've traveled there. What a stunning victory for the BJP, 33%, say 46%. Congress more or less retains its vote base.
But just tell us, give us the final numbers and tell us, are you surprised? And what explains the stunning victory of BJP without a CM face? Well, I think it's Ajoy's analysis was that it's all complacency on part of the Congress. I think it was incompetence, frankly. But just to first run through the numbers, just to put this number in perspective, BJP has 46% plus. Its vote share in the 2003 election was 37.8%. In 2008, 40.3%. In 2013, 41%. And these are elections where it won. So just to say that that's the scale of the BJP victory this time. It surpassed both in vote share and seat share. It never crossed the 50 mark. 50 was as far as it got. And if these trends sustain, then it's currently at 54. So of course, it's like there's still several rounds of counting to go, but the vote share tells us what has happened. And it isn't just a case of the BJP being successful at taking away the votes of others. It was pretty evident that after Ajit Jogi's death, the Jogi Congress is not going to do very well. BSP is holding on to its vote share. I think there's more that's happened. The Congress has actually dropped even in vote share. It's not only like dropping seats. And again, if you look at the map of Chhattisgarh, what also becomes clear is that, there are regions where the Congress has been wiped out. And these are the two Adivasi majority regions in Chhattisgarh. Ambikapur or Sarguja division up north and Bastar, both of which had decisively voted for Congress in the last election. And this time, the Congress is absolutely not there. It's in a few places in Bastar, but it's all of North is saffron right now. And that's why I say there's incompetence, because to lose votes in these two regions, which had, clearly, reposed faith within 5 years that these regions are decisively rejecting the government, is because the Congress did not live up to the promises that it had made here. And even for all the talk about the paddy bonus and how that it created this, everyone was reading it in a way that this is all that Congress has to do to get votes in the plains. But I think, as was pointed out, that in all the Sahu-dominated constituencies, the Congress is currently trailing. So all the talk that Bhupesh Baghel is like the new OBC face of Congress, again, much was being missed in that. The Bhupesh Baghel government, those familiar with Chhattisgarh could see, had really not shown any vision in these past 5 years. Other than giving a higher paddy price to farmers, there was absolutely nothing in terms of governance that it had which to the show. BJP was willing to match. So there was Yes, which if they thought that they could ride to power again on a paddy promise, they were completely outdone by BJP, because again, BJP matched that. So, it cannot just be used for one thing. If Congress thinks that that's what's going to, while on all other fronts, it's kind of failing, and it's politically failing to craft a response. If Bhupesh Baghel thinks that that the Congress can play the Hindutva card and get ahead of BJP, clearly this shows that can't happen. You can't build like this Ram Mangaman Path and say that Ram is everyone's. You're introducing Ram to areas that people are not even familiar with. And look at the attacks on Christians. In fact, I was looking at Narayanpur constituency, which is a constituency in Bastar. This is a place where we've seen some of the worst anti-Christian violence in recent times. And there again, Congress is trailing. Now, that's where it's sort of, to me, this constituency is interesting because, BJP candidate has a margin of about 11,000 votes, and 5,000 votes have been won. Half of that margin has been won by a CPI candidate, Phul Singh Kachlam, who is sort of associated with the Christian community. Now, it's a little complex. They're not converted formally to Christianity, so they don't call themselves Christians. So they are Vishwasis, they're believers. So clearly, like, the Christian community wanted to send a message to Congress. So half of that margin, we can see the votes were lost to Phul Singh Kachlam for that reason. But then you have to also account for another 5,000 votes, which means people are rejecting Congress for multiple reasons. It cannot be reduced to sort of one thing. And if you talk to Congress people, again, Bhupesh Baghel ran a very centralized system. It was like a kind of a mini Modi where all power lies with him. And he had sidelined, marginalized all other leaders, alienated party workers. So there wasn't really a Congress cadre on the ground.
In terms of a grouse, like what are the key central grouse you were picking up on the ground from like governance, in terms of governance? So I traveled to Bastar primarily, and in Bastar it was clear that there were several reasons. As I said, in some parts it was the attacks on Christians, but there was overall a sense that this was a government, this was, they sort of made promises of implementing PESA, Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, this whole idea that we will protect Jal Jangal Zameen. And it's something that the Congress went to town with in 2018. Rahul Gandhi made trips to Chhattisgarh. He went to Adivasi villages. There was this whole spiel. And then it went into some sort of cold storage, partly because of this, raging war between Bhupesh Baghel and T.S. Singh Dev. T.S. Singh Dev was the Panchayat minister. His department was responsible for drafting the PESA rules. Basically, the rules had to be notified to implement the law. And that was just caught in the turf war between these two leaders. And somewhere it's then the Congress central leadership also, where a lot of the blame lies, because they came up with this really crazy idea of trying to do a half-term chief minister. So for the most part, the Congress was fighting internally. Yeah. And that was like leaving its like imprint all over governance. In the COVID years, T.S. Singh Dev held a health portfolio. So when the state should be putting all efforts in dealing with the pandemic in a united way, Baghel and Singh Dev were at war and they're constantly undermining each other. So the governance record of the Baghel government was abysmal. Power had been centralized. Congress workers, leaders felt sidelined. In Adivasi regions, the regions that had wholesome way backed Congress decisively, 14 out of 14 seats in Ambikapur voted for Congress, and Bastar similarly, 11 out of 12. Those regions, you completely ended up alienating voters, like even to return to the fact of the anti-Christian violence. Now, it was evident that that was going to happen. This is a state where the RSS set up the Vanvasi Kalyan Ashram all the way back in 1952. It's the state where they have worked the hardest to build a base among Adivasi communities. And it was clear that with the Congress coming to power, they'll try to capitalize on this social fault line on religious conversions. So the Congress really had to do some work in crafting a response. But instead, they allowed mobs to sort of go and attack Christian believers, mobs led by BJP leaders. They went scot-free for the longest time till there were repeat attacks. And it was finally when a police officer was injured in Narayanpur that they cracked down. And then people there told me that when they went to meet the Adivasi leader, sort of the tallest Adivasi leader of Bastar, a minister, Kawasi Lakma, he said, "Why have you converted?" So Congress didn't come across as empathetic at all. And Bhupesh Baghel tried to do what I think he thought was clever. He was like, most conversions happened in the BJP, under BJP rule. But that's to say that there is something inherently wrong with conversions to Christianity. It was left to Adivasi intellectuals and movements like Sarv Adivasi Samaj to say that just the way, if the argument is that Adivasis converting to Christianity threatens the Adivasi identity, what about Hinduization of Adivasis? And again, like sort of to get everyone's attention on what is actually the biggest threat to Adivasi identity, which is the loss of, their sort of traditional livelihoods, of the forest, of Jal Jangal Zameen. So Congress just politically failed in Chhattisgarh. They squandered what was an opportunity in a state where BJP won 3 times, a state that doesn't easily vote out incumbents. The Congress, and the Congress BJP's in come back 5 quite years, spectacularly. To go from 68 seats to now like 38, or I don't know what the latest is. It's We'll come to Modi's, pitch, because again, like they went to election without a CM state, but KTR has conceded defeat. He's tweeted out. He's congratulated Congress. So please tell us what's happening in Telangana, and were you surprised and stunned at the results? No, not really. Not surprised. I mean, Manisha had actually come to Hyderabad, and there was a show that we arranged at this place called Lamakan. So we had called 4 or 5 people, and before that, we had done a show with students. So everybody was really angry with KCR. And Manisha asked me, "What is happening? Did we only pick and choose these people?" I said, "No, we generally called people. They all came, and they were." But that's the point. There was a lot of anger. In fact, one of the first things I felt while traveling in Telangana is that BRS was underestimating anti-incumbency. The only thing which I was not sure of whether that anti-incumbency will convert into votes for the Congress, because there are some states where people will not actually tell you who they're going to vote for. They don't make it very clear. They just tell you, "We are angry with this person,
but they're still not making their choice clear. So I was just speaking to BRS. They believe that they have gone wrong in Karimnagar, in Nalgonda, and one more district. But I think the biggest news may be in Kamareddy, where Revanth Reddy and KCR are contesting from. There is a possibility now, only 5 rounds are left, that the BJP candidate may win. Oh, everybody's already calling him the giant slayer and all that, but there are, I think, now maybe 4 rounds left. But if this Venkat Reddy does win from Kamareddy, that'll be the story of Telangana. And of course, Revanth Reddy. I think all English news channels have already started. Will Bhatti be the new CM or will it be Revanth So Reddy? this will be a double slay. He'll be a double killer candidate, right? If he, And so- BRS's vote share has gone down from 46 to 37%, and Congress has upped it almost 10%, 28 to 39. And look at the BJP; which they've is- also doubled. They were at 7 last time, and this time they're almost at 14. So in terms of principal grouses against the BRS, corruption, crony yes, capitalism, all that. I think there's anger against the family. There was. There's also this resentment against Hyderabad being the focal point of all development, right? Like even if you look at the Warangal, which is one of the towns, one of the places where they're not doing too well. Warangal is better than most districts in Telangana, but there still is this overwhelming feeling that a lot of development. So you can't say that there is no development happening. It did happen, but largely focused in Hyderabad. in So, Hyderabad. yeah. That's a complaint even we heard. Yeah. quite a bit. So everything that is for so Hyderabad, for and within everybody Hyderabad, else, everything is for the high-tech. yeah. And this election, Manisha, where I mean, not too many elections we hear of jobs as a problem, as an electoral issue. This election, people spoke a lot about jobs because that was one of the biggest promises TRS made when it came to power last time. So I was in fact surprised. The remotest village you go to, people will still say, "What are the jobs?" The jobs they gave was for the police department, and I think this there has been this whole civil society movement also in Telangana. There is this former IAS officer called Murali Arthanori. He was doing this thing called Jago Telangana, and they had gone from constituency to constituency talking to people. So there's been a parallel movement. Kodandaram, who was a joint action committee for the Telangana movement. All those people have also been working against KCR because everybody turned against him. So I think it's a coming together of all those forces plus sentiment that the family is held on for too long, that there is corruption. And though they brought in a lot of schemes, they did not deliver it properly. And the MLA, what the BRS government ended up doing is make the MLA a very powerful entity. Because for any scheme, which is your 2 BHK scheme, Dalita Bandhu, Raita Bandhu, the MLA was deciding who the beneficiary would be. And it was widely known in Telangana that MLAs were taking bribes, were taking money. And so there was a lot of resentment due to that also. Great. Hartosh, Madhya Pradesh, I think a lot of journalists are going to be talking about MP for a very long time because no one seemed to have predicted this spectacular 48% vote share for the BJP. In fact, everyone was saying that Congress ka time aa gaya hai, fatigue hai, ye wo, but Shivraj has bounced back, and how? I mean, it's just 48% is just spectacular. So tell us, would you also say that you judged it wrong? Absolutely. And where did we go wrong? Well, one, I was surprised by the result, but I also must say that I am actually quite happy with the results. The loss and the decimation of Kamal Nath is a direct indictment of the central leadership and the kind of focus the Congress has picked for these elections. And the blame goes directly. There is no reason for Kamal Nath to exist but the Gandhis themselves. And we should be clear about that. The man has a pretty despicable record in every which way. And that you should pick this upper caste leader at this time when your messaging is supposed to be about the OBC vote. And after 4 defeats, I think our package, which was in Hindi, ended with whether voters disenchanted with Shivraj Chauhan are disenchanted enough to vote for a tired, aging upper caste leadership. And they clearly were not. Why is the result a surprise? Because I think, and let me, as you said, 48%, 162 seats at the moment, that may change a little. This is higher than 2013, when the BJP was clearly on the up. And this time they were seen as on the back foot. One is the first question, why did we not all see this? That disenchantment was being voiced, was clear on the ground to everybody who went there. As Dhanya was saying, did that mean that people voted on that disenchantment? It seems that was not the case. It reminds me of, I think I was telling you the story of when I used to report Punjab.
he would go around, and I would repeat this in Punjabi because it sounds better, that Yes. that ਜੀ ਵੋਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, they haven't paid for paddy, they haven't done this, they haven't done that. And you think that there's great resentment against the Akalis. When the vote is over, you go ask them, ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪੰਥ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ. And so there is, and this I've been arguing from the morning, that there is a baseline Hindutva in the Hindi belt that has settled down. And when all things seem to be equal, that is what really counts over everything else. Okay. And all things were equal. They, in terms of a vision or a developmental plank, there was nothing that the Congress had offered that the BJP was not already offering. There probably would be a divide in the gender vote. But going beyond that, if you look at the distribution of how the state has voted at the moment, if you look below the Narmada towards the Gond areas or towards Rajasthan where the Bhils dominate, it does not seem the Congress has done that badly there. It is in the rest of the states, in the intervening areas which has a large OBC population. I think the upper caste vote is in any case a lost vote for the Congress. It's not going to touch it. You can dance, you can strip in temples, you can wear dhotis, you can put tikas. It's not going to make any difference. Don't strip in temples. I mean, strip down to temple Janu and all you want to display your suddenly Shiv Bhakti, it's not going to help you much. So if you want to build on a base of at least the Adivasi support in Madhya Pradesh has been oscillating. They've been seeing which party offers what. They are not a steady base for anybody. Unlike the Bhils, where substantial amount of RSS work has happened in the Gond, parties like the Gondwana party have introduced a sense of their own identity, a very strong identity that stands opposed to the BJP. A party that again Kamal Nath tried to break down and disrupt in some senses. So how do you build on some support from the Dalits and the Adivasis? You're not going to get it from the upper caste. You need to build it from the OBCs. Now, you are going to go into an election where you really need OBC support. And who are the figures that your face is Kamal Nath? There's Digvijay backing him up. There is no discourse about what it means to be an OBC from these two people. There is a third candidate, Jitu Patwari, who's been confined to his constituency, put in his place by these two. Rahul Gandhi wanders around talking about the castes. These are states, unlike Bihar or UP, where you have not seen social justice movements. You have not seen any impact Mandal. You haven't seen a Kashiram. You haven't seen a Mayawati work directly at these places. You haven't seen a Mulayam or a Lalu or a Nitish. How do you message? What does the caste census mean? What does it mean for the OBC there? What is it that you are offering? How are you different? What is your vision? None of that is articulated. And the third is, I think Vishnu from Caravan in the last discussion had pointed out that the effort on the ground was absent. I think the BJP held twice as many rallies. Yeah, on any some given 600 rallies and Congress was half of that, 300. On any given day, Shivraj was working with twice as much enthusiasm as the tired and aging Kamal Nath, who I think, unless the Gandhis are really losing it, should now be put to bed in terms of his political career. Whether that happens or not, we will find out, because the central leadership is a strange beast. You look at the difference here after 4 elections, you have anti-incumbency on your side and you can't get anywhere. At least when you're driven by a vision like Gehlot, there is a battle in that state. There is at least an identity that you form for yourself. All that Kamal Nath offered was a 100-foot statue of Hanuman, and that the Ram Mandir was built by the Congress. I think this is the point that a lot of reporters in Madhya Pradesh did articulate quite a bit, that Shivraj is just giving this, you may see Modi everywhere, but it's really Shivraj. He's going out, he's campaigning, he's doing 6 to 7 rallies. Compare that to Kamal Nath, who'll do 2, at best 3. So that fight, I mean, BJP always puts up a fight like it's in the opposition, even though it's been in power. And the Congress is like perennial power mode. It's true, it's Shivraj. He was discounted in the beginning. There was this. But do not leave Modi out as a factor. I think there is a huge positive response to Modi. Yeah. It is visible in the Hindi belt in every corner you go to, at every segment you deal with. And
how that translates directly into votes, how it helps the BJP is, I think, for pollsters to actually go and examine. Not that they've done a very good job. I mean, there is this that they've got one MP election right, but the same pollsters got 3 other elections wrong in the other states. So I think you can say that there's a random lottery that's going on and they claim credit on such things. I think at least on Chhattisgarh, all the pollsters got it wrong. I don't think anyone predicted such a victory for the. And Seema, we were saying before this that we should not link this to Lok Sabha. No, but we have to pick up cues. But I think, at least on Modi as a face, if he can go to 3 states without a very clear CM face, even in Madhya Pradesh, if Raj was diminished, it's pretty clearly Modi's double engine also, or one single engine. So I think, or maybe as somebody remarked, the double engine may well be Mr. Amit Shah. So that may be a different nature of the double engine. But I think we have to, see it for what it is. And clearly the destruction of the double engine seems to have played a role in the whole thing being centrally directed in these states. But of course, I want to just pull back on these 3 states, which the BJP has won. And actually, in all the 4 states that went to the polls, there's been spectacular anti-incumbency except Madhya Pradesh. So looked at from that point of view, also it makes Madhya Pradesh an interesting case to watch out for, because the BRS has been toppled, Baghel has been toppled, and the Ashok Gehlot has been toppled. So there's some things up. There's clearly either it is an underlying economic unrest, a dissatisfaction and anxiety that is clearly visible. There is some degree of turmoil. But these are 65 seats. I mean, if I translate these 3 states minus Telangana into MP seats, it works out to 65, 25 plus 29 plus 11 MPs. Of these, the BJP in 2019 had 61. So these are the areas where the BJP is looking to at least hold its own, even if the opposition gets its act together and does things in 2024 in, say, South India or Bihar or Maharashtra. So in a sense, they are really good to saying that our single engine works in these 65. So I think the big claim that the Congress has, and rightfully so by being the signature opposition party, which is locked in combat with the BJP in these areas where it is maxing, needs to really now think about what is the political campaign, what Supriya said, the spectacular political failures. So, of course, all this is that they didn't try hard enough, and the rallies, which I also think is like a function of resources, how many resources the opposition has at its behest. But I think it's a larger political message that the Congress needs to articulate and sort out. Because there is this whole thing that, if you do a little, let's also do a bit of Hindutva, because that's the mode. But then that way you just shift, the Overton window is shifted, and you're also shifting there. So the more that Mr. Baghel does the yatra, or Kamal Nath paints the entire office saffron, the more you're reinforcing the larger messenger. And certainly Mr. Modi is a much better messenger of all of that. So you remind people and say, oh, that is the message, then I'm going to kind of give the gold medal to that person who's going to stand on the podium. So, I mean, they would need to really figure this out. On the caste census, a lot has been said. So I just think that we're making a mistake. I'm sorry if I sound too much like an outlier here, but we're making a mistake to link the caste census immediately with this vote. Because if any party, whether in politics, whether in opposition or in the ruling party, thinks that caste census is like a dolo that you take and it'll fix your fever, that ain't happening. The caste census is a much bigger project. It's a social project with India. It's about the recognition of our social realities, which, if anything, and frankly, even if you do a caste census and the OBCs, they are in the Hindutva frame, okay, they go vote for the BJP, it's okay. It is about recognition, it's about agency, it's about recognizing the idea of India and the position that it's many people who you don't even count or see occupy. So I would like to delink this and say, oh, then the caste census shouldn't work, they should stop talking about the caste census. And I think there, what Hartosh is saying is that if you introduce like a big medicine, you say, I'm bringing in chemotherapy, you should know how to administer it. So the whole logic, the nuts and bolts of how you use it, if you want to use it politically. Otherwise, if they think that caste census is a quickie that can be administered and we'll win this, and we'll defeat a powerful OBC leader who's going to be up for re-election for the 3rd time in 2024, they are totally delusional. And I think Hartosh's point that basically if you're going to be championing it, at least show it in your own ticket distribution or in your own leadership. It can't be... No, I just want to add something to what Seema said. And in fact, I was mentioning that in the previous panel. Karnataka is a state where Congress did a caste census when Siddharamaiah was last in power. And during this campaign, he and DK Shivkumar, in fact, I personally interviewed DK where he said that
we will bring the caste census. As soon as we are in power, we will release it. It's been so many months. Now DKS has signed a letter along with the Vokkaliga Association saying that the caste census should not be out. So at one end, okay, whether it's a chemotherapy or an injection, the Congress doesn't know. But even when it is done, it doesn't want to release it. So what is it that they are actually, so I don't think apart from a banal kind of census kind of an exercise, even people are confused about कि भाई करना क्या चाह रहे हो? हाँ, अगर है तो वो release क्यों नहीं करते in Hindi? It's a record you have to. I mean, I think as you had mentioned, in Madhya Pradesh this time you promised paisa. In Chhattisgarh, you had 5 years, you haven't been able to implement it, and it boils down directly to the Singhdeo and the fight between Baghel and him. And you've given a moth-eaten paisa, which doesn't work for anybody on the ground. And you have done nothing about it in Chhattisgarh. The results are not visible, and in fact, people have gone against that. Now you're going promising something you haven't delivered in one place at the other. If you're going to do the same thing with every issue you picked up, it's going to be a problem. You see, this is the question of messaging. What do you pick up? The caste census is important. Of course, it's important. All of us think that it's a hugely important issue. But don't make it a plaything. By making it a plaything, you are doing damage to the idea. It's what you do within Adani. You can't endorse Kamal Nath as a chief ministerial candidate and say, I'm against Adani. Don't joke around with things. You can't go to North Chhattisgarh, like Rahul Gandhi goes to North Chhattisgarh and says that, and whatever they're saying nationally about Adani Group, and then allow Adani Group to open mine after mine. Exactly. That's So I think clearly, like, it shows up as blatant hypocrisy, and nobody then has any reason to have any trust in Congress. I think before we wrap up, maybe we can look at two big picture questions. One is, what does this mean for the India alliance? Because abhi Congress is kind of diminished with these elections, especially in the Hindi heartland. What does this mean for the India alliance, especially because before the elections we saw rumblings, Akhilesh Yadav was very unhappy, other alliance partners weren't really ecstatic about the way Congress was behaving. So where is that going? Any guesses? I mean, I honestly won't comment much, just to say that I think Kunal Ghosh of TMC has said TMC should now lead the India alliance. So, okay. So no, I mean the India, picture, as you said, the big picture abhi baki hai, I'm sure. So there's more to go. We have a very exciting and full of women vigor kind of time till March, till the general elections. So there are two things. See, had the Congress done brilliantly, it would hurt India alliance, because the Congress is already on a very, very high horse about leading the India alliance, whether to victory or wherever, but leading the India alliance. So I think in defeat, there may be actually the India alliance may have, as somebody said, this is good for India. That, they may kind of figure out that had they taken what my colleague Ajoy Ashravad said, that in the whole alliance game, in the way votes have gone away, seats gone away, those parties doing well, whether in Chhattisgarh or Rajasthan or Madhya Pradesh, maybe there was ground to go there as a team. Once you'd made so much of a team, you'd set some sort of a political narrative, should have carried that through. And at least naam ke vaste, given tickets, kept Samajwadi Party on side, the other parties on side, and sort of said that you're a team player and not just playing a solo game. I think that would have helped in just smoothening things, even if not on a seat-by-seat basis sort of thing. So I think that is like good for the alliance. I want to just come very briefly to Telangana, which I think is the only silver lining in the Congress story, really. And I think it's really important to watch out for. Is that the Congress has been out of the two Telugu-speaking states for a long time, after what we thought was a shooting in the foot kind of division of Andhra Pradesh, of the former Andhra Pradesh, was split into two states, and then the Congress quickly went out of the picture. I think this, as a comeback, opens, it's not only about South India, it's about Telangana offering a window to East India. If I was YSRCP, I would be worried, because that's how Andhra votes. Congress has made up a huge percentage in terms of what it got. It did abysmally last time. And now it's several percentages ahead of the BRS. That's interesting. And it got ahead of the BRS and all while taking down Asaduddin Owaisi's party. So the whole charge of being sort of with a Muslim party, etc. So it's a very interesting positioning in Telangana, which can offer some sort of a model. We're always perennially looking for models for them to work on. But also it's the first time the Congress has been structurally almost decimated in Telugu-speaking areas, and it has been able to piece back its structure, even though Revanth Reddy again without like a clear so that I want to actually connect two things that Seema said. First, you said about India alliance, and if the Congress loses, perhaps they will come down a few notches and behave like a team player. But the problem I know that a lot of India alliance leaders are saying the same thing.
But I feel, okay, theoretically that sounds good. But the reason why Telangana did well for the Congress is also the momentum brought from Karnataka. So there is no momentum now for the Congress because it lost Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and okay, whichever other states it lost now. But the point is, there's no momentum, right? So for 2024, what are you going to carry? I mean, you can bring together 5-6 parties in every state. But the big impact in Telangana was the fact that they did so well. 2-3 months before, I'm telling you, nobody was talking about the Congress. Yeah. Even the Congress was not talking about the Congress. But last minute, they put together everything. And one thing I feel the Congress is doing well, at least in the South, is booth management. Social engineering, they are still not as good as the BJP anyway. But at least booth management, there are certain things they've picked up on. If possibly, are they structurally and organizationally better placed in South India? So in the North, there's been like a decimation. So even their workers and all don't really exist. But there are also very strong regional leaders. Yeah, right? I think that like if you matters a take Kerala, if you take Karnataka, everywhere they have. Andhra Pradesh, no. So, I mean, will this create some sort of ripple for the Congress in Andhra Pradesh? That's what I would be watching out for now. No, but is there any state where the Congress has been able to like win again? Again? We were talking about it. So I think in 2011, Punjab, Tarun was what Gogoi happened. won, and then in Yeah. Punjab, I think who's now in the BJP. Not in the Modi era. No, not in the Modi era. Not at all. Punjab was during the They seem to win states where there's already like a lot of anti-incumbency. But the interesting thing is here they've beaten a regional partner who was formerly with the Congress. They've never managed that. So one reason why Sunil But it's Kanagolu 10 years. was made a cabinet minister, one reason why Sunil Kanagolu after the election was made a cabinet minister in Karnataka is precisely because of this. Because there was an internal meeting in which the Congress said that state elections we never seem to win again. We win with a big majority and then something we do wrong. So the reason why Sunil is in the cabinet is also to sort of keep watch as to what is happening wrong, that in the next 5 years people are going to be dead tired of Siddaramaiah, which is what is happening to the Congress all the time. So Congress realizes that something is wrong. They never win again. States. Despite, like in Rajasthan, one would say putting up a cohesive campaign, popular CM face, lots of things to But so offer. much went wrong in these 5 years in Rajasthan, right? Like they had like a raging. And also, they have these fights in each of these 3 states, Yes, whether it is, Tamarvat Sahu and all that. Even in MP, Kamala Digvijay, though Digvijay Singh has kind of made his peace, but they fought as much as they could. Jyotiraditya Scindia left the party. It's again to do with the center, the lack of clarity. Correct. Also, the opportunities for leaders. You are going to get state level fights if you don't have a center to accommodate them in, because there are ambitions here. Either you make it clear in the beginning. I think Madhya Pradesh is a good example of, alliances. Of course, it matters that you have a coherent campaign. Unlike Telangana, you just waited for the BJP to defeat it. So there was nothing that was happening. Also, you were arrogant, which speaks to the India alliance. I mean, I was just looking at Samajwadi Party, a drop in, despite Mulayam Singh campaign, the Akhilesh campaigning, there's a drop in the vote share of the Samajwadi Party by 1%. Not great. BSP by 2%. But those 3% votes have gone to the BJP. They haven't gone to the Congress. The Congress has maintained its vote share. So I think there will be a humility now, the rare humility, because the Congress doesn't know the term, when it is talking to its allies. And in Rajasthan, what you did is indefensible. You tried to take down Gehlot. You supported a man who has really no traction of his own pilot except for studios in Delhi or sort of the circle of the Gandhis kind of Anyone thing. who's been to Rajasthan knows it's not a Gehlot versus Sachin thing ever. You damaged the Gujjar vote. You took away, you wanted to push him up to the center. He didn't want to go. The MLAs who supported him, you were vindictive about them. He wanted to retain them. So you create a situation there. I think these are things that the party has to sit down and think about. I think there's one last thing I think we haven't mentioned, though it is very hugely seems to be a factor in all this, is the gender difference that everybody is talking about in terms of voting. And certainly in Madhya Pradesh, it seems to have played a huge role. It also sort of indicates why many of us may not have got it right. These are maybe excuses after the fact. We tend to talk to men, we talk to people from the dominant castes and tend to give a sense of the elections. We are often wrong in doing so, I think. I think it's a very important point, and I'm really looking
forward to data from CSDS at least on this, on how the women voted? Because I just want to point out another camel in the tent. I mean, we've all spoken about it, but I think we have to take it head on. Whatever has been happening in this millennium in this Hindi belt, because it all comes to a focus at this time of the year when we have these autumnal elections every 5 years. Is there something happening there which is making the BJP's presence almost socially a fact of life in these states? So, I mean, is that so? Which tells you what a spectacular performance Congress put up in 2017. I mean, how on earth did they pull off Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan? So, but is there something that is just being given away because there's no parallel social presence, narrative, story, structure, strategy, or plan? All of the above, no doubt. So everything is missing. So is there something there happening which is kind of, making a cleavage? So I don't want to get into simplistic north-south things, but there's clearly a message if you look at a political map of India. No, everybody's just turning here. So tell us about that. I mean, I think that's really the heart of with delimitation coming up now. We're going to be talking about big things. And should there be a continuation of the politics we've had for the past 10 years? What does that portend for India with the north and south sort of cleaving off? Specifically, I mean, and which is the thing I sort of mentioned but the idea of the Panth as a de facto Hindu, is that such a factor in the south? Because now in the Hindi belt, it has become a de facto issue, I think. Okay, so I'm not exactly an optimist when it comes to, the south does not feel the same way at all. I feel that the BJP's efforts to sort of homogenize all Hindus and is slowly working. It may not show any electoral results for them, but they are there everywhere. They are in Tamil Nadu, they are in Kerala, they're working. But there are very other strong movements, right? You look at communism in Kerala, even the Congress, there is Dravidian politics in Tamil Nadu. So these other local forces are basically stopping the BJP and the Sangh. If you simply look at numbers, Kerala has the most number of RSS shakhas in the country, more than Uttar Pradesh. Why hasn't it ever worked out for the BJP? It's not for the lack of numbers or for the number of people who believe in this, but it's just electorally they've never worked out a formula. Recently, there was a huge controversy where the BJP president said that, so if you go to temples in Tamil Nadu, many of the temples, when you come out, there'll be a Periyar statue which will sort of be questioning religion or mocking God. So when we were doing a series, someone said that Tamil Nadu is a state where people will go pray in temples, but they'll come back and they will also bow to the Periyar statue. So these are people who will coexist with religion and with secularism and with their liberal values, right? I think that is where it makes difference because of the local movements which have happened so far. So, which is what worries me and gives me hope as well at the same time, that it's a story beyond politics. It is beyond what just mere political parties can do. So is there something else which needs to be done in North India in order to just lift it to, if you like, to the same level of consciousness, as somebody would like to say, or at least to provide 100 stories? So that there are thing which many chapters. Those beginnings were made in North India. Of course they were, but they seem to have been sandpapered to a, yes. I don't know how much the media plays a role in I shaping can see that. So I was actually telling Supriya a while ago that I also believe that the media plays a small role in how people think, right? Especially the local media, the vernacular media, whether it's print or television and digital. So in the South, there too, they take the same side of being of Dravidian language or communism, all that. There are a lot of critics for that. But I feel local media does play a role. No, certainly. And this whole feeling that we were talking about earlier also of India just generally doing well under Modi, it's what the channels tell you every night. And it's really plastered onto you night after night, channel after channel. And civil society groups. In Karnataka, we saw civil society groups just came together. It was a huge movement. In Telangana also it has happened. In Telangana, the civil society movement was against the BRS. So in these two elections, this is the first time I'm seeing people who are not affiliated to parties simply coming together to make sure that the ruling party is defeated for various reasons. If it was communalism against the BJP, it was corruption against the BRS. Great. So we can wrap this up now. Thank you guys for staying with us. Any last thoughts? Do you guys want to say anything to cap it all up? No. Not much. The Newslaundry office provided us with very good lunch, especially masala dosa. And the Jahangiris. We had some. So they're not called jalebis, they're called Jahangiris. Yes. Or jangries, as I think they're called. No, thank you. I've let down my North Indian roots. Nobody danced yet. I've already had one, but I'm let you have all going of to that. a little more. But no, this is going to be very interesting times even for party politics because of how, who's going to be the CM in Rajasthan for one. Vasundhara was sidelined.
But she's been very disciplined. She's been quiet. She's been campaigning for the party. Probably the only BJP leader who went outside her own constituency and went, campaigning. Chhattisgarh. Chhattisgarh. I won't even, though I think everybody expects it, but that you should count on Shivraj as a certainty. You never know with Modi and Amit Shah what is going to be pulled He's off. already thanked Ladli Behna. He said it's Ladli Behna. Rajasthan, I mean, is a big question. It'll decide the course and the suggestion for what politics. But in BJP has on BJP, is offer. there any other word? I mean, it is That's Modi and Amit Shah's word, nobody right? at this level knows anything till the announcement comes through. Nobody knows. Single engine. Even the top news anchors with the closest sources will not. UP Chief Minister. Yeah. So yeah, interesting times to watch out for. Thank you so much, guys, for staying with us for 8 hours. Like I said when I started this show has been made possible thanks to your support. It was completely ad-free, and it's no mean feat to carry on a show for 8 hours without any ad breaks, guys. So that's really like pat ourselves on the back. Manisha has absolutely no kind. She doesn't like Mr. Narayan Murthy at all. We should have done at least 70 hours. She's taking so much pride in 8 hours. I think that's ad-free. Ad-free is very hard. Completely ad-free. Like Narayana Murthy in our group. Continuously talking about how many hours we work. Somebody has to pay for the jalebis, no, in the end. That is more important. The Jahangiris, I'm sorry. These are not jalebis. You can work how many rename hours. the jalebis. In this Jahangir, in Punjab, there would be jalebis. We have to get Jalebaz. You have to get bigger before you get to. Yeah, it's a bit like Balushai. I don't know Balushai. Balushai is Imriti. fatter. Imriti, Yes, that is the. Like I have Imriti. no clue what you guys are talking about. It looks like jalebi. Great. So thank you so much for watching, and thank you so much for supporting this telecast. If you still want to support us, the link is still there in the description, and you can go support this endeavor. We're going to be back next year. Till then, definitely read all the reporting that all our organizations have done. I think the aim is not to predict who's going to win. That's never been our aim, but to really tell you what's happening on the ground, look at voices that are happy, that are unhappy, bring you stories that last beyond the election cycle. So if you go back to our websites and read what we've done, I think they still make sense. They don't have a sell-by date. So thank you so much for watching. Stay tuned in, and remember to support independent media, because it's thanks to people like you that we're able to do what we're able to do. And like Abhinandan said, we need to reclaim media from big corporations and big governments, and people need to be in charge, because when the public pays, the public will be served. Thank you so much, and see you next year.